माफी तलाफी की काफी पर आई काम नहीं जी आप वो लेती मेरा नाम नहीं pills pop I let the weed smoke sometimes just talking does not make the pain go तू ही आग तू ही उस पे पड़ती बारिश मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस तू ही छाँव तू ही धूप रंगों के साथ रूप तू जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज्यादा दूर मैं लिखना छोड़ दूं जो तेरे बारे मैं कलम तोड़ दूं और तू स्याही में बसा रहे हंसा रहे जमाने को खुद से परेशान वो पढ़ती थी किताबें मैं पढ़ता हूँ इंसान भी क्या चीज है एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है इंसान भी क्या चीज है मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीज एक तेरा नंबर नहीं है You left the city and you're gone बात करने को है बस ये माइक्रोफोन वही कागज वही कलम लहजे सख्त दिल नरम बदबख्त बस करो उदासी हर तरफ झूठे तेरे भरम किस बात पे तू बरहम पर हम क्यों अभी stuck like a jam on a one way but someday तू समझ जाएगी दूर होके हमसे कि हम में वो करार नहीं पहले वाली बात नहीं तुझे किया आजाद या दी है खुद को सजा लेकिन दिल के मोहल्ले में अब तेरा मकान नहीं आज फिर तू आई नहीं याद तेरी आई थी बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी आज फिर तू एक गुमान आज फिर तू शायरी सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती पर God damn it girl आज फिर तू आई नहीं याद तेरी आई थी बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी राजी दिल तो रजामंदम क्यों नहीं टापी पिल गाने लिखे ये शऊर भाई आज है बागी इसको कहते हम गुरूर नहीं दिले मगरूर तू भी खूब तो आराम देना सूद फिर I'm just a text away इतना भी दूर नहीं feels like yesterday सच का सबूत नहीं तू ही ज़वाल मेरा तू ही है उरूज ए लोगों से पूछे कलम लिखता झूठ नहीं गम देकर फिर दिला से कैसे मुँह पे तसल्लियाँ तो दुनिया में तमाशे कैसे हम आज भी कहते ना कोई रकीब ना हरीफ हम थे गरीब न जाने काटी हैं वो रातें कैसे कलम छोड़ या कलम तोड़ा वजन तोल नहीं हजम शोर ये हजम खोज तू सुरंग खोद तराजू ही नहीं जो तोलेगा ये डजन बोल तू रकम सोच इन लफ्जों की आजा जख्म तोल इंसान भी क्या चीज है एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है इंसान भी क्या चीज है झूठ की सजा नहीं तो तोहमतें लगाने पे यार ढील है हेलो 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 एवरीवन वेलकम टू द स्ट्रीम। आज 30 सेकंड्स का डिले डाल रखा है क्योंकि 2-3 गेम ही खेलने हैं। 2 गेम 3 भी नहीं हो पाएंगे। 2 गेम खेलने हैं क्योंकि उसके बाद फिर वॉच पार्टी करनी है, तो 2 गेम में कोई बीट ही नहीं लेंगे, चुपचाप डिले के साथ स्ट्रीम करेंगे। हेलो ब्लेजिंग फायर, हेलो अर्नब भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम बॉयज। वॉच पार्टी करेंगे आज, तो फुल डब्ल्यू मैचेस होने वाले हैं। लेट्स गो। आ जाओ, स्क्रीन दिखा दूँ। मुझे एक बात बताओ, स्ट्रीम क्वालिटी कैसी आ रही है आज? कोई नहीं है ना, आज डीले में कर रहा हूँ स्ट्रीम क्योंकि 2 ही गेम करने हैं ना हमें, फिर वॉच पार्टी है, तब तो हटा ही देंगे। अरे यार, आज मुझे अल्ट्रा लो पे करना है। मैच फाउंड। और भाई बिरयानी कहाँ है? यहाँ रखी हुई है, ये खानी है तो बोलो, भी एक प्लेट में देता हूँ आपको निकाल कर। हेलो राज ब्रह्मा, डीले तो लगता रहता है। Death match. Warm up.
भाई कम से कम न्यू प्रोसेसर ये तो 14 करेंगे अंश भाई। प्रोसेसर नया है, रैम वगैरह सब पुराना है ना, हमें कुछ टेस्टिंग करनी है सब कुछ एक बार। सब कुछ अगर टेस्ट हो जाएगा करेंगे, है ना। हेलो योग भाई, क्वालिटी नहीं पर वैसे नहीं बोल रहा हूँ। 1080p में तुम्हें दिख कैसा रहा है? अच्छा क्लियर दिख रहा है ना, क्योंकि कल कुछ लोग बोल रहे थे ब्लर आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। It's only life or death. Fight! Show them how we fight. पूरा भर दिया साल। नाइस शॉट। न्यू पीसी बेबी, न्यू प्रोसेसर ओनली। ठीक है भाई। Stay down. Nice shot. Kill confirmed. तेज मुझे मार ही दे रहा है यार। Target down. Alvida. बढ़िया क्वालिटी आ रही है ना। Too slow. Got 3. Got ya. Dominating. Dafna. स्ट्रीम लाइक कर देंगे सब लोग। बेचारे का ही पंच हो गया। अंश भाई आज मूड में आए हो गया भाई। Alvida. ये मैं क्लासिंग फायर बटन बाइंड करके खेलना, अनबाइंड करके क्यों खेलूं? फायर बटन करके। अच्छा शूट और क्राउच का सेम बटन क्यों करूं भाई? Too slow. 10 kills remaining.
Got 3. Got 4. Five kills remaining. फीवर और खाए क्या? ध्यान रखो यार अपना. Phantom moment. One kill remaining. 4. One more. Come on. I हेलो told you बेबी we हाँ trust भाई them. असलेबाज. ये धोखा दिया इसने मुझे. आजा बेबी खेल रहा है क्या? कर देते एक छोटे से सब्सक्राइब का मन था देखने का. खुद के पीसी में करो. Statistically loud is winning. Hey Hashibara, sorry I missed your text bro. How are you? Welcome to the stream. And we have a 25 seconds delay as well, so you might hear it 25-30 seconds later. सोलो और ये तो अलग ही पार्टी में रहते हैं हमेशा. तो आ गया. पे क्या करूँ बजी भाई की खींच ले दी और खुशबू से मूड. क्या लिख रहे हो? बजी की स्ट्रीम खींच लेती है. हाँ ये हेलो. अब बार एक डेथ मैच खेल लेते हैं अगर वार्म अप करना है तो. आइए आइए आइए. प्लीज़ मेरी फिक्र करना छोड़ दो. फुल ब्लैक इन्वेंट्री आज. ब्लैक नेवी ब्लू डार्क. आओ ज़रा अपना डीएम में क्राउच स्प्रे दिखाना. या Begging on your knees to be popular. Match found. Death match. Warm up. भाई समझ गया ना क्या कहना चाहता हूँ. भाई डार्विन न्यूनेस आ गया भाई. क्या? डार्विन न्यूनेस डार्विन न्यूनेस आ गया भाई. भागता ही रहेगा, किल नहीं करेगा. भागते ही रहेगा, किल नहीं करेगा. Dominating. मेन्यू के पॉकेट पे है ना, डर गया थोड़ा सा. We know more than we did before. Let's use that. Fight. Now, where to set up shop? Fire's out.
हेलो रेडॉक्स। 3 out of 5. क्या पैंटम चलाता है भाई? Real birds use phantom. हेलो अर्चना सिंह, हेलो अक्षत भाई। ब्रो बेस्ट पैंटम अकॉर्डिंग टू यू? सिंगुलैरिटी। Singularity and protocol. दिस वन। भाई ट्राई हार्ड डेथ मैच लग गया है तो। Goodbye. वाह 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 वाह, गेमर तो इसे कहते हैं। डार्विन को वन टैप पड़ गया। भाई मेरा तो हो गया इस डेथ मैच में, चैट कर लेता हूँ बढ़िया। राकेश भाई हेलो। अरे भाई सब के सब एंगल लेके खड़े हुए हैं। डार्विन को लीड कर। 3 out of 5. फैन का लोड़ा न्यूनेस। गेम्स कितने बजे स्टार्ट होगा? 8:30। वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। 10 kills remaining. आजा बाहर आजा, छोड़िए डेथ मैच में तो नहीं हो पाएगा, कुछ फायदा नहीं है डेथ मैच में खेल के। मुझे तो बंदे ही नहीं मिल रहा है, फिर वो एंगल उड़ के खड़े होते हैं। मरे जा रहा हूँ, राउंड स्टार्ट हो गया। आजा बाहर आजा, बाहर आजा, सब प्रो लोग। आपकी किंग वैंडल की एक वाइट कोनामी, सबसे गंदी आयन फैंटम। सही बोला भाई। भाई होली स्पेशल कुछ होने वाला है क्या? नहीं। अर्चना सिंह किस लोग देख रहे हैं स्ट्रीम, लाइक कर दो फटाफट। फाइट क्यों करेंगे आप, अपन एकदम अचानक। हेलो भाई, मैं नया व्यूअर हूँ, आपकी वीडियोस देख के आप अच्छे एंटरटेनमेंट लगते हो सबको। लगता है थैंक यू किंग स्लेयर, वेलकम टू द स्ट्रीम। आवाज़ वॉच पार्टी करेंगे तब आना। भाई GTA ऑनलाइन खेलो कभी? नहीं। स्ट्रीम लाइक कर लो, बाकी गेम मैं खेल लूँगा। Banging on your knees to be popular. By the way guys, 30 सेकंड्स का डिले स्ट्रीम पे, तो मेरी आवाज़ तुम्हें लेट सुनाई देगी अगर मैं चैट का रिप्लाई करूँगा तो।
मुझे भाई लग रहा है कि PRX हारे की, हाँ हो सकता। क्या बात कर रहा है? कौन बनेगा फिर? ऋतुराज? तो उनको फ्यूचर देखना है ना भाई, ये सीज़न ट्रेन करके चले जाएगा वो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शुभमन गिल। शुभमन गिल ईट्स 10 ऋतुराज फॉर ब्रेकफास्ट। नियॉन ले ले, मैं फट से 100 ले रहा हूँ। क्यों वॉच पार्टी में डिले क्यों? वॉच पार्टी का टाइम हटा दूंगा, अभी बस गेम खेल रहा हूँ ना, अभी तो वॉच पार्टी को 1.5 घंटा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वैलोरेंट गेम, हाउ मेनी इयर्स इट विल डोमिनेट? राइट वाले चलाएंगे सही से तो चलेगा, क्योंकि इसमें मतलब ये ऐसा नहीं है कि गेम आके रुक जाएगा एक स्टेज पे। नए नए एजेंट्स आते रहेंगे ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ होते रहेगा। बाकी वो राइट का विजन कैसा, उस पर डिपेंड करता है। गेम तो चलेगी, इकोसिस्टम अच्छे से बना के रखेंगे, टूर्नामेंट्स टीयर 2 टीयर 3 थोड़ा बेटर हो जाएगा ना, तो बहुत तगड़ा हो जाएगा मार्केट वापस पहले जैसा। अभी थोड़ा सा मुझे लगता है टीयर 2 टीयर 3 में से दिक्कत हो रही है थोड़ी। प्लीज़ मेरी फिक्र करना छोड़ दो ना। कौन जीत रहा है? अच्छा रेजी भाई, आज जेंजी और सेंटिनल्स। गल्लाजार हाँ आया है ना। अच्छा भाई साहब ने हार्बर ले लिया है। The enemy Fade will use our fear against us. So it is better to be fearless, I think. I'm out of here. Go, go, go. Reloading. Need a drop. Thanks. उससे बड़े तो प्रोटोकॉल ही चला लेता भाई। हेलो Gotta हेलो, go. सब व्हाट्सअप। Get a hall, man. Who? S1 वॉल चाहिए क्या मिड पे? No. Revealing area. Yes, you're in. जेट हॉल्स देख ले, हॉल्स देख ले। ए मिड टू बी। वन मिड वन हॉल्स। नो इट्स नॉट योर। साइफर हेल्प करना मिड पे। चेक हाइपर इधर आ जा, मैं हेल्प कर दूंगा तेरी। इधर आ जा। Flooding. अरे यार Water तुमने line. बुलाया, मैं स्विंग किया, मैं मर गया। Shot down. Spike down B. हाँ फुल 63 फेक मिड 30 One enemy remaining. आप वाले 63 फुल के साइड कहीं पे है। On your right, Jet. तेरे साइड ही है। बैक साइड 1 मिनट Stay out of my head. Go down. Reloading. Enemies close. Eyes up. सेव मत करो ना, कोई भी सब लोग बाय करना। स्टिंगर चला रहा है। बाय करो Bye, outlaw. Gotta go. अरे आपने इतने बड़े मैप में स्टिंगर लिए, वो भी हाफ शील्ड पे भाई, कुछ और ले लो यार। भाई देख भाई तू बस अब देख सिंगल को अंडर एस्टिमेट करता है भाई। देख लो, अंडर एस्टिमेशन मत करो। Shot down. There. साइफर मिड देख लो। Reloading. Enemy down. Scanning ahead. Spike down A. वो One वहाँ के थ्रू enemy आगे remaining.
बढ़िया गुड जॉब Be at rest. Reloading. मेरी गाड़ी क्यों मारती है इको में सबसे ज्यादा? अरे यार शेरिफ पड़ी hazards थी aside, तुमको दे देता। I do love how much मैंने we रिकॉन travel. भी किया था उसमें डैश किया तेरे को साउंड भी मैच कितने बजे मैच में अभी टाइम है थोड़ा सा रेस में मैच में अभी है एटलीस्ट 1 घंटा 30 मिनट। Go, go, go. युग दुबे वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो सब लोग स्ट्रीम लाइक कर दो। बैट ऑन नहीं करी अभी मैंने यार। Let us hunt. सुनना मैं रिकॉन दे रहा हूँ स्टन करके फाइट लियो। अच्छा तेरे पे तो Revealing area. इधर आ रहे मेन आ रहे मिड पे Take flight. प्लांटिंग देयर इन ऑलरेडी। Spike planted. 115 रेना फेड एंड जेट ऑल 3। ऐसा क्या मार दिया तुमने? अरे स्प्रे के थ्रू 3 को हेड लगा। अरे फक ही इज 115 हर्बर। शूट ने देखा भी नहीं था ऐसे। Last player standing. किल फेड ही इज 150। बड़ा चूतिया है। भाई हार्बर राउंड निकाल देता पर No hard feelings. Cage triggered. One enemy remaining. 115 मेन मेन नाइस वन। दो रिकॉन में डैमेज। नहीं होगा, निकल जा, गन उठा के निकल जा। कोई नहीं बढ़िया भाई Good round, पापा प्लेयर आ गए अपनी टीम में तो। हार्बर आपने उसने आपको देखा नहीं था पता है आपने फायर कर दिया। Your mind is just as dangerous as your weapon. उसने फिर ने देखा नहीं था, देखा नहीं था। भाई पर नहीं तो देखा ही नहीं था। हेलो स्टेशा भाई कैसे हो? अरे भाई इग्नोर मत करो। हेलो थ्रोमस भाई हेलो और लर्किंग अभी वेलकम टू द स्ट्रीम। ऐसे वेंडल मांगना तो Need a drop. Thanks. अच्छा वो दे रहा है वैंडल मुझे फुल शील्ड के साइफर। आप इतने अच्छे कैसे हो? मैंने ऑल्स में दोनों वायर लगा दिए। फक कोई बात नहीं, 2 बंदे फंसेंगे ना। ये साउंड ऑल डन फटाक से। Scanning ahead. Welcome to my world. हार्बर जिंदा रहना ठीक है, प्लांट करने दो यार। Spike planted. One enemy remaining. Last one down. Shot done. कट जाओ ना। रिकॉन है क्या? नहीं भाई अलग अलग की जा रहे हो एक साथ। अलग अलग मत जाओ साथ में। मैं कर लूं? I'm out of here. Work good. वाह 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 300 रुपए वेस्ट। अरे मैं जो मेरा पैसे भी नहीं मिला था मैंने। अरे सॉरी। I have survived more than they have ever seen. I need this. पूरी फिर लेनी पड़ गई भाई दरवाजे किसी को। Gotta go. मैं ये राउंड ये खेल रहा हूँ ना कोई बीज ऑफ। बराबर ये ना सुन बीजा ना इधर स्टैंड से रोक Right here. वेट कर। Scanning ahead. ये साउंड मिड छोड़ दो, वैसे पिक देने की जरूरत नहीं है। मेरा कैन Take दिख flight. ये डैश अच्छा तू नहीं किया, सामने जेट तो मर गया। अपना जेट ओके। Is ready. स्पाइक ये रहा। Spike down A. One enemy नीचे remaining. नीचे नीचे जस्ट Team Ace. जेट भाई इधर था Not right here. We all did our part. Reloading. हाँ Wow, we are destroying them. मैं वापस से खेलूंगा। अरे कांग्रेस अरे थैंक यू शीशा भाई। भाई राइट बड़ी कैसे मिलती है? 2 शनिवार रखने पड़ेंगे। Reloading. अच्छा सामने इनिशिएटर अच्छा फेड है। वाह 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 भाई मेरा कैम है ना यहाँ तक का एरिया देख सकता है। क्या यहाँ बात से कर रहा है लेके भाई शीश। तो फिर अगर मेन से मरोगे तो ब्लेम मत करना कुछ। I Razeman it is I know but I am used to it now.
बट उसके लिए मैं स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ तो थोड़ा बहुत प्रिकॉशन ले रहा हूँ, बट फिर भी बी घुस रहे। क्या बात है। जाओ जाओ स्टन करते रहे, स्टन करते रहे। नाइस नाइस, चल कोई ना। 80 वरी मत कर। 80 वाइपर, 80 वाइपर। दोनों भी बहुत Revealing area. इन है क्या? हाँ आई थिंक सो। बैक साइड है, बैक साइड बैक साइड। मैं मेन से आ रहा हूँ। नहीं ये इन दोनों मेन है भाई, कुछ भी कॉल दे। One enemy remaining. Spike down Deploying B. drone. What? To oppose us. अरे वो चूतिया, वो रिवील हुआ उसमें पीक दे रहा है। Reloading. बंदर बना दिया तूने उसको लोवर। फ्री फायर ही दे दिया मैंने तो। Study their pattern. Exploit मेरे को देना whatever you स्किन। can. तो वाह। ये लो, Someone spot सो me. आई ड्रॉप देना। दे रहा हूँ। ये लो साइफर। Shukriya. Need a drop. मैं भी बंदर बनाता हूँ, रुक। साइफर दियो ड्रॉप। Thanks. दिया। भाई मंगलवार को भी रख लेता हूँ, जल्दी मिल जाएगा। रख लो, 7 दिन रख लो ना। विनर प्रोटेक्शन इन VCT, सेंटिनल्स एंड जंजी। Get out of my way. ये सॉन्ग। पूरा वॉल है। मिड देखता हूँ। हर बार अब मिड देखोगे, मैं अल्ट पे खेल रहा हूँ इसलिए। हाँ मैं एक Scanning ahead. कौन से कैफे में खेल रहा है, इतनी चिल्लम चिल्ली है। पता नहीं भाई, है एक चूतिया। वो भी तुझे यही बोल रहा होगा। इसके लिए वेट कर रहा मैं तो बोली। Target mid. Deploying drone. हट जा, छोड़ दे उसको, छोड़ दे। Reloading. Enemy marked. आ गया, कस्टमर आया। Blocking fire. हूँ। इन्हीं है, वापस जा। Gone. One enemy remaining. Spike down A. अरे मारो बेबी रेग उसको। किधर है? Revealing area. My quiver is never full. हेलो शिवराज, कैसे हो? 469 गेमिंग, आज आप प्ले ग्राउंड क्यों नहीं जा रहे? अरे यार I'm out of here. मुझे तो पता ही नहीं है प्ले ग्राउंड को। क्या मुझे नहीं चाहिए कोरोनामी? मुझे दियो। दे दिया। शिवराज भाई कोई बात नहीं, सब लोग स्ट्रीम लाइक कर दो गाइस। आज 30 सेकंड का डिले डाला है मैंने, तो इससे You स्ट्रीम want to चैट लेट play? करूंगा। Let's play. Scanning ahead. Face your fear. यार अल्ट तो करने ही नहीं मिलेगी यार। बढ़िया ऑफ कर रहा है जैसे यार। मिड पे भी सेक्सी पिक निकालता है हर बार। Get that. आई डोंट थिंक फेड वुड लर्किंग। I have it. पीक दिया जा रहा है। चिल करो मैं ट्राई मिनट, करता हूँ। एक हाँ मिनट। लेता हूँ। ये पिक्स में तो है ना बहुत। एक ही बुलेट है आई थिंक उसके बाद। B boys. It's B. फाइट मतलब प्लांट पेल्ट कर रहा हूँ। One enemy remaining. एक बुलेट है सिर्फ। Spike down B. Enemy B. Revealing area. Outside. Weapon here. Weapon here. Get ready. I go fast. भाई नियॉन भागते ही रहे, पैसा है मतलब भागते ही रहेगा क्या? उसको बेचारे को दे देता ऑप उठा के। हेलो बिल्ला भाई, कहाँ हो यार? बहुत दिनों बाद आए। हेलो सीएम राय, हेलो शुभम भाई, कैसे हो सब लोग? ऐसा नहीं लग रहा है मेरा थोड़ा। मैं ट्राई कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपने एजेंट भी तो बहुत अच्छा लिया है। थैंक यू। चैट मिस योर माय न्यू पीसी इज हियर ब्रो। ओह कांग्रेचुलेशंस ब्रो। कैसा चल रहा है न्यू पीसी में गेमिंग? वरुण पात्रा कोजाई अंदर राजा। गिरेगा तो उठेगा जनाजा ना, तू मेरी तरफ आना। Scanning ahead. There they are. Oi! F the hunter! वाइपर 80। One enemy remaining. Right here. Shock dart. This. Conflict is not my first choice. Go. But that choice was made. भारत। अच्छा आप तो इंटरनेशनल ट्रिप पे थे ना? कैसा रहा ट्रिप? कोई बात नहीं यार, हार बोलो। वो फेड भी गंदा ही है।
अरे अरे हाँ ना। क्यों भाई, अभी मैच खत्म थोड़ी हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हो यार, प्लीज यार ऐसा मत ट्रीट करो, तो मार लेगा बाद में। नहीं वो अगर मैं नहीं भी मारूंगा मैं खेल लूंगा भाई, कोई नहीं। तुम्हें वही ना भाई, provide करेंगे। उसकी यूटिलिटी से अब हेल्प कर दे रहे वही बहुत है ना भाई, किल्स क्या देखते हो बार बार ये यार। रश होने वाला है बहुत तगड़ा। आई मीन बी सॉरी। ट्रैप और उस पे स्टन पे खेलो इजी। Revealing area. One mid. मिड कोई स्पॉट नहीं हुआ है इसमें, हाँ ऊपर है। 80 टारगेट चेंबर 80 मिड पे। अच्छा वायर अरे बहन चो अल्ट में ही वन टैप पड़ जाता है। ओ मदर Chamber मुझे लो। बैठना पड़ेगा ठीक से। एक बी में एक और भी मैन बैकर भी मैंने। Spike down B. One enemy remaining. Last है player उसको क्यों किया, standing. उधर ही था वो। बोला तो उसे कॉल भी थी। अरे यार मेरी वजह से मैं उस चेंबर से मर गया यार, जो 1 HP था, गार्डियन वन टैप मार दिया। Care mid. ये मेरी एस हो जाती है अगर ये लोग आ जाते तो। साउंड मत दे लोड़े। अरे इस पे भी राइट बड़ी है। यार मेरी वन नहीं है। गलती कर दी उसने प्लांट वो करके, Welcome to planted. my- वो पहले प्लांट कर देता था। अरे जो पता नहीं इसमें क्या हुआ। ये जो आप भाई गाली क्यों दे रहे हो, तब थोड़ा तमीज से खेलो ना भाई। ये मंकी किंग नहीं है भाई साहब, ये मंकी किंग जो है। ये लॉर्ड मुझे दूर से आते हुए दिख गए थे पता है पहले ही। पता नहीं कहां से सब बोर्ड पे आ रहा था भाई। नजिया को चप्पल मारी यार, मस्त। यू ओपिनियन ऑन बीबीएस, योर ओपिनियन ऑन बीबीएस क्या है भाई, बेबी बीबीएस क्या है? अरे ओ चिमकांडू कर दे रिफ्यूज। क्या है मुझे क्या पता। क्या बीबीएस का मतलब क्या है? बिग ब्लैक सैंडल्स। भाई पता नहीं। They will scurry. And then अचानक से एम को क्या हो जाता है, आधे घंटे 3-4 राउंड से फाइट ही नहीं मिली, हक दिया चेंबर पे मैंने। और वो ना वो सामने वाला जो बंदा है ना रेना, वो सिर्फ रेना ही खेलता है भाई, बोर नहीं होता क्या एक एजेंट खेल के? मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए दोस्तों। जेट, साइफर, हार्बर एंड नियॉन, क्या आप एक ही एजेंट हमेशा खेल सकते हो? नॉट रियली। जेट तू तो रहने दे, तू तो इंस्टॉल करता है जेट हर मैच में, तू रहने दे, तेरे से नहीं पूछ रहा। रहने दे, तेरा ट्रैकर देख लिया मैंने, 100% पिक रेट है तेरा जेट का। एक राउंड है Shot that. Revealing area. One enemy remaining. Mid is. नेट से आ। spike spotted. Spike is here. अरे बहन की Take flight. 105। नाइस। मेरा एक ही वायर में Beast Boy शुभ। मैं तो देखता ही नहीं Last कंटेंट तो round कैसे before जज the करूं भाई। switch. ये सिर्फ गार्डियन ही करना चेंबर। जब वो उन्होंने ब्रेक लिया था उससे पहले बढ़िया थे, उसके बाद थोड़ा सा तेरे से पूछा है क्या? पॉइंट तू यूट्यूबर है क्या यहाँ पे? भाई 120 मिलियन सबसे मेरे। यस खेल सकते हैं बिल्ला भाई। आपको नहीं, आप जो कंटेंट क्रिएटर है उनको छोड़ के, कंटेंट के लिए करते हो बात अलग है, कंटेंट के लिए जो भी करना है करो, बट अपार्ट फ्रॉम कंटेंट अगर आपको एक ही एजेंट खेलना हो पूरे टाइम। ओह अमित भाई सही बोला, मैं तो ब्रीच खेलता हूँ हर मैप में हमेशा। ऐसा है क्या? ये राउंड तो गया है, तू पिटेगा अभी। चार तक काउंट कर रहा हूँ। 4 4 3 आधे कुछ तोड़ नहीं रहा। अरे वो ऑपर है, कैसे तोड़ देगा? अच्छा मेरे Scanning ahead. अंदर आ चुका है रेना कहीं ना। रेना की साइड में ही है। Deploying drone. One enemy remaining. Back. देखो सर और Death is ये cold. रेना को पूछ लो कितना दिया है। मैंने हेड मारा है, मेरे को मतलब नहीं है कुछ भी। Switching sides. बंदर बना रहे हो। Bow and arrow is old fashioned. बीबीसी तो सुना है ये, Sometimes बीबीएस old ways are best. बीबीसी तो सुना नहीं, देखा है रोहित भाई। अरे व्हाट द फक। अरे बीबीसी तो भाई चैनल है ना, देखेंगे ना भाई बीबीसी न्यूज। कितना बुरा खेल रहा है। भाई मैं तो रोज देख लेता हूँ कच्चा बोल के अपना। अरे भाई क्या कर रहे हो यार? वॉच पार्टी की स्ट्रीम है, बकचोदी मत करो, ये सब मॉनिटर होती है बाद में। तक 40 डैमेज दूंगा सर। सॉरी सब लोग स्ट्रीम लाइक करो, 50 लोग देख रहे कब तक है हैं। जा? माँ काल के आशीर्वाद से लाइक हो जाना चाहिए। कोई नहीं, चलो एक अच्छी मेहनत बॉल नहीं कर रहा हूँ रोज आके बेटा। यही कर सकता हूँ। मेहनत नहीं कर रहा हूँ। I'm out of here.
बेल बेंजामिन जू बीबीसी यस Mid door. Reloading. Shock dart. एक हग रिकॉर्ड दिया मैंने जो हग रिकॉन कर तो दिया Mid door 2 है. रिकॉन वाला डेड रिकॉन करके डेड हुआ हूँ यार स्टन करना उधर से सीधा पुश कर दे Watch out. Flying. वाह 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 एक आगे तुम्हारे पीछे आ रहा है वो. अरे वो डिफेंसिव डुएलिस्ट भाई Last player standing. की पिक मैंने निकाला था पहले। वन टैप मार के वीसीटी कब चालू होगा फर्स्ट मैच स्पार्की भाई वीसीटी चालू होगा 8:30 बजे लप्पे तो हैं भाई अरे लप अब हार्बर 2 और फिर सेम हो गए. यस नहीं अभी बेटर We are strong because we are together. Don't प्लान forget बना था that. क्या मैं भाई ऑब्वियसली बेटर है विनिंग टीम का प्लेयर है भाई कुछ तो ऐड कर ही रहा है अपनी टीम के लिए भाई आपकी बात कर रहा हूँ हार्बर ऑलवेज दैट. थैंक्स भाई लव यू ये मत. ये जिस दिन से शेरिफ लिए ना सारे पहले मरेंगे देखना अभी फिर मैं इनके शेरिफ उठा के एक हेडशॉट मारूंगा चल ठीक है Go, go, डन सीन है डन सीन है Scanning ahead. Found them. आदत छोड़ ये तो पूरा चूक के चला गया तुम्हारी बात तो सच Perfect. चल लो प्रेडिक्शन तो है भाई ये सोआ मत जा अकेला है तू. दिया डरते हैं सोआ क्या दिया. 11-2 चल रहा है अभी तो थ्रो करूंगा 7-8 रन उसके बाद सीरीज खेलूंगा अब काली को लोच होंगी भाई यहाँ पे कर रही सो लो भैया जेट नहीं बैक कोई बात नहीं जेट सेम से बट डिफरेंट नो हनी नो मनी ले भैया एचपी थोड़ी सी है नहीं Scanning ahead. आई विल ट्राई टू सर्वाइव One enemy आई remaining. कुडंट सर्वाइव Thrifty. भाई ये सोवा पे वोट है कोई More poor next time. It'll be hard. यो प्रेम भाई हेलो तन्मय Match उसको point. उसका सन तो पाकिस्तान गया 50 लोग देख रहे स्ट्रीम लाइक कर दो मैंने क्या बोला था ये शरीफ वाले अब मरेंगे फिर मैं वन टैप मारूंगा उसकी शरीफ से बोला था ना शरीफ वाला न्यू वन ऐसा बोले. भाई मुझे क्या मतलब एजेंट कोई भी हो भाई मुझे तो उसकी मौत से मतलब है Reloading. मैं जिंदा था भाई मैं जिंदा था मैं जिंदा होके कुछ योगदान नहीं दिया मैंने कुछ I'm out of here. इतना डिप्रेस रहते क्या रोज. भाई यार क्यों बोल रहे हो अगर उसको सही में डिप्रेशन हो तो क्यों उसको वो कर रहे हो यार मुझे पिछले राउंड और ब्लेड लेने चाहिए मुझे लगा क्या ही जरूरत पड़ेगी गांड से भाई चोक ये बंदा मेरी गन There they are. भाई 3 दिन ले ले वो आने पीछे Spike down A. मतलब मेरा एमवीपी आ गया था नेक्स्ट राउंड Last player standing. ओके फक एक्चुअली अरे हेलो कृष्ण भाई कोई डब्ल्यू बात नहीं. मेरा क्रॉस है रीच कर अपने आप मारने लग जाएगा. क्या क्या क्रॉस है How's everyone feeling? Good? तेरे को कॉपी करना पड़ेगा. रुक मरता सुनो अरे सुनो मेरे पास एक बढ़िया सी कॉल है साइफर हाफ शील्ड लो कोई भी भाई मत करो सब लोग हाफ शील्ड लो साइफर और मैं गन लेंगे बस मैं इधर ड्रोन करूंगा अभी एक पिक निकालूंगा फिर मेरी अल्ट आ जाएगी प्लांट करके अल्ट पे राउंड निकाल दूंगा ठीक है हां ये I'm out of here. हार्बर ये ले प्लांट कर गोटी डाल के ला 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 हेलो ईशान भाई गोटी खरीदनी पड़ेगी ये लो हाँ, खरीद ली। ले लो. मेरे को शेरिफ दे दे. हाँ सही है शेरिफ तो दे दे दोस्त. मेरे पास शेरिफ ही नहीं है बाबू चला Deploying. और मत लेना कोई आ जाओ गन वाले एंट्री ले लो एक मैं घुस गया हूं गाइस बाप पीछे दिखा Revealing वाइपर बैक साइड रिकॉर्ड डालना पीछे एक वाइपर लो -40 ये लो गाइस हमारा प्लांट हो गया shock dart. Out of charges. मैं भी आ रहा चिल हूं करो मेरे साथ. Down. My ult. मारने तो 120 दोनों लो One enemy remaining. अरे बोला था ना राउंड निकालेंगे भाई वी एज अ टीम डब्ल्यू टीम प्रीमियर टीम बनाओ चैंपियंस
थोड़ा सा हक दिया था मैंने वहाँ पे, मुझे लगा साला उधर लेफ्ट से पीक कर गया फिर। साला कहता है तू क्या राउंड निकालेगा। अब स्क्रीन हाइड ही करेंगे और एक गेम फिर से क्यों करेंगे। आखिरी गेम होगा आज का ये, क्योंकि आज 8:30 बजे मैच है। जय श्री राम कृष्ण भाई। नाइट बॉट ठीक से काम नहीं कर रहा। अरे वो नाइट बॉट का इशू नहीं, वो जो एपीआई है ना, जो रैंक वाली कमांड है उसकी एपीआई है, वो उसकी दिक्कत है। नाइट बॉट तो चल रहा है। वो ओपी डब्ल्यू टीम अनोनिमस गाय सिद्धार्थ भाई राइट गाड़ी भी मिल गया। नहीं मेरा नहीं था, मेरे दोस्त का था। ये बेबी रैक है ना, उसका था। कॉल्स तो है। अभी तुम लोग स्ट्रीम छोड़ के चले आओगे, पर जो भी जाएगा उसको एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो है क्या है वो। आता हूँ वेजीबाई सीधा वॉच टेंस का दादा वेजी दादा। अरे नहीं नहीं भाई, वो बंदा वीसीटी खेलता है, मैं इधर रैंक में झूलता हूँ। कहाँ कंपेयर कर रहे हो यार। स्ट्रीम लाइक करो सब लोग, सब्सक्राइब करो। 6.6 के लिए 20 सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइब कर दो मामा। हेलो मोक्षी दी। दादा कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मानव भाई, आप कैसे हो? 30 सेकंड्स का डिले है स्ट्रीम में, तो मैं जो बोलूँगा तुम्हें 30 सेकंड बाद सुने। भाई ये गले पे क्या लिखा है? अरे मेहंदी है, मेहंदी है भाई। वो अभी होली आ रही है ना, तो उस पर कलर कलर लिखे हैं, पिंक रेड ब्लू ऐसा। राइट बड़ी के लिए राइट में दोस्त बनाना पड़ेगा क्या? पता नहीं यार भाई, वालों के लिए कंटेंट बताओ यार, मुझे क्या पता। हाय वामशी, वेलकम टू द स्ट्रीम। मुझे पता था तो मैं ही नहीं बना देता क्या? हाँ बोलो क्या मिलेगा, रुक जाता हूँ मैं। भाई भैया आप भी अपना एक टूर्नामेंट बनाओ। है मेरा प्लान अभी। मैं उसके लिए मुझे किसी बंदे से बात करनी होगी जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो। मुझे करना है एक टीयर 2 टूर्नामेंट। मैंने लास्ट नवंबर दिसंबर से प्लान करके रखा था। फिर जिस बंदे को मैंने बताई थी बात, बैड फॉक्स गेमिंग, हेलो ब्रदर। 70 के बुझे थे दादा पीसी लूँ क्या? अच्छा 70 के बजट है दादा, पीसी लूँ क्या लैपटॉप वालों के लिए? अगर आप पीसी बना सकते हो तो पीसी ले लो, क्योंकि बेटर परफॉर्मेंस देगा। 70 के वाला लैपटॉप फिर आपको 1 साल में दिक्कत हो जाएगी। 70 के पीसी बनाओगे 3 साल एकदम स्मूथ चलेगा, अगर स्ट्रीम नहीं करनी है तो। ड्रेक फॉर गेमिंग, हेलो कैसे हो ड्रेक भाई? हेलो डेथ स्टॉकर। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अरे आज डिले इसलिए डाला है क्योंकि सिर्फ 2 ही गेम खेलने हैं ना। 8:30 से तो वॉच पार्टी है। तो मैंने सोचा अजय भाई माइक कौन सा है, डिस्क्रिप्शन में देख लो, आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली माइक का नाम। तो मैंने सोचा कि क्यों फालतू में 2 गेम के लिए बीटी लें, चुपचाप आराम से डिले में खेलते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। नूब गेमर रैंक अभी चल रही है 87 आ रहा है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। वो कमांड काम नहीं कर रहा रैंक वाला, मैं आपको गेम में दिखा। 87 आ रहा है। ये गेम जीत गया तो इमॉर्टल हो जाऊंगा, नहीं हुआ तो फिर कल इमॉर्टल करेंगे। और परसों तो मैं जा रहा हूँ घर। क्या एक 24 इंचेस का मॉनिटर मुझे असेंडेंट से इमॉर्टल बना पाएगा? फिर स्ट्रीम करोगे डिले हटा के? हाँ हाँ हाँ, अभी बस सिर्फ ये गेम के लिए डिले, ये गेम खत्म होती डिले हटा दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए सब लोग स्ट्रीम लाइक कर दो। सिक्सटी के कैसर हो गया फिर मतलब? भाई हेडफोन या फिर आई एम्स यार ये। रुको ये इससे पूछता हूँ बेबी रेक से। भाई हेडफोन अच्छे हैं क्या? आई एम टी शर्ट मस्त है, थैंक यू। बोलो बोलो। आईएम्स के अगर कोई बंदा बीआर खेला आईएम्स के लिए तो ले लो। मान लो कि बैटल रॉयल वो सब, तो मैं कहूँगा अगर सेपरेट अगर तुम माइक यूज कर रहे हो तो आईएम्स ले लो। साउंड कार्ड अच्छा है मदरबोर्ड का तो आईएम्स
अगर नहीं है तो भाई फिर तो एक काम करो, ओमन ले ले, ओमन में हेडफोन्स ले लो कोई से भी अच्छे वाले, जितने भी लॉजिक, अगर तुम्हारा हायर एंड है तो भाई हाइपर एक्स के आते हैं क्लाउड 12 पर, तो वैल्यू ही खेलना है तो बेस्ट कुछ भी ले लो भाई। मेरे साथ अगर खेलो budget कम है तो कैंडिडेट पे। Redgear नहीं निकाल दो। बजट कम है तो क्या लेना है? अगर 2-3 हजार के बजट है तो उठा फिर दो मेरे कोई वाले ले लो, Redgear बोट के जो है Mousepad। मेरे पास। हाँ बोट के ले लो, ये वाले बेस्ट है। लैपटॉप गेमर्स असेंबल भाई, जिन जो कॉलेज में है उनको तो लैपटॉप लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, पर अगर ले सकते हो आप, मोबिलिटी नहीं चाहिए। Finally back out in the field. Let's go. There's so many new toys I want to try out. हेलो आशुतोष, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। 30 सेकंड्स का डिले है स्ट्रीम पे, तो किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो रिप्लाई थोड़ा सा लेट आएगा। कंटेंट बता दो भाई। अरे युग भाई यार, अब मैं परेशान हो जाऊँगा आपके उस सवाल से। क्या कंटेंट बताऊँ मैं यार आपको? कंटेंट तो सबका अपना अपना होता है। मेरे को पता होता तो मैं खुद नहीं बना देता क्या? ये बोल रहा हूँ मैं। 95 के लिया मैंने 400 जाते वाले में। हाँ मैंने पीसी का थर्मल चेंज किया और वेंट्स स्टैंड किया तो अब एफपीएस स्टेबल आ रहा है। यस न्यू एजेंट वाला Cover going out. दोनों साइड चलते आ जाओ। अरे यार ये सोवा लेके शरीर खेल रहा है। नाइस भागा वो, जा बाहर निकल गया। Last player standing. Planted. हमारे तो पिस्टल राउंड में मिड जा रहे हैं। मैं वही बोलने वाला कि क्या मिड की कॉल? अरे यार पिस्टल राउंड में मिड की कॉल में तो यार साथ आ जाओ पहले। हम दोनों नहीं मिड का भी इट वाज पीक था, बट ये उस शॉट का है मिड आ जाता। वही तो बोल रहा हूँ, जब कोई आ नहीं रहा है तो मेन चल लो ना सीधे। Wait for you to run circles around them. अरे तो ब्रो इफ इज कॉलिंग देन अगर मैं भी जा रहा हूँ तो तुम लोग अडॉप्ट कर लो ना उस वाली चीज को। यू गाइस कम। कोई नहीं, ठीक है, इट्स ओके, आ जाओ। मैं म्यूट कर दूंगा ये रेस को अगर ऐसी आईचिल करेगा तो। अरे कोई नहीं भाई। You will see better. Need a drop. Thanks. Gun here. Reloading. Scanning ahead. Enemy spotted B. Last player standing. इन्होंने Spike down B. मार दे। Flawless. रैंक अप मैच है ना मेरा, तो इसमें थोड़े से आते हैं ऐसे। The backs will be towards at least one of us. Need help. Reloading. Let's fly. हाइपर खेल रहे हैं क्या क्या Reloading.
Shadows traveling. Shadows traveling. Disappear. Shot that. One enemy remaining. Scanning ahead. नहीं बैकस्टैब हाँ वही है Flag planted. प्लीज एक भी किल मत देना उसको। There. क्या स्मोक गिरा? There. सीटी आया। सिटी आ रहा है सिटी। Gone here. Cover going हेलो out. नेक्स्ट। Finally. This is how I like to win. Need a drop. My thanks. Thanks. यार मैं पीसी से रिलेटेड कोई टिप्स नहीं देना चाहता हूँ, सबको अपना अपने पीसी की कंपोनेंट के हिसाब से चीज़ें चेंज करनी होती है। बाकी बेसिक चीज़ें वो है कि आप थर्मल पेस्ट वगैरह चेंज कर लो, देख लो। बाकी हार्ड ड्राइव फुल तो नहीं होगी ये सब। Need help. बाकी अंडरवोल्ट अंडर ये ओवरक्लॉक ये सब आप अपने हिसाब से डिसाइड करो भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसमें। मैं कुछ बता दूंगा, आपके पीसी में दिक्कत कर गया तो फिर मैं खुद ये बेबी रेक से पूछ के करता हूँ एक एक चीज़। मतलब आप उसको पूछ लो कि मैं इतना भी पूछता हूँ बटन कौन सी दबाऊँ, इतना सब पूछता हूँ मैं इससे। राइट। Revealing area. Reloading. Cover going मेरा पैकेट लॉस आ रहा है गाइस। Bomb buddy out. बहुत सिटी। Here. Spike planted. Reloading. एक मार्केट है एक है 10 सेकंड दे दो स्मोक आ रहा है मेरा मार्केट देख रहा हूँ। क्या स्मोक तू सिटी मार्केट मार्केट One enemy Enemy remaining. kill. ये भी सिटी सीटी थे दोनों, तुम बोला ना। अरे वो दोनों ने फ्लैश किया ना सीटी से। Sweet. That went well. All Good right. round, Same good thing this time. Hey, nice work. अंडरवेयर कर ले। भी चलते रहता है। आ जाओ ब्रो, फ्लैश कर देना फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ ड्रोनिंग। यू कैन ड्रोन फ्रॉम हियर ब्रो। वो वैसे भी बाद में आया साइफर, पता नहीं क्यों। नहीं जेट तो पूरा आगे आ गया जेट था। वाइड आई थी ना पूरा। तो जेट आई थी क्या मुझे तो। हाँ यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक। Even fight? That's fun. अच्छा उसको कवर देने आया था चूतिया। Satchel out. blinding. Blocking sight. Scanning ahead. Blocking sight. Shadows traveling. There they are. One dead. एफर भी है। Here. गेट में कर दो। Spike planted. Take flight. Camera taken out. One enemy remaining. Gun here. भाई मैं तो से पिक दूंगा नहीं वेंट के लोड़े को। Careful. देख रहा Reloading. Flawless. अभी अभी मेरा खाता भी खोलना है भाई। हट सब लोग हट जाओ, मैं मारूंगा पहला। We gotta नहीं ब्रो, click. यू Remove डूइंग it. फाइन भाई। Got it? जो कर रहा है करता रहे, वापस आ इधर। बहुत सही कर रहा है रे ब्रो, तेरे पापा तेरे से बहुत ये प्राउड है। बहुत सही जा रहा है ब्रो, बहुत सही कर रहा है जो भी कर रहा है तो लाइफ में। तेरे अब्बा एकदम सही जा रहे ब्रो। आदित्य यानी अभिषेक अपनी बाप की सुन। Reloading. Satchel out. भाई मेरे कौन तोड़ देना पहले। मैं तोड़ दूंगा। होने वाली है। Grenade. एफर Spike down B. अरे अरे नहीं जा रहा था इससे। कुछ भी हो गया। मैं टाइमिंग करता था यार। Silence. टाइम नहीं होगा। Spike planted. Deploying drone. पीछे पीछे बोटा था बोटा था। Reloading. पैरन में I है। know exactly where you क्या are. चीज कुछ भी नहीं है, दे दिया सब। बस एक टीपी बच। Last player standing. एंटी तुम ट्रेन हो खाता खुल कैसे होगा? जो क्या फायदा ऐसा खाता खोल के राउंड तो जितवा नहीं पाया टीम को मेरी। मैं साउंड पे खेलता। Level heads until we're home, yes? Good. तूने पीक क्यों दे दिया सिटी वाले को? पहले अपन फर्स्ट लेन वाले को मार लेते। अरे पता नहीं, मुझे लगा बहुत क्लोज आके मैं से पी का एडवांटेज देके मार दूंगा। वो क्लोज भी था लेकिन वो ओपन नेट रही। दूसरे वाले ने मार दिया ना। हाँ
बी पे आवाज करके यार ये आ जाओ। No, they're stacking B. That's safe can do. You flash. Let this flash. Watch this. Scanning ahead. Got you. Oh, he pre-fired. थोड़ा सा डेढ़ हो जा रही है। Nowhere to run. रेज अल्ट कर दो ना अंदर। अरे 3 है। Someone is dead. 7 3 now. ये जा रहे कर सकते हैं, करो। Scanning ahead. एनी इन्फो? Rena है jet B. अच्छा जेट बी था। Last player standing. तो स्मोक में क्यों जा रहा है? बी की तरफ आता ना। बैठ रहा था उसके लिए ही। वो क्रॉस करा उसके मार देता हूं। बैक साइड गियर कर लेना बस। ये ना इजी 1v2 है। लग गया 30 seconds left. Planted. मत दो। उन्हें लगना चाहिए कि बैंगलोर उस पे खेल रहा है अल्ट पे। अरे 1v2 में कौन ऐसी अल्ट करता है? One enemy remaining. अरे जेट ऐसे मत जाओ ना यार, फेक करने बोला आप इधर ऐसे कमिट क्यों कर देते हो? अरे भाई मैं कहाँ, मैं मरा कहाँ हूँ ब्रो? यहाँ मरा हूँ मैं। यहाँ I got pre-fired. वो फुल फ्लैश था। I got your backs. Just अंग्रेजी में बहन चो। मुझे सामने आने की वैसे आनी चाहिए भाई। कुछ भी चला दो गोली तो कभी कभी बंदे मर जाते हैं। यस सर, यस सर। उसमें मर गया मैं उधर। अंदर नहीं गया था। यार इसको नर्फ करो भाई, शॉटी को। नर्व करी हुई है अभी, और क्या? पहले तो 1 बुलेट में एक मर जाता था पूरा। हेलो राहुल कुमार, वेलकम। इसको ड्रॉप दे दो कोई, इसको ड्रॉप दे दो। यार ड्रॉप I दे have दे। extra money अरे if anyone मांगेगा तब needs. तो। तो आवाज ही चली गई। Blinding. गांड में कीड़ा है इसके भाई। अरे वो मार करके से कैप्चर कर रहा हूं भाई। ना ड्रोन करने देता ना स्मोक करने देता, अपना पहला पीक देता है जाके बस हर बारी। वहाँ पे साइफर है फिर भी तुमको मेन में ही मरना है, पता है? एंट्री भी नहीं मिल रही है। Bullseye. 3 लोग रोटेट करें तुम्हारे पास। Last player standing. बराबर कॉल था, 3 ही करे। 30 seconds left. तो एक वहीं पे ही था। Shot down. यार मैं कुछ बोलूँगा तो तुमको अभी चिढ़ जाओगे, पर तुम ना ड्रोन करने देते हो ना स्मोक करने देते हो, फिर फ्री फायर पे ब्लेम कर रहे हो। रुक जाओ ना थोड़ा सा यार, राउंड स्टार्ट होते ही पूरी एंट्री चाहिए क्या भाई? भाई स्मोक था यार, मैं तो वॉक ही नहीं कर गया एकदम ही। क्या बताऊं मैं अंदर Begin to comprehend it. बोलते रहे भाई। I need this. यार ये ओमन ने मार दिया मेरे को, निकाल देता राउंड। My तो मैं भाई सोमन को ड्रॉप दे दो मेरे बाबू को कोई। ओमन कह रहा हूँ साइफर को। मिट्टू ये करना है क्या? आ जाओ। Reloading. ये मिट्टू है साइफर पर तो लड़कर वहाँ पर बहुत इवेंट कंट्रोल ले। मिड वार्ड में स्मोक देता हूँ मैं। रुक जाना। बोलता रहा हूँ उसको तुरंत चाहिए सारा, राउंड स्टार्ट होते ही सब हो जाना चाहिए उसके दिमाग में, जो जो प्लान कर रखा है उसने। Revealing area. The hunt begins. Last player अरे standing. मिड पे होल्ड कर रहा था। Spike down. नहीं घटिया एजलिंग कर रहे हैं ना जो भी कर रहे हैं ये लोग। मिड। हेलो मनन भाई, हेलो कार्तिकेय भाई।
घुस ही नहीं पा रहे लौंडे You're going अपने। to scatter from my stuff. Super easy to pick off. अब मैं घुसूंगा भाई, ओमन घुसका साइड में। मैं घुसा ना स्टार्टिंग में। आओ भाई आओ, AW बॉयज, AW। ये करो नेट, ये दूंगा फ्लैश, ये होगा डैश, या मारूंगा टीपी। ले रे लंड के, ये ले ले टीपी। अब सही है क्या आवाज? हाँ पिछले मिनट तुम भी तो हो रही थी। ऊपर जाता रहो। अभी जेट मरेगा देखना फिर। बच गया। Enemy spotted A. रुक के रुक के रुक के। Grenade! Blocking sight. मैं कहाँ से? Scanning ahead. Someone break recon. Found them. Reloading. Flag planted. Where is everyone hiding? 5 सेकंड रुक जा, हेवन स्मोक दे रहा हूँ एक। डीप स्मोक दूंगा। Revealing area. इतना कांड फट। They want to dance? I'll leave. वो साइफर भाई, वो साइफर ने इतना आगे ट्रैप लगाया हुआ था, ध्यान रखना। साइफर का ट्रैप नहीं होता ना, उसकी ऑफ डाउन कर देता है यार। बढ़िया सेक्सी रिकॉन ऊपर का। बस तुम यही सुन लेते, बीच में आइजलिंग कर रहा है, 4 बंदे मेरे साथ आ जाते हैं कॉल पे। एक भी राउंड नहीं हारते अभी हम। बता इमेंट फ्लैश चाहिए क्या करना है? मांगो। अभी ऑफर है, वेट करना, मेरा पूरा ड्रोन आगे जाने देना, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। Take flight. Bomb buddy out. Revealing area. Nowhere to run. Get out of my way. हाँ टीपी करके आएगी। Reloading. Watching this spot. नाइस। both One enemy remaining. Spotted cover going out. Last player standing. प्ले की नहीं पड़ा मेरा। इतनी गंदी पीक दी तूने। अरे मैं तो हेड नहीं तूने उसकी तू एचपी नहीं देख रहा है उसकी, तू पीक भी गंदा सा कर रहा है ना, अंडर हेवन जा रहा है। पीक बहुत गंदी है जो मुझे, या तो पूरा वाइड ही आ जाए या फिर मती फाइट में। Last round in the half. Spend like there is tomorrow. Reloading. Hello. जेनजी इंडियन टीम नहीं जापानीज कोरियन कोरियन। गन ले मेरे से इधर। शरीफ दे मेरे। भाई पिक्स पे खेलो, ये राउंड चाहिए हमें। हाँ पिक्स पे खेलो। मेरे मत जाना। Camera taken out. Die. थैंक यू भाई, बचा लिया। I have अब बी में ना आ जाओ। रुक मेरे को आने दे। Scanning ahead. ये कैसे हो? ओमन ये लेजेंडरी। चलो चलो, ये चलो, दो इधर है। भीतर गलत करना, बस सारी साइड क्लियर। अरे स्पाइक भी ड्रॉप कर सकते हो। अच्छा अब ये ना वो जाके पिक्स मत देना, ठीक है? मुझे स्पाइक लाने में टाइम लगेगा, पूरा बेस से आ रहा हूँ। तुम्हारे पास पोजीशन से क्रॉस फायर। One enemy remaining. बहुत बढ़िया। बस अभी छोड़ दो उसको। 120 है ना? यस। मत जा अबे जेट वो ऊपर हेवन पहुंच जाएगा अपना बंदा जल्दी। I know exactly where you पहुंच गया हेवन, मेरी पेटी से ही कर। कोई नहीं, सही है। Shot that. Scanning ahead. Enemy spotted A.
एक HP वाला भी नहीं मर रहा इससे। इसने मारा ही नहीं। ऑफर को जो दिया है मिड में। Switching sides. हेलो अभिराम, मेरा 144 चलो भाई, वोल्ट। डिफेंडिंग जेट है हमारी, लेट्स गो डिफेंडिंग जेट। साइफर आल्सो डिफेंडिंग। भाई साइफर तो है डिफेंडिंग। भाई उसने अटैक में इतनी गंदी साइफर खेली है ना, अटैक लर्क में जा रहा है पहले मर जा रहा है, जिधर जा रहा है पहले फाइट ले ले रहा है। एक्चुअली अरे और तो कोरियन है ना, प्लेयर कहीं की भी हो। प्लेयर भी इधर से ठीक है। और मुझे लगता नहीं कोरियन प्लेयर टीम्स बाहर के प्लेयर लेते, सारे कोरियन ही लेते हैं वो लोग। This is gonna be fun. मिड टू बी का प्लान है उनका। रिकॉन दूंगा, रेना पीछा, रेस पीछा। Revealing area. Bomb buddy out. Spike down B. Reloading. One enemy remaining. अब क्या कोई बहन का लोग इधर ये लग नहीं था। फुल साउंड दे दिया मेरे पे ना चढ़। इसका तो ग्लिच पॉप बन गया। Reloading. Reloading. We're here because we're the best. Don't any of you forget that. सुबह तो रहा ओडिन ये सब चला है, इनकी गांड मारे थे। मैं भाई मेरे से नहीं चलती भाई ओडिन। आजा चलाऊंगा इनकी गांड लूंगा। साइफर इधर आना अगले यार एक समथिंग क्या है INTL इंटरनेशनल है ना, if I'm not wrong। वहां से नहीं लगेगा। अरे तो जेट कवर देना, उसको आने मत देना। वो इंडोनेशियन टीम है ना भाई, कवर अपने कैसे हो गए पहले से। Hey man. Revealing area. रेज मेरे साथ आना, मैंने इधर है और भी है मुझे, इधर कवर दे। अरे वो मार लेंगे, इको राउंड है, चल ना। Spike down A. थोड़े इको फ्रैग लेने दे उनको भी यार। One enemy remaining. भाई मुझे वन टाइम मार रहे हैं भाई। शॉट आ गया क्या, कुछ बोल लो भाई। गार्डन जेट का तो मरना निश्चित है। अब स्पेक्टर आगे फेंक अगर है तो। घूम के वन टाइम मारा उसने सिर्फ से। Okay, I only have like 7. कोई बात नहीं, आपने एक मार लिया ना, यू गॉट योर ब्रो। ये ले घोस्ट ले बस भाई, और क्या चाहिए, अपना काम कर रहा है। अरे इन वैसे ही लग रहा है इसने। हेलो सेंसेई, हेलो राइजन, थैंक यू ब्रदर। आ तू तेरे को घोस्ट में भी एग्रो पीक लेगा क्या? सही है भाई, खेला जा नहीं रहा है। पैरानॉइड डाल के होल्ड करा ले, आके रिकॉन दूंगा, रिकॉन पे पेल देना। पैरानॉइड डाल जल्दी। मिड देखो एक जेट एक घूम रहा है, गया मैं गयो। Shot that. Scanning ahead. ये ट्रिप लगाई से बोलूंगा, ट्रिप ना लगा। Spike planted. Last player पता standing. है सेम मैं भी ऐसे स्पैम करने गया था सेम, और वो ऐसे खड़ा हुआ था। मैं एक बात बता, आजकल वैलोरेंट रन इन हिट बहुत नहीं हो गया। बिल्कुल मानता हूँ भाई तेरी बात से, बिल्कुल 100% सच। भाई अब रेज या जेट दोनों में से कोई भी एक शॉट खेल लो यार। अरे वो तेरी ट्रिप को सुन साइबर, और तेरी ट्रिप को शॉट डेट से मत तोड़ रहा है। मैं इससे तोड़ा नहीं था, मुझको स्मोक टू टैग कर दिया उसको। एक और लगती है तेरी चीजें टूटती नहीं, अगर तू ये वाली और ये कनेक्ट कर दे तो। अगले राउंड ऐसा नहीं चल रहा है, ये राउंड लगा दिया। शॉट खेलता हूँ। Shot that. Scanning ahead. No one's in. Deploying drone. कोई अंदर नहीं घुसा। अरे गांड ले लो मेरी पे। I need help. पीछे खेल ले। कहां देख रहे? मेरे कुछ समझा नहीं क्या हुआ। मैं बी बोला। हेवन है। Last player standing.
Spike planted. भाई यार डिफेंस में तो कर लो कुछ। Act on my intent. किसने बोला बी घुसे अंदर? किसने बोला क्या? हाँ क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कोई अंदर नहीं घुसा भाई। मैंने तो जेट को बहुत पहले म्यूट कर रखा, अगर उसने कॉल दी तो पता नहीं मुझे। अरे भाई वो क्यों नाराज है जेट से, वो पूछ रहा है। कोई नाराजगी नहीं है भाई, अपना अपना खेलो, मैं कुछ बोल थोड़ी रहा हूँ तुम्हें। यही प्यार प्रेम है। अब हो गया अरे पर क्या नहीं है। Revealing area. There they are. No more. मिड लेन घुस गए। एक बी के बाहर है। मुंह पे। अरे चीनाल बैठा इधर। पीछे गया एमएन की तरफ गया। Reloading. ओमन और सोहा बीमेन के बाहर थे। शॉट है एक। Scanning ahead. मिड पे घूम रहे हैं इधर। वो बाइनरी क्रॉस करके बैठा है। ओह माय गॉड। वहीं रुक जेट, वहीं रुक। One enemy remaining. एक नंबर। बढ़िया। No one beats my firepower. I got this. मार रहे। अरे दल्ली टीम है देखना, वो क्या 4-5 किल, अटैक में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, चल 5-7 कर लिया, पिस्टल भी निकाल दिया, उसके बाद तो मारना चालू कर दो यार। हेलो मैंग भाई, नाइस वन, गुड क्लाइंबिंग बैक। ओए जल्दी भाग जा, शॉर्ट चले जा कहीं तो। जा रहा है वो। Deploying drone. Right here. Nowhere to run! Oi! I'm the hunter! Revealing area. रीना बाइनरी क्रॉस कर जाता है। मिड में था साइफर। इधर है साइफर उनका। Right here. Shot dark. स्मोक चाहिए? नहीं बस शॉर्ट देखो, मिड देखो बस। थैंक यू फॉर द सुपर चैट यार सिद्धार्थ भाई, लव यू, मीन्स अ लॉट। Scanning ahead. 30 seconds left. जेट बी में देख बस तू। One enemy remaining. नाइस बॉय। Spike down A. 10 seconds left. अरे मार, ये वाइनर ही खेलता है भाई, ये वाइनर ही खेलता है, उसको इतना बड़ा कितना चूतिया रीना है भाई, कितना चूतिया रीना है। All right. Revealing area. This place is nice, but not nice enough to die in. सुनो, अगर बी साइफर बी खेलो। ये अपना जेट को एक गोली में मरा बेचारा। मनन भाई कब से देख रहा हूँ, नर्स लिख रहे हो, मुक्का मारूंगा एक। भाई गेम के बाद डिले, हाँ अभी इस मैच के बाद ही डिले हटा देंगे जैसे ही मैच खत्म होता है, ठीक है? क्योंकि ये वॉच पार्टी थोड़ी डिले पे करेंगे यार, ऑब्वियस सी बात है। मयंक भाई 65 वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक कर दो, और सब लोग वॉच पार्टी के टाइम पे रुकना है जरा, आज बहुत मजा आने वाला है। Get out of my way. एमएन साउंड नहीं है बी। बाप रे बाप, जेट से वो बंदा भी नहीं मरा फाइनली। रिकॉल दिया तुझे। Satchel out. Spike 1 पे है।
Reloading. मिड नहीं छोड़ ठीक है। Take flight. आ जाओ मैं मिड से आ जाऊंगा। आ गया एक, उसकी हेल्प करो। Reloading. One enemy remaining. इधर ही था, बी में नहीं था। Spike down mid. बढ़िया। माय बैड साइफर, मैंने ट्राई किया था उसको स्मोक में अटैक करने का, पर वो इधर उधर हो गया। I will take back what is mine. हेलो मनोज भाई, आपका इतना पीक रैंक क्या रह चुका है? इमॉर्टल 2। क्या बोला ये दल्ला? पता नहीं, मैं कहीं बिजी था, व्यस्त था। हाँ डिस्कॉर्ड पे बकचोदी कर रहा होगा ना। अरे यार तुम्हें क्यों लगता है हमेशा? Scanning ahead. भाई जब मैं मांगू नहीं तो ये वन वे मत देना। ठीक है, मैं उसके लिए यार कुछ ना मिड घुस गया, नाइस। सोवा इधर है, मिड लिंक। छोड़ दिया तो मैं मार सकता हूँ उसके। टॉप मिड स्पाइक ड्रॉप हुआ है गाइस। अरे वो रंडी का बच्चा रेना कहीं ना कहीं वो करेगा, फाइनली बजाएगा बाप। चले जाओ भाई रेना से बचा लो, मत टिकिए। Scanning ahead. मिट्टा बार है ना। नहीं दोनों में ना। अभी हुए अभी बस खत्म करने की मतलब। Shock dart. बी में नल्ट करेगा वो, जाना। 30 seconds left. बी में जाएगा वो, रेना रेज निकलना। हाइड साइबर हाइड। ना फुल होगा 10 seconds left. ये आने ही है भाई। ठीक है One चल। enemy remaining. नाइस प्लान नहीं हो बॉस, बहुत बढ़िया। क्या प्लान था ये? कैंसिल किया था उसने अल्ट, कैंसिल किया था अल्ट उसने। ओ सड़ी का साला। साइफर ए लगा। रेज आप बी खेलो ना, नेट बूम बॉट से। वो नहीं देखा भाई। अरे उसको उसकी टीम से उम्मीद छूट चुकी है, तो बस स्किल्स पे खेल रहा है। एमवीपी लेके अपना माइनस बचाएगा। अरे भाई टीम से सही तो खेल ली उसकी टीम, चूतिया अगर एंट्री कर दे तो बनी लाइक सेल वेलकम। सामने वाले उसकी रेना की, आप थोड़ी एंट्री कर रहे हो, हम तो डिफेंस में आ गए हैं भाई अब। मिड फाइट नहीं लेनी साइफर। साइफर टैग करो तो स्पैम करियो। हाँ Revealing area. सोवन है तीनों थे। बीबी आराम से आ, तेरे पास होगा एक। बीमेन के बारे में ठीक है। One enemy remaining. नहीं हुआ ब्लाइंड हुआ वो। अरे ऐसे मारना, क्या टीपी ले रहा है। हेलो अंडू, वेलकम टू द स्ट्रीम। बाय द वे गाइस 30 सेकंड्स का डीले है तो माफ करना। Match point. One last fight, everyone. We can do Need a it. drop. रेस दियो। Thanks. Need a drop. Thanks. वो थोड़ा सा रोजा हो गया था क्या? नहीं उनको मेरे को बाहर ही रखना था, अंदर नहीं आने देना। हाँ ये मैं भी यही एक्सक्यूज देता हूँ भाई, पेस क्रिएट करने के लिए अल्ट की थी भाई। कोई शक ही नहीं, कोई सोचना ही नहीं। एक मैं ना मिड पे चुतियापा करने वाला हूँ अभी। Cover going out. क्या मैं चुतियापा किया वो बच गया। The hunt begins.
फ्लैश कर दो ओमन। I know exactly वो where खड़ा you कैसे हो are. गया छूतिया, मैं इसको मार देता। Spike planted. एक मैन हो सकता है, मैंने दोनों साइड कूदते देखे थे ओमन और वो। दो तो देखे। एक नहीं आता पीछे गया। रुक 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 प्लीज प्लीज रुक 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 रुक। बहुत टाइम है अपने पास। तेरे पे चढ़ेंगे शायद। एक डब्बे के पीछे इस। अल्ट है ना भाई का, रुक ना। Last player अल्ट standing. करना भाई, तो कर ही नहीं रहा अल्ट। डिफरेंट करो बॉडी का है। तो ये क्यों कॉल दे रहा है फिर जब बॉडी नहीं है तो ये रेज। एक तो पुश करके थ्रो करता है। We got this. बॉडी तो साइड में है ना सारे। भाई ना भाई रेज भाई क्या यार। चुप चुप। I need this. को मारा, साइपर को मारा। हाँ तो साइड पे मारा ना उसको मैंने, स्पैम करके मारा। भाई ना भाई क्या यार। दोवा के रिवील से वो हुआ ना, उसको स्पैम किया मैं। ओके ओके। मुझे लगा लेन मारा था वो। इसको ड्रॉप दो भाई वापस। मैं उसको इधर मारा। चलो चलो मैच क्लोज करते ठीक है, ये राउंड में बकचोदी नहीं। हां बॉस पापा की शादी है। मैं देखेगा On target. और देखता ही रह जाएगा। मैं फाइनली साइफर भाई तू साइफर क्यों खेल रहा है भाई जब तुझे कहीं भी हो सकता है। एटी जेट नाइस। Spike down A. साइड वो शॉर्ट आएगा ऊपर तेरे ऊपर आएगा। अंडर हेवन खेलना, स्पाइक है अपने पास। मान मेन चला जा। जो मैच होता है अंडर हेवन। बेबी लेग इसके पास चले जाओ। क्या तो है One enemy वही है साइड ही remaining. है। Defenders win. भाई रैंक अप हो गया, मुझे तो बीटी हो गई थी। कोई ना भाई कोई ना। सॉरी लिख रहा है बेचारा। 75 वाचिंग गाइस, लाइक कर दो जल्दी से। बैक टू माय होम। ओ A1 2D आया था। कॉस्लोविच था अपना लौंडा है। अरे पीयूष भाई थे अपने, खेलोगे एक और? नहीं अब तो वॉच पार्टी का टाइम हो गया है। चलो मैं ही बाहर जाऊंगा। अरे बेचारे रीना को गाली दे रहा था, तू अपना आदमी है तो। अरे यार लेकिन फिर भी लर्क कर रहा था, क्या करें अब। चल आजा स्ट्रीम पे आजा, मैं वो कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ ठीक है। ठीक है। 81 वाचिंग गाइस, लाइक द स्ट्रीम, जल्दी से लाइक कर दो। अभी वॉच पार्टी करेंगे भाई। आज जो एंटरटेनमेंट होने वाला है ना VCT में, मैं चाहता हूँ सारे के सारे मैप ओटी जाएं, रात भर मैच चले। ओटी 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 ओटी, सिर्फ ओटी। Mike, for the sake of their tournament run, we do hope they get it right this time. Yeah, absolutely. I think individually, I mean, identifying Chalo. the threats here, Texture and Karen both individually, I think, having a top 5 performance so far at this event. Quietly, Karen, Texture more so the headliner, but अभी मैं सबके चैट का रिप्लाई करूंगा। टाइफून भाई बता रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ बस, डिले हटा दो, उसके बाद रिप्लाई करूंगा सबको। सब लोग पहले स्ट्रीम लाइक करेंगे। Let me check. I think actually we feel the same, like nothing is different because like right now, like we सब लोग स्ट्रीम लाइक करेंगे। 66 लाइक्स, 81 की तो वाचिंग देखी थी मैंने अभी। maybe right now we just playing in लेफ्ट हैंड से नहीं मिरर कर रखा है, कैमरा मिरर्ड है तो क्या बोलते हैं, वो नहीं कर रखा, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं खेलता हूँ। डिले हटा दिया ठीक है। So Mimi, this doesn't seem like a good sign.
Yeah, it's so weird. PaperX this tournament has आपने नर्स वाला शर्ट टी-शर्ट के पहन के रखा है। जल्दी आप आऊँगा डिस्कॉर्ड आऊँगा। 6 मिनट बचे अभी, पानी लेके आता हूँ, पानी भरना भूल गया था, तब तक आप लोग ये देखो डिस्कॉर्ड आ रहा हूँ। that confidence, and every series they've played at Madrid thus far, they somehow find it in themselves the second half of map 3 and then promptly lose it again. Yeah, it's so strange to, and we were talking about, you know, not really knowing where to place Gen G, but PaperX has always had this kind of image, like what PaperX do we get, right? I mean, we've seen examples here. The second अंडू आज आप मेरे डेथ मैच में आए थे, शायद आपने डेथ मैच के बाद लिखा था अंडू वेल ऑन YouTube ऐसा कुछ। To be honest, on the international stage, in my eyes, the way they performed in that second half is This up there sounds with so some of their best performances. But top 2 teams and America's top 2, they lack yes. confidence. They're at 6 out of 10 right now. ताकि वो लोग को चाहिए कि एक-एक रीजन से दोनों टीम आ जाए, दोनों की वॉचिंग आए। Sense from the outside looking in, and then we get to interviews and they're like, yeah, we kind of don't know what we're doing at चलो times, पानी लेके आया मैं। it worked. Yeah, but that then brings us to the question you were asking earlier, Mike, of like, what is the next मैंने भी step? ध्यान नहीं दिया था, पर Because मैंने वो that's प्रमोशन what देखा तो मुझे पता लगा Logical, ये तो right? अपना। But then you throw logic out the window because it's PaperX. Yeah, So it's that's the thing. But when you look, when you try and apply logic to this team, it doesn't make sense. For instance, some of the comps they're playing, they're running a comp on Lotus with no Sentinel, playing double Duelist, double And still with the Sky controller without as a well. Viper, with the old Sky. Like, so many of the decisions they're making seem so off. And in the past, when we've seen PaperX make these decisions, we get things like they're like Reina Sky comps where they're cooking, they're coming up with something creative. But nowadays, it really does feel like some of these ideas are slipping through the cracks. But that stands in contrast to moments where this team is looking incredible. Yeah. Like you brought up, that second half of Split. I think when they're playing on Bind, that comp, very well thought through, very well cooked. PaperX really seems like a team in transition right now that it's, again, so hard to figure out where to place them because of that. I'm just gonna, I mean, I'm an OG paper girl. I'm gonna come in and maybe channel a bit of paper thin as well for this. Is that every single time people do have those questions, is this the end of W Gaming? When do they stop getting away with this? They get away with it. Gen G So, हो रहा I है mean, rematch. we've seen it. We've been here before. We've been here before. I absolutely Kick off Pacific Finals rematch in Masters Madrid semi-final. Yeah, but when you hear them coming out and talking the way they're talking, that's when you make them doubt a little bit. Yeah, वो title change करना एक मिनट रुकना है ना? Because Forsaken has been on it, and we've seen the rays come out of him, Mimi, for the first time here. Yeah, I think in terms of things that have improved since that Pacific final, Forsaken is a big piece of that. Oh He हाँ, wasn't doing BM too जीतने great वाला when they second था played W. regionally, and अब मैं बिना हेडफोन के खेल रहा Masters था. Madrid, this guy has showed up and looked incredible. He's picking up the rays. He's playing seemingly every role possible. The guy playing the most agents in this tournament right now. That is why he is my looks favorite player. electric on all of them. Guy Also, does it he's a big all. voice in this team, Mike. Yeah, I think as well, if this is an indicator for अरे इसका एम इतना अच्छा है कि ये साला कोई भी एजेंट खेले ये निकाल ही देता है भाई वैल्यू उससे। बस इसके जैसा वैंडल स्प्रे सीख जाऊँ ना भाई, मुंबई सर्वर मेरे नाम से कांपेगा फिर। सब लोग स्ट्रीम लाइक कर देंगे अब। They're giving him those moments where he can be confident. And these are the things we have to walk away from. That is why PaperX is a contender. Because they have players stepping up. Because even if something's having a bad tournament, you still have Forsaken. VCT kick off you still have America Blade, final you rematch still भी है, have yes, guys yes, who will yes. step up and win these games even against the best. Yeah, and the thing is, you say put him on. He's putting himself on those things. Alex even said it's Forsaken that comes up with this kind of stuff. And Gen G's Munchkin actually had an opinion of Forsaken's raise, and I don't think you can get a higher praise, Hypog, on a raise than saying that you look like Jing. Yeah, that's up there with some of the best accolades you can receive. जिंग जैसा रेस तो कोई नहीं खेल सकता है, बट Forsaken वो ये फिर अपने स्टाइल में खेलता है और बेस्ट खेलता है वो। बट जिंग थोड़ा सा अलग है, बट ठीक है। Forsaken ही है जो उसका काम कर सकता है, जिंग का काम। बाकी मुझे नहीं लगता किसी के एजेंट रिवील कब होगा? वो तो 25 को होगा ना, मैं कर नहीं पाऊंगा, पता है, अर्ली एक्सेस यार। मैं तुमको एक दिन में एजेंट सिखा देता, कसम से बता रहा हूँ, एक दिन में एजेंट सिखा देता। वो अर्ली एक्सेस मिलता ना मुझे, गेम में आने से पहले मैं सिखा देता। लॉल यू लव वैल्यू Forsaken. Guys, I hate the CS Forsaken discussion. I hate the CS Forsaken discussion, guys. Please get over it. It's been like 7-8 years now. How many years? What do you think contributes to the team's Stop talking about it, man. Get over it. 지금 현재 젠지가 정말 좋은 경기력을 보이고 있는데 지금까지 젠지가 이런 성과를 거둘 수 있는 데 있어서 가장 큰 요인은 뭐라고 생각하시나요? सही बोल रहा है। 그냥 저희끼리 소통 잘 하고 बराबर। 총 잘 쏘는 거 그게 다인 것 같습니다. ठीक है। Honestly, I think it's just
us talking really well and hitting our shots really यहाँ well. तो ट्रांसलेट कर रहा है, मैं हमको समझ आता है भाई वो क्या बोल रहा What you है. guys have prepared for फालतू PaperX, का the ट्रांसलेटर Mousepad. रखा हुआ है भाई. Good luck. I mean, this is the thing with PaperX. They had a bit of confidence issues. They admit they're struggling, but Mimi, Genji are on the other side of the scale. They look and feel great. From which act you playing? in Act third. particular, all of Third the act से खेलना conditions start from किया था. Pacific have continued into this one. People ask, is नहीं. Karen as a rookie going to be able to show up and look incredible? He's done that. Is Texture going to be able to maintain this performance? He's shown up. He's वाह, क्या done translate किया है that. I Veggiebuoy. think there can be, Veggiebuoy though, an new agent argument कब made आएगा? that maybe they played some weaker 25 को आ रहा है opposition, शायद. right? अंडू They नया played agent teams के बारे में who बताना. weren't their height. It was New loud. agent is In trans. that I first have match no of this clue. event, it was an EDG who was really looking like they were crumbling towards the end of that series. But I think that's not what I focus on. What I focus on is that they're on an international stage. They're playing against a variety of different styles, a variety of different opponents, and I think they're doing still a very good job of maintaining this structured style that they perfected in Pacific while still having the individuals to pop off when they need them. Sure. I mean, I would counter that by saying bringing a team like this with, I guess, the international experience that here some of these teams do have, to come out and beat Loud, regardless of form, qualifying to Madrid, Loud, that's got to be a big bonus for them. And the key thing for me is seeing the energy on stage. It matches how Genji looked at regional as well. I mean, the opening series-wise, they struggled versus Secret, but still, the energy was super high. Karen was having standout performances time and time again. Munchkin and Texture alongside that. For me, they're looking very comfortable. I mean, let's talk about Karen a bit more, because on day one we did say, how does he compare to the other rookies? We had a lot of exciting prospects coming from every single region, and now we've seen him in the group stage. How does he compare? He looks just as good. Quite honestly, he looks just as good. He could even look better in some of these games. He's still winning these clutches. He's still a consistent fragger. But what I want to talk about more is his presence on the stage. You look at these clips, every time his team is winning, even when his team is losing, this guy's standing up. He's screaming at the opponent. He's bringing the energy. He's such a young guy. This is his first global event. It's a guy they found in ranked. He's bringing the vibe against the best. And having a player like मुझे that, जाना he's ही है. so मैं important किसी for भी any हाल में team. घर में And he's नहीं dropped some cold lines as well. भाई कैरन का एम यार. They won a championship when I wasn't इसकी even playing. इसकी शूटिंग यार. इसकी इतनी प्यारी शूटिंग है ना भाई. He's transcending that to the rest of his team as well, and also mimicking that with his performance. In my eyes, I mean, I'll go ahead and say we're only entering playoffs now, but I don't think we've had such a quietly consistent performance from a standout controller rookie. Obviously, outside of duelists, at any international events. 25 क्यों नहीं आ रहा? OCD हो रही है. If he keeps this up, I really think he's in the conversation for like best rookie performance. I mean, Demon 1 probably ये क्या बात है भाई? जेंजी से चूड़ियां बेचने थोड़ी आए वो लोग. This guy's getting close नहीं भाई, but to मेरी keeping वाइफ up भी आ that kind of performance. Hey, he was barely competing when Demon 1 was winning as True. well. So That's the even crazier. We keep saying it's a new era, so. Yeah, that is भाई something. चश्मा उतारो एक बार It's time please. for the result of our Mastercard fan poll. Earlier, we asked you if today's regional matches would go the distance, and you said that you believe the Sentinels versus Loud One will. And I feel like, Mike, I think both games will. Yeah, fingers crossed for both. Yeah, that would have been me for sure. No shock. That should be me holding your hand. That should be me. गंदे लग रहे हो, मत Who करो. do you think's gonna 2-0? Oh. Yeah, exactly. तो मुझे अच्छा थोड़ी लगना है. स्ट्रीम कर रहा है, मॉडलिंग करने थोड़ी आया हूँ. But still, I feel like general fan sentiment has been very high on PaperX still. Yeah, and we won't have to wait long to find out. But first, let's Cutie आ find गई out क्या today's chat में? map pool and check in with Victoria. कौन क्यों किया ये चैट में? कोई भी नहीं आया. सक्षम भाई, SEN FTW, let's go. जतिन will, I have willing Genji will. एक मिनट जरा मैं डीमन वन की क्या बात कर रहे हैं? डीमन वन की कोई बात नहीं कर रहा भाई. Guys, I don't like NA teams, NA players. Full stop. End of discussion. बहुत बेकार दिख रहे हो भाई. ये मॉडलिंग थोड़ी करना है. खेला कैसा आज वो बताओ. रैंक अप कर दिया ना तुम्हारे भाई ने वापस. Sunset. Split. Side on split. Attack. Attack and map number 2. Lotus. First है. Attack. Next set of bands starting. डबल डोलेज देखने मिलेगा. चलो मीटी और जेट खेल रहा है ना अभी तो. मैंने पिछली बार देखा नहीं था मैच इनका. Ban Breeze. Ban Breeze. Your ban, you have Ascent and Bind. भाई this presenter looks better than this girl looks better than Kakuka. पिज्जा ऑर्डर कर दिया. Go to sleep. Carry हुए हो. इम्मा पहुंच गए क्या? Yes sir. Boosted हो भाई तुम. मुझे उससे क्या मतलब भाई? Ban Bind. Ban Bind. Map number 3 by default is Ascent. PaperX side on Ascent. Attack. All right. Good luck to you both.
Begging on your knees to be popular. When they played against each other last time, not in the same order, and a Mimi Split is going to come up first, the one that Paperex did actually manage to win. Yeah, for Split, honestly, that's a map I don't have too many questions about. Both these teams play very sane comps. They've both been rocking with the double duels. I think what we should be fixating on this series is Lotus, because Paperex have struggled to figure that map out. We were talking about it earlier, Mike, but last time they played that double duelist, double controller with no Viper, no Killjoy. They got फ्रिज में घुसा मार देगा and Keiko is excellent at भाई Lotus, सही में but I think घुसा मार that देगा map to me फाइनल्स कब is the pinnacle फाइनल्स भी देख नहीं पाऊंगा मैं Paperex is still trying to find themselves where they don't have a comp that really works. I think that weakness in the map pool could really be exploited today. Absolutely agree with that. I mean, it was a real head scratcher to see the way that they played that comp as well. It wasn't as if we've got the sky, we're going to front load some of these rounds and be hyper aggressive, guarantee that we're in outside, let the Astra भाई देखो जिसको भी ये छोटे मोटे क्वेश्चन है ना थोड़ा बहुत यार खुद से भी चेक करने की आदत डाल दो ऐसा नहीं कि मुझे बताने में दिक्कत है कुछ कुछ चीजें होती है जो आपको पूछने की जरूरत नहीं है इधर VLAD.gg लिखना है बस ये हो गया सारा काम भाई सब दिख रहा है इधर भाई इधर जाना है टूर्नामेंट के अंदर चले जाना है देखना है अब ग्रैंड फाइनल 24 को है 24 को फाइनल है 21 को ये दो मैच है 22 को ये दोनों मैच है अपर फाइनल लोअर फाइनल 23 को अपर फाइनल और लोअर राउंड 1 23 को लोअर फाइनल और ग्रैंड फाइनल है 25 को ग्रैंड फाइनल्स होने वाला है बेस्ट ऑफ 5 अपर फाइनल होने वाला है बेस्ट ऑफ 3 और लोअर फाइनल भी होने वाला है बेस्ट ऑफ 3 बेस्ट ऑफ 5 ठीक है सारे क्वेश्चंस क्लियर थोड़ा सा एक वेबसाइट VLAD.gg 6 बटन दबाने पड़ते हैं बस मेरा चैट इनविजिबल अमन दत्त भाई नहीं यार क्या मिस हुआ आपका I look better, you look better than Kakku का my grandma looks better not gonna lie. That's the thing. That's the hot topic right now. Is like, oh, you guys keep down. आपकी चैट आई नहीं यार They always end up getting themselves. It's the logical thing to do. It's the logical thing to do, but they are the team to defy logic. Yeah. I just that Lotus comp is the one that's a bit out the window. In my eyes, that's a little too far past it to really justify. But also not taking nothing away from Carmine Core being a fantastic Lotus team. Maybe it was exposed, exponentially more so than another team. I want to pull out from the map feature yes. and just talk about this rematch. I mean, first of all, yes, he's correct. But also for Gen G, think about what this would mean. If they could beat Paperex a second time, for so many of those players, it's their first time on an international stage. It's their biggest match ever. They made it to playoffs when so many people doubted them. And now they're again playing basically the kings of their region. If they could beat them a second time, भाई at their first global tournament, that would be भाई वॉचिंग टेंस के नाम से आती है मेरे को कोई मतलब नहीं किसी से है ना वॉचिंग टेंस और सेंटिनल्स के नाम पे आती है मेरे को फर्क नहीं पड़ता फिर किसको क्या भी लगता हो भाई दुनिया मतलब की है क्यों जी भाई हमने कौन सा मतलब निकाल लिया But where do you guys sit with here? Are you 11% feeling like Gen G? I think Gen G's going to win today. I feel like they're favored in this matchup. I think especially looking at this map pool, seeing that Lotus has made its way in. Gen G have just been so consistent throughout 2024. Their players have been stepping up to a new level, and it really feels like at some point the Paperex magic won't be able to work. नहीं एजेंट भी दिखाएंगे शो मैच होगा शो मैच में दोनों टीम के एक प्लेयर खेलेंगे भी वो एजेंट चलो लाइक करो जी लोग देख रहे हैं हां सही बात है भाई सही बात है लाइक करो हां टीम आ गई है मिमी खेल रही है काइडे खेल रही है ऐसा पता नहीं बाकी मुझे पता नहीं Yeah, but that's the thing. We do have also another curse. We got the 9-3 curse. We have a few curses in this tournament. But whenever there's a rematch, whenever that happens, it does feel like the team that's lost before is somewhat favored going into it again. Yeah, there certainly is. I think there's a pressure to do more, to improve, to look back on that match and learn from it. And Paperex is a lot better than then. The individuals have stepped up. They've gotten closer to finding their identity again throughout this tournament. I think that this is a moment for Paperex that if they can dispatch Gen G here, make it on forward, this is finally the game where it can kind of
dispel the doubts that everyone has had around this team, around if they can do it again, on if they just have to rely on these hero plays, especially if they can do so dominantly or in 2 against Gen G, which I think will be really tough against a good opponent. I don't think this is too hard. Yeah, I mean, I don't think there's any world where that happens, but if they can come out here and get a confidence win, not only is that people looking at them better, but for themselves, right? They're still rating themselves a 6 out of 10. They're still low confidence. I think always they a need 10 a out win of 10 today. to me. Always. No bias on the desk here at all. But no, I absolutely agree. I think as well, it's really telling if. To hear PaperX talk the way they haven't spent these last few days trying to reinvent the wheel almost, because that's the level of extreme I think they need to go to. To hear Alex saying W Gaming's run its course, we need something else, now's the time to pull it out. And as you said, Mimi, this might just be the one that actually gives them the confidence that they need. We are down to our final 4 teams. So let's get the playoffs started. It's Gen G versus PaperX and Sentinels taking on Loud. Day 6 of Masters Madrid starts right now. तगड़े कंट्रोलर आ रहा है वेजी भाई नया वाला वैसे जो आ रहा है हेलो एक मिनट Dap each other up real quick. Hello. High five each other real quick. I remember playing against you guys in scrims back in Iceland. Yeah. It's been a while since It's been a hot minute. Yeah. I remember you guys were insane back then. I'm super happy you guys are here representing the name with us. It's good for a change. Nobody is standing in Loud's way as Loud make their way to the playoffs easily. Com certeza, acho que essa última partida foi o nosso pico de performance até agora no nosso time novo. Sentinels have done it. Sen City here to play. At this point, everyone wants to beat us. So far, it hasn't worked out for them. Cara, a adaptação do QCK tá sendo muito boa. Eu acho que ele nasceu para jogar com um duelista. QCK, he just slaughtered VDG. At the end of the day, anyone can like take it and win it. It's Valorant, so it's true. Just who plays better that day. 나도 선글라스 꼈는데? 자, 근데 원태가 되게 깔끔하고 좋아. 깔끔한데 이 선글라스가 저팔계. 안 돼, 상범형도 Can we win the Masters between me and Gen G? I mean, definitely. And even if we don't make it far, I hope they do win the trophy for us for the Asia Pacific League. Last game against Gen G was a pack final, and we didn't manage to win. 이제 플레이오프에 진출이 원래는 첫 목적이었는데. Gen G, this team looks scary. Valakia, it is a return to greatness. 너무 이루게 돼서 기쁜 것 같고 남은 경기도 이제 잘 준비해야 할 것 같습니다. हेलो अदिति, वेलकम टू द स्ट्रीम। वेजी भाई की PRX एंड लाउड आज लोअर ब्रैकेट जाने वाली है। मैं तो जेनजी और सेंटिनल्स को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई। आज प्रीमियर खेलोगे नहीं? मैं प्रीमियर खेलता ही नहीं हूँ I'm very proud of him. भाई, कसम से टाइटल देख कर आया। And the block is ready. You're not gonna meet the same PaperX. 일단 저희가 이제 딱히 증명해야 될 필요는 없는 것 같고요. 그냥 네, 뭐 Ash YT, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। 40 वाचिंग, सब लोग लाइक कर दो फटाफट। पूरा एस्थेटिक बना रखी है।
this matchup before, and last time Gen G became the king of Pacifics. But this is a different stage, and a stage that PaperX have conquered over and over again. These teams, they have faced in Pacific, but then that was Gen G proving themselves for their first time. People could write that off as an upset, as a one-time run, but now they're here in Madrid. They've done it again. अरे मैं टाइम आउट दे रहा हूँ उसको. अरे वो नो नेम से आईडी बना देते हैं और फिर बकचोदी करते हैं. भाई आज मैं अच्छे मूड में हूँ. मैं 2 मैच खेला हूँ, दोनों मैच जीता हूँ, रैंक अप कर दिया मैंने. मुझे शांति से वॉच पार्टी करने दो प्लीज. आज नो हेट्रेड है ना. एक व्यूअर कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन बकचोदी नहीं करो भाई. खुद भी आराम से मैच देखो, हम भी आराम से मैच देखते हैं. मिस्टर माफिया, वेलकम टू द स्ट्रीम. They always surprise. They always find that miracle, and आ that's गए what बजने. makes them वही so ना. damn scary. अरे आप रिप्लाई क्यों करते हो ऐसे को देती? Sunday really of what you get on the day, especially now we're thrown into the mix of potentials for composition changes to come out. PaperX looking back at their previous performances, not feeling fantastic about it. Gen G now don't necessarily have a very familiar opponent. What other team will play a comp for the first time after scrimming it once and then show up and look terrible in the first half, win in the second, not to the same level? एक मिनट घर के लिए कुछ सामान ऑर्डर करना है, ठीक है? They show up, they make a miracle happen, and then you'll talk them after and like, oh, no, we just weren't feeling it. Like, they're ridiculous. Yeah, I mean, on the veins of Navi, Angel, he does currently hold the record for the most agents played in a single tournament. But Forsaken is one away. If he just whips out a 7th, a different agent play here, I mean, we see, yeah, we see the by the way, map here, in half the amount of maps too, because Angel did it in 21. Oh, okay, okay. So maybe that is the key. Like you guys said, Forsaken, he has been creating a lot of the stuff here, and at least individually, Mike, he's been doing well. He's on form. Yeah, definitely. I think just to double on from that, the real test for Gen G would be as well if PaperX do completely, especially the fact that we're starting where we are to start on split. If that composition gets changed, it'll be another validation for Gen G to come out, obviously prep out the window and just perform bread and butter Valorant, which they've shown time and time again. They've looked very, very clean so far here in Madrid in terms of curveballs coming their way. If they can do that versus a team like PaperX that are willing to just kind of push all in on a comp first time, bringing it out on international stage, massive, massive bounce. The thing is, normally when we say that on a desk or on a cast about, oh, you have to do it against PaperX, that's the exception. Gen G is used to that. They've played this team twice before. They know about the chaos, and they've adapted to it very well. We're in Agent Select, and it's standard for once in a PaperX standard. It's double duelist style. It's the old standard from last year. Yeah. The teams have moved away from this, but it is still a good comp that I think works very well to these teams' play styles. Yeah, and I guess as well, abandoning the madness that was the Yoru comp as well, coming out from the split, which was the iteration that Gen G played against last time in the regional finals. I'm looking in this matchup at the head-to-head between the rookies, Monyet, and on the other side, out from Caron. Both those guys have come out in their debut international tournament and looked incredible. They're both on the run for one of the best rookie performances we've seen. And probably been the two loudest on the stage as well. Yeah, well, let's get this Pacific Showdown underway and send it over to your casters, who's been very familiar with the journeys of these two teams. It's Mixman and Tom Biz. Thank you so much, Insu, and our fantastic analyst desk. Yes, we're pretty familiar with these teams, as I'm sure they played are. EDG, right? Yeah, oh yeah. But, you know, we heard it from the desk. The only thing harder than beating a team once is beating them twice. PaperX know that from EG over at Champs. Now it's an opportunity for them to give Gen G a lesson in that very same thing. Well, that's the thing. I kind of want to touch on what Mike said earlier, where it's like a head over heart sort of situation. I also think it's mind over mental, because the way that PaperX play is insane. So you kind of have to almost center yourself. We've seen teams do that throughout the tournament so far. The other problem for these teams as well is, yes, they've played each other before, but as it was sort of said in the interview there, like the video we saw just before, they would both like it if Pacific were able to win. They have never managed to win an international event, and it's almost cruel that they get pipped against each other. The only good thing is they won't have to eliminate each other because one of them goes down and one of them goes forward. That's the only sort of saving grace for now, but it does mean that you're almost wanting to just, okay, both teams play their best so that whoever goes forward is going to be able to match up against America. So I think most people at the moment are favoring in this tournament. Yeah, it definitely feels like fan sentiment. And even from what we've seen, Sentinels have just looked unchallenged throughout this tournament. Yeah. Other teams have had shakier starts, but also you saw what Loud did in their last game. I'd be scared of them just as much.
Well, you know, talking about this map in particular, we're going to see Split popping up. And actually, for the whole series, Split, Lotus, and Ascent, the first 3 maps of the BO5 that they played regionally, that Gen G won. इसके मटा देते तो भाई इसको मैं coming into Split, Tom, it's not exactly ऑफिशियल वॉच पार्टी इसमें मैं गाली दे नहीं सकता हूं वरना इसकी Forsaken on a Yoru, himself and something were हर्षित diving त्रिपाठी in, ध्यान taking so रखना much space and winning almost all of their opening duels. I think it was 13-4, correct me if I'm wrong, where Gen G just got demolished on this map. मैं So बताना for चाहूँगा PaperX, कि I आपका understand why जरा they माइक come in बंद and है. change their comps. Like we say, the hardest thing is to beat them twice. So they're bringing a new comp and a new philosophy on how to handle Split. Question is, will Gen G be able to deal with it this time, now that there's nothing spooky going on? Well, it also seemed like, at least for PaperX, once their comp was figured out, they were like, okay, let's change this one. We lost the EDG, we need to actually try and fix the things we've got going on. The thing is, though, the same can be said for their opponent, because we saw Gen G come in, switch into this competition. अरे डिले नहीं युग भाई हटा दिया बहुत पहले से हटा दिया. Especially, the only change they made was Omen in for Astra. 41 watching guys like करो stream explosive, but I just remember that defensive half of Texture and Meteor. Apex भाई तो हर बार इग्नोर हो रहे हैं. हेलो हेलो हेलो. अरे मैंने हेडफोन नहीं पहन रखे थे. मैच चालू होगा फिर एकदम बात करूंगा आपसे टेंशन मत लो. नहीं वो तो कोई नहीं. These are the players we have to watch. The amount of times that PaperX would have just got absolutely banged if it wasn't Forsaken just having life games. But the thing is, it's every time he plays. आ जाओ मैसी भाई पूछना पड़ रहा है आपको यार. मैं आपको सुबह ही बोलने वाला था पता है जब आप स्ट्रीम कर रहे थे ना और जब आपने मुझे इनवाइट किया था तभी मैं आपको बोलने वाला था कि आज शाम को आ जाना डीसी पे. फिर मैंने सोचा क्या पता आपको मेरे साथ नहीं बैठना हो डीसी पे. आपका सीन हो जाता है ना. मेरे को इग्नोर कर दी स्पीच यार. हेलो यार आपको कौन इग्नोर कर सकता है. शायद उनसे उन्हें हमसे दोस्ती ही न रखनी हो. चलो मैच स्टार्ट हो गया. अरे फॉर्मेलिटी करता हूँ. अरे ब्लैक स्क्रीन ना करे बस. अब ऑल टैप दबाऊंगा ही नहीं. चलो भाई PRX 2-0. माइक ऑन है एपेक्स भाई मेरा. They both run pistols in this direction before. Good nade coming out of Forsaken already, and something. And Mind Freak peeking off the back of it. They're going to be stuck in the corner early on. This is a great start for PaperX. करता हूँ अंकल. Munchkin's in danger as well. अरे भाई नाइस राउंड. ये राउंड तो गया है. हाँ गया ये 2-5 हो गया. And for Gen G, 2 versus 5, barely any damage done. At least they've still got the spike, but they have to hope for some serious mistakes at this point. The PaperX go running forward. ये तो रीड हो गई भाई PaperX की तरफ से और जाके पेल के शटडाउन कर दिया बिल्कुल. ये तो उनके एग्जीक्यूट की बुंड मार दी. ये तो पिस्टल राउंड में ऐसा ही पूरा मैच खेल लेना बस. दोनों मैप तीनों मैप. सब लोग स्ट्रीम लाइक करें ठीक है. बार-बार याद दिलाते रहूंगा स्ट्रीम लाइक करने के लिए. Attack sides out of Gen G. Obviously that is helped a little bit by having that Omen instead of the Astra. But other than that, it's flawless. Let's go. Flawless start to this one. Now, as said, expectations for PaperX is this is the map that they'll win. If it's going to happen in this series, I think the next two I would favor to Gen G, even more so because of the fact that we saw recently on Lotus the changes to the comp for PaperX, and I'll be honest, I didn't like it. It didn't look good. So this is the map that I feel like PaperX लाकिया जैसा पहले खेलता था ना यार. I've said that. जब वो विजन स्ट्राइकर्स में था और जब वो that's just how they are. They just managed to adapt. They have the individual players that sometimes कौन सी टीम में खेलता था और DW क्या नाम था उसका. That is rare. Like it is very तभी वो बहुत खतरनाक खेलता था भाई. आजकल परफॉर्मेंस बहुत डिप हो गई यार. बट ठीक है कुछ ना कुछ तो ऐड कर रहा है वो टीम में क्योंकि उसके आने से ये लोग बहुत अच्छा खेलने लगे हैं. तो एज अ टीम ये कर तो बहुत अच्छा रहे. पूरी टीम ब्लाइंड हो गई. मोने गेट्स वन मोर. नो ये तो गया है. ये गया है 4 सेकंड को. 4 सेकंड क्या जो हाँ 4 सेकंड को ऐसे नहीं कूदना चाहिए था. मेरे पति रेस खेल रहे हैं. हाँ टेक्सचर रेस खेल रहा है. सही बोला. टेक्सचर रेस खेल रहा है. Now that would be ridiculous to even attempt, but do you know who he is? Yes, I do. He just lost his gun. It's now been given to something थोड़ी उसका पति है 4 सेकंड ही to replace it. So that again, if you're talking about Forsaken, he's basically answered the question himself. Well, it looks like we're going to be using that dash very early on for something. He's getting aggressive. Wall goes up. He's ahead of it. Looking to take someone down. He got the shot off. 10 HP left on Meteor, but that's the one problem. If you're the one taking contact with that Outlaw, you're not going to kill the player. Sky. You need to get out.
That's the thing. They can just heal him back up, so that it's actually not that problematic for what was an early battle. You can already see heading over in that direction. Munya is going to get aggressive as well. Bear in mind, this purchase is fairly weak for PaperX. Normally you'd see a rifle or two in the mix, but this is just SMGs. It can work, more so on Split than probably any other map. This crossfire is fairly nasty, but that's the thing I've really enjoyed about Gen G. They've been methodical. They've been careful throughout this tournament. They are not one of those teams that are just aggressively running in and blitzing their way through rounds. They can. तो रैंक मैच थोड़ी खेल रहे हैं ऐसे घुस जाएंगे कहीं पे भी. They're always, especially in these sort of rounds, very careful. And it looks like caution's paid off for them. Whatever noise they made on A has sold it to PaperX, who are now running the gamble on an A stack. Of course, there's an L that could be retrieved. I doubt it even will be. It's quite far up. Q2 देखते हैं तक ठीक है, उसके बाद वाली बात देखिए वो मत लिखा That करो. spike plant should be coming down in a little bit. PaperX, hear no noise, seeing nobody here. There's a flash still on Divide that could be used to clear outside of it, but this late on in the game, you're just going to sit there, hope they dive into you. And as we can see, they've gone to the exact other side of the map. So for PaperX, you know, it's hard to get back into a site with these weapons as well, especially a site like this where pretty much every fight on the way in is low range. See, normally you talk about, okay, maybe going down to the spike or just trying to hold for exits, but I am waiting for Forsaken to attempt to I think she meant Golu. Already, Mind Freak taking a lot of control. Texture very aggro, कोई trade भी नहीं ले पाएगा उसका. There's a chance. There's the blast packs already. And there's the judge. Exactly what Forsaken does. He got a rifle, but it's very short-lived. एक kill तो चलता Well है. held by Gen G, even with a इतना little bit of economy तो chaos. होगा किसी के पास. Yeah, I mean, they spread themselves out there. Lots of space. So even when that judge gets up close, he's only getting the one. And it's an immediate drop. The rest of the players easy to deal with. You've got that kind of weaponry advantage, and you're not caught out of position. 2-1. It's a fairly bog standard start to the game. Pistol win for PaperX. Follow up, and then they lose. I mean, the one thing that we'll say is that maybe that third round could have seen a bit more damage. But कुछ और word निकल गया. Let's go Gen G. It didn't work out. This is what happened. The opportunity, though, to deal that damage here as we get the operator out on something right away, and the shot has not landed. मुझे एक और order कर देना चाहिए था. Drop the B site under threat, but Gen G back off. The whole time they've been leaving Meteor outside of A to catch a rotation. He hasn't found one, but one can assume that rotation's going on through the spawn right now if you're Gen G. They don't know that Mind Freak's वो sheriff base पे तो छोड़ रखी है, उठा लो. Flash mid on the defensive side. वो गोल पे घूमती है वो वाली, क्या नाम है उसका? There's no one there, so they're able to gamble an early rotation into कौन सी sheriff है वो? ऐसा घूम के जो मैं one tap मारता हूँ. Still with the judge, it's just going to make sure he keeps control in mid, but it's slightly more stacked up than you might expect. The only problem is he might get caught. Lucky for Divide to get one. We'll pull the gun out, but the aggression ये round भी Gen G का ही है. absolutely nothing. And while there is the For second by the Rendo judge, not going to find anything more, and for something, I hope to God he's going to save. Save कर ले तो ही अच्छा है. round you want to see him throw his life away for. 2-2, let's go. 1v3 with the op, possible, winnable, but New Frontier, हाँ. भाई क्या कर रही है यार ये PaperX यार ऐसे थोड़ी चलेगा. Maybe risk it with the blade storm, but even then the op. भाई PaperX first half में ऐसा ही खेल. Hello. I think they're sort of realizing. Hello. They heard the op earlier on, right? They know that hello right now. So they're gone spread out. Already sending Munchkin to try and find this player, and based on the time, it looks like he might be safe. आई आवाज आई. अरे PaperX first half में तो ऐसा ही खेलती है यार. Start hightailing it in that direction now. भाई कमबैक इससे अच्छा कोई टीम नहीं कर सकती PRX से, ये बात तो देख. अरे वो क्योंकि थोड़े राउंड थ्रो कर देते हैं ना वो एग्रो जा जाके फिर मोमेंटम आता है. मैसिव भाई कुछ बोलोगे कि ऐसे ही आया वो खाली. मैसिव भाई को आया आपने अपने घर पे बुला रखा और बात नहीं कर रहे भाई. दिस इज को ऑफेंडेड हो गए. हेलो मैसिव. Grinding out of these early rounds is going to be really. मेरे को बोल रहे थे भाई ये वेजी में घमंड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बोल रहे थे भी मेरे को पता नहीं है. Cause issues in the round, but as said, they've been methodical. Their utility's been good. They instantly had a snake bite that went through to deny him that early aggression. It's expected at this point. By the looks of things, they may even just be going for an early take. निकलेगा देखना है. All set up outside. PRX का. Gen G का कैसे निकल जाएगा सिर्फ ट्यून पे इतना पैसा यार. कोई दिमाग की बात तो करा करो यार. दिमाग होता तो. See how many high fives there are for Gen G after this one. They've got a lot of space, but that flash was perfect. Deadly from Divide. And he's हो गया मार और ले. Another fight. And he's actually got a teammate in there. I don't know if they've seen Forsaken, but they certainly have now at heavy cost. Smokes are down, but so too are the majority of PaperX players. It's only something that has that off.
The 1v2 he didn't go for. The 1v3, it's tempted him. It's pulled him in for the fight. He hasn't found them to start off though, and that dash already halfway up. Wants to close the distance. So many tough angles, tight angles to clear with this op in hand. And no idea there's a player up top. He's checking the right shot, but Lakia was close by, ready for that play. A third round found for Gen G. They're running away with this early game. Yeah, still a close round for Top right में वो हटाओ ना क्या हटाऊँ That भाई? was a decent stack up in the early stages for क्रॉस PaperX, सा बना हुआ आ रहा है having कुछ the majority. ये सर्च बार And सर्च somehow का आ रहा है managing to ऑप्शन वो dodge some shots that I don't really know how they did. But Sorry guys. bringing it down to just one player surviving, keeping that economy Thank you a for little letting bit me know, more Abhiram honest bhai. for Gen G. And well, you see the danger of how fast this man is with the operator. The problem though is he's not going to be able to. बे यार 2 घंटा हो गया मेरा पिज्जा नहीं आ रहा और कह रहा था 30 मिनट में पहुंचा दूंगा. The fundamentals of Gen G sublime. 1 kill, 1 death as well, so he's still 2 away from a blade storm. So we're down to just that rifle. But as we said, ultis were coming online. We saw the Seekers used by Lakia, finding a lot of Good eco information. though. This time around, PaperX have theirs, but also a show. Sorry क्योंकि आपको inconvenience हुई ना stream देखने have में. in the back pocket of Forsaken. Could play a role later on in the round for Gen G. You can see their spread. This is a full default play. At this point, they're expecting PaperX to make some adaptations and to throw out some of that signature early-round aggression. Gen G. Still hasn't happened though. They're happy to bunker down. घंटा जीतेगी Gen G. Gen G और Sentinel जीतेंगे. The other problem here, Gen G have a lot of Gen G जीत गई तो वेरी भाई के. this round. It's going to be a फिर तो पक्का जीतेगी. Oh, maybe when. That's not the start they were looking for. 2 players down immediately. Forsaken's been a hero before, but ले भाई एम नहीं लग रहा 4 सेकंड का एम नहीं लग रहा. बहुत सारे लोग आ गए ना एक्सपेक्ट नहीं किया बेचारे ने. Went towards mid, but also in towards the A site. The realizations there eventually. लो भाई ये घुस गए. Mindfreak gets 2. कितने गंदे स्किन है उसकी मीटियोर की. Obscure position to be in, but then it's almost revealed. दवाई gets 2, sorry. 4 second है ulti, dog कर दे फटाफट. The spike just about making it to the site, and it is going to bait in. Nice work from the Heal कर दिया इसने. Dog करने में क्या मौत आ रही थी इसको मुझे समझ नहीं आया. This man who did get healed up early in the round. As said, he's been ever so Throw devastating. कैसे होगा अगर dog कर देगा तो. Might just be able to clear, shoots it into the Viper's pit, but actually, Munchkin's just teamed up with his teammates, just left it. Doesn't even mind about the pit. I don't know if Forsaken realized it, but it doesn't even matter. सारी टाइमिंग Gen G के फेवर में चली गई यार. DRX only. Arifan Rajasthan, yes sir. Gen G are having a field day right now. Like I mentioned, the economy was in their favor. The ults that were there for PaperX burned up in that round to try and gain some जल्दी जल्दी 2 रुपए का ज्ञान फेल देता हूँ. रेज मॉर्नेट को खिलाना चाहिए था. नहीं. फिर तो जो पहले मैच जीते वो भी नहीं जीते. Sacrificing himself because he's so out in the open. They swung to try and trade him, and Devi had that beautiful off angle to just rip them to shreds. We're seeing elements of that team play there from PaperX. We're seeing individuals पिंक कलर का माउस चला रहा भाई अगले लोड में. It's not enough right now. Gen G अच्छा माउस है बहुत वो. loaded with a huge lead to start. I mean, it's doubled the rounds, but आपका भाई है अल्ट में. that's really the problem. मेरे भाई सब पैसों वाली बात है. छोड़ के बता गई मेरी क्या 5 and औकात. above is average for the Gen G side right now. PaperX, they're going to be on stingers, weaker weapons, From no which ultis to district? fall back on. क्यों बताऊं? Great. Off rip. कुछ गिफ्ट विफ्ट भिजवा रहे हो? You found the same number of rounds they did last time they played PaperX here. Yeah, I said it's looked like यहाँ का एड्रेस ले लो. भिजवा दो एक. Have done really well with the 240 Hz का monitor. Someone as legendary as Solo, I don't think you're भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है. कोई कैजुअल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मांगा है. Even just giving him a moment to talk is going to be beneficial. और डिस्पैच हो गया ओए. Mind freak off to a bit of a slow गलती बस दवाई नहीं कर दी. दवाई डॉग करके उसको क्लियर इन्फो दे देता और बाकी मेन वाला बंदा तो फिर दवाई को दवाई खिलाओ थोड़ी दिमाग की. क्यों भाई आप तो Gen G सपोर्टर हो, आपके लिए तो बढ़िया है. आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई दवाई से? Yes. How many kills do you think you will do in such matches? 15 to 17, 15, 16, 17 kills के आसपास. मेरे घर में कुछ कोई नहीं ला रहा. Because you'd rather just be winning the rounds outright. But they need some of those heroes to come on. Okay, as you wish. They've been okay. खेल के इतना करता हूँ मैं तुझे देखने के लिए. Same pitch भाई. आश भाई. Versus PaperX also do very well in those late rounds. Players like Forsaken previously bailed them from so many situations. Weaker weapons, like we said. Close range surprise factor is probably the best way to find value. Guardian से क्या ही Freak has at least picked up one, but Karen है ना भाई सीधा निपटा दिया पूरा. 3 kills already under his belt. एक और किल ले जाएगा पोजीशन के लिए. स्मोक हटते ही डाउन. It looks like he's going to get this one easily with Mind Freak drop. That's his fourth. एस तो हो रहा है लेकिन किसी और का. मैसिव भाई.
And that's the last thing that PaperX wanted to give to their opponent. Again, not talking ambitious about amount them है losing the round. That's expected. 15 किल कहाँ का ambitious भाई 25 थोड़ी बोल दिया आगे दिया बेचारे ने प्रेशर में आ गए थे इसके ओरे giving him no chance. Firing squad down below. Yeah, I think against any other team maybe it'd have a chance, but Gen G have been so good just playing off of each other, trading effectively. They don't even lose another member of the squad. 5 and 2, and I love the sort of switch up in tempo, especially in these anti-eco rounds. They're not allowing their opponents to really figure out anything that's going on. You had the instant TP to the back of site, information clearing things out, the rest of the team quickly execute, and Karan actually sticks around. He Final तक ही आते हैं. keeps the control, doesn't allow anybody to लगता है उनकी women's team जीतेगी अब. takes himself 4 kills while he's at it, so why not? This is definitely where on the side of PaperX you start to feel that mental pressure applied. Defense has been tested again and again. They failed the test again and again. 5 in a row for Gen G. And now ultis are there. Showstopper fired off, and Munyet had no chance. No smokes for the way back through. No paranoia to play with. Still some flashes on Divide, but PaperX set up with a man disadvantage on a retake. Seconds into the round. W game तो Gen G ने It's not कर going to दिया. be easy to get back in here. As said, Karan will pop off these 4v5s, but Gen G are even better in the 5v4s. Opener again. Karan takes down another Forsaken, trying his best, but he's almost dead. It is Lucky and Meteor combined. One of the fastest rounds we've ever had in the VCT. That was so quick from Gen G. And you could just see the more the confidence build, the faster these What character would you prefer playing on this map? मेरा तो Sky नहीं है भाई, मैं तो Sky खेलूँगा. Both Sky है playing. लाकिया को आज ही मैंने बोला कि performance नहीं आ रही और आज ही खेल रहा है. नए वाला एजेंट देखा आपने? आएगा तब देख लेंगे, पहले देख के क्या कर लूँ. मैं तो शो मैच में देखूंगा भाई, तभी मजा आता है वो हाइप. GN1 है GN1. यार मैं घर जा रहा हूँ यार, मैसेज भाई परसों वरना अर्ली एक्सेस करके तुम्हें सब कुछ सिखा देता है एजेंट एक ही दिन में. हेलो आर्यन भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. मेरा विन रेट इन ब्रीज 80% है. हां तुम पर अर्ली एक्सेस भी है? अबे हमें कब दिला रही है? वो तो बोला क्या अप्लाई करना होता है यार, कुछ पता है आपको? यार ये सब मेरी मैनेजमेंट टीम वाले करते हैं. एनामी व्हाट्स अप ब्रदर? मैनेजमेंट टीम वालों को बोलो मेरे को एक बार आड़े में नहीं जाना. कोपचे में ले जरा. मैच में भाई 50 लोग देख रहे हैं, स्ट्रीम लाइक कर दो फटाफट. 50 रुपए देने पड़ेंगे, दे दूंगा. अरे 50 लोग देख रहे हैं, स्ट्रीम लाइक करो बोला. 50 लोग देख रहे हैं, मुझे 50 रुपए देने पड़ेंगे तब बुलाऊंगा. अरे 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 मैच भाई ने तो बटवे से निकाल दिया था 50 का नोट. नथिंग इज वर्किंग फॉर PRX. समथिंग विल वर्क फॉर PRX. घर कब जा रहे हो? परसों जा रहा हूँ. कल स्ट्रीम करूंगा, परसों से स्ट्रीमिंग बंद फॉर अ वीक. निकल गई हवा. और जिंदा भी रह गया. और मीटियोर नहीं आता ना, समथिंग एक और ले जाता शॉर्टी से. नाइस वन मोनिए. ये तो जी की तरह खेल गया. जी मोनिए खेल गया ये तो. I didn't think there was any way that round was going to become competitive. आपका कोड दो मुझे अर्ली एक्सेस आपका स्ट्रीमिंग एनटीजी मच असाइनमेंट लिखने हैं. भाई PRX के सामने इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर. वजी भाई बंदे से ब्रेकअप हो गया, क्या करूं? फट से नई बंदी ढूंढ लो. और क्या? As soon as possible. Something will work for PRX. Yeah, it will eventually. वजी भाई गया है मैच फॉर रियल. अरे कहाँ इतने में भाई? ना हो भाई PRX का. जब तक आपको कोई और मिलेगी, जब तक नहीं मिलेगी आप वही सोचते रहोगे पुरानी वाले के बारे में. भाई जितना प्यार में विश्वास रखोगे इतना हर्ट करोगे खुद को. फट से नहीं ढूंढ लो. वजी भाई की एडवाइस तो बहुत बढ़िया होती है भाई. कुछ भी कहो यार, टेक्सचर जो डोलस खेल रहा है ना ये पूरे सीजन अभी तक टॉप नॉच भाई. जेट खेलेगी, रेस खेले, बहुत बढ़िया भाई. आपत्ति से कब आ रही थी आप खेलने में ऐसे जब जी टेक्सचर यार डिपेंड करता है पूरी टीम में यार. नहीं ऐसा नहीं, जेट भी खेला है. जेट भी स्ट्रीम आगे वापस देखो. आ गई ऐड आ रहा मेरे में. PaperX GTO, finally back on the board, but hell of a distance yet to go. Yeah, and again, it comes off some individual brilliance out of Forsaken. Definitely had support.
think he doesn't get that kill if it's not for Munya being छाती पे मारी able to close fire. यार मेरे 50 की वॉचिंग आ रही थी पूरी चली गई। A breath of life. We've seen them have strong attack in halves before, so even a sort of 8-4 scoreline wouldn't be a complete death ये YouTube वाले sentence. चलते हैं वेजी भाई, आपसे समझ गया हूँ मैं। सही में भाई। I'm looking at two operators on the attack though. That ऐसे वापस चले जाओ, एक और राउंड जीत जाएगी PRX। अरे अरे थोड़ा जा रहे हैं यहाँ तो चैट में। मेरे को PRX को जिताना ही नहीं है, जेनजी को जिताना है मुझे। 50 से 20 कोई नहीं, वापस आ जाएंगे यार, अपने लौंडे हैं कहाँ जाएंगे। वो तो भला हो किसी एक आदमी का जिसने बताया स्ट्रीम रुक गई है, थैंक यू यार। मुझे भी दिखता है, मेरे मॉनिटर चल रहा है साइड में। भाई यार ये तो भाई चैट भी अटक रहा है थोड़ा, वो तो रिफ्रेश कर दो, एक बार हो जाएगा। मेरे में आज लाउड जीतेगी, लेट्स गो। सेंटिनल्स फॉर द विन। भाई ओए सेंटिनल्स हो बनने भाई कोई टीम, ठीक है ना? They're holding tight, waiting for PaperX. सेंटिनल्स के बारे में सुनो भाई, एक टीम पता है मुझे। ये ब्रैकेट्स में भी ये सेमीफाइनल्स का लोअर ब्रैकेट भी होगा क्या? यस यस यस। हेलो कहाँ पे हो आप? घर पे। माइक तो म्यूट कर लो कॉल वॉल के टाइम। फिर वरना कुछ वैसी बात कर देंगे, ये सेल्फिश था कोई क्या था कुछ। 4 सेकंड जाट है भाई, फिर स्ट्रीम बंद हो गई क्या? उस वाले मॉनिटर में लाइव है बस। इनको मौसी को जरा नमस्ते बोलना। नहीं बोलूँगा। TP into the backside once more. It's been cleared out, so the spike will be able to go down. फिर रुक This almost has to be a complete बफर हो रही है। Oh, nice shot by Lakia as well. There's his 13. यार ये YouTube के ग्लिचेस है यार, मेरे साइड से तो बिल्कुल सही चल रही है। Seconds left. It's time for Gen G to अब get a मुझे move on. मजबूरन ट्विच पे Munchkin देखना has to पड़ेगा। step out from that corner and he's being caught. They need a dive on that spike and get it planted, but PaperX are in their way. 4-8 half it is. 4 second 3 लैग कर रही है ना स्ट्रीम। Like you said, Tom, but certainly nothing to celebrate. This has been a strong performance sorry from guys. Gen G. Lakia leading the charge. 4 second किल नहीं करता ना, 2-3 राउंड 3 किल 4 किल, जब तक ये साले वापस कम बस शॉट हो गया, शॉट हो गई। Something special planned on their attack because this अरे was a मेरे सर्वर पे एक लौंडा बैठा है बेचारा। scenario for them to have to fight back. मैच देखने मैंने भूल गया, मैंने अपनी स्ट्रीम एंड करते करते बोला था देखना हो तो आ जाना, बेचारा बैठा हुआ है। The fact is, there's definitely still opportunities. Even still though, you said Lakia's performing. Let's hear from him now. बढ़िया करते हो यार। 안녕하세요. 젠지 e스포츠 소속으로 활동하고 있는 이민이라고 무엇보다 플레이오프에 성공한 것 같습니다. 일단 첫 스타트가 되게 힘들었었고 오늘 또한 첫 경기 자체는 그거를 잘 견뎌내서 좋은 모습 보여줘서 기쁜 것 같고요. 이제 플레이오프에 진출이 원래는 첫 목적이었는데 너무 이루게 돼서 기쁜 것 같고 साले जब ठंडे हो जाएंगे फिर से जब लेकर आएगा क्या? It leaves it down to just one player actually within the site. They have to go running in though. Karon might be able to just ruin their day, and that's exactly what he'll do. 먼치킨 선수가 젠지에 들어오게 되면서 저희 게임 스타일이나 그런 수준이 되게 올라갔다고 생각을 하고 그리고 이제 개개인의 실력과 이제 먼치킨 선수가 저희 बाद में बात करते हैं ऑन स्ट्रीम रहने दो, तुम ये सारी स्ट्रीम मॉनिटर होती है भाई, तुम कुछ भी बोलते हो यार। 자신감은 늘 넘치고 우리는 준비되어 있고요. अरे भाई कुछ पता नहीं, तुम्हारे मुंह से कुछ निकल जाए भाई अभी। नहीं यार नहीं, वो तो मुझे पता है स्ट्रीम पे यार। हाँ पता है बोल के अभी बहुत अच्छी बात बोल दी थी आपने। भाई यार आप मुझे बिल्कुल यार छूते 경기들이 며칠 뒤에 올 텐데 그때까지 더 좋은 모습을 준비해서 잘하는 모습을 보여드릴 수 있도록 하겠고요. अब तो स्ट्रीम स्मूथ चल रही है ना, सब लोग बता दो एक बार चैट में। 응원과 격려해 주시는 팬분들께 너무 감사합니다. 팬분들을 위해 게임을 하겠습니다. 감사합니다. Well, it was third time looking Hi, भैया क्या हाल चाल है? Hello Tanya, welcome to the stream. PaperX now fourth time fantastic, at least kicking off in that first half, 8-4 when we left you. And now it's time for Gen G to close this map out. At least that's their mindset going in. PaperX, their attack side is about to be put to the test. And the big thing to write home about last time was something diving into sites. The thing is, he had a Yoru causing a lot of chaos for him. Now it's a little bit more conventional, but that's never the name of the game with PaperX. In he goes! Something's looking for a fight. Paranoia is perfect. Snake Bite's even better. And with 1 HP, Lakia doesn't stand a chance. The rest of the squad comes in to save him. But they've ended up falling to a 3 versus 1. With Meteor left standing and his back. PRX को सपोर्ट कर रहा है। नहीं भाई गया था ये राउंड, पता है अगर ये मर जाता तो।
Munya needed to hit that headshot at the end. It looked like there was a round by Meteor. Managed to turn that back. Even still, though, it is the pistol round for PaperX, and that is the thing. Even with this compositional change, the thing that it adds is, firstly, you're going to have that paranoia available for Munya to sort of set them up in, as we saw at the beginning of that round. But also, it just almost, we're going to continuously see the switch up of who's going in first. So you're going to have Forsaken sometimes taking space for something, maybe if he has that operator in hand, and something in that round taking space for Forsaken. They are a deadly duo. There's a reason they went to this comp after all. Nice shot by Meteor. Opportunity for more, and he's landed that shot as well. Forsaken's very low, a big help to any teammates that end up taking that fight. We may talk about the outlaw, but this man's making it work with the Marshall, the cheaper weapon. And, okay, an opportunity if they had spotted a player in the corner. Munyet, though, able to deliver the killing blow. Mind Freak fell to a snake bite. Oh, what is that push from Meteor? You will rarely see a man with the goal or the gumption to do such a thing. Karen, 1 versus 2, a serious opportunity. Yes, he's far away, but that might mean by the time he gets here, he could pick up a weapon. It depends though. PaperX, that's the plays of PaperX have been so far. There's actually still loads of time. They don't need to over-aggress. They've just thrown out the guiding light, the flash to get them. A little bit of extra information. Still no weaponry found. Now, Karan does have himself a paranoid. He's brought up his full belt of utility. फिर यार तुम वही बात है यार, मैं जा रहा हूँ अलग विषय में, बहन चो तुम बैठो। अरे सॉरी रुको तुम्हारे यार बोला हुआ यार, मॉनिटर होती फालतू कूल मत बनो यार, बाद में कर लेना ये सब बातें। Sorry. We've got a Bulldog to play with 100 HP. A Paranoia still online. Both smokes. Timing is key, and they swung together. That's a 3-2-1, perfectly on cue. They won the round, Tom. 3 players down. This definitely isn't how they would have wanted to start it. When I add to that it's a Marshall headshot, okay, what can you do? And another Marshall headshot from a guy pushing the smoke close range, using it like a shotgun. That's not going to feel great. And the other player died to a snake bite. So, few kind of random engagements that ended up, well, rocking the boat a little bit for PaperX. We'll see how they recover. When the thing is as well, the player you really don't want those alls to be going over to is Meteor. 3 away from the Blade Storm, even just a bit of damage in this round, and he'll have something for the next. Now this purchase from PaperX has players now fairly low on cash. You've got Forsaken and Mind Freak down at 150 credits, so for the next round they might be in a little bit of trouble. Forsaken though, he's just gone walkabouts. He's sprinting after Lakia, but he isn't going to be able to land the shot. At least for now, it's only going to be the control that's lost for Gen G. No heavy price tag associated with it. Down in vent, this is an uncouth hold. 2 players and they're dropping in, landing on each other's head. It couldn't be easier for Lakia, signed, sealed, and delivered to this man with the heel up for his teammate. Munchkin's going to be back up in fighting form, and in a 5v3, that's another nail in the coffin for PaperX. Tagged up a little, a ranged fight, and what an adjustment from Munchkin. Clinical, as now there's only 2 attackers standing. Their chances are looking pretty slim. Yeah, he almost comeback होगा क्या लॉन्डो यहाँ से? Through the screen as well, so he's going to be half HP entering the site. They don't even know the Munchkin's there. A perfect reposition. This might be a flawless return to form as Devi's the only man left standing. 1v5 scenario. Talk about can he do any semblance of damage. As said, they invested some extra credits into this round, so the next round's not exactly going to be pretty. Wouldn't normally talk about saving, but I think actually holding onto a gun here would have more value, and he's just been seen knowing exactly where he is now. I imagine there's going to be pressure placed onto this man. Blast packs could be thrown in, but it's just going to be the entirety of the squad looking to just jump down upon him within those last few seconds. Well, it's not even needed. First one gets the job done, and Gen G will extend their lead. 5 players alive, you know, it's a little scary because it feels like since the very beginning of some of these halves, Gen G haven't had a problem when it comes to economy. And I think for this 6-9 scoreline, PaperX attack side, they get a decent buy out of it. And, you know, it might even seem weird if you look at the timeline. You lose the 3rd round after winning first 2. What's the issue? The issue is the damage done. 2 players alive coming out of both of those rounds. It meant constant reinvestment, and PaperX now left with a Stinger and a Sheriff. Light shields on most players. Some
heavy disadvantage to play with in that orb. Well, I mean, it kind of has worked because Munchkin fell into it, but not doing exactly what they intended. It's not going to cover up above. They've had to re-smoke it. Again, an explosive start to the round, almost a kill. Well, I say almost, they've ended up with 3. This is exactly what PaperX does. These fast-paced plays into the site. As mentioned, this was a weaker purchase. They had some pieces missing with that Sheriff and Stinger. Now that you look towards the players of Gen G, in this 2v4 scenario, Flash is already going to reveal Texture's position. And they've spotted Karen as well, although I say that, the peek out never really came in. The player behind the back of the site should have probably seen him. Now it gets a little bit more interesting. Space given to Texture, but it's both shots landed by Mindfreak. He's been quiet so far, but popping a couple of heads with the Sheriff isn't going to go amiss. Well, this is definitely the time to wake up. You know, we gave the same caveat coming into the last half, and then Gen G ran away with it. But here, a challenge early on, and more importantly, a challenge with so many weaknesses on the board. I mean, this was a round where you have a couple of rifles, and what ends up winning it is a Stinger diving on the site, 2 kills out of a Sheriff to close the round out. Doesn't get much better than that. There's even a classic jumping around the corner to find one of those opening duels in elbow. But it's also now, you've talked about, it's 8 rounds in a row that were lost. An 8-2 scoreline. The difference is now just 2. That's how close PaperX have managed to bring this. Going on to their favored side, the B site under serious pressure. Half the team still waiting patiently. Karon's reposition. It's sublime. He's managed to TP behind them. He gets away with murder. Brilliant from Karon. We talk about picking this player out of ranked. He's put the rank play into the pro play. And it works. You know, sometimes you just got to throw out those curveballs. You're focused on so many different things. You don't think the Lunatic's going to be up top. Mindfreak भाई ये 3 किल हुए हैं उसमें 2 तो पिछले राउंड में गए थे 1 किल पे and clearly one that wasn't expected on the other side. And again, we fall back into economy discussion around this squad. They've been sitting pretty. They've been looking fantastic. They were able to obviously rebuy in this round because of the damage done early on. And well, they only really needed one of those rifles by the looks of things. A timeout called by PaperX as they can now feel that it's getting very late into this game. We're at a stage where if Gen G picks up one more, they'll be knocking victory's door. 17 and 14. Mindfreak की जगह जिंग नहीं खेलता है, मोन्ने की जगह जिंग खेलता है. Munchkin, that tripled his kills. Mindfreak की जगह जिंग होता तो जिंग क्या वाइपर खेलता? Yeah. Munchkin's been doing well. Yeah, Munchkin's he's triple. Mindfreak नहीं जा रहा भाई इस टीम से. Yeah, no, Mindfreak's एक मैच नहीं खेल रहा तो क्या हो गया? Fnatic खेल रही है क्या? Like we talked about खेल रही है उनके घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. Other than Madrid में नहीं खेलते हैं. They've actually all been a little bit underwhelming. It's been other players stepping up in this matchup, and I think that's really what we're seeing at the moment is the depth of both teams individually, but more so just that interplay. I think we're seeing much better fundamentals out of Gen G, and it's mostly been those explosive plays from PaperX, like going off the back of a paranoia, everybody diving in together. And you see if it's even a slight bit disjointed like that round, Karon just pulls out a crazy play and is able to win the round for them. 10-7, as you said, everything on the brink here. Seekers. नहीं पता भाई इसलिए तो पूछ रहा हूँ. नहीं खेलते. जिंग ओनली use that in this round unless he sees the value. An immediate setup for the paranoia, but this is a ruse. The spike is over on towards B. Costly ruse, perhaps. Forsaken. The decay is going to fade, but he's still half HP, and Munchkin finds it too easy to deal with. ये मैप तो नहीं आ रहा. ये मैप तो नहीं आ रहा. और लोटस मुझे लगता नहीं है कि हारेगी. Now we need to see the return for Gen G. 2-0 कर देंगे ये लोग. Something falls. 2 rifles still in play. Seekers still in play, and a few flashes here and there. 1, in fact, just on Divide. Not a lot for them to fight their way back through with utility, but it's this man's position that might get them something. He's found another with the weaker weapons. This man's an animal. Oh, he's being put down. And for PaperX, they look to take it elsewhere, but those steps are heard. Meteor's in position, unbeknownst to them. You might have her trail, but, well, it's a little more difficult to deal with her cleanly. Mindfreak, the last man standing, 1v3, and Munchkin's already spotted him. He's a known Mindfreak by यही time है. Munchkin just needs to buy some time, back off. And let his teammates take it. He gets this kill. Ad क्यों आ रहे हैं? Ad आ रहे हैं क्या? रुको बंद कर देता हूँ. That's the thing. सबसे कम ad वाला select करता हूँ यार मैं. I शायद screen black हो जाए 1 second के लिए ad बंद कर रहा हूँ. फिर monetization ही off कर देता हूँ. Playing with someone like Munchkin has brought a lot of depth to his own playstyle, and you can just see the intelligence even in this round. He literally just pulled Mindfreak towards him. He had no plans to fight him at any stage. Wants to just play the higher percentage play, and that's why Gen G have been able to convert a lot of these. यार ये लोग अलग ही फैंटम ही चलाते हैं भाई.
A lot of the time I don't mind these gambles, but I feel like Forsaken has been one of the sort of glimmers of hope. You're almost going, he has to get something. पूरा टूर्नामेंट ही मैड्रिड में है भाई, फाइनल होगी कोई भी हो, him going into the site, and it didn't work with him. You know, the thing is for PaperX right now, at an eye test, you might think it's not doom and gloom. 11-7, 4-round gap, it's not that bad. It's a chance for them to fight back, albeit here with weaker weapons, but they've looked good there. The problem is, they've won 4 of those 7 rounds off the pistol and follow-up. Like, the injection of rounds early half makes this look like a much closer game than it is, but Gen G have been dominating in rifle rounds. Now they've got 4 ultimates to fall back on, up against weaknesses, but no Lakia, a big opening kill for the side of PaperX. Could now be theirs. Gen G might start to panic, might make a mistake, and with Munchkin inside the smoke isolated, that might just be the mistake they were looking for. Oh, this could be big! Oh. He actually switches away, and it's just going to be the shutdown, surely, from Meteor. He starts off the round and ends it as well. 12-7. This map looking over. As you said, in terms of buy rounds, we've barely seen anything. 3 of them, in fact. Well, guess what, Mitch? They need 5 in a row. 5 in a row, up against 4 ultimates, only the Blade Storm that's gone. Like, keep in mind, Gen G have a full buy with Seekers, with a Viper's Pit, with a Showstopper. Showstopper use नहीं किया था क्या? And so that's a lot for this defensive side to close out this game. If you remove those ultimates, it looks like they'll close out the game because they're winning almost all of the buy rounds thus far. The closer rounds for PaperX have been individuals, and they need to show up individually and together. 5 in a row needed, and the challenge already underway. Ooh, okay. Yeah, he put down early utility to try and slow this push a little bit, but the fact is, he underestimated the pacing. Lakia in the corner, but they expect it. He's stuck in the mud. Good utility usage in this round. It leaves now Karen. He's had some magical plays, but they know exactly where he is. Well, it seems so. Munir goes bouncing past him. Now there is a flank, and no one really watching it, although it seems like Texture was doubting the player behind. Also a 1v1 taken, but it won't matter in the end. A 1 versus 5. Some serious mistakes needed, and Munier's going to put him down immediately. Okay, there it is. The start of the way back for this squad. They've actually managed to deal with the vast majority of the ultimates as well there, Tom. Gen G are left now with just a Viper's Pit. We listed all of them last round. They got used, they found nothing. So not only winning a buy round, but winning a stacked buy round in terms of ult economy. And they've still got some left to play with themselves. The Blade Storm help out. The Pit can win rounds. And with 4 needed, Gen G are finally seeing some negative economic state. No, that peek from Lakia was not expected. Good flash too, and it's a double. He's got his teammate Meteor with him, and they're absolutely extinguishing the flame of PaperX. Bhai, thank you for the 400 rupees super chat. अरे उतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब ना के बराबर आता है ad revenue. इंडिया में ad revenue कुछ नहीं है. और क्या बोल रहा था? और मैच के बीच में इंटरप्शन नहीं चाहिए लोगों के लिए. God damn, you are nice viewers, guys. You are one of them. Obviously, I have nice viewers. VCT शुरू तो होने दे. तो फाइनल कब होगा VCT का? 25 को, 24 को, 24. You see how much space they lost because this Viper's Pit isn't just stopping a push; it's stopping all of PaperX's plans. Their plan was to. अदर कंट्रीज में ज़्यादा रहता है कि हाँ बाहर ज़्यादा है, और उसमें फिर बाहर Twitch कर दो, Twitch पे तो बहुत ही बढ़िया मोनेटाइजेशन है. Not a player flanking. If they're just pushed up in B main, holding that aggro intel, you're going to find it very hard to actually dive in. Now this TP is to B side. Up top, it's going to be broken last second with something down below. अभी बीच में ad revenue कुछ चेंज हुआ था, but फिर भी USA से तो अगर इंडिया में $2 मिल रहे हैं तो सेम चीज पे यूएस में $6 मिलते हैं. उतना डिफरेंस. कल मैच है, हाँ जी हाँ जी मैच है. He's got 3 more to go. He's found the 4Ks in the past, Dom, but this would be exceptional. Good luck to you and good night. जी जी. Yeah, it just wasn't enough there. And the fact is, the running through of that Viper's Pit with the spike, they needed to clear that man out immediately. It did not happen. A stellar map, losing both pistols and only losing 8 rounds. What a performance for the side of Gen G. It's even more impressive considering Munyet on PaperX, a player that we've highlighted again and again, that was a big talking point, not just from the desk, but even from the team themselves when they were being interviewed.
and he comes out fragging. The calls were good. We had some good fake plays, but at the end of the day, this was a Gen G map. 13-8 doesn't sell it. This was convincing, and now they move on to their pick of Lotus after this. क्यों स्नाइप करता है अभी पर डिनर करने कोई बता दो एक और मैप है क्या? हाँ एक और मैप है। अगर वो मैप ये जीत गई, क्या नाम है इनका, PRX जीत गए तो एक और मैप होगा फिर। स्कोर जीत गई, जयंती जीत गई अभी के लिए। Match found. सुपर स्ट्रॉन्गली मुझे तो लग रहा है इस बार सारे चैंपियन में मिसल चैंपियन भी जीत गए। चैंपियन से पहले ये तो जीतने दो। Death match. Warm up. Pay attention. Might learn something. Fight! You know what to do. Sorry, kid. Enemy down. Goner. Taken down. आज पिलो के ऊपर बैठा हूँ, आर्म स्लीव भी नहीं पहनी है। Sorry, kid. अरे डिले नहीं है, डिले नहीं है। एमबॉट लगता है उससे। Sit still. अरे पहला शॉट वो रेलिंग पे लग गया था भाई। That's 3.
And 4. Dominating. चेंबर कोई भी मैप में पिक कर, अभी तो मैं नहीं करता। राइट जिम बड़ी कैसे मिलता है? 4 शनिवार रखने पड़ते हैं। Dominating. Hot shot. शुभदीप भाई मैं एम वाले एजेंट्स नहीं खेलता जिसमें सिर्फ एम करना होता है। रेना चेंबर मोस्टली ये दोनों। मेरा एम अच्छा नहीं है क्योंकि तो सिर्फ एम पे रिलाई नहीं कर सकता मैं। यूटिलिटी चाहिए, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। Sorry, kid. Sorry, kid. झूठ कह रहे हैं, कौन सी वाली बात? मैं चेंबर खेलता हूँ भाई। कल के स्ट्रीम पे देखो आइस बॉक्स पर रहना। हाँ तो आइस बॉक्स नहीं, स्प्लिट पे खेला था तो 9 किल किए थे, देख लो। Sorry, kid. भाई लेफ्ट तो कितना अजीब लग रहा है मुझे। That's 3. 10 kills remaining. And 4. अरे दल्ले की स्पॉन की आवाज़ ही नहीं आई मुझे वहाँ। Sorry, kid. Down you go. अरे दल्ला यहीं खड़ा है तब से। Like butter, baby. Exclamation mark Sensi. Jet. 5 kills remaining. Who trained you? Sit still. One kill remaining. Finish it up. कुछ बेनिफिट है लेफ्ट में रख के खेलने? नहीं कुछ नहीं है, मैं कभी करता हूँ चेंज, ये मस्ती के लिए किया है। अभी वैसे भी मैं टाइम पास कर रहा हूँ ना। अभी मैच चालू होने वाला होगा, बताओ भाई जरा मैच चालू दिख रहा है? तुम्हारे भरोसे नहीं बैठ सकता, तुम लोग सब स्लो आदमी हो। मैं चेक करता हूँ। The front line fragging together. ये तो ऊपर कर रहा है, एम लैब्स कर रहा है। मैप खत्म हो गया भाई। हाँ जी मैप खत्म हुआ क्या अभी? एक हाँ एक मैप हो गया। कितनी देर हो गई? 5 मिनट 10 मिनट हो गए। 5 मिनट हो गया ना। 5 मिनट और अभी गया मैं वो लेके आया थोड़ा सा दुकान से चिप्स। आया मैं। क्या आप लेफ्टी हो? फर्स्ट मैच हो गया। तो वी हैव सिमिलर सेंस IMM 0.35। नाइस। गेम स्टार्ट हो गया जी भाई? नहीं हुआ है, फिर फ़ोन में खोल के रख लेता हूँ ना कुछ। यार मेरे को 50 की वॉचिंग आ रही थी, इतनी बढ़िया, फिर वो मेरी स्ट्रीम लैग हो गई, सब चले गए यार। अभी तो एलेक्स का इंटरव्यू चल रहा है। Match found. हैंड चेंज नहीं सेम पर नहीं कुछ नहीं, 5 मिनट हो जाएगा शुरू। हेलो स्मार्ट Death match. Warm up. सब लोग स्ट्रीम लाइक कर दोगे, 100 लाइक्स करते हैं अपनी ऑल्ट आईडी से कर दो अगर किसी ने नहीं किया तो। 100 लाइक्स कंप्लीट करके 10 लाइक और
गड्डी मेरी लो मैंने देखो गौर ना हमारे साथ भी खेलो डेथ मैच नहीं फेवरेट आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स और ऐसे आईपीएल बंद कर दिया हमें शुरू होने वाला है चलो आ जाओ change back. This isn't the comp they played last time, but it is the comp they ran versus Heretics. I think भाई मेरे को तो एक तो उन लड़कों पे तरस आता है जो फेक आइडिया बनाते हैं भाई तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या और अपनी मैस्कुलिनिटी पे थोड़ा सा मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता क्या प्राउड नहीं हो क्या अपने जो भी हो आप उस पे तो दूसरों को कैरेक्टर प्ले करते हो भाई बंद कर दो यार फेक आईडी बनाना क्या लाइफस्टाइल है भाई तुम्हारा कर रहे हो भाई जिंदगी में from the side of Gen G as they move to the A site. Here comes PaperX diving a little quicker than expected, but there's the return. यार बहुत मुश्किल है कि Gen G ये मैप हारे यार बहुत मुश्किल है भाई They're winning the fights, leaving Devi all alone. The 1v2, good damage done, and the follow up, and he's out of ammo. Wins. He brought a knife to a knife fight. 3 kills already. This guy's been sensational. Hello, you guys. Welcome to the stream. He's like, you know what? I'm not gonna be the coward. I'm not gonna go and reload. Respected it. I'll take you in the 1v1. सच्ची में लड़की होती है हेलो जानू नहीं लिखती मेरे को पहली बार स्ट्रीम पे आके कितना ऑब्वियस कर देते हो फेक आईडी बना के भी What was that? 5v3? As ठीक they है get भाई to the site, they get the initial आपकी opener, चॉइस है and वो they get an entry, and then they don't convert the round. उसकी आईडी से आ जाया करो कोई आएगा नो नेम वाली आईडी बना के फिर किसी को गाली देके चला जाएगा कोई आएगा कुछ भी आईडी बना के भाई खुद से आने में फटती है क्या And again, we're going to see the same proactive approach from the defense, constantly looking to garner extra control. And PaperX, they're going straight into the site. Oh yeah, look, they're willing to dive. You can tell that as soon as Munyet picks up this agent, and well, he very nearly died to the turret. Not a good start, but Spike should at least be plantable. No nade left online for Gen G. Nothing to really force these players out of the corner. Spike planted. With that sees, it's keeping him in position. It's only deducted about 10 HP or so because he was so low. And the problem now is you have to fight back through all these close range angles where PaperX have the numbers to play with on a lot of the fights they're going to take. Decent damage on the headshot, good follow up, and then it's clean house for Gen G. 2 players lost, not the end of the world. Yeah, could have been much worse. Interestingly, yeah, something buys shields into that round. So maybe hoping that they could get a kill and he could steal a gun away, but doesn't come to fruition. Texture as well as one off a showstopper going into round number 3. So especially on this map, it definitely is a little bit more difficult for challenge for those orbs, but it might mean that we see a bit more of an aid push, an opportunity to find something there. Well, this is where we are going to get the investment. Mitch, you'll be happy. Forsaken is already bringing in an Odin. Listen, he's a wise man. I've always said that, Tom, and he's just proven my point, isn't he? You won't expect this off rip if you're Gen G, and a little bit of danger for Texture. That crosshair's lined up on his head, and it's done some damage, some serious damage by the looks of it. Down to 77. Texture's tagged. Lucky is dropped. And we can continue on with the spams. Heals for most players. Devi the only one to stay quite low, not having anyone to bring him back to full fighting health. The reality is, though, they're in a pretty good position. The close range spot by Karen shouldn't be left unchecked. There's still a flash on Devi. You expect that to pop as they move forward. No, in fact, it's just a double swing, and the same thing there. Exactly. Clean trades for PaperX. Yeah, it looks like it's just going to be fight after fight. Meteor now has to try and pull off some individual brilliance as well. I think a little bit too predictable on when he'd make his move. Munchkin on the other side of the map, and the thing is, he could just hold this through to the next round, but I don't expect him to. When there's an opportunity to have an upgrade, maybe take a gun away. Time out लेंगे तब खाना लेके आते हैं. Oh, indeed. Yeah, I mean,
not a position you're going to be clearing a lot of the time. 4 सेकंड में तो अटैक में कोडिन निकाल लिया भाई Defy and Mind Freak. दवाई नहीं भाई लो है यार तू अपना बाय राउंड है यार Forsaken also with no shields and no head anymore. This is No getting head very anymore. costly for the attacking इसको side. देखो Munchkin not stopping अरे ये तो anytime पांचों soon. गए अब ये He's पांचों already गए picked up क्या three. बाय राउंड खेला है भाई बहुत बढ़िया उसको अल्ट भी दिलाई दे पूरी अब So desperately low and he doesn't know where Defy is. The element of surprise gets PaperX the kill and the round. But at what cost? Everything. पांचों गए Everything. Every single gun just goes for वो सेम एंगल दवाई छोड़ के आया तो मोने भाई पीक ले रहे हैं अरे क्या मतलब है भाई I understand wanting to earn those extra orbs up, but this is one hell of an overextension. Just constantly fighting versus a player that had a bulldog. Munchkin, well, you can already see him smack talking, and well, it's not the only thing getting smacked. Wow. Round 4, and there's going to be a real challenge for this attacking side. Weakness is already seen. Chance for now Gen G texture has to ulti shut down this the way round back is to also PaperX I guess very done early on. We know this is a map that both plus teams can Monya is playing Raze on this fight map tension, but so with it's Gen already G, on risk we've done that extra work on it, picked it into this series. already at risk I'm worried for PaperX. It's early times just now, but with showstoppers online for both squads, we knew this was coming. Munyet's on the way, head caught on the arch on the way through. It slowed him down enough and actually bought some time for Meteor to escape. And for Munchkin to round the corner, no one's going to go down to that showstopper, but it's claimed a lot of space. Yeah. Oh, they don't realize how close Karan is. He had to move because of the Tiger. अभी texture ult कर देगा This is risky. Multiple players on the other side. Showstopper, he should be dead. He actually almost manages to catch one. Even still, though, for Gen G, this is looking fantastic. टाइमिंग्स भी बेचारों के फेवर में नहीं जा रही भाई It's going from bad to worse for PaperX. They need to find a miracle through these spams. At least been able to get one, but they don't know if the player's still on the spike. The second tap will definitely help them out, but it's no, it's just going through. Too many bullets to dodge. अटैक कर रहे हैं अपन लोंडो ऐसे राउंड कैसे चलेगा Immediately, and well, we mentioned them losing all their players. It's going to hurt now. Yes, it absolutely is. Now you see the butterfly effect. वैसे मोनी ने बुलेट चलाई थी वहाँ पे टेक्सचर को पहले ही उल्टी कर देनी चाहिए थी एक बुलेट खाई वो भी नहीं पड़ती And then the chaos afterwards. Every time you see someone on PaperX turn their crosshair to look towards an angle where they've just seen someone swing or they've just lost a teammate, they get shot in the back because that's the exact timing that Gen G go for the retake on all sides. Gorgeous stuff. 3-1. Odin being kept through. Lakia going way up in my estimations, let me tell you, buddy. And the spams, well, they're not having too much success, but they don't need to. In this round, PaperX have basically nothing to play with. 4 sheriffs. Well, also they've already taken the control. That's the main reason. You've got Karan aggressively. It's allowed for a gamble rotation, so he's just moving that Odin elsewhere. Not the most common door to spam because you are open to a couple of angles, but it won't matter. And this is the thing. We've seen this scenario many a time. Find a kill, TP back. Karan is excellent at knowing when to reposition as well, so they can leave those. गाइस जिनको नहीं पता है उनका मतलब है CS:GO में एक गन होती थी नाम अब मैं भूल गया उसका बट वो कैसे समझाऊं DMR पता है ना PUBG में कैसा होता है DMR वैसी मतलब स्नाइपर बट बैक टू बैक बुलेट चलती रहेंगी तो उसको CS:GO की लैंग्वेज में वो वाली गन बोलते हैं They'll get nothing done. A flawless round. नहीं जाएगी 9 तक के बाद नहीं एक और मैच है हारने के बाद भी लोअर ब्रैकेट फाइनल of last map, but it is still very early days. Plenty of time for PaperX. Lower bracket है they don't want to waste time throwing rounds away. They've called a time. That's the funny thing. We might actually get to the point where we can just highlight when Gen G don't have money. Yep. We'll just save time. Everyone on Gen G is performing. They have the perfect timings. Or even if they don't have perfect timings, every timing would turn out in their favor. Everything is going perfect for Gen G right now. I don't think Gen G is going to lose more than 7 rounds. I don't know if this one's looking any better for them right now. Also, it has a lot of reliance. Again, not more than 7 rounds, guys. There was a moment or two at the beginning where I was like, okay, something looks like he's here to play. But ever since then, they're just getting boomed. And everyone on the other side for Gen G has looked utterly fantastic. In this round, at least, one of the players needs to be popular. The only ult that isn't going to be playing a part in this round for either side.
Munchkin already having that Viper's Pit online. Clearly, this is a time where Alex needs to earn his money. Otherwise, I think PaperX are taking that fast track straight to the lower bracket. I want to at least get that third map out. You know, officials are a different ball game to talking about regional play, especially against a team you've already played on that map. You're testing so many deeper things, and I think for them, bombing out like this in the uppers, it wouldn't speak well for what's to be seen, because Loud Sentinels, they're not going to be any easier. Yeah, no. I wouldn't want to face up against either of those teams right now. Here we go, though. Again, early paranoia. I think this one is not really going to be played upon. I like the idea, again, using that haunt to get them space, but something, I think he's just going to disrespect the utility. Had enough of these pushes coming through. He is going to get pinged up. They know where he is, and Texture's already there to support. That's it. They're trying to punish the oath. They know it's not easy to fight from this angle, especially when the door gets open. And now he's dead. But that's what it's all about on Gen G, filling in the spaces and being able to fight afterwards. But with a return from PaperX, they've got a real chance. The headshot angle held by Mindfreak, but Meteor's just ducked underneath it, playing the limbo, and he's winning this game with Mindfreak down. It's 45 HP, and a dream turned to a nightmare. 7 rounds में मैंने ज़्यादा बोले, but वो PRX पे थोड़ा respectfully मेरे को 7 round बोलने पड़ रहे हैं. But ये मुझे लग नहीं रहा कुछ round जाएंगे. Every gap that Gen G were trying to stuff their way into. They always had someone to take that second fight. PaperX had someone to take the third. This time though, they lose out when it comes to the post plan. You gotta say, they really could have used that round. Yeah, this is one of those things as well where Meteor's in a 2v2 scenario. The amount of times I feel like I've watched him just get both kills and his teammates still rotating. Like he's just so confident at this stage in his individual ability, and even just ducking under where he assumed his opponent would be holding. That was again another big round for PaperX. A lot invested, even having some decent early trades, but it isn't to be. And now, well, Bladestorm is really all we could talk about. And जली तो नहीं पर काफी गर्म था initial play almost goes down, but has managed to dodge that singular bullet fired by Texture. Yeah, the thing is that's sending them elsewhere. Forsaken was trying to claim some space by sneaking through. We saw good success for that. I think Monyet on the previous map was thrown at a few of those little feelers. But the idea now is you can't play up against that op. This ain't the round for it. Your Bladestorm's already gone, and everyone else has pistols. Close range, numbers advantage is the way to go, and they've done it. At least trading out the first. Karen, though, he has been consistent every single time they've challenged him. This guy's coming up with multiple. 7-2 right now. Teammate ready to swing, and luckily, because Karen was dropped very quickly, so too is Meteor. Hell, it's winnable for Divine, but his knife was pulled out. Tried to evade some spams or some, well, players emerging from the smoke. Unfortunately, he jumped right into their crosshair. 6-1 for Gen G, and 4 ultimates online coming into round number 8. It's one of those scenarios where, again, PaperX have made some of these rounds look somewhat competitive, but Gen G are consistently able to clutch out the late round. Again, as you said, ults are in their favor, finances are in their favor. There's at least a lot coming online in this round for the side of PaperX. Counter operator going to be invested into on something. He has had a very quiet start to this game, and a reaction shot from Texture already puts down Monyet. Texture का POV दिखाओ See यार. the idea as well. We see the aggression. We try to take space elsewhere. Denied on A because Gen G are getting aggressive. Give them PaperX a taste of their own defensive medicine. This is a really good start with 4 ultimates to fall back on, 3 of which will help you out if you're in a pinch. For PaperX, where do they go? Where do they take it? Maybe they can get a neural theft if they can even drop a body. And they cannot. Oh, no. A wall bang kill with the Odin from Lakia. That's something dropped. That's the op down. And he's looking for a little bit more. I don't know where they're going to take this on the attack, but I think I know what the result will be regardless. Forsaken's been quiet as well, and reposition. Nice shot at least. Will make things that little bit more interesting. The reveal as well will tell exactly where their opponents are. Knowing there's only one player here, the turret though, keeping things disruptive. And Meteor, again, full sprinting to help his teammate out. It gets close for a matter of seconds, but Gen G continue their utter dominance in this match.
100%. on the defense. Good I shot. don't know. Yeah, second pause is going to be called for PaperX at this मतलब point. अगर I feel like they're running out of ideas. I also just did tip ये it as देखना well. है Last उसका 3 इम्पैक्ट तो भाई times, फोर्सेकन से भी बेटर Gen रेस G बोल have सकते won, हैं उसको बहुत आराम से played and won this map. मतलब जैकन 8 और rounds on attack, 9 ये rounds on attack, 9 दोनों rounds on attack. इक्वली गुड हैं अभी They're 7-1 up इस on टूर्नामेंट defense. में उन दोनों के जैसा रेस कोई नहीं खेल रहा है मार्टिन खेल रहा था बट उतना अच्छा भी नहीं जितना ये दोनों कर रहे हैं Yeah, and the reality is for PaperX, you're looking at the last Plus, time he they plays played this Jet map also. against this squad again. You know, I was looking back at that series. Equally good. Perfectly for me today because it's the same maps. But the funniest thing is something. He was on the Reyna and he was popping. He was doing well. Will I say justified a Reyna pick? Maybe not. But we know on a good day he absolutely can. This time, I don't care what agent he's playing. He's having a damn tough time. 2 and 8. Compare that to Split last time. Many gamers so eliminate many नहीं होगी opening entries on that attack side. Now listen, I'm going to be the last person to complain about Jet dying on the attack, right? Often that's your job. But here we haven't seen those. जो हारेगा वो लोअर ब्रैकेट में जाएगा मतलब आज की दोनों जो टीम हारेंगी वो लोअर ब्रैकेट में जाएंगी फिर उनमें से जो जीतेगा वो जाएंगे लोअर ब्रैकेट के फाइनल में और आज की दोनों जो टीम खेलेंगी दोनों जो टीम जीतेंगी वो खेलेंगी अपर ब्रैकेट फाइनल फिर वो जीतेगा जो उनमें से एक वो जाएगा ग्रैंड फाइनल में और उनमें से जो हारेगा वो खेलेगा आज की दोनों हारी हुई टीम के विनर से And they pushed A with 2 players in the same Chat round. पढ़वा रहे हैं भाई So पढ़ते this is the thing. You even peek your head out and go, "Oh, are they rubble?" Yeah, ये they are. अटैकिंग में I'm dead. हेवीली अटैकिंग में Oh, आता now है we have no advantage. We're playing They're from going to push behind. B. It looks like they are. Insta smoke. B control being taken by 3 players. Just waiting to see if the push will come through in that direction. It's going to allow them the fast take back of this control. Paranoia immediately put through. The trade's not awful in the beginning, but they quickly divulge into nothing for the side of PaperX. Forsaken trying to claim it back though. Finally, he comes alive. Well, this is the round that he needed to wake up in. That spike is theirs, and they can walk it straight to the C site once that door is closed. 16 HP, Mind Freak on 42, but Texture's got an op and an aid. And there's a snake bite left. This could be very, very dangerous indeed. For now, though, Texture's not deploying the nade. Instead, sitting down. Op in hand, 16 HP, turned to 0. Nice shot with the ulti करनी चाहिए मेरे हिसाब से. Now is a nade below him. He's safe. I request Texture to ulti. That can make it win a भाई but साहब Texture's a नहीं little यार too quick. I love it. बिना ulti के ही मार दिया भाई. It's just like, he's got an op as a negative, and then it's like, no, never mind. Wide swings it. Like, all right, we're quick scoping now, but that's the level we've hit for Gen G. 8 and 1, Tom. Yeah, I almost wanted to say going into this map, well, it can't get any worse. It just has. It was 8-2 at least last time. Yeah, it definitely is looking like a golf in class. Which, again, considering this is the #1 and #2 from the same region, that we've already seen them play a best-of-5 series. It was a 3-1, and a lot of the maps are close. It looks like Gen G have leveled up, and for PaperX, I don't know if they've fallen off, because that's looking like the difference between these two is not the same we've seen before. All 5 ultimates, by the way. Gen G don't need them. That's actually the point we're in. They don't need the ults. They're just winning the rounds anyway. Normally you'd be thinking at this point, oh, let's just throw one out just to see. जितनी बार ये Okay, cycle the economy a little अरे bit. रे Here रे comes the रे big कनेक्ट नहीं rocket हुई and it's not landed. अच्छा मोन्ने ने की ना मुझे लगा टेक्सचर ने अल्ट की कनेक्ट कैसे नहीं हुई Destroyed and Meteor was tagged down quite a bit. That's the value, right? That's the value. They got rid of the show. They got rid of the lockdown, so they can at least claim some space. He's screwed. There's no way he survives that. It's a little messy. It's giving PaperX a chance, Tom. They haven't planted the spike, but they don't need to if they win these fights again and again, and they have. Lakia dropped, leaves Munchkin 1v3. If he wins this, I'm putting the headset down. They've got decent amount of HP, and they've lost Mind Freak. Okay, but it's all right. They've still got 2 players, no utility to play with. They've got to just take these fights, not one at a time. That's the only thing I beg of you. Not one at a time, not up against Munchkin right now. He's 11 and 4. He's been winning round after round, but a reposition by Forsaken. The swing is good. And the double peak wins the day, 8-2. Deja vu for PaperX. And, well, Gen G got to be feeling confident. The good thing is they used 3 ultimates there. Yeah, that's what I mean. They lose the rounds, they use the ults. That's the weird thing about it. And again, a lot of this just came down to some brilliant individual play from something. Finally putting a couple of kills on the board. The fact is they did peak. First player peaks, dies. Second gets dinked. And it's only finally they reposition.
I think we would have needed a new desk completely for Alex if they बड़ा है ना managed तो to lose attitude that दिखाता round, है. but it's scary that it even got close. I think just get rid of the desk, man. Punching bag with an LED screen in it. Whose face is on it? It depends on the game. Make it interchangeable. Well, Forsaken's आपकी picked off शादी हो गई Karen. क्या? That's a हाँ, मैंने fantastic बच्चे kill. से तो Look रोटी how मांगी open थी. the A side is, and they've made that realization. There's no further challenge. There's no utility. There's no reaction from मुझे लग रहा है मुझे उठना ही Gen G. पड़ेगा सब्जी लेने So के लिए. Forsaken realizes it's wide open, and he gets caught by Lakia. That timing was near perfect. You have to, well, I mean, you could call it a mistake. At the end of the day, he was open to like 6 angles, so he has to just be clearing those, constantly being paranoid about them. The site, though, is lost, and PaperX will find the plant nonetheless. Showstopper online. Not wanting to allow them to set up. Something's going to try and get aggressive, but he's not going to manage to land the shot. Now, I think the flash through the back might have actually caught Munchkin. So he's going to actually reposition through B instead. Move away from the flank position. It's open. I think it's because Divide's having to check too many angles. The Seekers at least will give it away. Showstopper has been thrown in. He might get caught by all of the Seekers, but his teammates got his back, and that means he'll be able to kill off Mindfreak. The remaining players a bit of an obscure position. Munyet has not been cleared yet, and because of that, he's going to be able to deny the defusal. The spam doing so much damage, and now it's all on to Divide with an operator. First shot missed, but he just needs to kill the guy defusing, and he's done enough. There's no time left. Finally, PaperX pull out the miracle rounds we've seen from them, but everybody will go down with the ship. Well, it's the same thing as what we saw before, Tom, right? They're getting this little resurgence towards the end of the half. This time, PaperX didn't have the pistol to help them out. They weren't both on the previous map, putting them up 4 rounds, and they ended on 8. But here, they're doing it on the rifle rounds. They're doing it in the clutches as well. As close as they may come, it's still giving them that little bit of a heartbeat to continue on forward. Now, this round, the last of the half, Gen G come in with a Viper's Pit. That's going to be a problem to fight through on the defensive side, or potentially a very strong tool for retakes. Man, it's scary when it's a Red Bull clutch that gets you your 3rd round, but as long as they're getting the rounds, I don't think they're going to mind too much. This battle is now changed. It was previously Karon being solo, and now it's Texture, and his operator has been fierce. Looks like they're going to go back into it. Is there a flash? Is there anything? No. No, it's just a dry, wide peek by Munyet. Players up top looking to trade, but Texture's out of the angle too quickly. PaperX have given him another shot, and it looks like another bite of this apple. As around comes another, but finally the miss is there. Texture gets the reset, though, with low HP. He's dancing around, but he's being caught. There was no escape this time, and with Lakia falling, a real chance emerging for an 8-4 half. It looks like PaperX have finally woken up. They've found some punch to be packed. Let's see. Meteor's on his way in. Up close with a teammate further away. Munchkin's making a lot of noise. They're trying to find an angle to deal with him, and instead running into Meteor. Well played. Now they can group up and try to force this 2v2 with the Viper's Pit. That was a little scary. Thought Munchkin was about to be spammed, but now they've got a lot of space as they close in the distance. No snake bites to play with, though. That could help out, keep them way out of this pit, and with Munchkin falling, it's done. PaperX 8-4 at the halftime. They found some legs to stand on, some foundations laid. But the second half will be tough if they lose the pistol. Yeah, it's almost identical to what we saw in the last half. A streak of rounds, that's just disgusting. I was thinking from Forsaken's point of view, I didn't even really see anything. That's how good Texture has been. But again, it's those player deficits that are actually what turn the tides over there. Well done from PaperX to at least get something. Well, Tom, it's time now to toss this one over to Divide, who had some words to say earlier. I think it's like a stressful game. I feel like, for me personally, I feel like we are playing against ourselves because the way they play is kind of like similar, you know. I mean, trying to outsmart them. I mean, they were very good. I would say they are smart, and they're kind of like one step ahead, especially on Lotus. We kind of like way behind them. Yeah, I think we were taking too easy, I think. I mean, they did exactly what we were watching them, like in the VODs, like they play the same, like they are not scared, even though this, like, I think for some of them it's like their first time in Masters. And yeah, I mean, very surprised with how they actually perform. Yeah, you're going to be put to test, put to task. Oh, that's rough. Blinded and Monye. कह रहा है केसी वाले हमारे जैसा ही खेलते पर थोड़े स्मार्ट हैं हमसे ज़्यादा.
even spotting right there. मजाक कर रहा हूँ. Over towards Shybox, this guy's on for it. He's absolutely on the money today. Gen G, I mean, the good thing is probably we might be able to get some revenge, you know. I mean, we lost to them in the Pacific kickoff, and yeah, I mean, I think texture is giving us a lot of problem, like just killing us or like punishing us over and over. And also, Karon was playing insane as well, even though he's a newcomer. But I think he's probably like the top player in the league. I think he got MVP as well in the Pacific kickoff, and yeah, I mean, insane. Yeah, maybe we go back and cook some strats, you know, to cook these two. Well, Devi has certainly been cooking 15-9, exiting that first half, with the next closest player being something. Pretty good player, pretty well respected. He's got 6 kills, almost a third of what his teammates rocking. It's been tough for the side of PaperX. They haven't found a lot of success, but that little 3-round streak to close out the first half, Tom, it's given them a chance here. We want to see them take the pistol, though. Yeah, we want this to be a competitive match that it definitely has not been. Gen G are looking like a competitor for the crown, and thus far we haven't seen the PaperX that we know and love. This pistol round might just be a deciding factor, but a great start from Monyet. Already pushing aggressively on the other side. Is something waiting for someone to try and make their move, and he's going to go back for a little bit more. Has to use the dash to get out of there, and is now waiting for the cavalry to arrive as the rest of the team somewhat far away. An opportunity, but Forsaken with a good trade. Keeping the numbers in their favor. Something needs to do a little bit more. He's done some damage, and there's the follow-up. A shot right to Texture's temple. That's going to put us in a 4v2 with PaperX definitely favored to take this pistol now. Forsaken fallen. A little bit more of a chance. Something, though, delivers. Okay, he's up top and not spotted. Easy peasy. That's a 3K for Something. Looks like even he's starting to heat up. That's exactly what they need. Just him having confidence. Because you look at some of the fights he's taken, and there's definitely risks about it, but that's always been his play style. Even on a Gecko, he's basically an op main, so then get the finances built up early, get the orbs rolling on the duelist, which is exactly what's happened thus far. Get that sniper into his hands. This game can definitely slip back. As said, though, for the majority of the matches we've seen, be it mostly in Pacific, Forsaken ही जीता पाएगा इन दो मैच, क्योंकि वो खेल रहा है साइपर, उसको एक साइड शटडाउन करनी पड़ेगी पूरी. अगर इन्हें जीतना है यहाँ से डिफेंस में निकालना बहुत मुश्किल है जेनजी के अगेंस्ट. उसको इनसेनली गुड खेलना पड़ेगा. Very little to play with for Gen G, and even if they drop Something, he's the player that's rocking with the pistol. So the margin for error's already been reached here. Any further kills will be costly, will force some level of reinvestment from the side of PaperX. But on the defense, they can keep distance. And with the buy that Gen G have, they're definitely not favored on ranged fights. अभी तो स्लॉट ही एक है. थोड़े इंडियन प्लेयर निकलने तो अच्छे. Solo, but you can see the rotation already coming out from Monyet. Jump peek will give him the info to go back in with that Marshall. This is a round that they shouldn't really have any opportunity to win. The weaponry not falling into their hands off the kills they've garnered, and the players they're pushing into are actually just going to start pushing into them. A good round for PaperX as they manage to bring things again back within 2. Abhiram, there is an option you can assign 2 keys for the same action, so you can use jump and scroll both. Apart from just simping on Tenz, if you clear your basics, you will get to know. Buy an operator and potentially have a blade storm, even if they lose the round. With how consistent he normally is with that op, I would definitely put stock in him finding at least the 2 orbs. 1 kill and a death. We'll see what he can get up to. It also means they can gamble the control. They've got him holding onto the A site, an aggressive position from Monyet. This is not really the gun you want to have here. Somehow he gets out of there unscathed. They also had an initial setup for players outside C, but after that spot comes through, fading back. Now the cross has already happened, so Something now in a pretty deadly position. And honestly, I think Meteor's a little bit lucky there to even get 1. Well, here's the chance for that operator to finally show its ugly face. Ugly for the side of Gen G as they lose a player right off rip.
and it's Texture, the man with the responsibility to take the space, to close the distance. Now they'll be a little bit slower on the way around these corners, which is just perfect for something. He had to be watching the right way, though, and Munchkin caught him unaware. The same happens with Divide, though, leaving it to a 3v2 defensive advantage, and Divide walkabouts. He's been so good. 19 kills, looking for his 20th and his 3rd of the round, and it looks like he might... Oh, he will get the opportunity, but he's being dropped. Doesn't matter, because Munyet's there to catch him when he falls. 8-7, and now this gets me excited for PaperX. That round puts them way back in contention. I like the way they play it as well. After the initial फिर अंदर आकर फिर याद है कि मीठा खाना है कुछ तो मिठाई खाने का. There's an opportunity to potentially steal a gun away. So they 3-man push. Even a trade there's not too bad, knowing there's some things on the other side. And even though he only gets 1 kill, he does enough to delay and allow अभिराम भाई तो चले गए भाई, रिप्लाई भी नहीं दे रहे. As you said, he's been fantastic. 19 and 10, topping the entire scoreboard right now. Something once more. They know he's going to be here. They know there's a high chance he'll be here, and they're actually going to really put the pressure on early. I don't mind this from Gen G. They have players lurking elsewhere. Trap just got broken on B. So now for PaperX, they have to be worried about the flank. It means you're not going to have Forsaken there to help with this fight. Instead, something has to do it on his own, and again, he finds Texture. That's a big part of this take. They try to seize the space with him blast packing in, but instead, they've been left to try and trade it out. 2 versus 3. Meteor's good position has been noted. As we said earlier, they know that trap was broken. They know there could be someone around here. It's why you see Divide wait for Mindfreak, wait even for the plan to come through, while Munyet finishes this flank. Looks like they're aware. Well, they're very much aware that something is going on. I mean, PaperX सब ट्रोल करेगा दौर. यार तो अभिराम भाई मस्ती कर रहे हैं ना. ये लोग मुझे ट्रोल नहीं करते क्या? ये लोग आगे आते ही मुझे नहीं बोलते क्या? कैमरा बंद कर दो, मनूस लग रहे हो. चलता है, ये तो मस्ती चल रही है ना अपनी. अपन तो सब दोस्त बन गए हैं अब. They've spotted players near B, and they're worried about their spawn. They're actually going to go fighting aggressively. This could be a big win if it comes through. Nice work from Meteor. 1 bullet left. वैसे ही बात मैंने बोली थी, पर बोलने वाला था मैं कि मीटियोर को ऑफ मत पिक करने देना, वरना ये राउंड चला जाएगा. मैं कसम से बोलने वाला था कि मीटियोर को ऑफ मत उठाने देना, कसम से भाई. उसने तीसरी फाइट भी ले ली शेरिफ से. हाँ वही ना. That's what I said about this guy. He knows he'll hit the shot. For some reason, when it's him, a 2v2, and he goes, okay, I've got the first one, he always peeks for the second, and weirdly, he always gets it. That's the thing. Every time I'm sat there going, I'm ready to critique, and then he gets the kill, and I'm like, well, fine then. I guess that was the right play. Well, uncouth, but it works this time. Baap re, if they lose this game, it is because of this round. I'm telling you guys, I'm telling you. PaperX have weaknesses. An operator in the hand of something. मैं तो वही नहीं कर पा रहा हूँ इस राउंड को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ. Oh, nice flash, that's good. But he hasn't got the dash anymore. It's faded out. But Munchkin, oh, the shot's missed. And Munchkin's been given a second chance at life, while the showstopper is again just, oh, I thought just used for space, but if he fires it out close, no, he doesn't pull the trigger. And now he realizes his mistake as the dive comes in from PaperX. They've got a lot to work with. The old Stoke should be, well, in theory, forcing them back, but it hasn't happened at all. They went aggressive, made this one problematic. Spike already planted at least, so they're going to have to respect it and just fall back. Munchkin's still holding, and they have a pretty nasty potential crossfire just with the amount of time that can be bought. Munchkin is just looking at that clock. That's all he really aiming for, sitting back, waiting for the push. He manages to land the first, almost onto the second. The PaperX responding back and forth so far. सॉरी यार, ये कुछ तो सीन है ब्लैक स्क्रीन का यार. मैं ऑल टैप दबाते ही ब्लैक स्क्रीन आ जाती है यार. कुछ तो गड़बड़ है. मैंने ये कौन सा कुछ और विंडो कैप्चर की जगह गेम कैप्चर लगाऊं क्या? डिस्प्ले कैप्चर नहीं, उसमें तो पूरी स्क्रीन आएगी. गेम कैप्चर यूज करो क्या? क्रोम नाम रखते हैं कैप्चर स्पेसिफिक विंडो ब्रेव. And for PaperX,
it looks like they've really got their hands dug into those reins. The economy is low. We've seen Gen G win low by rounds. There's a Viper's Pit online with 1 kill from Munchkin, 1 orb, 1 plant. Okay, bye. Q. But the main thing is something has got basically an all right now. That's a Yassine dash. But it works out for him. No punish. And the reposition gets him another लॉजिक इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि पता नहीं वो फायर नाइस वन मतलब एक ही रीज़न हो सकता है अपनी इन्फो नहीं देनी होगी कि मैं इतना क्लोज आ गया हूँ पता नहीं उसको कभी अरे मैं बोल रहा हूँ ना आप रेस खेलोगे ना तब पता लगेगा कभी कभी उसकी अल्टी आपको नहीं समझ आता भाई कहाँ करनी है थोड़ी सी इन्फो चाहिए और वो अल्ट इतनी पावरफुल है ना आप उसको ऐसे ही शूट नहीं करना चाहते हो इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें तो टाइम ही खत्म हो गया था उसको कर देनी चाहिए थी शूट बट वैसे मैं बता रहा हूँ बहुत रोज़ा इसलिए होता है भाई क्योंकि अभी उसकी अल्ट ना बहुत नर्फ हो गई है तो एग्जैक्ट उसके बुंड में ना लगे ना जब तक अल्ट किल होता नहीं है तो और आप सोचते हो कि आपको ऐसा चाहिए कि मुझे इन्फो मिले तभी मैं शूट करूँ उसको तो इस चक्कर में बहुत सारे रोज़ास भी होते हैं अरे ये तो गलत हो गया माइंड फ्री ये तो बहुत गलत हो गया भाई Karen was trained in on that with Texture finding a field day. 2 HP left on Divide. He'll find it hard to get any impact from this point. A straight bullet enough to take him down. But he's caught Karen off guard. The flash भाई पूरा ऊपर चले जाएगा भाई No more flashes and they don't regen anymore. If he gets one more, it's done. अच्छा वो लो था ना इसलिए. Viper's pick could change the game. They're trying to get in as quickly as humanly possible, but Meteor's there to defend. Leaves it onto something. As said, he's had a real resurgence. They just fall back to enable the reload. कर ले पहले टुनटुना हिला दे अपना पहले. Completely. I think they know exactly where he is, but somehow he still wins the battle. 3 bullets left in the clip. The pit's been dropped. He's already going to spot one, but he's now just out to the classic, and it's a classic v classic. Blacky is the one to take it home. Why didn't he reload? बहुत टाइम था यार. Something बहुत टाइम था भाई. It's a back and forth once again. रिस्क था मतलब उसने गैम्बल किया कि बस क्लासिक लग जाए और उसकी क्लासिक लग गई लेकिन यार ये तो बहुत गंदी फाइट ली माइंड फ्रीक ने यार बहुत ज़्यादा एंटीसिपेट करके चल रहा था कि मुझे टाइमिंग मिल जाएगी या कुछ तो हो जाएगा दोनों लोग बुलेट पे थे Gen G, पीछे जाके कर ले they've got a lot set up in front of them, Tom. There is a नहीं ये ट्विच पे होता है नॉट ये प्रॉब्लम तो चलो क्या चाहिए उनकी स्ट्रीम पे उनका विंडो ऊपर के ऊपर रखो on the home stretch very soon and Forsaken in that corner needs value. They've not seen him. He's good for 1 and damage on Texture. Those could be very pivotal facts for us as PaperX look to move back through. So many players are low. One extremely low in the corner. It's the Rocket to find him. Yeah, that's the thing though. That trade's all right. That was the low HP player that goes down. I don't think they're going to mind that whatsoever to put it back into a 3 versus 3. Something about to try and go through this. His teammates a little bit further behind. No flash available for Device, so it's just going to have to be the raw push. Already managing to retrieve a rifle, but every member falls. जी नहीं हो ही नहीं सकता अब कमबैक नहीं हो सकता And the major worry वो दोनों राउंड जो गए ना ये they don't have backup credits. They don't have समथिंग का 1v1 और other than the Blade Storm. 1v जो 2v3 दिया Could be the beginning of the end. पता है मुझे पता है 2-round gap. Gen G in this series have just been miles ahead when it came to these rifle rounds. And again, it seems strange that 13-8 to talk about it as a dominant game. Yes, it is a strong scoreline, but not damning for the other side. But when you look at both pistols, that's a 4-0 start based off of coin flips. And PaperX managed to just about come ahead. When it came to rifle rounds, they weren't able to succeed. Now early push, it's not quite a rifle. Instead, it's a set of blades, and those don't even get fired off. They lay by his side as he falls to the floor. Something down, so too is Divide, and they're ready for another player close. There seems to be Texture पे अल्टी है, लाकिया पे अल्टी है, Meteor पे अल्टी आ जाएगी. Roster in the last few rounds. And with 12 looking like it's on कोई the board, चांस Tom, नहीं कमबैक का कोई चांस नहीं 2 राउंड they have बहुत to be feeling बहुत गलत हो रहा है जेनजी के साथ थोड़ा लक भी है जेनजी के साथ यार वो जब से वो जब भी खेल रहे हैं ना मतलब ये पूरा टूर्नामेंट इन पे लक रहा है भाई थोड़ा सा मीटियोर की अल्टी आ गई लाकिया की अल्टी आ गई टेक्सचर की अल्टी आ गई ये ग्रीन वाला व्यूअर बनने के लिए क्या करना होगा मेंबरशिप लेनी होगी
weaker investment, but they had to use one of the old. नहीं यार सारी टाइमिंग्स जेंजी के फेवर में जाती हैं भाई, सारी टाइमिंग्स जेंजी के फेवर में जाती हैं, क्लच भी उनके फेवर में जाते हैं, सब टाइमिंग उनके फेवर में जाती है। जी जी 9 राउंड जीत गए ना, मैंने तो 7 बोला था, चलो मतलब PRX अच्छा ही खेली है उस हिसाब से। आपका डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करने दे रहा है, मुझे तो कौन सी उसकी बात कर रहे हो? डिस्कॉर्ड में वो आप किसी भी VC में ज्वाइन करो, मैं आपको ड्रैग करता हूँ शुभदीप भाई। हाँ वो मैं वैसे हूँ नहीं अभी किसी भी इसमें, मैं आ गया हूँ, देखो वो प्राइवेट है वैसे, मैं आपको ड्रैग कर दूंगा, आ जाओ। PRX DG Aditi looking to try and do what no Pacific team has ever done before. Take themselves to a international victory. Hello are you? PaperX are not dead. Hello are you? Not down. इतनी देर बाद आया, मैं कब से बुला रहा हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में। नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो क्या? रुको ये मैच खत्म होता है फिर मैं नया लिंक देता हूँ। वो लिंक का कुछ इशू हो रहा है मेरे डिस्कॉर्ड के, वो नाइट्रो खत्म होने वाला है अभी, तो वो दिक्कत हो रही है, वो कर दूंगा मैं सॉर्ट अभी। घर से आऊँगा तब नाइट्रो बूस्ट भी कर देंगे पूरा। उधर से ट्राई किया था। अरे दीदी मुझे, अरे पेक आईडी पे कितना सिम करोगे रोहित भाई? Problem is, okay, good nade up close. That's going to force that player out in the open. Problem is, Texture was covering. अभी तो अल्टी भी नहीं हो गई थी। Now the push on mid is spotted as well. 3 players left for PaperX, and it looks like they've still got a fight in them. Nightfall. वो मार्क हो गया, वो मार्क हो गया। Thank God TP कर ली उसने। The shrouded step has bought a little bit of an advantage for Mindfreak as he's still alive, his HP recovering, but with something उसकी down. टीम कहीं है ही नहीं, समथिंग अकेला फाइट ले रहा है भाई। Towards that spawn, Mindfreak's on the wraparound. Wants to move towards that singular door. For this, Divine needs to buy some time. He still has a flash to play with. There it goes. It's popped and it's cleared out this corridor. Devi's even won the fight. The smoke is down. A chance if Mindfreak can make it to Devi. If they can take this fight together, but they don't know where the last players are. जी जी यार टाइम नहीं बच रहा। अरे वो कुछ तो जुटेल डाल रहा है, रिवील भी आ गया उस पे। just dodges that seize, but Mindfreak down. The time now not to be played with. Okay, no, Texture went out swinging. There's no chance. There's no chance whatsoever. He had to stick it underneath his nose, and short of a big display, it was never swinging the other way. 13-2. चलो डिस्कॉर्ड का नया लिंक देता हूँ आपको। 13-8, a consistent showing from the side of Gen G as they take victory over their Pacific comrades. It's on to the upper final. Yeah, it is another huge statement play for Gen G. No doubt at this stage that they wear the crown when it comes to Pacific. But that's not the crown they're gunning for anymore. They said it at the time. Their goal was to make it to the playoffs. Well, they've made it there, and they've continued to push forward in that upper bracket. A team has said that last year didn't really do too much, didn't really give us much to be excited about, and then bringing together a mix of players that maybe many didn't expect to do well, definitely didn't expect to get this far. They continue in that upper bracket to fight off and be the representative as they face America's Pacific champion, a previous finalist of one of these events, down into the lower bracket. The second map, although only 1 round in the difference, Tom, this was definitely a much better feeling from the side of PaperX. They earned their way back in from an 8-1 deficit to a close scoreline. समथिंग का वो राउंड नहीं यार, वो मीटियोर में जो ऑफ से राउंड कर दिया ना। Thanks to map number 1, PaperX's pick where they just didn't get started. अब जेंजी का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। Concern for them. Moving on to an elimination series next, they won't get a chance to have a slow start. They've got to come out swinging off the bat for Gen G. Guys 100 लाइक्स तो कंप्लीट करा दो यार, कुछ तो अच्छा हो जाए आज का। Figure out who it is, take some notes. This is a very nice position to be in, and a chance to make a historical run here in Madrid for their region. But that's always been the thing. Like, we talk about Pacific teams as a flash in the pan a lot of the time. You look at the Zeta run. You could even throw a Chinese team of EDG in there as well, making a run. PaperX making a run. This Gen G squad, though, it feels different.
They have so much depth to them in terms of individual plays, but they have such a solid structure, great trading, and also it just looks like the individuals on that team have leveled up from last year. They look like different players, even if they're in different roles, some coming from the tier 2 as well. They are an absolute joy to watch. And the fact is, I don't know where this ends for them. They could genuinely be there. It definitely feels like they have a long road ahead of them. Hopefully no bumps in that road. And the reality is, you know, Texture for me is certainly someone to take notes on, because this guy, he was good before, but now on the international scene, up against some of the best in the world, and he's leaving his mark. He's already left his mark, and it could get फाइनलिस्ट उन्हीं से डिसाइड होएगा। हाँ नहीं, अभी तो फाइनलिस्ट नहीं डिसाइड होंगे, अपर ब्रैकेट का फाइनल है। जाके देखना VLR.gg पे क्या फॉर्मेट है। देखता ऐसे मत बोलो। बिगेस्ट फैन सिटिंग हियर ऑफ सेन, सब यही बोलते हैं भाई। शुभदीप भाई वो डिस्कॉर्ड का लिंक डाला मैंने, उससे आ जाओ। Match found. पूरी टीम अच्छी खेली। जेन जी तो बहुत मस्त खेली यार। लोटस नहीं हारती, अपना मैप हार गया उसके बाद तुमको वो चांस यार स्टिल प्ले लाउड उससे। हाँ हाँ सही बोला। Death match. Warm up. When we go out there, someone dies. Carry that weight. Fight. Okay. खेल रहा है। गेम खेल रहा हूँ। नहीं। Dominating. Try again. Hello Navin Mishra, welcome. Dominating. Not enough. Neutralized. Omen's gone. You're finished. आप क्रिकेट देखते हो? Yes. Got 3.
वेट किया। I stopped their raid. आरजीबी यार एक था ना। Got one. हेलो बग्गा। Enemy down. Who else? 10 kills remaining. Target down. Five kills remaining. One kill remaining. Let's go again. Players still have some tracks left. Match found. हार गया पेरेक्स। यस हार गई। Death match. Warm up. Warm up. They will scurry, and then they will die. Fight! Okay, let's get set up.
Killer kill. Breached. Dominating. Goodbye. AMD crazy, yes, Emily. 3 out of 5. Buried. 3 out of 5. भाई वो हिला ही नहीं, खड़ा ही उधर ही. Foolish. गनर विंडोज 10 यूज करता हूँ. Why not 11? क्या कैसे सवाल पूछते हो यार? नहीं करना अपग्रेड भाई. Why are you using Windows 11 में पूछो तो? 10 kills remaining. गनर भाई. Out of 5. पता नहीं 11 में यूज नहीं किया, मैं अपग्रेड करना ही नहीं चाहता हूँ. क्या ये FPS दे देगा? विंडोज से थोड़ी इतना फर्क पड़ जाएगा. जब सब लोग विंडोज 11 एकदम स्टेबल हो जाएगा, सब यूज करने लगेंगे, तब अपग्रेड कर देंगे. पहले तो बहुत अनस्टेबल था, अब तो काफी अपडेट्स आ गए हैं. बट बिल गेट है, दहेज नहीं भेजा. Slammer.
5 kills remaining. One kill remaining. प्राइस कैसे ले सकते बता सकते वॉच पार्टी की नहीं क्योंकि मेरे पीसी हाई एंड है फिर भी मुझे कम एफ पे जाते हैं आई थॉट ओएस का इशू है हेलो स्कार व्हाट्स अप मैच चालू होने में कितना टाइम है सेकंड भाई वार्म अप कर रहे हैं मुझे 500 FPS आने चाहिए लेकिन मुझे 300 ही आते हैं ऑन स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम भी मतलब रिकॉर्ड वगैरह करते हो या कुछ करते हो जब तभी भी या सिर्फ गेम चल रही तब Match found. पहले भाई से पूछो भाई का स्टॉक कूलर है या लगाया है एक्स्ट्रा कूलर अभी तो फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब पूरा ही पीसी चेक करना पड़ेगा सही है ऐसे नहीं पता कर सकते भाई Death match. Warm up. लिक्विड कूलर है भाई फिर तो कुछ और इशू होगा कितने हर्ट्ज पे चल रही है They think themselves are equals? They are mistaken. Fight! I will not die today. 280 हर्ट्ज की कैसे रैम आने लगी 280 हर्ट्ज फिर 2800 हाई एंड पे से मॉनिटर नहीं पूछ रहा हूँ अरे मॉनिटर नहीं पूछ रहा हूँ दोस्त मैं पूछ रहा हूँ रैम अरे हर्ट्ज की रैम है 32 GB तो आपका भी बता दिया आपने बहुत अच्छी रैम है भाई आपकी टास्क मैनेजर खोलो उसमें देखो आपका विंडोज़ 11 है तो टास्क मैनेजर खोलो उसमें परफॉर्मेंस में जाओ
मेमोरी में जाओ, उसमें स्पीड में लिखा हो रहा होगा। Kill confirmed. 3 down. 4 down. टास्क मैनेजर खोल के उसको मेमोरी में जाओ, परफॉर्मेंस जाके मेमोरी में जाओ, फिर उसमें स्पीड में जाओ, स्पीड होएगा उसमें, वो बताओ कितने में चल रहा है। Target down. भाई ये हर जगह आते थे, बाय द सेंड बंडल, बाय द सेंड बंडल भाई। पर्सनल प्रमोटर होंगे। अरे हर बार क्या, ठीक है भाई, एक बार कर लिया, समझ आ गई भाई। One less. 3 down. Scratch 1. हेलो यो, जंजी जीत गया, यस। Dominating. Kills remaining. अरे सब तो एफ के चले जाते हैं भाई डेथ मैच में। मैच खेलने का फायदा नहीं है, सब बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अननोइंग होता है और सबसे ज्यादा पूरे मैच में अकेले घूमते रहो, 3-4 बंदे, 2-3 बंदे फिर वही मिलते रहते हैं। Kills remaining. Got Sky. One kill remaining. Final quarry. आ जाओ भाई, खत्म करो जल्दी। Oh, fy faen! Well done. Okay, so here they are. Over to you guys. That's extremely true. We have so much influence and power, actually, over Riot Games here at the caster desk. But excited to get started. Well, our second match of the playoffs, and it's bound to be a barn burner. We've already had it, you know, a sneak peek of it, at least in the regional finals. These two teams clashed, and they're kind of taking over that mantle now. You know, me and you, Josh, we were talking about it just before we got into the game. But you know, you think of that Optic Core versus Loud matchup. That was, you know, El Clasico, and now maybe the passing of the torch over to this one. We've seen Sentinels versus Loud now many times so far in 2024, and it's always pushed both of these teams to great heights.
it's possible that we'll see it even later on in the playoffs too. भाई We're आपका yet to really problem discover solve which होगी. of these teams are going to be able to battle it out against each other and make it deep in a playoff kind of situation. Gen G looks scary. You do not want to be in the lower अभी 11 bracket की if they आदत end लग up गई down है there तो at some 11 point. 10 Obviously, में Paper X शिफ्ट not होने का sure मन this नहीं either. कर रहा. But yeah, मत this करो, is उससे कुछ a फर्क नहीं really पड़ेगा. cool regional matchup that you have between these two teams. हेलो शुमिदी, हेलो ट्रायो. अच्छा शुमिदी का मैसेज आया था क्या? वो डेथ मैच में ध्यान नहीं दिया मैंने यार. हेलो शुमिदी, कैसे हो? सब लोग स्ट्रीम लाइक करो. Stage 1, Stage 2, we're going to have 3 potential opportunities for regional fights like this, and then also all of the opportunities at Masters events or at Champions, where Loud and Sen, they're not just fighting here for the rivalry, but they both believe, and I think a lot of the fans do too, that they've got a serious chance of being able to win the thing. I think every team does that's at this event as well. I mean, winning here in the playoffs, of course, you know, not in the danger zone just yet. There's not elimination on the line per se, but it does just, you know, stretch you ever so deeper into that tournament, into Madrid. Gives you a really decent chance as well of lifting that trophy, lifting that title, which, you know, every team here is looking to do. Now that we've got a little bit of time too, just to dig into the map veto, it's going to be electric. You look at the opening map, the analyst desk has talked about it, and then Icebox, yeah, Loud won that in the 3-2 victory. Tenz पापा क्या खेलेंगे? Ended up putting up, but Icebox was close, man. Really close. And Sunset too. There's no guarantees that that goes the way of Sen again if we do end up going to 3. Sen need a good start here, but I think for Loud too. पूरा सेन के फेवर में कमेंट्री वोमेंट सब सेन के फेवर में करेंगे. सेन नीड्स अ गुड स्टार्ट. हां, सेन को चाहिए बस. Early presence showed here by Loud into the main with the boombot, walking up behind the smoke. Looking like they want to fight through it. They've got a flash ready and waiting. Potentially, no, just literally egoing the smoke. हेलो टुल्लू. अरे मैं कूलन की स्ट्रीम देखते रहता ना, तो वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे. 1-2-3 बार सुना मैंने अलग-अलग दिन पे. तो इसलिए मुझे पता है. A little bit of damage done. It looks like just a Tenz, not a reclear. देखा टेल्लो, सब पता रखता हूँ मैं. And Tenz prepping the paranoia in case this. ले भाई क्वालिटी लो हो गया. It didn't. They've recleared B main. और इधर हील हो गया. Going to start taking that इधर territory with bodies. साडक ने हील ली नहीं है. डॉग भी यूज कर लिया है लोग. Kawanzin did not use a fault line at the start. चलो स्ट्रीम लाइक करो अब और आप फुल वॉच पार्टी. Gunfight instead. Yeah, just straight up. I mean, just dry into it. No kit being utilized. Again, want to face with the bodies. And to be honest, I think that favors Loud. Yeah, they've lost the breach, but no smokes if they decide to go over and commit to B. And Loud are re-exploring down mid as well. John Cutie and Sewers. Massive proactivity being called here by Sadag, but well, John QT left to do so much Franco, more there. Just the to one maar diya, before the warna trade nahi comes through, but the B site now opened up Three entirely for them. Will be have that plan. Sassy's out wide into the open, could have been danger there. लेकिन का बूमबॉट बचा है. सासी के 2 फ्लैश बचे जिसमें से एक अभी यूज होने. Snake by now being held, but he's got 3 targets to deal with. Luckily, Zella. Okay, Zekin right there, vulnerable. Will he be able to get the damage? Of course he will. Followed up in the end with the snake by post-mortem. I love watching Sen set up these kind of little plays. You could see it constantly when they were playing against the European teams in the Swiss stage, and they didn't want to offer them opportunities to go for retakes, where they would cook up some kind of post-plant aggression, and they've always got a different idea. अरे मैं पीछे का देख रहे हो तुम सब. बाकी स्ट्रीम में बंद कर दो अपने लिए. यही लाइव है. ठीक है, 4 जगह खोल के रखते हो क्या स्ट्रीम? Just a depth of micro plays that they can add in. This Tenz को इतना हाइप क्यों करते हो सब पता नहीं. क्या इधर भी बंडल बोल दिया. Already seeing examples of both of these teams just trying to be proactive. IPL cameraman. All in that mid push earlier, fighting through into spawn. So I think what I said earlier, both these teams. आगे भाई अब तो खेल रहा हूँ. Nice. Brilliance. I think you might be seeing it. At least we certainly hope so. Les Korani opened no man's land, so he will fall. And I think what you're seeing, at least at the beginning of this game, is Sen taking a very slow approach. That's a big kill. John Cutie going down on A means that this side of the map no longer has any offensive threat. Ooh, second reactions there. Fault line stunned up. Well, there it is. The classic damage coming through. Flash in the end as well, so Tenz is shortly behind him, but a flash repeat. Kawazin can't get too much more done. 1 player left. 2 years. काश ऐसे flash dodge करते मुझे. Too much danger around. No. And Sentinels were forced to accelerate there once John ended up dying because they don't have information about what's happening on the other side of the map. But if you want to talk about info as it relates to these compositions, Loud constantly need to be jiggle peeking corners, need to be going for those proactive explorations. And that's going to incentivize Sen to play a little slower, to try to punish the jump peaks and see if they can get damage or kills that way, to try to punish the info pushes into mid, that kind of thing. And Loud can't always run around the map
pushing on defense with utility because it just makes it so obvious where they're playing. It's a difficult comp to play on defense. Might just get even harder as well when SEN end up swapping sides. They look like one of the better teams here at this event when it comes to their split. सिर्फ सेन की कमेंट्री कर रहे हैं, लाउड की तो कर ही नहीं रहे हैं भाई। उनको व्यूअरशिप चाहिए, उनको मतलब ही नहीं Still being thrown out wide here for that ramp control early. Now setting their sights out into the A side. Sadak anchor in position, tucked nice and tight and safe, and really just buying time for the rest of his team. Where are the reinforcements? It was a molly into the smoke, and well, damage has been done. Vulnerable up, sets it up for an easy one for Celsius. 3 versus 3. Bit of a blunder there for Loud, offering SEN another opportunity to get back into it. Not planted for Heaven. Spike planted. Oh, and the pick goes down too. Now Sassy is pretty far away, but I think, yeah, I mean, look at the way that Loud are clearing this. They're expecting a reflank back up. Holding. Usually going to be the bread and butter of a team like Sentinels, just trying to fight, scale for it. That paranoia, the timing on it. It's immaculate as soon as the nade comes through. Yep, just hearing it and tucked to the corner. Sassy removed. Taken out now, just 2 will stand, and it could be just a bit of random spray, a bit of random spam that saves the day for them. Celsius traded, pit going down. Tenz 1v1. Doesn't really have to gun for it as a bulldog, but will it be all bark or all bite? Tends to be the latter when Tenz is wielding it. Great clutch there. Enormous round for SEN to be able to pick up. The momentum piling forwards for Sentinels as they win the bonus and knock Loud's economy down. And what a fumble after Sadak's able to get a 2K at the beginning. And it's a 5v3. The stun just comes through a little too late for Sadak to be able to follow up on. And then the flood is late too. And they've taken a huge player advantage situation set up by भाई उसको कॉल नहीं दी क्या, वो लो है, फाइट ले लेता यार हाफ करने के बाद. Tossed it away. Glimpses of the comms there as well, keep playing together. Fundy's on show for SEN. Winning that bonus round is amazing. And I do think that that's such a key. You know, Loud thrive against teams that opt into the individualism. You saw what they did to EDG. Oh yeah. It was a massacre. No chances, no gaps when they're playing against that. I mean, you can argue as well a team like Loud had a relatively easy path into playoffs. Only beating out the Chinese representatives at Madrid. Neither of whom played that well in their games against Loud. Didn't put up a fight, really, did they? But having said that, we know that Loud are an extremely good team when they're on. Sassy feeling the danger there. The dog spotting out too. John is so much wide. Yep. That is so much info. John's like, guys, there can't be anybody B because they're all looking at me in mid. Lucky to not pay with it with his life. Nade waiting. For Loud. Could be some danger if they find a few initial picks rattled off maybe with the Sheriffs, but use the Trailblazer early. Nade follows through with a snake bite exchanging, the handshake dropping down. Sadak was alone there. There wasn't really much to do with in terms of the follow-up. They have to face it wide though with the aftershock being played for. So much damage done to these Loud players. Positioning's known and noted, and so 3 survive into it. Second picking up 3s, 1 away now. The big critical ultimate on attack side, that showstopper is going to be putting in some work if he manages to earn it. Yeah, and this is the problem once you start snowballing forwards. Loud are going to be 1 away from having a broken economy again, and SEN are starting to get up to key ults. Look how nice as well the Sentinels' utility usage is when they get into a plant scenario. Zekan's holding nade to try to deny someone who might try to stop the plant, but he's also ready to throw counter utility with that. गनर भाई गोट तो नहीं है, डायरेक्ट CS:GO में लास्ट में एक जीत गया था बस में. गोट थोड़ी बोलते हैं उसको. मेरे से करो ना CS:GO की क्या बात कर रहे हो? One-sided affair. Want to see some bite back from Loud, really. Oh, this is interesting. Celsius went for an orb lineup that's all the way into mid there. You see how there's 2 Viper orbs layered on top of each other. And that's going to disincentivize what Loud have been going for. This is Sentinel's Viper orb in mid there. You're going to take a lot of damage if you want to try and fight mid. If you're Loud. That's broadly speaking what Loud have been doing on this defense side. 30 HP वाले से fight ले ही लेनी चाहिए भाई. Dog right on cue there, at the minute mark. It's going to be broken for a bit of that mid-round information, but अभी उनको लग रहा है कि QT अकेला लड़ कर अच्छा डॉग कर दिया था. Still left scratching their heads ever so slightly in terms of wondering where this might बिना land. डॉग के वॉकआउट करते हैं ना तो शायद correctly with the seekers as a point them directly into the right targets.
Sassy's going to pick up the ult orb and get Seekers himself. Seconds left. Which direction is this going to go into? They've still got two players planted into mid here for Actually third round में गलती क्वाउजिन की थी, वो हेवन से अकेला कूद गया स्टन करके. Push and pull, ebb and flow of the map, not really working out in Sen's favour, and they need openings and they need options right now, maybe to be granted to them. A bit of spray with the damage, the bullets going wide, but this is such a difficult setup to break. 20 seconds left. What are they even going fan for? तो नहीं हूँ, but मेरे को नॉर्थ अमेरिकन कुछ नहीं पसंद है भाई. नॉर्थ अमेरिकन प्लेयर्स टीम गेम कुछ भी नहीं. Team flash, John QT there, close to the corner, cut to wide. Satchel's through and over the top. Cabazine still anchoring. Tucked tight to the corner, Sassy planting the balls on the man to go for that one out wide for a heaven plant. The wrap around, now Zelsa becomes a key player in the game. ये राउंड भी सेंटिनल से जीत जाएगी. अटैक में 5-0 कर दिया भाई. So he's set to try to blind somebody playing elbow. Tenz is already repositioned up top. No follow-up off of that flash at all. Cabazine with the stun finally now to try and at least attempt that. Valorant में simple जैसा कोई होगा. Giving this one up, they don't have positioning at all. Zelsis is backed away, playing a really passive position. Tenz spots it, backs away, not favoured for that fight, and they've won out the least critical ones. And no mollies for Zelsis. Let's tap onto it. Les is holding for it and watching for it. Thank God. That was really nicely done there by Loud. यार ओपिनियन अब सबका अपना अपना है. किसी को सिंपल लगता है तो नहीं, मेरे को तो नहीं लगता. मतलब सिंपल का फैन नहीं हूँ मैं. वहाँ प्लेयर तो गोट तो है. सिंपल तो गोट है भाई. उसके नंबर्स देखो भाई. Look how good Kawanzine is at being able to deal with Zekken flying over the top of him. As an individual player तो सिंपल गोट है भाई. The backbone when it comes to fragging, winning duels against. As a team CS:GO नावी में गोट है क्या? नहीं. To shut the round down. That's where you see the slower pace of SEN get punished. If Loud are not going to give them things in the mid-round, give them openings to punish, you've still got to be able to make your own success with the executes. निकला राउंड निकला. मेरे छाती में दर्द हो जाता नहीं तो. थर्ड राउंड में क्वाउजिन ने बहुत गलती की भाई. वही फाइट ले लेता था, वो बोनस हार गए लोग. नहीं वो नहीं, डिफ्यूज नहीं. जो सैडक ने 2 मारे, सैडक मर गया, फिर तीसरा बंदा वो स्टन करके जो हेवन से कूद गया ना अकेला. हाँ वो भी वहीं राउंड चला गया ना, क्योंकि फिर प्लांट मिल गया, वाइपर अल्टी आ गई. 1v1 डिफ्यूज में अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है अपने को पता नहीं. अब अपन तो बोल दिया यहाँ से कि अरे फाइट ले लेता है ना. 1v1 में तो ये आने वालों को एटीट्यूड बहुत है. मुझे तो पसंद ही नहीं है भाई. यानी चीजें नहीं. बेकर इज द रियल गोस्ट फॉर रियल. बॉम्बर्ड्स किस कर रहे थे. वैलो में कौन हो सकता है उसके जैसा. आसपास हो पाता अगर लाउड में रहता तो. डर का मतलब आधी जर्नी पे पहुंच गया था, लेकिन वो पिछले 2 टूर्नामेंट से अच्छा नहीं खेल रहा है, तो इसलिए अभी डर का को बोलेंगे नहीं. और यार फिर जिंदा भी रहेगा देखो. अब फिर हील हो जाएगा यार. वो एक किल भी लेगा वो, देखना हील हो गया अभी. बच गया. तो क्या मेरी स्ट्रीम देख रहा है क्या? नहीं. वो भी बच गया ना. रेज का नाम देखने. अभी भी सेकंड जिंदा है, बता रहा हूँ. एक किल भी लेगा देखना तू. अब फिर क्वाउजिन ने अकेले फाइट ले लिया और 1v3v3 करा दिया वापस. नसीब उसने मॉली कर दी. Arriving to the party though, Util in his hand, Sanang adjusts it and watching for it. Tenz now 1v2, the double face is there. Terrific 100% आसपास. आसपास अब तो लेव में चला गया ना. अभी तो लेव तो उतना नहीं दे पाएगी जितना वो लाउड में चीज. पता नहीं उसने टीम क्यों चेंज की. पता है क्या किसी को रीजन? आसपास ने क्यों टीम चेंज करी? The timing there to re-push ramp before रीच खेलने वाले लोग ऐसा क्यों Sentinels were anywhere near set up for it, right? Sen's general game plan is we're going to get to site, we're going to have some kind of post-plan idea for aggression, or a backup plan like Zels is going for that late lurk. But if you can find the timing between them going to site and setting up the next play, which Loud did, you can be very disruptive. And also, one of the big crucial factors in round 5 and 6 to Loud winning is that they just had players able to take ones and win duels. You saw Tenz at the end there. We've seen him do magic in those positions sometimes before. But Loud is shooting back. Might sound reductive, but it's very important. Here's that same orb lineup, but this time it's just going to go straight into a pit. I don't think that's going to have the value that Zelsis was hoping for. Kind of risky to go and retrieve it too. Yeah. But it's lost, isn't it? Can't really be reclaiming it unless you have a plan to re-clear, which... एरिन देखते हो. एरिन क्या है भाई? Bodies, don't get me wrong. Just hoping that a few stray bullets might land. रोल्स का इशू आ रहा है थोड़ा. रोल का क्या इशू? उसको डोलिस्ट ही खेलना है. उनको उन्होंने एक प्लेयर रिप्लेस किया, वो डोलिस्ट खेल रहा है. अब कुछ झगड़ा हुआ था शायद.
If SEN get a read that Loud are playing heavy over mid at the start of these rounds, which they generally are, there's normally 2, sometimes 3 players there, SEN might be able to make an adjustment and go for more less burst carry बोलते हैं, less ने वो डिफ्यूज नहीं किया, स्टिक नहीं किया होता तभी 4-2 Loud का होता. Of what your opponents are doing in this match, and they will be changing it up compared to the last time they faced off. Pretty clear called. It looks like it was the dog John QT. He's been pushed forwards now, tucked, and there it is. Kill claimed. QCK fault line, definitely there. Initially laboured enough, but still the trade online. The call's being made to try and speed up the play now into B, but already that Yuto, look at it. I mean, the paranoia, the smoke drops out, cuts up the side, and with that lurk into mid, Sassy not rewarded for it. Tenz has the spike here, looking eager potentially to take some fights here, but has to stick the plan now towards default. But his team do on his back and more. Look at that coordination on display. Sadak creeping and crawling. He managed to weave his way into the site there while all that chaos was going on, but not enough to get too much more done. And that was a tricky round. Commentators भी SEN का ही side ले रहे हैं. John QT goes down over towards A. SEN are forced. Their hand has to go B. And Tui's knew it was happening. The Loud players were there, and yet SEN come out on top anyway. Celsius destroys that attempt to flood retake. Dodge the flash and pick up both players. Good job. SEN, they are running away with this a little now. Getting to dangerous territory. Loud put 2 on the board with some slow, nice retakes, but now the economy's broken again. Yeah, strange, isn't it? How that ends up working out, but quite salvage. Will keep any of the money running. Keep smoke. Going to be disrespected apparently. At least with the flash, they know that nobody's close, tucked to the corner. A lot of players now looking for a punish on the top. Hello, Gamer Ultra. It's been noted that he plays here a lot, solo play. They're just going to posture and pick up the orb. And if they can find a pick on John QT and push him away, it'll create timings where Loud can worry about the rest of the map. And I think they've got a very good read that John is playing solo A lot. That's an expectation that maybe... यार एक राउंड पुश करके मार क्यों नहीं देते QT को उधर? Loud have found a decent timing here to make a little कोई aggression ही नहीं है भाई Loud की तरफ से, पूरा मैप दे देते हैं उनको यार. The more the time ticks, the more you start to get worried in situations like this. Absolutely. Especially when we saw one of the rounds go down to only 15 seconds. और अभी Sky पे refresh भी नहीं होते, flash तो इतना unchanged use भी नहीं कर सकते फटाफट info के लिए. Which is where Loud are going for their gamble. Sky का करना चाहिए इन लोगों को, वापस ले आना चाहिए, या तो एक्स्ट्रा फ्लैश देने चाहिए, 4 फ्लैश हो जाएं. अरे 3 दे दो भाई, 4 तो नहीं देंगे भाई. पहले 3 होते थे, पता है तुझे? हाँ पता है. तो 3 ही कर दो वापस भाई. 3 मत करो, 2 करो, रिफ्रेश में 1 फ्लैश वापस आ जाए बस. लेट राउंड कुछ बचता ही नहीं भाई स्काई के खेलने के लिए. नंगे हाथों घूमते रहते हैं. बाकी सारे एजेंट्स के जो मेन यूटिल होती है जो मिलती है उस समय वो रहता है टाइमर. स्काई का क्यों निकाल दिया मुझे इसमें? वो कूद भी गया उतने में जेल्सिस आके बचा भी लिया. कूदता नहीं, ऊपर से मार देता कम से कम एक. अकाउंट भी आ गई साइपर केज में, ट्रैप भी लगा दिया उसने. किस्मत चाहिए भाई. जेनजी भी ऐसे ही जीत रही है भाई. सेम चीज जेनजी की. Where SEN, it looks dangerous on the minimap. You see them walking into the trap. Even managed to get one. Was given but to everyone on bank, SEN is playing really which tight is together. for value and making sure that they can trade, making sure the bank sent it to the public depth office for renewal in their names. Absolute sentiment. The true owner of the note recovered compensation from the state, and the state was allowed to recover from the bank on an implied promise of We've indemnity. seen these teams play before. One was an extremely close split. The Loud ended up winning, with Sadak just popping off at the end of the game to drag him over the line, and the other was a flattening. It was Sentinels just utterly tactically dominating the game. And this is looking to me to be more like the latter. Obviously, the scoreline would suggest that, but the approach, the way that SEN is so patient around the map, dealing with everything that Loud throw at them. I think that time, having been the first team to qualify for playoffs, has been used very Split Sentinels का pick है. Rest and rejuvenation. I mean, listen, I've seen these players wandering around the hotel. QC के नहीं भाई, QC के में दम नहीं बिल्कुल यार. ऐसा लगता है मैं खेल रहा हूँ. But now they've finally been able to get some sleep. And you saw there in that the shot of the stage, actually, Sadak popping off, making sure he's communicating what he wants to be adjusted heading into this. Tack timeout taken for Loud. Are they going to be able to find the adjustment that gets them
a little bit of a cushion to work with because the economy has just never been in a good spot. इन लोगों को एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा अग्रेसिवली खेलना पड़ेगा. फर्स्ट राउंड जैसा अग्रेस किया था वैसे ही करने लगे तो जीत सकते हैं. सिर्फ एक ही राउंड अग्रेस किया इन लोगों ने. यार वो एक राउंड कितना भारी पड़ता है. बोनस दे दे तुम डिफेंस का यार. Now look how difficult this is from Les and Kawanzin's point of view. You know, when this orb goes एक out, बंदे का डिसीजन पूरा मैच someone on SEN has just टर्न अराउंड हो गया. डिफेंस में तो घंटा जीत पाएगी. And so these स्प्लिट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. जीत सकते हैं. अरे वो क्यूसी के से घंटा एंट्री नहीं होगी कुछ भी. I've got your trail. Little portion of the round though, with a minute 10 onto the clock. You can see those Seekers offloaded, pointing in various different directions, but it doesn't really give SEN an indicator. They do know that a male is going to be free, or not male, but ropes itself. Yeah, that Seeker. देखना लाउड के प्लेयर्स देखना वो मैप के आधे साइड के इधर साइड कोई भी नहीं दिखेगा तुझे. सड़क भी सिर्फ बी मेन तक आया. अभी डॉग करेगा ये डॉग टूल. कुछ कंट्रोल ही नहीं है भाई. मैप कंट्रोल ही नहीं है. बेस से बेस जाएंगे, बेस से वापस यही पूरा टाइम रीटेक खेलते रहेंगे. उसमें से एक बंदा रीटेक भी नहीं खेलेगा जो सोलो पुश करके मर जाएगा. फिर 4v3 का 3v3 करा देगा. फिर जैकन एक मार देगा. फिर उसका नेड आ जाता है उतने में वहाँ पे. फिर ये मॉली कर देता है जल्दी से. सेम एक ही चीज स्क्रिप्टेड हो रहा है पूरा. देखना वो कितनी कम यूटिल यूज होती है सेन की साइट लेने में, क्योंकि वो फिर पोस्ट प्लांट सारी यूटिल यूज करते हैं. उनको मेहनत ही नहीं करा रहे कोई भी एरिया रिक्लियर करने में. देख अब इनको लग रहा है ब्रीच अल्ट पे रीटेक कर लेंगे. अब इसने अल्टी कर दी जेल्सिस ने. How devastating this looks to retake. How do you do this now? Yes, you have a rolling thunder, but it's going to be utilized hopefully now to clear through. वो देख लर्क पे आ गया पीछे देख. Flying from Sassy, and yet he's caused all the distraction in the world. बस हो गया काम उसका. His life close to the corner, cut him up. Still John क्यूटी ने भी मार दिया. Attacked his quality time now with the whole family as he's sat back into the spectator. CQCK forward. क्यूटी रुक देता तो पूरे सबको ही मार देता. But it's already wrapped around, so they got to expect the Sassy's there. हो गया जीजी. Half clearance. Not enough. 2 years TP adjustment. He's on that high ground position. तुम कहाँ मारोगे? जेल्सिस तो मार ही नहीं पाओगे वहाँ. वो पूरा बैठा है सिटी स्पॉन के अंदर जाके. हट भाई. But already time ticking, so 2 years no chance in hell. तभी तो बोल रहा हूँ भाई e-sports ट्राई करो. अरे किसी और कंट्री में होता तो कर लेता. अपने इकोसिस्टम नहीं है. कुछ मतलब नहीं है e-sports ट्राई. They're going to be knocked straight back down onto a low buy. And that adjustment, whatever it was that Sadak came into the round. अरे ऐसा लग रहा है कुछ चैलेंज ही नहीं करना पड़ रहा है सेंटिनल्स को. It did not work. They weren't ready for Sassy. देखो दो बंदों को तो फ्री फाइट मिल गई. जॉन क्यूटी और सासी को. हाँ यार. It completely disrupted. सासी ने लर्क कर दिया वहाँ से सब कुछ. वो सासी अकेले ले जाता अगर थोड़ा सा और डिसिप्लिन खेल लेता तो. नहीं और वहाँ पे नहीं उसको पता है ना कि वहाँ पे मार के निकल लूंगा फट से. चला तो गया उसने. एक और बंदा मेन में मारी तो दिया. अब सेकंड के अल्टे राउंड उनका ऑलरेडी इक्वल है. देख हेवन तक आने में बिल्कुल मेहनत करनी पड़ी ना. पूरा ए हेवन ले लिया. पूरा ए हेवन ले लिया और साइड पे भी कोई नहीं. सीटी भी जाएंगे अभी तो देखना. सीटी पे भी कोई नहीं है. The weaker buy here from Loud using that Trailblazer trying to be fast onto the approach. Chance here, Zekken tries to adjust the spray. अभी देख जेल्सिस किधर है और टेंस किधर है. Tenz evacuating. पूरा बेस पे बैठा है वो. इतना लड़के उसके पास अभी. What's the call now for Loud? Looks like a pivot. निकाल सकते हैं ये वाला राउंड तो. निकल ही नहीं सकता है. किसी भी हाल में नहीं निकल सकता. Tenz is in there. अरे Tenz ने. They don't have a clue. I mean, they've just caused them to all just be looking backwards अरे as well. जेल्सिस ने निकाल दिया. हो गया खत्म है. गेम भी खत्म है ये तो. ये जीत रहे तो. One with a rifle, but no longer. Drop to the floor. Drop to the deck. Less. Quite able to do it. कौन सी टीम को सपोर्ट? And it's not really Tenz that makes the round winning play, but 8493 किसी से नहीं निकल रही है मैच. He popped it over towards screens. I believe that's how. अरे भाई ये 93 कर थोड़ा सा फालतू बातें मत करा करो. नहीं मैं वो कह रहा हूँ कि नहीं निकलेगा. मैच ही नहीं निकलेगा. कुछ भी नहीं. ट्रैप में फंस गए देख दोनों. मतलब एक फंसा था दूसरा स्पैम में आ गया. It must be devastating for the Loud. कौन सी और ज्वाइन करनी प्लेयर डिसाइड करता है क्या भाई? Full BO3 ahead of you and you knew that you wouldn't be favored here, but it is still going to be. हाँ ट्राई आउट देने पड़ते हैं और भी डिसाइड करती है कि उसको लेना है कि नहीं लेना. ऐसा नहीं है. भगवान ट्रेड तो लिया कम से कम. Up with the stun at least, but this high ground angle of Tenz drops down, gives him the cues. Kawazi just taking a wide peek by himself, man. अभी भी ये सोलो इंडिविजुअल प्ले पे निकला ये राउंड.
Heads have fallen. Thousand Heads फिर have से push कर गया था वो तो मिल गया kill exactly उसको. what Loud ordered. Yeah, player advantage situation looking lovely for them. खाली है साइड. Showstopper too. 1v1s देंगे देखना निकाल लेंगे ये राउंड भी SEN नहीं निकालेगा. नहीं ये राउंड तो नहीं निकलेगा. ये भी नहीं निकलेगा और लास्ट भी नहीं निकलेगा. 4-8 होगा. This one is going to be tough and Loud cannot afford देख QC के बैठा उधर. Yeah, just watching for it. Look at that. Loud. Great awareness knowing that 2v4 है ना उसको प्ले बनानी पड़ेगा तो वेट कर रहे थे. और ये बूम बॉट में स्पॉट हो गया. बस हो गया. अभी 2 अल्टी है अपने पास. Thousand की अल्टी है QC के अल्टी है. तो लास्ट राउंड निकल जाना चाहिए. थोड़ा सा अगर रेस से अर्ली अल्ट करा के कर देंगे ना तो राउंड निकल जाएगा. अर्ली पिक निकाल के. पर ये तो अर्ली पिक निकाल के भी हकते ही है. Every other round we've seen Sentinels with a tortoise-like pace to the beginning of these, making sure that they are cautious, diligent about everything. Stream like कर दो ठीक है सब And लोग. as soon as they step forward to try to take the fight, Loud are so happy. These players behind Zekken just got wide swung and minced. Crucially as well, run around at his first half. The money's looking good. The ult's even better. The showstopper for QCK. Can play really much more aggressively now that he's got that one. And the silver lining, if they can get to 4, if they can win a pistol, maybe it's doable. But they've got to be securing those wins. Yeah, clean with the rounds that are available to them now. Viprorb does throw a lot of just chaos into the mix. I mean, look at the amount of Loud players. It's just gathered all the way into mid to watch it. They've got 3 players checked and ready. Yeah. And Tenz is still holding counter utility over towards B main. That timing was looking pretty good. Just. Now that they've spotted the up though, the call's been made to contact in through B main. So SEN have just got themselves Venka freebie there. आया था Now गेम. utilize this. Ult forwards. The rocket goes wide. Rosa. Now no value to be found there. Out wide once more. Still QCK's on a swivel. Molly's vulnerable. Dimmer नहीं निकला pushed him last out into the open. रोजा कर दिया ना जल्दी अल्टी खोल दिया. प्लांटर पे कर देता है सब. चलो साइड पे खड़े रहकर कहां प्लांटर पे करता है. हेवन चले जाता. An ace on the cards. Leicester stick. This one comes down to the spam, but John is stunned. A tap. He's going to be out wide. He's going to be forced wide. Knows it. Info gathered now, but another stick now. Less finally to trust maintained in his team. नहीं reload नहीं यार. Reload नहीं भाई. Reload नहीं भाई. Reload नहीं भाई. John QT balls of steel. Reload ने कर दिया ये. Was forced to reload in the middle of that, and John took the timing as Kawanzin reloaded. Les was still on the spike. यार कॉम्स कर लो भाई कि रीलोड कर रहा हूँ. फायर फट जा वहाँ से. More than anyone could have been asked to do. But the timing on that of when to take the fight in the 1v2 and was this makes them look better, bro. Perfection. All of this shit makes this team look better. Damn, absolutely unreal stuff. Well, we heard from John earlier. Let's find out what he was expecting coming into this matchup. Hello, I'm John Curie and I'm the IGL for Sentinels. We definitely did a lot of mistakes and we looked rough. We've had 2 rough days, but we made sure to rally the team and stay focused on the goal. अरे क्लासिक से कर ले भाई. कवर देना है बॉडी कवर तो यार. क्या रीलोड बोल तो दे उसको. रीलोड कर रहा हूँ भाई. वो हट जाएगा ना वहाँ से. Their patterns and what they like to do, what's their tendencies. रीलोड नहीं करना था तो तू बैठ जाता हाफ के बाद. उसको बोल देता कवर दे दे. उसके बाकी टीम बोल देती कि रीलोड आ रहा है. I like to tell my teams the devil is in the details. The small things that adds up and create that big thing that will make the difference. All grouped up right towards the back TP on top. That's amazing. This man is terrifying. What an angle to find. All the way forwards, Judge in hand, Shin. It's away with it. Still, reinforcements arriving. Narrate can withstand the pressure. It's too much. It's immense. This man is a thing of nightmares. तो क्लच दे दिए उनको फ्री के भाई. The mobility, the confidence, both working in tandem. He's on for the ace. Obviously, the team has been through very lows after the 2021 Reykjavik, so it hasn't been all rainbow and sunshine. But the fans still stuck with the team. Since I joined, I mean, I'm lucky to say we've only had high highs. We've won all of our off-season and VCT so far. So I mean, everything is going great right now, but we're still
process oriented and like goal oriented. Even if we lose, we still make sure that to keep it like consistent and not really like worry about the comments. Consistency is key at the end of the day. It's clearly working out for Sentinels. I mean, he was talking about it, time in the off-season, they've been winning a lot, but you know, with that comes a lot of hard work. They've shown some of the most maps of any teams coming into the kickoff, coming into the entirety of this year, but part of that is just them honing these map pools, you know? All the questions placed onto their split, why the teams keep letting it through. Well, the reality is, it's a middle ground map for most teams. Certainly true. Loud have come into this perma-banning Lotus, and Sen's Lotus देख looks अब good. सेन की टीम देख पूरा मिड पुश करके वेंट आ गए So चार Pistol बंदे Round वेंट्स में हैं decided सेन to के take a ramp control at the start. Sen wanted to fight over mid, but there was nobody there. Loud has still got some people really far away Fast from the refight. action. Real fast refight. अटैक कौन कर रहा है There's no connection there, so Les is able to just skip and hop away between GT. It's just this watchful eye onto it. There's a gap into the smoke. There's 1 Maybe HP a bit already. unintentional there. Maybe just a bit rushed from 2 years. Sen are also expecting there to be more players on site right now. Like, okay, well, where are अटैक the कौन other कर two रहा था players for Loud? They lost track a little bit of where Kalanzine and Tui's could be, and now they've lost a lot of map info too. There are still chances here for the Loud players to turn कुछ नहीं मिलेगा इस things around. लत पे टू This इसको silent jump spot not gonna be punished. इतना डीके लेगा हटना वहां से भाई Look at the rest of Sen, tripled up, re-clearing areas of the map, trying to regain some information, making sure that they don't offer any 1v1s. Yeah, methodical. 30 seconds. You know the win conditions of Loud right now. And against it, slowly creeping forwards, making sure to regain some of that map control. No kill found onto Kawazine. Less a chance really for him to bite back and fight back. Here it is. Return of the fire. Tenz from the बोलो ना टू से wraparound. कुछ नहीं मिलेगा लत पे 2 राउंड आ years गई अब running पॉइंट all the ड्रॉप way पे through. He GG knows the time's against him. So pistol round does not go the way of Loud there. Sentinels again looking like just a map of pure domination. Yeah, this could be extremely similar to the last time we saw these teams face on Split. As pure Sen domination. पुरानी लाउड की लाइनअप ज्यादा अच्छी थी कंपेयर टू Is that paranoia, by the way, too? Lovely from Tenz. नहीं सिर्फ आसपास ही होता तो as बहुत far as फर्क I'm पड़ aware जाता that Les was in that position. हाँ. Tenz just sensed that could be dangerous. Small window. बाकी तो impactful थी पता है पहले They've तो got a force. बाकी ये जो क्या बोल रहे हैं बाकी साथी पंकाड़ा Need some momentum. से तो मुझे लगता है कि टूइज और क्वाउजिन बेटर है वैसे भी करंटली बट वही है ना किसी के फिट नहीं हो पा रहा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा ना किसी के इन लोगों को इंपैक्ट नहीं डालता है भाई कुछ इंपैक्ट नहीं डालता है बस फिनिक्स लेके अल्ट करते रहेगा आरती राउंड और कुछ Reface Elsis, that is incredibly brave. Well, अगर वो मारे और मैच हार गए तो नाम बदल दूं मैं अपना जिस मैच में क्यूसी के ने मार दिया ना वो मैच नहीं हार सकते फिर उसी का इंपैक्ट नहीं है Sentinel's fully aware. उसकी पैरेलली जैकिन को देख लो Forwards into this deep angle and approach. That trip broken. There was a chance of a timing. Sassy's going to re-explore. लेकिन बहुत ज़्यादा Very favored अपने in the fight against Tui's unless और हैसियत से ज़्यादा कर देता है कौन That's bonkers. जैकिन हैसियत तो पता नहीं क्या है हम थोड़ी डिसाइड करेंगे बट मारता बहुत कर रहा है वही मतलब जो कर नहीं पाता कोई वो कर देता है कभी-कभी उसकी टीम में तभी तो बोल रहा हूँ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही वो निकाल देता है वो और जेलसी राउंड लड़ते हैं डुअल इसका इम्पैक्ट नहीं Back online, it's going to be spotting the crossover. भाई जल्दी मैप खत्म करो भाई मुझे दूसरा मैप दिखा दो They'll be calling out now that they could have been compromised towards spawn, but now time running against them. Loud, get a move on. Cages, propped up, pushed up. Behind it, John QT can't follow through after that trip. There's a smoke in his face. It does make it quite dangerous, quite difficult. Still, it's a bit of run and gun in action. Only a few seconds remaining. Pull out the sidearm. Why not? And it gets the job done. Really excellent teamwork and anchoring again there from Sen. Didn't have a cage for himself to be able to play inside of, but has a smoke there from a teammate. Somebody inside the smoke that he can spam off. Just really solid setup. Beautiful little team plays happening all over the place for Sen on this map. They've refined it so well. मरा भी नहीं हो बंदे भी वही आए जो लो थे उसके पास That force smacked of desperation. Down 3 to 11 with only Sheriffs to work with. This one is a GG go next. That's brutal. Really brutal. And the other two maps here are going to be, even if Loud were to win them, very hotly contested. It's not like Loud have a map पिछला राउंड बाय किया था guaranteed to dominate on.
They got a Sisyphus level fight ahead of them, honestly. Uphill battle. Icebox, both of these teams quite favored on their attack side. Sunset, I would give the edge to Sentinels. Yeah. So even if you do win on that second map to extend the series, it looks dire still. Anything can happen. Team like Loud being around the block, they might be down and out right now, but they have that experience to maybe rally themselves here. They need a few more though. Openings not going to be given to them. Defensive setup to Sentinels just a little bit too strong, too well honed. Yeah, everything looks... They've crossed every T, dotted every I. You heard John talk about it too when he said the devil's in the details, right? What makes a team excellent is not just the macro, not just the shooting, but it's all the small things, the little interplays between players, the maximization of, you know, a certain piece of utility, knowing to always smoke this spot or knowing to always throw this nade in this particular way. And on split here, SEN approaching some levels of perfection on this map in the current meta. They are ahead of the game here. True flattening. And it's going to strike fear into the hearts of anybody else, because if you have a perma, you have to let this through. Yeah, playing split against SEN, I mean, almost guarantees. Yeah, Sentinel's going to be taking it. They've only lost it a handful of times. One of them to this team that they're playing against now, Loud, but Sentinel's the kind of team getting knocked by their losses. Re-clearance called here with a flash and a paranoid. Well, good counter good flash. one, yeah, from Kawazine. Yeah, very important counter flash there. SEN are trying to set up plays like this because they have looser weaponry to work with. The two Spectres, the Bulldog. Heal up, squad. Here. So we get to see a slightly more aggressive version of their setup. So goes the ebb and flow of the map. But there are still chances for SEN to win this round and just dominate with the same scoreline that they did. Flash, rifle, bloody hell, that's a lot of damage in the retreat. Covered and watched for. Celsius just swinging wide, a bit of run and gun in the reaction. Called now from Loud. Into the site, will they be able to get the plant down? Looks like एक तो मुझे ये breach समझ नहीं आ रहा, breach There isn't very much retake utility here for SEN. ले नहीं पा रहे हैं लोग breach का फायदा एक तो उसके कारण QC के कारण. Waiting for the right timings. I mean, the smoke up. 1 second here for Tenz. Going to be using it probably to block off one of the angles. Just jiggling for now. There it is, actually dividing up the site. Paranoia flying with the fault line. Time. Time to tick. A crucial kill. Celsius falling on top heaven. Side control, at least partitioning in it and trying to take it wide. Still with that util online. The aftershock does push him away. A time from John QT, but forcing the fights out into the open. The snake bites, plenty of util here. So Loud, really well played into that one. Just understanding how to play that. And it's officially now a closer game than it was during the grand final. Where SEN won 13-3. But man, it doesn't feel much closer. No. I mean, this round almost I'd say a givey, but it was a bonus. It was a bonus, you know. Yeah, SEN didn't have as much util available to them, but still, you know, Loud. One round at a time, it's all the way, you got to take it. Yeah, and we've seen them pull off big comebacks before. And we've seen them lose leads before as well, but listen, we won't talk about that one. We won't talk about it. We'll mention it a few times. Look at the timing there, just beautiful. Great read that Les was going to go for an aggro lurk. Les dropped. I mean, this is your star player. This is a guy you're expecting to put up next map massive numbers. GG go next. Offset that mechanical advantage that a team like Sentinels might have with players like Second, like Tenz. The desk was talking about it. When he's shut down here, your chances begin to dwindle. In their face, there's no protocols at all to really deal with that one. Should have known it was there, surely, if they were walking all the way up. TP forwards, it is just being toppled and crumbled. All the opportunities in this round here for Loud. QCK with a nade does get the one onto Celsius. I mean, this spike is down in such an open position, though. It sends to close out. And Sadak, it's inevitable, yeah, the double face in the air. That is one of the most one-sided maps we've seen. Two of our top teams here in playoffs. But Sentinels are primed and ready. This is a team angry. They want to go deep, they want to go forwards. They know they've had obstacles, they know it's been tough for them. But that was just a dismantling of the opening map. I don't know whether Sentinels have, been talking to EDG and told them they'd get revenge, but they just stomped Loud in the same way that Loud stomped EDG. Absolutely impeccable work. We'll send it to a quick break on the other side of things. Plenty more action where that came from.
Excuse me, would you mind taking a picture of us? Oh, no problem. Thanks. Ooh, yes, problem. You need Verizon. Trade in that old thing and get a new iPhone 15 Pro with tons दिव्यम of भाई storage. प्रसाद So you पार्सल can तो take करवा all the सकते हो आप, pics. लेकिन मैं तो घर जा रहा हूँ अभी। Selfies. A preposterous amount of panels. चाहिए प्रसाद मुझे, चलो अब इस बात पे तो And as many प्रसाद तो चाहिए, portraits of लेकिन me as your heart desires. How about none? घर जा रहा हूँ मैं। घर कराओगी क्या पार्सल? घर में तो मुझे लगता नहीं वो आएगा कब, पता नहीं। फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा तब वो घर पहुँचेगा। आओ भाई एक डीएम ही खेल लूँ तब तक। टीम में 2-4 बंदे मार के खुश होगा। लाउड बोले तो कुछ नहीं करेंगे। अरे दिव्यम भाई आए क्या चैट में? हाँ हाँ। कैसे हो रेनामीन? तो नया माउस लिया तो फुल कब मतलब घर तो मैं जा रहा हूँ परसों। मैं जो 2 राउंड हारने के बाद लोग ओडियन करना क्यों शुरू करते हैं? अरे अभिनव भाई आ गए। बढ़िया क्यूटी, आप सुनाओ आयु। मैं तो चल रहा हूँ बस, पता नहीं कैसे ही। आयु भी क्यूटी है क्या भाई? नहीं यार, मैं कहाँ क्यूटी हूँ। छोटे बालों में तो डेंजरस लगता हूँ मैं। एक बार पता है वेजी भाई? पता है। तो फिर क्या ही बताना। आयु वेटिंग की वेजी भाई पूछ लें एक बार, चल ठीक है बता दे। क्यूटी तो मैं हूँ, अनोनिमस सस गाय। मुझे नहीं लगता आप क्यूटी हो। यहाँ पर सिर्फ एक क्यूटी है, वो है दिव्यम भाई। जॉन क्यूटी। दिव्यम भाई को क्यूटी बोल रहा था। भाई मैं तो सबको बोल रहा था कि लाउड कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट सेन। आपके साथ कौन है डीसी में? मैं ही हूँ, खुद से बात कर लूँ। खुद से बात कर रहा हूँ, ये अच्छा था गुरु। दिन भर करे बातें हम, फिर भी लगे गानों से याद आया, गाने सुनते हैं। Match found. तू आसमां है, पास है तू, पर कहाँ है? जिद मेरी तू नहीं, मेरी आदत है तू। I love you. Death match. Warm up. टेलर वर्सेस ली 1924 का केस। बैडमिंटन? नहीं केस वकालत। कौन है टेलर? टेलर एक बंदा था जिसके जो लैंडलॉर्ड था, और वो पे नहीं कर मतलब उसका जो बंदा है ली जो है वो पे नहीं कर रहा था वो बंदे को, तो उसने उसको केस फाइल कर दिया। असाइनमेंट लिख रहा हूँ ना मैं। अच्छा आपको क्या लगा? ना क्या बोल रहा है भाई? रोटी निकाल रहा था तल्ला। जगह चले जाएं हम उस जगह से, इसको ले नदी नदी में दस्तूर। राइट देयर।
ये वेगीबॉय को ओपसी लाउड दे साले आने में रोको। He says their bullets tickle. मैं क्यूट नहीं हूँ, नहीं हूँ, आप खुद से बात कर रहा हूँ। हाँ। ये सलमान भाई की मूवीज में और ऐसे गाने क्यों नहीं आते? तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है? Right there. See ya. I'm good for 3. क्या कर रहे हैं लोग? Got 4. अच्छा ये तो पहली मैच का है। इतना बबम बबम कर देते ना, साला सुना ही नहीं देता बंदा कौन आ रहा है कौन नहीं। डेथ मैच में। हाँ। अरे हाँ हाँ, अरे बाप रे। नहीं एफ के हैं भाई। आईसो की तो मूवमेंट करना है। Sit down. गाना सजेस्ट करो भाई कोई। Creature killer's dead. I'm good for 3. Got 4. Dominating. Creature killer's dead. क्राउच कर देता बंदा। हाँ ये I'm good. फुल ट्राई हार्ड कर दिया मैंने डीएम में अभी। Sorry, coach. I'm good for 3. 5 kills remaining. अरे बाप रे। पाऊंगी ले लेके आया पानी, उन्होंने कहा आप पी लें, आप जन्नत। ही भाई ऐसे करना पड़ता है। अपने आप बजने लगा। झूठ मत बोलो। सही।
One kill remaining. Creature killer's dead. Next time we're taking. बताओ कौन सा गाना लगाऊं? क्या पूछो? बताओ ना आप. पी को पूछ रहा हूँ. लिखो इसमें वेजीबाई सॉन्ग्स. डिवाइन मेरा भाई आ गया. छी भाई, पूरी प्लेलिस्ट ही घटिया आई होगी. डिवाइन सुन के मुझे अच्छा लगा, फिर मेरा भाई सुन के मुझे उतना ही ना अच्छा लगा फिर. मैंने लिखा वेजीबाई सॉन्ग्स तो उसमें डिवाइन का मेरा भाई आया. क्रिटिकल P1 इश्यूज छोड़ के नहीं आ सकता, ठीक किया ना. ईशान भाई सिंगल ही रहोगे आप, रहने दो. Guys, by the way, this looks good on my profile, no? I mean my Valo account. एक सेकंड, let me see. Let me see. Enough to make a grown man happy. Grown पता नहीं, but हाँ भाई, मैं कॉलेज में हूँ ईशान भाई. Damn. थोड़ा सा प्यार और अटेंशन तो मैं भी डिजर्व करता हूँ. 110 दिन सपोर्ट करो, एक बार क्यूट बोल दो ना. नहीं, स्वीटी से बोलवा अब क्यूट. Match found. चालू हो गया, मैच चालू हो गया. अरे यार, इतनी जल्दी लाउड की हार क्यों देखनी है? थोड़ा सा डिले कर. ओ, मैप चालू हो गया है. तो मैच नहीं बोलते इसको भाई, मैप चालू हो गया है. So just gamble in the wrong way here. Sadak. Flash through. Secure jet. नसीब भाई, नसीब. Just rips away to it and frenzy in his hands. Deathmatch. उसको आइडिया है शायद एक सीटी है. अरे Fading away but second still. आराम से आओ रे, अभी प्लांट हुआ है. 5v3 है अभी. जेकन इसको भी निकाल देगा. Dodged. अच्छा 2v4 है, एक पहले ही मर गया. Last second to recross back playing together now. They've got 4 players to deal with. Make it 3. Can't let this one slip now, Loud. Tenz 1 HP. It's good for the damage. Tenz gonna be forced out wide. Tenz. अरे रे हो गया मेरा हो गया. इस दुनिया से मेरा हो गया भाई. मेरा हो गया इस दुनिया से. Sadak push forward. That's a 2v4. मेरा हो गया. The मेरा हो गया इस दुनिया से भाई. Sadak there to give Sadak 2 kills was about the only way that SEN could have messed up what was happening. Not that it's their fault. They didn't know where exactly he was positioned. But for Tenz to recover that, he's forced to take that duel there as he crosses back. He's on the sidelines. Yeah, he's forced to take fights because of their utility, because of how they're positioned. Who are they peeking? Who are they peeking? Give it to him, man. Oh my god. I mean, the players on Loud are so talented, and Tenz is just owning them. Yeah, man, return to form. His form has been spectacular in basically all of this year. Yeah. आजकल टेंस भी वो सिनाट्रा वाली उसमें बात करने लगा है, एक्सेंट में. Kills from him have been unbelievable sometimes. When he's not forced to be the entry player, to have all of that extra mental bandwidth being taxed. समझ रहे हो ना कैसा? Player's going to be dropping plan online here for Sassy. Now look at this high tide. It's not going to have an influence in this round, but I do like how Loud are using it. They throw it out from 2Es when he's playing over towards Snowman, and it's going to let them play between the Viper wall and the high tide to break the wingman, to deny the plant, to fight more aggressively. I think that could be crucial once we get onto some of the rifle rounds, but there is no danger here. SEN have just taken a very clean B exec. Yeah. And to be honest with you, Tenz, he should be trying to hunt. Yeah, you see him swap the weapon. Yeah. Offloading it, an exchange there. Does want to go hunting. 2 years. Who are they picking? Who are you picking? Who are you picking? One step closer. That's what matters. It's a fairly important denial, though. If Tenz had access to that ult at the start of the round, things would get quite difficult for Loud. The attack side on Icebox can be very potent. And the thing is, Loud's composition doesn't actually have great ways of disrupting you when you go for that. It doesn't have the ability to, you know, flash re-peek from yellow or on pipes on A, that kind of thing, which teams like Gen G have done so much work integrating those micro plays on the defense. A little bit of proactive fighting over. Yeah, and I think that's one of the reasons why we saw the attack side be so good for both of these teams, is that SEN hadn't really built out those defensive plays, and Loud's comp
it kind of relies on playing retake, which is easier to deny. Bounce तो है. So the purpose of that Dizzy is just to spot if a player is aggressive up through B, but the अरे वो टेंस को इसलिए भेजा था हंट करने क्योंकि वो उसकी अल्ट से क्लोज है ना, इसलिए वो स्पेक्टर लेके गया था, बस रिस्क ले रहे थे छोटी सी. एक किल मिल जाता तो उसकी अल्ट अभी आ भी गई Not होती. really an opportunity here for Tenz to be able to get the ult online, I don't think. Instead, looking more like a standard A exec. Now, Tenz is getting in position for this flash Dizzy combo that Gen G were using. It's so good. Yeah, choose to break it. You're going to be staying right into the sun. The flash goes off plan. Now here for Sassy. Util a little bit delayed. So yep, it's down, close to the quarters. Down underneath rafters. Kawazin wins his one out versus second. वो तो उसका guardian थी इसलिए. And Tenz is starting to use his ult now for this. Making sure that they can't use any of that post plan. Util keen and eager to take the fight. He's ripped Kawazin's head clean off. Over the top of the ropes, this is a real dangerous situation. Scenario flash, peek. The rest of his team sets them up, but no real casualties. Now QCK finally, abilities back online. Dash, backing away, gets the one. Needs to clear the corner here, but he's just really struggling. Waiting out wide here. Having a defuse from Sadek, pushed back and away. And a wide tip tap and a face there from the Loud players remaining just in time. 2.5 सेकंड ही बचे थे, इतना टाइम तो उन्होंने Very बाय nice कर ही लिया. patience there from Loud. Didn't get caught by the flash re-clear, but I can see that SEN are starting to add more stuff into their playbook. I mean, that flash Dizzy combo is so good. The pathing that the Dizzy takes and the way that the flash pops catches so much of the area. And Loud had to wait a long time to get their high tide and the cove back online, and then played with each other really well to stop some of this momentum from SEN. Calm the mollies. We really need to calm the mollies. Okay, there we go. Calm the Looking what? for a readjustment early. And these players are smart. They understand what the issues are. Kaplan's talking Calm about it so the much. what? Potential off the charts here, but clear understanding of what is really going wrong for them. Knife not broken. अच्छा गाली दे सकते हैं क्या यहाँ पे? Yeah, that's going to create a serious threat though. See how 2E's is using his high tide to make कौन it से difficult record for होते हैं SEN to ना? clear out that area, unless he's pushing up on the other wing of the map. He's going walkabouts. Overstep himself, waiting for the high tide to now fade. So he's going to be using again. Flash Dizzy, dash forwards from Zekken. Make sure to clear all that space. If somebody was holding that aggressively, it would have been mince meat. But now, once they've gained control of B main, what's going to be the call? Maybe to go back into Zelsis? Yeah, I mean, they either needed to hit B quickly there or go back over towards A, because if they wait enough time for 2E's high tide to come back, which it now is, it's much more difficult to get the plan down and get Sassy his ult. Drone is going to confirm. I think that a lot of these players have left the area. Does it catch? Oh, yeah, just onto Zekken. Zekken looking like the fox in the pen, but with him notified now, he's really just caught. He is, but he's going to be distracting and pulling people away for quite a while. He's got 3 on him. Here we go. Coming through there. Dizzy firing a blind shot off, but it actually didn't trigger onto Les. Nano Swarm. That's so much damage. My God, yeah. Tenz lucky to be alive, facing top rafters Sadak. Taken out cleanly. Now Tenz is going to be playing a 4 position here because he is so low. Might be able to get a 1 and done. And Sassy, with that ult plant, Wingman got the Thrash online. Need somebody to break that down for him though, and there wasn't anybody really waiting available, but still, like you said, the Thrash is now online. Sassy lets it loose, the movement clean, jiggling with it. Entertainment not quite online here. Now a bit of pace injected back into the thing. See it Loud using that util. All available for them, but it's a crossfire setup of Sentinels and they punish that swing and wide face out. Great with the movement and patience with the aim. Cooling down the weaponry enough to take out QCK. Over on the top of the rope, Zelsis, he's hungry for this kill. He's hungry for it. Building up towards it, but okay, Les just a better player on the day. But a sad situation for him to be in. He was the player pushed the furthest forward on A, last to fall. Everybody crumbling around him. I just want to go back a little bit to their communication from the previous round. SEN were coming, or Zekken specifically was saying, calm the mollies. And the reason that's so important in this composition is because players need to be able to hide. Players need to be able to hide and not have to face and break cove and fight while the mollies are online. मैं अगर वहाँ बैठा हूँ तो मेरी तो गाली निकल जाए. If the spike is safe. And so getting that timing correct is really important against what Loud have. मतलब money here. QCK अगर कभी जीवन में VCT खेलने गया तो have to do, and it will. Sassy
वापस बोला, ये कुछ बोल रहा था क्या? हाँ कुछ नहीं, सरकास्टिक वे में पूछ रहे हैं या इतना समझदार तो तू है ही। अगले जन्म में पहुंच जाऊंगा VCT। I will be a VCT player। फ्री फायर के esports भी होते हैं क्या? हाँ भाई होते हैं। उसमें खेला है तू? हाँ क्या खेला था? उसमें एजेंट्स नहीं होते ना, उसमें बस मारना अरे पीटना कौन सी होता है। टूर्नामेंट खेला था पूछ रहा हूँ तो। अरे यार उसके उसी के होते हैं ना मेजर टूर्नामेंट्स, उसी में 2 बार खेला था मैं। कौन सा मेजर? इंटरनेशनल टूर्नामेंट? इंटरनेशनल नहीं, बड़ी बड़ी टीम्स खेलती हैं, जैसे वो टोटल गेमिंग वाली टीम खेली थी उसमें, और अनग्रेजुएटेड गेमर वाली खेली थी। ये कौन है? हैं 2-4 उसी के यूट्यूबर्स हैं, फ्री फायर के ही हैं। उन लोगों की अलग अलग esports टीम्स हैं, उसमें खेला था मैं अपनी टीम के साथ। फ्री फायर मेजर इंटरनेशनल टीम नहीं है पर मेजर बोल दिया उसको। मेरा एक दोस्त है वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला है। मैं गरीब हूँ, मैं अच्छा नहीं खेलता। फ्री फायर में भी मैंने ग्रैंड मास्टर करके छोड़ दिया था क्योंकि वो फिर पेड टू विन गेम हो गया है। चेस है क्या? हाँ चेस की बात कर रहा है कि फ्री फायर की? इसमें ग्रैंड मास्टर भी देते हैं? हाँ फ्री फायर में ग्रैंड मास्टर एक वो है। चलो स्ट्रीम लाइक कर दो। फ्री फायर में ग्रैंड मास्टर इज रेडिएंट इन वैलोरेंट। ओहो मैंने खेला, वो करके छोड़ दिया क्योंकि फिर उसके बाद उसमें बार बार स्किन्स खरीदनी पड़ती हैं ताकि आप अच्छा खेल पाओ। अलग अलग स्किन की अलग अलग पावर्स होती हैं, डैमेज ज़्यादा होता है किसी का रिकॉइल ज़्यादा होता है। बहुत गंदा गेम हो गया था, मैंने छोड़ दिया। गंदा हो गया था मतलब? मतलब मस्ती कर रहा है, मैंने तो खेली नहीं आज तक। मुझे भी नहीं पसंद। He's looked fairly good in the games of Icebox that they've played, despite people doubting his jet ability. And the other big takeaway, I think, from that is trying to look for mid-round information so your stacks are correct. Maybe might see some. अभिनव भाई आप क्या बोल रहे हो? इमॉर्टल हूँ मैं। Said just trying to gather, gain some of that mid-round information, but comp isn't really too suited for it. I mean, you've only got the Sova as your initiator. मैंने भी Valorant Majors You really have to do it by pushing into areas. And again, you don't really have the ability to flash re-clear spots on defense, so it can be very tough. You kind of have to double up, triple up, walk areas. That's got its own danger. So both teams on opposite sides of the map here to start this next round. 4 players grouped up on defense on A, just pushing QCK into an aggressive angle. Excellent for him. Yeah, but I mean, SEN are nowhere near. Still, he's going to be telling his team to over-rotate. Get your asses into mid, get your asses into gear, because it's leaning over towards a B hit. Yeah, and Loud have actually finessed this. Lovely. I mean, they've managed to get into a position where SEN weren't comfortable going for the early round timing, and now Loud have stacked it for the mid-round timing. And on top of that, QCK's watching in case things rotate back towards A. मुझे पता फाइनल फिर से दिख रहा है। GNG versus PRX. Oh, maybe just catching. Optimistic हो रहा हूँ ना ज़्यादा। I think they've got all the info they need though. Yeah, they have. QCK pushed up like this. Look at it, just top of the stack. Already protocols in Okay, play. sir. Rolling forward, Zekin just tanks it. Half his HP just removed, but they weren't expecting it. Still, Loud with all the kills. 2 versus 3. Sassy almost being taken out. Has to back his way to safety here. Fast flank of QCK. Might be causing some issues a little bit later. भाई उसने तो watch this कर दिया। He's going to be notifying his presence at least with. जल्दी आओ भाई, कितना उसको टाइम दोगे? He's hoping that forces them out wide. Don't know if they took a glimpse of that one. Still 10 HP. Leave it just to Zelsis. Kova. There's no real chances here. There's no real chances. Maybe. Thank God. Watch this. But no. Full stick there from Sadak. I Watch this. think Loud's defense on B looks way Watch better than their this. defense on A. Personally. Conqueror कितने? मैं क्लासिक वाले से खेलता ही नहीं था ईशान भाई। Scrim I only. think Loud's protocols for dealing with B hits like this are actually real nice.
उसमें भी उतनी बारी क्लासिक खेलता जितनी देर स्ट्रीम करनी होती थी। रैंक पुश का भी सपना रहा ही नहीं भाई मेरा, ये काउंटर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, दो चीजें। I think SEN should be quite cautious if they're sending B hits over and over and over. The A side of the map does look more of a weakness. लॉर्ड वाले वॉल, हाँ ये लास्ट मैप में भी, लास्ट टाइम भी जब आइस बॉक्स में था तो इन लोगों ने वॉल गंदी करी थी। And SEN are going to have opportunities then to fight aggressive in the post plant to stop Loud. हार्बर वॉल याद आया वैसे भाई लास्ट मैच जब अपन मालूम है वॉल के चक्कर में तो राउंड हार गए थे। Right, split from SEN is perfection, but not every map is up to that kind of caliber. And Loud are finding those ways of stopping SEN going for these hits. Now they've knocked the economy in the other direction. मैं नहीं बताया था राउंड वॉल के जो राउंड हारे और मेरे को वापस बता दो। अरे सर आप ही तो गोट हो, गोटेस्ट ऑफ गोट, and then they just dominated. बेस्ट गप्पे चौधर, बेस्ट गोटे। तुझे कैसे पता? Down to it. A couple of decisions to be made here because they do have money for. मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऐसा अंधा तीर छोड़ रहा हूँ। अभिनव भाई से पूछो। Should have money to spare. It goes poorly. Sorry अभिनव भाई, तोड़ना नहीं चाह रहा था। We're probably not going to be seeing signs of it just yet, not in this round with the weaker guns, but you know SEN might start playing towards somebody orbs, try and earn up some big ults. Celsius will probably earn his after he goes down to a player. And look at Loud setting up the same kind of thing. 4 players A at the beginning to post up some. Oh, QCK messed that up actually. Yeah, I mean I was going to say to post somebody up really deep so they have good information, and yet that 4-player stack now just has to kind of chill and reset. But SEN are not going for anything too aggressive at the beginning of the round. They're worried. As soon as 2Es puts up this high tide, it makes it feel like there's many players ready to fight B. Even though we can see it was only 2Es at home. One dizzy clearing away, Sassy. प्लांट अगर कर देना राउंड गया देख लेना। Being broken, Loud. गया राउंड। Should have the protocols for this, but still Zekken with Knives is a very dangerous target. Tagged up by the drone, has to respect it now, has to back away. Celsius. भगवान का नसीब एक किल मिल गया। Section of the map, the other side of things, still with that. अरे बहुत बढ़िया। They're pitting. They are going to be pitting, committing into this one. This is interesting. I mean, even though the money is a little bit wild still, now the lockdown being invested. अरे लॉकडाउन का है। Absolutely crazy stuff still. Feeling like it's necessary now. John QT getting into this spot and this position on top of it. Can't break it down, so detained and dealt with. Oh. Big committed with the ultimates here. मुझे लगा तोड़ दिया। Loud, win it out. 4 players surviving. तोड़ने से भी राउंड नहीं जीतता। Both ults that were used there. क्योंकि सेकंड तो निकल ही गया ना, 4 मिलके तो मार ही देते उसको। इतना फायर करा था उसके पोजीशन पता ही लगती थी। The problem is the kills came through so अच्छा इसको लर्क पे पकड़ा था क्या? बहुत बढ़िया भाई। I think John didn't quite realize that he was in such a player disadvantaged situation when he decided to pit. And likewise with Sadak just decided to set इधर पास कर दो सर। sure that they get the streak Red Bull दे दो। So now we go into a rifle round. Celsius ultimate super powerful. Yes, They can get आपको onto pipes. आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो आप? मैं भी नहीं पीता भाई, मेरे को तो पसंद ही नहीं। Very heavy emphasis and presence सोडा ही being नहीं shown पसंद by मुझे। SEN. Sassy. Thrash movement. Looking to lead. Looking to clear out the side as well for the rest of his team. Look at that, skipping and hopping over around the side. How is it? He's been caught. Do they want to dive and dash onto this one? Now Sadak is his bodyguard. उस पे अल्टी है भाई। अरे लेस, अरे मुझे एंजाइटी हो रही है। Yeah, it's a wallbang angle with a hit drop down on top of it. Lockdown though should push him out of position. कवर में है वैसे, मतलब उसी का पेटी है। अच्छा लेस ने अल्टी करी ना अभी तो। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। He's wrapped all the way behind him, and yeah, he will get detained just so that this pit stays up, but he's spammed onto the top right of this position. अरे अरे अरे। अच्छा वो अरे नहीं। Celsius cleans that one up, so no gaps now left into the play. ने अल्टी भी कर दी। Offload it. Really just going to be utilized to try and push at these players from Loud into these forward positions. They have managed to even it up ever so slightly. निकल सकता है अभी भी। अगर हाफ पूरा डिफ्यूज करने मिल जाएगा इसमें बहुत मॉलीज होंगी यार अभी तो। Now stacking up all together. अरे 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 तीनों ही एजेंट मॉली वाले हैं। नंगा कर दिया। Players realize it. They're the ones who have to make the moves forwards. Kawazine. Oh my God! What a retake! That is just disgusting. That looked like a checkmate situation. वेजी भाई को ऑर्गेज़म आते हुए। लेजेंड ऑर्गेज़म भाई। Crossfire from 3 different areas. The way it was set up. There's no way. And yet through the high tide through. मैंने बोला ना निकल सकता है। The hero from out निकाला है भाई। Kawazine my boy.
This time putting rounds Ah, on तोड़ the दे board. टेबल तोड़ दे. Yeah, Kaplan's going to be annoyed about that, but I don't really think that SEN misplayed it too much. जॉन क्यूटी बाय किया था. क्यों किया था? बाय क्यों किया था? उसके पास पैसे थे नेक्स्ट राउंड के इसलिए. Sometimes it be like that. Loud. Only creeping forwards with this lead here. Yeah, look at how mobile they are with QCK's positioning. Yes! Another one. That's excellent. Yeah, okay. They played him over towards A. Last round he walked down Tube, but this time he's over towards B. So difficult to predict. Middle over to no command. Plant. Oh, hello. Counter spam. पाउजिंग भाई ज़्यादा हो गया थोड़ा. Still have to worry about this. एक ले ले, एक ले ले, एक ले ले. That was actually through mid. दो ले ले. Ah, yeah. Ace. Now, plenty of time and space brought for the rest of these loud boys to really get into the action. Auxiliaries are here. Wide face by Zelz is traded. Drop down. And John Q nice, again, good. isolated in this 1 versus 2 position. चार बुलेट reload कर दिया. The reload surely going to be heard, and yes, Les is very quick onto the angle. Shot. What a round from QCK. Very similar to the Thrifty that got them started on this map. Takes an early angle, hits the shot, and then he's there to कैसे हो तात्या भाई? अरे चैती है क्या? Hello चैती, what's up? Really get the gears going. I was talking about the attack side for both of these teams being good, but I mean, so far it's clearly Loud are the ones who have stepped up. ओए होए होए, ये 2-3 राउंड जो निकले मुझे सुकून मिला है. Disgusting shot. QCK with his op. मेरी रूह को शांति मिल गई भाई. Barely tagging onto him. मेरी रूह का परिंदा. उसके पहले फड़फड़ा ही रहा था भाई पिछले मैच में तो. Which is QCK's op, and now they've given it to Coenzine. Just to mix it up. If QCK gets spotted now, still he's rattled off the shots. Ended up using the dash. भाई लेस तो सोलो पुश करके मार आया भाई, मां कसम. लेस माय गॉड. He did in the pistol round. I mean, he went for this aggressive push on that. अरे लेस माय गॉड यार, प्लीज ब्रिंग दिस बैक गाइस. Let's bro, let's go. What a beautiful. और ले ले please. Coenzine and Les as well. We're bringing this back. Yes sir. Oh my god, everything is going in our favor now. Let's go. ऐसा ही फील हो रहा था मुझे पिछले मैच लाउड के लिए. Every fight, every timing in their favor. Let's go. थोड़ा सा लक तो चाहिए भाई गेम जीतने के लिए, लक तो चाहिए. जिधर मुंडी घुमाओ उधर ही बंदा पीठ दिखा के खड़ा हो. Let's go. Flawless. सासी भाई को पता ही नहीं है. ऐसा ही होना चाहिए. Who are you picking, bro? Who are you picking? You are picking Les? Les will like shout Les. Who are you picking? भाई लेस के जैसा एम दे दे भगवान यार. 150 रुपए चढ़ाऊंगा बंदे को. नहीं ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि अपन को क्या पता चले लेस के जैसा एम हो गया अपना नहीं हुआ है, फिर अपन वो 150 रुपए चढ़ाने भूल गए तो कैंसिल डील कैंसिल. भगवान अभी चढ़ा देता हूँ, आप कर देना. एडवांस ये लो एडवांस. भगवान को ब्राइब कर रहा, शर्म नहीं आ रही है. सिस्टम को ही ब्राइब कर दिया भाई. Get Tenz up over on 2 pipes where he's got that flash angle. Turret broken in mid. अरे डिटेन नहीं होना था. बस यही इंसान बचा सकता है इनको, और कुछ नहीं कर सकते. थोड़ी अजल भाई मैं थोड़ा सा वो एक्साइटेड हो रही है. बैठो डिफ्यूज. उन पे सोवा भी नहीं है वैसे भी. अरे और डाला है उसने, बैठो ना. अरे चलेगा. अरे जेल्सिस 2 कैसे ले गया? ले भाई जी भाई. वो टाइमिंग वाला बस हो गया, किस्मत पूरी खत्म कर दी 1-2-3 राउंड में. Over and around, spotted, 1, Sassy dropped, Sadak now, but time surely working against in the jump spot, the jiggle, John QT, trying to gamble and dice with Dev himself here, all the way through, that! यार जेल्सिस 2 कैसे ले सकता है? सिफल 1 HP होके भी 2 ले गया. सिफजीत वेलकम टू द स्ट्रीम. To his situation on split where we saw him play against Coenzine and Les. चलो ठीक है. एक राउंड पर. But I do think overall SEN are giving Loud way too much space in these post plans. अच्छा वो लो था क्राउजीन. तो तीसरा खेल तो समझ आता है, उसने टाइमिंग से निकाला. हाँ पर अरे उसको उसने उस पे एम नहीं था ना. Most teams when they play against the Harbor Viper
They're trying to get aggressive in post-plant situations and stop them before they get into retake spots. Who are you picking? Instead of backing off and trying to play post-plant utility. But हक दिया flash, Tenz भाई ने flash हक दिया. It's looking good. Double orb. QCK and Cowan seen. Kidding me. You are kidding me. Les getting one here. Top of the rafters. QCK is obviously on the other side of the map, just trying to lock down at B angle, but the इधर lockdown jet होना चाहिए था यार. अभी ये वो ज़्यादा देर hold नहीं कर पाएगा ना. Dash तो है नहीं उसके. Another problem with this composition, you have no way of dealing with the lockdown. You don't have molly lineups. Backing out no detainment. पिछले राउंड यार उसने अल्ट भी यूज की थी यार हार्बर ने जबकि. अरे रे मेरा क्वाउजीन क्यों? अरे डबल किल दे दिया. अरे जॉन अरे भाई 7-5 कर दिया यार ये तो. एस कर ही दे यार ये सब. With him toppling ace on the cars, the crowd wants it. The people are chanting. QCK spotted out wide. Will his team give him anything? Not quite. Still, around earned, around gained. इको नहीं हारना था बस. अरे यार वो गलत राउंड दे दिया यार 2 इसके अंत के बाद. And round 11, round 12, the player to salvage it is अरे मटके में लग गई बुलेट ऊपर हेड पे यार. और ये रोप पे भी चलो वो लो था पर वो बुलेट लग भी गई उसको. बोला ना सारी किस्मत गई. सिनेमा हेलो क्रिश और बजो वेजी भाई. अरे वैसे भी हारना ही अलाउड है. 2-4 राउंड बजने मिला था बज लिया. Masters Madrid is awesome. I mean, I'm really cheering for Loud. I arrived 2 days ago and I'm enjoying the city. Of course, right? And how do you feel about this rematch? What are you expecting from Loud? Sentinels is a very strong team. They beat us on VCT Americas, so I'm hoping for a really close match. We weren't able to show our game on the first map, but we are trying our best on the second one. Of course, excited for that comeback. Now, what's this I hear that you bought every single VCT bundle? Is that correct? Yes, is that true? Oh my gosh. Okay, now I have to ask you, what's your top 3 and you can't say Loud? Okay, I really like Talon, G2, and also Leviathan. Cloud9 one. Oh, okay. That's a healthy representation. I like those picks. Now, last but not least, can you give a quick shout out to the fans? Maybe get them to buy some Loud bundles. How about that? Yeah, sure. First of all, buy Loud bundle, and thank you guys for cheering for Loud. It's a close match. We are top 4. Last Masters we weren't really great, but I hope this one we can get the title. Hello Arsh bhai. Heard it from Cariano. I guess you are supporting Loud here, obviously. कैमरा डाल जाट. डरा क्यों रहे हो भाई? Man. I mean, I will say about Loud, they do have one of the only proper green bundles, if you like the color green. So they got that going for them. Yeah, if you're a fan of green, any eco-friendly people out there? क्या बात कर रहे हैं भाई ये लोग कास्टर्स? भाई ये लोग क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं सुन नहीं पाया. अरे बाप रे ये लोग क्या बोल रहे हैं भाई? माँ कसम. क्या बोला मैं सुन नहीं पाया. अरे क्या बोला बताओ ना. मैं रिपीट नहीं करूंगा भाई. YouTube पे जाके पीछे करके देख या तो मेरी स्ट्रीम पीछे करके सुन ले. He's picked up a sheriff. Loud are one of the teams that buy sheriffs the most in these pistol situations. Often there's 2 players on the team with them. Trying to take those long range fights, Celsius. Espanol में खुल गया भाई ये तो. Dicing with death, but with that jiggle, always a chance, isn't it, that it goes poorly. He's going to be backing his way up to kitchen. The reclear here from Sassy and Zekken. They had a cascade in their face early on, and now they've realized that was fake pressure. A good gamble to take. And they've got a little bait and switch set up here. Kind of blocked by the wall, though. Yeah, I mean, there's not going to be any swings coming out for here. Sassy needs to get one, but yeah, like I said, no trade in sight. Zekken, dash, activated. That's just wasted. He was expecting समझ आई? towards that. Sadak's. अरे एक बार बोल दे ठीक है. उसने पूरी कमेंट्री कर दी भाई उसी बात पे. Yeah, I mean, Zekken's already recleared this area once in a round. Ready for it. Zekken's now going to be वो लोग Zekken के पुश का वेट कर रहे हैं बस. अब प्लीज उसको चेक कर लेना वहाँ पे यार. Pryor is gone. Loud. What do they have to clear this one? Bodies might do it. Surely Ghost moment. Not getting away with too much more still. 1 for 1. Drop down. Celsius taking up space back towards the backside of Yellow.
I need some supportive util though, and Tenz is the one holding it. So flash, repeat timing, needs it now, needs help right now, and he's got it. The follow through from the rest of them. Those reinforcements, Jones, and peek, less. He's taking them all out. 7 seconds remaining. Molly has to stick it through here for Sadak with that plan. It's the only way he goes down to it. And it leaves it just up to less. 1 versus 1. Viper versus Viper. They should know that less is this week. Yeah, they do know. They obviously know. This Sentinels Classic could do work here. फिर क्लासिक के बाद चोट दी भाई. To the test. Lot to clear though for John QT. Thankfully, he's got a bit of time on his side. Contacting, spots it. That's now going to be dropping. Orb propped up. How does John choose to play it? Here's those shots. Spots it out on the right-click business. Done and dusted. Wipe your hands of that one. Pistol round here for Sentinels. Did not look good for them in the beginning of this round. Not. And Celsius has pulled it back with some great supportive utility coming through from Tenz. SEN really abusing the slower pace of Loud there. Loud had multiple opportunities in the round where they could have gone forwards as a team and cleared out a solo player on B. Because they took so long dealing with Zek. यार पूरी मॉली में मर ही गया वो. Also, perfection. Putting pressure on the clock. Shield नहीं थी ना. Took so long First dealing round. with Zek. That allowed Celsius to tuck into yellow. Nice! And like I said, Bren, this is 4 out of 4 pistols, 1 for Sentinels. And this is going to get them back into this map. It's an enormous advantage, especially because it offers you opportunities to keep that momentum going with a bonus. Clear ideas. Very clear ideas. I mean, here, Zekken, Outlaw. Sees the jump. Spots! Just baited out for the shot wide. Nice. Just didn't really realize that he was already pushed up on that left-hand side, so he's earned himself an upgrade. Phantom है. Nobody for Zekken to play off. That's a really bold angle. He was expecting Loud to be playing more slowly. Bulldog भी वाला भी इतने पोस्ट प्लांट यूटिल ले रखते हैं ना ये लोग यार. जैकन को छोड़ के सबके पास ही तो वो है भाई पोस्ट प्लांट की यूटिल. Someone trade him or fall back to A, please. I don't want to risk this now. We need this round, boys. Bike लेना पड़ेगा ना. अच्छा आगे गिर गया. यार प्लीज यार किसी की एक निकाल देना प्लीज यार. किसी के अगर नहीं. They're still going to try and fight over it. There are still opportunities and danger here. भाई वो बेस पे भी एक्सपेक्ट कर रहा है उसको. Tenz is making an enormous wraparound unless it's gone into Snowman. अरे ये गया राउंड यार. Please please मार दे. Timing. Thank God. Lesser finds it. And the gamble. Loud, please, QCK, please expect him. Oh, उसने reload sound दे दी, मम्मी. Close. Quarters again. Cuts it up into the angle. 1 versus 1, but it really should never have been here in the first place. Knife. अरे suppress हो गया. Positioning as the wall fades. The head is collected. That is a crucial one for Tenz to win. What a play! Expect नहीं किया था कि backstab आएगा. Value out of the play that they went for. But for Tenz to go for that flank all the way through mid, wrapping back around quietly the whole time, and not have clock pressure because of John being able to deny the plant, and the spike went walkabouts into Snowman. Could not have gone better, the timing in that round for Tenz. Crazy round. One suppressed. And despite SEN winning, that follow-up round, it was really expensive. Yes, they carried a 1 rifle through, but they're opting to just take a full eco. इस मैप पे गेको काम का है. Yeah. हाँ दो इनिशिएटर उनके पास slowly clear करते हैं, fast execute नहीं करते win the ना. pistol, you expect them to get up the momentum that they have done on every other half that we've watched so far. गेको हर मैप में काम का है भाई अगर आप दूसरे इनिशिएटर के साथ उसको कॉम्बो कर रहे हो. That needs to be dealt with here. What a snap to the side. QCK deleted off the face of the map. It is responded in kind here. Sadak but cheeky there with the peeks over the top here, just trying to play on top of 410, drops down the Nana Swarms, making sure that nobody can play forwards. He does have the spike. Let's get his plan down. Little bit of There is no way now, Loud. Not too bad. Yeah. Love that cove too. You can plant in a number of positions where it's very helpful. अरे वैसे भी इको है राउंड तो घंटा नहीं यार. And Loud are looking to try to 10 by 200 IQ तो अच्छा रोटेशन उसने दे दी जो. You know, fighting on top of 410 with 2Es ready to swing. They got 2 layers to this really. इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि वो लोग रोटेट कर लेते हैं ना यार, क्योंकि उसने मॉली से इतना डिले करा दिया. 2v4 था यार, उनको
back उसको at the टाइम दे site. देना Again, रोटेशन time's of का, the खुद essence. ही रोटेट Nano's कर जाते dead चुपचाप already. पीछे. It's running out wildly. It's not a luxury they have whatsoever. No one's even forcing a tap onto the spike. और वो जॉन क्यूटी स्पैम करता है उसको किल मिल जाता है भाई, जिधर स्पैम करता है उसको किल मिल जाता है. This is just madness. Sadak, what are you getting away with? सड़क को देख रहे हो? Barrel. You can see Sen had no idea there that Sadak could see the spike. I mean, it turns red when it's being diffused. Sadak knows exactly where it's being diffused from. Boom. Headshots. And the fact that Loud were given those kills towards the end, and this has been आप enemy color क्या रखते हो? सब डिफॉल्ट पे, सब में कुछ चेंज नहीं करता. किसी भी गेम में कोई भी सेटिंग नहीं Harbour करता. is excellent for being able to take more aggressive control of a site. You know, if you're Sen here cooking up a game plan, I think you want to be going for like flash reclears to disrupt this before the big execute comes through. सिर्फ अल्ट की बटन Maybe चेंज कर that's what रखी है Sen are बस, और planning कुछ with both of the flash initiators and Zekken playing A. माउस बटन्स पे क्या है? एक पे माइक है, एक पे यूटिलिटी है. Early turret broken. Now Loud regrouping over towards A. And this is where I'd love to see Zekken posted up on pipes and trying to get some kind of flash aggression going. Because I think if you give space to Loud, this execute is going to be difficult to hold on against. Drone going to be heard. One tag down to Sassy, backs him away. Top belts seen and spotted. Dash to get himself out of there. Reckoning now, cleared away through for the rest of Loud to follow. All the way through. Stuns. Not really being respected. I mean, Zekken is just trying to really get the most out of it there, and he is finally punished. So, no command, fast, off the rip. Pushing forward, so they're going to expect this QCK. He's already behind the man. Already behind him. बाप रे बाप. This is some QC के gameplay, bro. This is some gameplay now. Tenz in this case, and Celsius for Nice Celsius. one. 8-9-7. And if we win this round, they are on eco again. Has to be the save. Just has to do some exit damage. Overthinking नहीं करने ज़्यादा चुपचाप. One round at a time. Let's go. Don't give him any kills. No, it doesn't. Absolute cinema. Nice economy. They've got a great माउस पे util है तो fire कहाँ से करते हो? Disruptively enough. Right click से. To play their own tempo, their और scroll से fire करता हूँ. They could never really get a grab on that on split. They were always trying to force fights in mid, and Sen were never letting them. That time, the patience and the slow play really rewarded Sen. And on this map, I feel like they need to be getting a little more up in Loud's face, trying to utilize the strengths of this composition, which are the flashes to go for those mid-round re-clear timings. But when Loud are given space, you see how difficult it was. Though Zekken tried for him to get a timing around the Harbour ult there. And then when Loud is set up in these... QCK doing some duelist shit now. They can shoot, man. They can shoot. जरूरत है पीने की अभी. आप माउस से फायर करते हो क्या? ये बढ़िया था. The buy in this round very similar to round 15. You know, everyone on pistols apart from one player with a rifle. नहीं आयरन भाई. आयरन की कमी है थोड़ी सी. Down. Theory, you're expecting Loud again to just keep striking. भाई 4 बंदे इधर हैं. Danger starts building. Hello. Through the wall just in case. Spot हो जाए बस एक करके. अरे वो सब एक भी स्पॉट नहीं होगा. एक भी स्पॉट नहीं होगा. Probably able to get themselves a plan. चलो वाइपर और जेट तो हो गए. ओहो साड़ा क्या बात है. गन मिल गई इसको. पर सैसी तो क्या ही कर लेगा. ये अच्छा सैसी तो क्या ही कर लेगा. Flawless. Let's go. Now we have Sadak ulti. भाई गेमिंग में मस्ती कर रहे हैं आर्यन भाई यार. And sometimes it can be such flowchart Valorant on this map. Yeah. Because if the defenders can't get in a good position to disrupt what you're doing, आपने गलत कम्युनिटी चूज किया अगर आप नए हो तो. हाँ इधर गलत जगह आ गए हो अगर आप इनोसेंट हो तो. इनोसेंट लोग बेचारे. कोई नहीं थोड़े दिन में आपको ट्रेन कर देंगे फिर आप फिर एक महीने बाद एक और बंदा आएगा जो बोलेगा गेमिंग में नया हो उसकी आप बंड मारना फिर. कमजोर दिल वाले दूर रहे. ये कैसे गाना गा रहे हैं लोग. वो वाली याद आ गई. जिंगल अलाउ की याद आ गई. Shakalaka boom boom. Veggiebuoy is not for beginners. एक दिन एक बंदा चला गया कहता है भाई इधर तो सब ट्रोल करते हैं.
You're thinking from Sentinel's perspective here. कमजोर दिल कमजोर बंड वाले दूर रहे। राहुल भाई तो सबसे पहले आप दूर जाओ। Deal with those. Yeah, might end up being really crucial. इतनी दूर चुके हैं क्या राहुल भाई की? Yeah. And of course, you know, Sadak, he's a good enough IGL that coming out of a timeout like this, he might decide not to use an ult play whatsoever from the strat book. And he might just send it with, like, I don't know, 3 players pushing mid or something. You know, really to just try to mess with what Sen are expecting. Right here. So we're going to see Recon deep with the Cascade to try to push away anybody that might be playing aggressive over towards B, and that is where Zekken's got the Operator. Look at how hard this is for Zekken to get value with the Operator. I mean, he smokes in his face. QCK, he's already pushed up onto the left-hand approach. Yeah. Yeah, it's tough. You can't watch everything at once. The Cascade now over towards A might give Zekken the idea that इसकी हम मारेंगे फिर नहीं मत करो ऋषभ सिन्हा गंदी बातें सिखा रहा है भाई। No, I don't think he was actually. So he's going to be able to get this lockdown off. Spikes dropped down. पटना ये कौन सी आईडी था भाई तू? भाई बीच में एक बंदा कूल बनने लगा था चैट में। सस बजी सस। ये तो गलत लाइन में आ गए। आर्यन भाई यहीं से ट्रेन होके जाओगे। लाइफ की ट्रेनिंग है ये आपकी। बिना ग्रास टच करे ट्रेन हो जाओगे। It's Zekken really, it's on him because the Loud players are now going to be walking and wading right into that Corsair. Thank God. Misses the shot. Now he has to really just use those smokes to evacuate and escape. Oh, safe आ गया बाहर। The eye of Loud. Oh, repeat भी कर लिया क्या बात है? They're going back to A. Sadak's like, guys, there's no one here. Look at this guy, look at the position. You practically expect him to be a defender with this spot. No. Let's go. To it, QCK drops him. Sadak gets one for free. Discipline, oh my God. Oh my God, Sadak, my IGL. Let's go. Easy targets all about. Boundless right now. Turret भी लगाते. Let's go, my IGL listening to me. Let's go, my IGL. Let's go. This is some shit from Loud. Let's go. They're feeling it. They're feeling it, bro. Not unless Zekken's able to get a freebie in a situation like that. It just looks very difficult from Sentinel's perspective for them to get any kind of foothold in a round like this one. So I certainly don't think the round was game planned like that, right? It looked like it was intended to be an A fake. सही बोला वैसे ही caster spitting some facts. All the space in the world. I can't believe it. I mean, how did he get himself up there? ASMR vibes थोड़ा. Hello, Rishabh. Loud खेल के. This is the Loud that I know. Come with them. Veggiebuoy making मेरी सीरीज में जा. सही बोला. भाई फुल तुम्हारी ट्रेनिंग करा के कल से ड्रिल्स दे दूँ क्या तुम्हें? स्पेशल फोर्सेस. आते साथ 4 गाले राहुल भाई को, अभिनव भाई को, वेजी भाई को भी. कल से वो वाला गाना सुनना. लड़ने को तैयार है टंके की एक चोट पे जैसा हर तेरा वार है मंजिल तुझ पे ओ खुदा. भाई जिम में वाला उसके बाद हम होंगे कामयाब. भाई इसको चुप रखो. इसको कौन बोला बीच में बोलने के लिए? अभिनव is now a veteran. Brothers anthem. The fuck. If Sen loses this, I go on a no-5 peak. Let's go, Yokai bhai. That is some sacrifice. Pace change we do fast. No. Purchase around the 2 guns that they have saved. So it's just Guardians online, at least for Zelsis. Presence now towards it. हम क्या कर सकते हैं कि लेस की भी अल्टी आ जाए अराउंड. शायद वो मुझे लग रहा है वो पोस्ट प्लान एक किल करके अल्टी करने का प्लान करता. अभी 2 इसको दिलाइए और क्योंकि ये रैंक मैच तो है नहीं कि बस वाइपर की अल्ट है तो बस घुस जाओ. 1 HP पे कौन है? सॉर्ट ऑफ लिटरली 1 HP है भाई. ये राउंड अगर निकाल दिया ना लाउड ने तो मानूंगा मैं कि लाउड इज बैक, वरना नहीं मानता क्योंकि बिना अल्टी के राउंड निकालना है इन्हें. अब वो तो पिछला राउंड तो केजे अल्ट पे हो गया उनसे फेक. All of this presence over towards B, and Zekken is still worried about a lurker on A. कल कौन सा डे है? क्या लगता है कौन जाएगा फाइनल्स में? अभी ये मैच जीतने में फाइनल्स में नहीं जा रहा कोई. कल एक और ग्रैंड अपर ब्रैकेट का फाइनल जीतोगे तब जाके फाइनल पहुंचोगे. अपर ब्रैकेट में मुझे तो लग रहा है सेन चली जाएगी वैसे, क्योंकि सनसेट है इसके बाद यार. क्वाउजिन यू नीड टू टेक दैट फाइट. यू नीड टू टेक दिस फाइट ब्रो. अदर्स आर लो. मैन एडवांटेज ले लेता ना. अरे भाई इन लोग कितना मॉली पे खेलते हैं.
flicks to the side. Luckily, 2 years still there. Not a reckoning. Drop down with only 12 seconds left. There's no plan on the here. Up and away. Updraft all round. And Sentinels. Wow. They grasp it in the midst of all of that. That's wild. The defense utility, though, was so much better this round than what we've been seeing so far. So Tenz throws a nade lineup as he hears the drone coming through, which allows him to have क्या देख लिया मैंने Veggiebuoy? अरे यार which is sick. Those kind of timings, beautiful. It's also then there's a mosh onto the punt position too. Let's go boys. अब तो मुझे ये मैच ही फंसता हुआ लग रहा है। ये राउंड बहुत भारी पड़ेगा। ये राउंड वो क्लाउजिन का वो विफ्ट ना। अरे उसको लगा मर जाएगा यार वो बेचारा। रेस्ट इन पीस हो गया। ये तो अब जा रहा है 11-10 तो 10 राउंड तक तो जा रहा है कंफर्म। ये नहीं अपनी निकालेगी ना। ऑफ से नहीं लेने देगा ये एंट्री। अभी देख ना ये टेंस की पोजीशन भी देख। ये एक 3 किल मिला उसको लेस का। चलो कवर कर दिया लेस टेंस ने। देखो निकाल दिया ना 2 ऑफ से। जेकन भाई जेकन है भाई जेकन है। स्टार्टअप भाई वेरी ब्रेव फाइट है डब्ल्यू फाइट। अरे मॉलीज हैं यार पूरा मॉली। अरे ये G2 ने सिखाया है ये पूरा। 3 एजेंट ऐसे नहीं है जो 4 वो टेंस पे भी तो मॉली है। हाँ टेंस पे भी है। Swinging at precisely the right moments. So they're not out of it just yet. Not a long shot. No, these last 2 rounds. मॉलीज बहुत अनोइंग है। देखने का मन उठ गया मेरा अब। अरे देखना वो फाइट ही नहीं लेता है कोई भी उनमें से। सेकंड छोड़ के कोई फाइट लेने को तैयार नहीं। और टेंस थोड़ी बहुत कभी ले लेगा अग्रेसिव बस। और ऐसा लगता है फिर कि वो भाई बहुत क्रेजी यूटिल से डिले करा दिया भाई। आपके साथ ये कॉम्पी में हो रहा होता तो आप तो ऐसा माउस छोड़ के बैठ गए होते। इतना ट्राई हार्ड। चलो भाई तो अरे पर लाउड वाला ये देख फिर भाई मैं बोल रहा हूँ ना यही बंदा है भाई इस टीम को बचा रहा है भाई। काहे साइन कर लिए पता नहीं भाई। नहीं निकलेगा ये राउंड देख लेना नहीं निकलेगा। Especially when Tenz is holding. हाँ सही बोला भाई सही बोला। They're trying to bait out these aggressive reclears. Yep. Just why you know the pump fake waiting throwing out. आप देखिए यही होल्ड कर रहा है अभी। ये फिर इधर ही आ रहे हैं। उस पे ड्रोन भी नहीं है कि उसको क्लियर करें। एक फ्री किल फिर ले जाएगा ये। उसको दिख गया ऊपर वो गया अब ये किल। He is exposed though. You are right. Many chances for him to be swung from a multitude of angles. It's all about the reactions. Now, yes, he still has a dash, but it's not active. Here he goes. Dart has to cover himself. His own footsteps there away from it. For the reswing now across. He saw नसीब भगवान का। adjust the aim in time. देखो फिर स्पैम किल। Spraying and a bit of praying. Let's get the job done there. अगर क्वाउजिन तूने अराउंड अल्ट यूज कर ली ना और राउंड निकाल दिया तो मान जाऊंगा। QC के भाई थोड़ा सा QC के भाई 2 और निकाल दो बस। अरे अल्टी नाइस वन नाइस वन नाइस वन नाइस। That's dirty. It does cover the spike. Yeah, look at that. Stretches all the way over towards it, and he still has 2 snake bites as well. अरे रीलोड है रीलोड है। What is the next wave of things? QCK traded. Now sticking though already there. अरे वो डिफ्यूज पे putting that pressure onto a Hunter's Fury, skipping a hop over to the top. नाइस। हाँ वो बच्चा डिफ्यूज कर रहा था। नहीं बच्चे ने नहीं किया। Wingman does not take additional damage from the pit being there, and they just assumed that it did. They didn't deal with Wingman the entire time. बता रहा हूँ ना। अच्छा विंगमैन से किया गया। When you're dealing with a player, the combination of pit and देख रहे हो गेको खेलने का फायदा। सब फाइट ले रहे हैं वो अकेला डिफ्यूज कर रहे हैं आसमान में बैठ के। केजे मॉली से टूट जाता है वाइपर मॉली से टूटता ही नहीं है। ऐसा है क्या? हाँ और उसको पिट का भी डैमेज नहीं लग रहा। हाँ वो पिट का डीके मतलब सही है भाई सही है। मैं बोला ना हर गेम में एक तो निकालते ही है डिफ्यूज फ्री का। ये 11-10 बोला था ना तुझे। वो राउंड देने राउंड निकल जाता पर वो सोवर्ल्ड भी सडाक ने एक बार उस स्पाइक पे नहीं मारा।
अरे उसको लगा मर जाएगा यार, मौली से मर जाएगा। हाँ मुझे भी लग रहा था। किस्मत तो है भाई, भगवान किस्मत मेरे को भी दे ऐसी भाई। अगर ये राउंड भी अगर तुमने, अरे 5-4 अल्टी हैं भाई रीटेक की, देख तो जरा, ले लगा दी एक तो उसने। अब छोटू डिफ्यूज के लिए और है भाई, इसकी मॉलीज भी डिस्ट्रॉयड दोनों। अभी वो आ जाएगा, मॉन्स्टर ऑन द लूज। Baiting it out now, Nade, a bit short and shy off the mark there. Still damage is being done to a multitude of players. Only 3 left standing for Lau, but again, anyone could win it. You just have to rely on a bit of that RNG there. Tenz pushing with the operator. Sadak still stands. Have on it, they don't have it. Still, John has got to stick it now. And a tap with a rifle. All praise. Praying from 2 years. Sentinels, barely there. एक ही हार गए, straight to हार गए। They look in control, though, of these retake situations, which is something that we weren't seeing from them in those spree of 4 rounds between 15 and 18 that Lau got online. The lockdown is so nice from Zelsis. Teams have come up with protocols to be able to deal with the lockdown that's over towards screens. They have a player up aggressive, or they have some kind of, nade combo. Sadak has lineups for it, too. But throwing that out in a different position over towards heaven, and yeah, it's not optimized, but it's not going to get broken. You know they're not in aggressive positions, so you can start the retake proper. We've seen 19-20 Sentinels won तीसरा मैच देखना था भाई, ऐसे नहीं यार, ये किस्मत वाले मैच नहीं देखने भाई, बच्चा डिफ्यूज कर देगा, कुछ भी करते हैं। Now they've also demonstrated in round 21 and 22 that their retakes can look really good as well, especially when it's held with ultimates. This is now anybody's game. It felt like it was loud. It's complete until this streak of 4. Can't count SEN out. Oh, you can. We were singing the praises of Louder there. International experience, adjusted on the big stage. Can't count this team out with how they were looking just initially, but you're right. I mean, Sentinels, they've also been slowly building up a repertoire. उसको तो बस स्पाइक पे मॉली डालो और डिफ्यूज डालो। Still with the Viper's Pit, still with the Thrash. And all of this without Zeka really finding too much value from the operator in the last couple of rounds, right? He's trying to take the timings and he's finding good openings, but he's not landing the shots. Here it looks like he wants to try and take this timing instantly underneath the tube, aiming for less. कभी वो टीम जीतेगी जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, टूटा भी नहीं। Missed the turret actually. अरे मस्ती कर रहा था, सपोर्ट PRX को था भाई। Drone utilized by Loud. Taking the space of the lockdown. Feels like a B hit. Should be a B hit. Second. Where are you going? Where are you going? With 4 seconds left, is this being held for? Yes. Look at that awareness. Jump spot, jiggle peek. Holy updraft dash, but he cannot escape it. Sadak was holding. अरे 1000 पे मॉली डाल देंगे अभी ये प्लांट के टाइम। Deep dart now. Thrash being used just off the initial tap here, but doesn't really spot anything at all. In fact, no detainments because GCK again looking up through, spots it out. उसकी जगह रेज ले लिया होता तो। Both of them. Celsius has time to try to disrupt this. Les gets dropped. So now it's going to be a 4v4. Celsius भाई तो बने हुए नार से नहीं है पता। देख अभी मॉली डालेगा सैसी देख। We pushed away this time. Moshpit just a little bit too delayed and late. It's going to be setting themselves up potentially unfavored. Oh भगवान। Loud वाले ने mental खो दिया होगा सच्ची में। But he does back away. So now with the alarm bot, bit of spam, a bit of spray. Spot flash play. Tenz, man, he's taking it to him. Damage done though. GG कर दिया भाई। Follow up, especially with 2 years there. But what can he really do? बोल तो रहा हूँ स्प्लिट वाली गलती फिर चालू कर दी। यूटिलिटी पूरी बच जाती इन पे पोस्ट प्लांट। शॉट भी हो गया बिना किल लिए। Sassy sticking half already. ऊपर का एंगल है ना, उस पे कर ही नहीं सकता वो डिफेंड ही है। That is up to 12 now for Sentinels. This is an absolutely incredible resurgence from this team on this map. अच्छा यार आरसीबी सपोर्ट नहीं करता हूँ, नहीं तो मेरा तो भाई हार्ट अटैक से ही मर जाता हूँ मैं। Played a great round there as well, and the SEN retake was too much for them. 3 rounds in a row now. The flash to be able to catch QCK is lovely, and then SEN players playing high-low positions. Yeah, it's great. Communication. On point.
Time to get a little sneak peek at the replays. Yeah, and SEN 5 rounds in a row to be able to get up to match point. Set up a date with Gen G. Aggressive. Sentinels वाले तो जीत रहे हैं, Loud वालों को जीतना है. He just tried to flick to the side. It was actually Tenz who was the one who went down there to a bit of random spam, updraft and away. उसने अपड्राफ्ट में पूरी इन्फो ले ली, पता है कि हो गया है साइट एग्जीक्यूट, 4 बंदे आ गए. मॉली फेंक दी. पता नहीं हो रहा था ना कहाँ हो रहा है प्लांट. बाय बाय हर्ष भाई, गुड नाइट. थ्रो टेंस. Doubled up, shoulder to shoulder, round to the back. Two, you're showing presence. A little jiggle and offset there with a movement, but not gonna expect Kawazin. अरे फाइट ले ली Kawazin, अगर वो ले रहा है तो तू भी ले ले भाई. Dodging, juking, playing with his team, spraying them all the way through. ये मैप आना ही नहीं चाहिए था ओटी तक. ओटी कैसे कब से जीत गए होते. ये मैप 11-8 पे जीत गए होते. सही में भाई. Huge क्या बोले. देखो आप फिर बोले एपेक्स भाई यार. अरे वैसे नहीं होता है भाई, कुछ भी मत बोलो यार, कुछ भी मत बोलो, आप आराम से मैच देखो बस. Resurgence from SEN has taken us to a spot where it does look like a possibility, unless Loud can dig deep. Yeah, revisiting it. Of course, it was Loud. You know, they won that one 2-0 in their initial matchup in 2024. Fought back immediately by SEN in the finals where they took it an absolute barn burn. I mean, it was a map 5 world-class game from both of these teams. Push once more. Dart. Broken. QCK forwards position as the sides are switched around. We know he's been getting aggressive. The question is, pushed away from this now. The Dizzy didn't even really so close to the corner, but he doesn't land the shot, so backs away. जिन्ना बच गया भाई बहुत है. With the operator, he wants a second goal at things. चलो ट्रेड ले लिया. बच गया. चलो go trade. It's sprayed. Stand here from Sentinels. Gonna be a difficult situation for John and Celsius to recover. Do they know that everybody is here? I'm not sure they've seen. भाई फिर और ले लिया. John picking up that ult orb. One away from getting a pit online. If there was an ult ट्विच की HP देख लो. it would be that one. They've got to be concerned about the wall. Les can drop it at any point to try to set up the double face. Doubled up side by side, top rafters. Thank God इन्होंने decide किया fight लेनी. Thank God. अरे नहीं. Can't quite land the kill. He now has a pit. He does have the pit because he chooses to offload it. Of course he does. It's OT. And now drops it down. Evacuating the one angle, but over the top of the ropes. Tuiz भाई तू ही है भाई, तू ही है भाई, तू ही है. Good try, nice catch by Tuiz. John was thinking about just slipping away. But Loud. चलो भाई अब मॉली से बच के बस. In round 24, now put themselves up to map point. QCK going for the force buy. Naughty दिमाग. वो उसने स्मोक के थ्रू मार दिया वरना गया था राउंड. John looks gutted. He wasn't able to pull that one off. QCK ने क्या हगा था? So we're going into it. QCK पे बेचारे पे ज्यादा लोड डाल देते हैं. वो इतना बेचारे ने 4 बंदे देखे उसकी फट गई भाई, उसने स्प्रे मार दिया. But they've been winning anyway. A lot of those defensive rounds towards the end. Loud, they send the sights over towards B. That's no way. The spam. Tagging him up, trapped. QCK my boy, let's go. Punish onto the corner. Even more where that came from. The rest of his team. पूरा CT push करो, CT push करो. Set up for map 3. You got to think it. Let's go. How is he accurate there? Let's go. Let's go map 3. Let's. G. Retake with the op. Fairy tale moment for second, it will have to be. And he doesn't expect it. They're up there. So 14 to 12. Not longer. They are going all the way. It deserves a map 3 this series. For a moment, I thought SEN were going to clear. ये थोड़े राउंड पहले कर देते ये लोग. कोई नहीं हमें क्या फर्क पड़ रहा है कितने भी राउंड कितने भी ओटी में जीते. जीतने से मतलब है. तीसरा मैप अब QCK टूट की बजा के कर देना कुछ यार, मुझे नहीं पता बस. Putting the doubters to bed. हाँ. Absolutely. I mean, set up for a good one. It is set up for. Sunset will be the decider. And what a map to end on for both of these teams. अरे यार e-sports में सब चलता है भाई. e-sports में वो लोग अपने हिसाब से थोड़ा चलता तो है बट ये चला नहीं पा रहे. नहीं अरे देखा नहीं था पिछली बार कितना अच्छा खेले थे भाई. सेन का सनसेट अच्छा है ना, इसलिए वो लोग निकालने नहीं देते उतनी वैल्यू, समझ रहे हो.
वो ईडीजी को तो क्या वन साइडेड पेला था भाई। अरे लाउड को भी पेला ये पहले मैच 13-4। लाउड को लाउड नहीं क्या नहीं सेंटिनल्स ने लाउड को पेला है, मैं ये कह रहा हूँ। Match found. जा रही है इस बार फाइनल में बाय हुक और बाय फ्लूक। ये पहले करते तो वॉचिंग कैसे आती। टेंज ने ऑफ लेकर सारा खराब कर दिया भाई। मुझे आगे पुश करके खराब कर दिया वरना निकाल लेता। अरे वही है भाई, ओटी में लेना पड़ता है गैम्बल। अब उसने ले लिया, उसकी टीम ने डिसाइड किया होगा, उसने अकेले ने थोड़ी डिसाइड किया होगा कि मैं पुश कर रहा हूँ भाई। वहीं मार देता तो तुम बोलते अरे भाई टेंस पापा तो पुश के भाई एडवांटेज लिया पुश करके। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। वो वहां पे मार देता तो राउंड निकल जाता, बस जीत ही जाते सेंटिनल्स वाले। पिक ले लेता वहां। अरे अरे वाह। जेनजी लाउड में तो कौन जीतेगा? क्या जेनजी और लाउड में तो कौन जीतेगा? लाउड जेनजी। उसमें यार लाउड की टीम थी यार, अब खेल नहीं पाई लाउड। तो ले ले रेस भाई, मेरा एक नहीं कर। A bow and arrow is old-fashioned, but sometimes old ways are best. Fight! Deep breath. चलो वेगी भाई आता हूँ मैं एक गेम खेल। हाँ पर हो जाएगा स्टार्ट। Defeated. कैप्टन हर जगह बैठा हुआ ही रहता है, ऐसे ही बैठता है हर जगह ऐसे ही। भाई लोग इतना ट्राई हार्ड डीएम में करते हैं, कॉम्पी में कैसे खेलते होंगे? मेरा पीसी बार-बार ही क्रैश हो जा रहा है। बेसमेंट अच्छा है, फ्लेज। हेलो हेलो क्या? Dominating. हेलो एक मिनट। प्रीतम साहा नहीं भाई,
Silence. Down. मैं खुद प्लेट पे स्टक हो भाई, आपके साथ कहाँ मैं थोड़ी रैंक अप करा पाऊंगा। मुझे भी जरूरत है भाई प्लेट से निकलने। चलो फिर से ग्राइंड चालू करते हैं। Shot down. रैंक वाला कमांड चल ही नहीं रहा। तुम तो इमॉर्टल के हो, प्लैट हो भाई, दिल से प्लैट। अरे भाई सब कैंपर है मां कसम। Taken out. No more. Captain killed. Please, bro. Captain killed. Ten kills remaining. Captain killed. मरा नहीं। 5 kills remaining. Three gone. हो गया मैप चालू। मांगे गड्डी मेरी चालू होने वाला है। मुंडे हाई हर बार, बस 4 किल करने हर बार। Captain killed. Phoenix, Breach, Sova, Viper, Omen. ये लोग फिर गेको ले लेंगे, फिर मॉली कर देगा वो। हाँ इस बार और अब तो जैक एंड रेस खेल रहा है वैसे भी, और अब तो जैक एंड रेस खेल रहा है, अब तो भूल ही जाओ भाई। One kill remaining. Like I said, on split, the loud compositions require a lot of jiggling without the Sentinel. Here's the flash being sent flying, lucky to not die. Sadak
Running and wading away backwards, running and gunning with the frenzy. Only had 4 bullets left, and he still managed to land that shot. So, play disadvantage here for Sentinels. Get themselves the site. Will be the plant on top of it. But what is the call after the fact? I'd have so much utility on rifle rounds to be able to deny plants from going down. Team like करो सब लोग. 150 likes today. Barely missing. Flash. Pushing him away there. Paranoia was bad. He'd still face it with the guns. Now Sadek's all the way behind him. Dizzy. Tap onto it. It's going to be alerting the attention of these Sentinels players back and around, but they have so much to deal with now. The push and the pull of these loud players. Thank God QCK got 2. अभी 3 और बाकी हैं. अगले राउंड में 2 किल और मर जाएगा फिर अल्ट. I was watching the way that they dismantled EDG, and one of the big things they were amazing at was watching for the lurks through mid. And Sentinels on this pistol tried to do something very similar. They insert Zekken deep up mid, create a distraction elsewhere, and try to get value with Zekken creeping through. Sadak is always wary of that kind of stuff. सब slow हो गया मुझे. हाँ थोड़ा तो मतलब पहले से tried to competitive. fight a bit more aggressive in the post plant. Just couldn't quite find it. Just got squeezed. Having said that though, with the kills that SEN got online, they're looking to try to force into the next. I feel like the money's good enough. And they got quite a few kills. I mean, 3 kills plus the plant. It's not a bad buy. What direction do you take it into? Looks like mid. इन्होंने buy कर लिया भाई. Single round तो निकाल ही लेते हैं लोग. Gamble though. If it doesn't pay off for SEN, they're going to give Loud so much momentum in terms of the economy, the ultimates. You know, QCK might well have the ult online at the end of this. He's gone and picked up the ult orb on A. Very good. Breaking the door with the pistols. Trying to avoid notifying Loud. Sure, do we have though? क्या बोल रहा है Canadian? Dizzy wide. अभी तक उनकी गन रिवील नहीं हुई है. इन लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि लोग बाय करते हैं हमेशा. Censored attack, heavily attacking. Drone doesn't. It didn't clear Zekken again. This spot is such a blind spot in the way that Loud are playing mid. That's wild. There's major chances for Zekken to just again. Montage क्यों नहीं डालते? But like I'm saying, Bren, EDG tried this kind 2020 of में चलते थे भाई montage. You know, they caused the distraction and get a lurk. And Sadak or Kawanzi just shut it down every time. 40 seconds, barely. Just drifting away here. Boombot. Use the flash. All in conjunction. Now to Dizzy. All the way through market. Nothing to really stand their ground. भाई. Still going to try less. Firing them down as well. The bullet tag. अच्छा वो भी shock dart से मिला है kill. Sadak to get that one, but a plan. Now down here for SEN. No push back from it, so they can start to play this post plan. But साड़ा उधर वो पड़ी है bulldog वो तो ले ले. With the stingers. It's like an awkward one to try and play into, especially when Kawazin has almost all. देखो साथी पे मौली है, Tenz पे मौली है. But there it is. Sends out the aftershock. Out वो बच भी गया. No kill. Paranoia. बाप रे बाप. Used to respond to this one, and a second flash sets them back up with a deep smoke. हक दी मौली शायद उसने. Forcing Loud to push forwards into this one. A tap onto it again. Stunned up inside the smoke, damage done. Kawazin still lives on 21 health. Diffusing now. Sadak onto half. Has to be dealt with. Has to be brought down. Sticking it through. And no damage. Let's go. पूरा बाय खा लिया इन लोगों ने. नहीं उन्होंने बाय किया था ना. हाँ तो फिर ठीक है. फिर ठीक है. It's a good thing. Butterfly banter किए. Yes. You see the stars sprinkling up around his head. Butterflies on my stomach and in my stomach. The rest of the team. It is so difficult to cover the diffuser in that situation when there's a flank coming from market and Tenz throws that. Normal वीडियो जो डाल रहे थे. हाँ अभी आज और कल तो नहीं आएगी. कल मैं दिन में एडिट करूँगा. अगर टाइम मिल गया तो, और जब घर जाऊँगा ना तो 4 वीडियोस आएंगी घर वाले पूरे टाइम में. 4 वीडियोस पूरी अभी रखी है सेट करके. एडिट होनी बची बट क्लिप्स इकट्ठा कर लिए. नाइस वन. ओ भाई लवली भाई लवली. आ गए भाई QCK की बेल्ट. QCK की अल्ट के बाद एक और किल कर लिया उसने. ओहो. John's just looking to do what damage he can. But Loud's economy is going to be looking good. Their ults are starting to come online too. So the gamble that SEN went for, it's difficult to assess in hindsight. Because we're only seeing it having failed, but Two is now off निकाल ली भाई. In round 2, there were possibilities for them. चलो ट्राई तो कर रहे हैं, मतलब ये राउंड भी जीतने का, क्योंकि QC की अल्टी है. यार मैं तो चाहता हूँ कि ऑफ की जगह वैंडल रख ले, क्योंकि अगर पिक मिल गया तो रीटेक के टाइम पे 2 QC को वैंडल देके उससे अल्ट करा के रीटेक करा सकते हैं. परसों जा रहा हूँ. Dizzy just to see whether anybody's trying to contest into mid.
Interestingly enough, I mean, 2 years has opted for operator. फिर से जैकन को उधर ही बैठा लेंगे। वो तो ठीक है पर जैकन बैंटर कैसे चला रहा है? शॉटगन का गेम होना चाहिए इसका। नहीं शॉट नाइस वन यार, शॉटगन नहीं है तो फैंटम चलाता है। एक और टीपी। हाँ नाइस। कहाँ किया? अरे वो ऊपर बैठा है। अरे रे मेरे को एंजाइटी हो रही है भाई। पीछे से कवर मिल जाए बस। अरे रे ये तो मटके में लगाया भाई। थैंक गॉड तीसरा नहीं मिला, नहीं तो बहन तो भगवान ही बना देते। अल्टी यार, एक तो ये छोटू से प्लांट कराने वाला ना यार। तुम किस साइड पे प्लीज क्लियर करो। खेल गया भाई। अल्टी क्यों नहीं कर रहा? क्यों सी क्या? पागल है क्या अल्टी करेगा? यार ऑफ इन्वेस्ट करी थी उतना यार, साइड छोड़ रीटेक ही खेलता ना यार। ये क्या पोजीशन? ठीक है पर उसकी गलती नहीं है यार, वो उसने वापस आगे भी गया था। अरे वो ऊपर वाली पोजीशन एक्सपेक्ट नहीं, दूसरा तो उसका थोड़ा लकी शॉट लग गया। तीसरा उसने पैरों को ब्रीच को मारा ना उसने। A lot of it coming down to that play from Tenz. Oh yeah. His omen on this map is so creative and flashy. It's wild. Well, I thought there was a good chance he was going to just pick up everybody there. Yeah, looked like maybe a few more bullets he could have done it, but he's just that guy when it comes to this map on the omen. So a pretty classic defensive setup here for Loud with QCK and Kawanzine holding over towards A. They do have 3 or 4 different defensive setups that पहली बात तो निमर भाई आप ना हिंदी इंग्लिश मत मिक्स करो। साइड लाउड की क्यों टेकिंग? क्या लिखा है ये? ऐसे बात करते हो आप? Loud also love going to the switch and closing the door in mid. It's something that they prioritize all the time, whether it's less or 2E's doing it. अरे कहाँ टीपी सुना होगा उसने बेचारा, एक तो ट्रैश से भाग रहा था इधर उधर। खुद ने टीपी किया था तो खुद टीपी के चक्कर में भाग रहा था बेचारा। Yeah, force out the fault line early. Somewhat early. पागल अच्छा बनाया था पर उसने अल्टी को। Close down in her face. It does force Sen to just go back, double back break. यार वो राउंड नहीं यार, फर्स्ट पिक मिलने के बाद देसी मीडियम folding into a different direction. देसी ना बोलिया कर जोरी रे। Really going to incentivize. इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही है। Tenz lacking the info. His jump spotting is punished for it. Tenz has cleared out the whole of elbow with his ult. 3-2 कर दिया है, पूरा मोमेंटम जाएगा अभी। 5-3 होगा देखना। 3-5. Drop down, play it down. Will be the plant. Someone's get themselves into it here with a player advantage. आप आंसर करो यार। It's a time to shine. निमर भाई मुझे नहीं पसंद सेंटिनल भाई। Can't loud out too much just yet though. Grouped up together. Nade. Oh, it's a bit of a blunder. Can't swing into that one. It was anticipated for him. Paranoia in front of it. Sadak, he had to be the playmaker there, and he was not. Drop down. Now a flash of their own. Tenz repositions on top of Jenny. Vulnerable. Snake bite. Goodness me. Everyone on that Viper से इतनी तेज जाती है क्या HP आजकल? ये नो शेयर करने आ गए। Sure, but Tenz then anticipated that they would try to follow up on that, sent the paranoia through, and was able to isolate the duel onto Sadak. Sen have got enough players who understand the what? Never भाई तो full भाई. Make plays like that to try to turn situations in their favor. And that early economical advantage that Loud had to work with, it's getting chipped away at here. I mean, this is essentially eagle up. I mean, 2 of the players can't be buying. Yeah. And just seeing that on the replay again, it's such a large punish onto QCK. And it's all due to that freeze that John Cutie calls into the round. They force out the fault line, and then they freeze everybody, group up A main, and look to try to punish the info peak. It's so similar to how they were approaching their split attack side with the real slow, patient game. At some point, Loud need info on defense. That's when the punishes come through. Different combination with a util being used. This time Dizzy up in the air, flash through into elbow. And it's all fake presence. As Sentinels quickly, after going for their default utility, group up on B. They shouldn't be too worried about B main with the door being closed. मुझे लगा 10 फिर ऊपर चढ़ गया. I'll be looking for an orb on Zelsis. All online, we'll be able to go for the B pop. Or not. Just avoiding it.
it's not as important against a cyclist comp. It's true. Now the nades and flashes do go flying though with a satchel play. Sets up second deep into the angle. Decay damage kicking in, almost getting brought down himself. He's on 60 health. अरे बड़ी से प्लांट कराने वाला ना बहुत उनको. Yeah, he's very isolated. Very isolated. Smoke to play in. Wants to try and get in and rule that angle over the top now. अरे भाई उसका लड़ from mid, देखो. but already it's traded equally. The timing actually here from John looks fairly good. Yeah, he has to potentially get a move on, but it's up to the rest of his team, I think, to persuade and push them back. Yeah, Paranoid's there, and he does catch it. QCK just alive no longer. Deep cam round the back, Louder left really scrambling, looking for options, and they've decided to take the fight! Force him to win! Tenz wins that! Get out of here! Still no tap onto it. The pressure's mounting, incredibly so. 2 years facing with all the kills. You're joking, but the time. अरे भाई तो 1000 कितना हगेगा टेंस पे यार. What is that? What an absolutely ludicrous दूसरे वाला का. Loud did such a good job of putting pressure forwards into B main. That's where most of the post plant on B is going to come from, is this battle about who can dominate B main control. And Loud really did a great job of that. Being able to, I mean, they should have been able to catch Tenz earlier. Let's go. But the flank timing coming in from John, and Tenz and John buying so much time, ending that round in such a weird fashion. Yeah. Bizarre set of circumstances. निमर भाई thank you for the 96 rupees. अच्छा 96 क्या 69 की जगह. सही है. 69 में करना 96 ही करना. थोड़े एक्स्ट्रा ही मिलेंगे मुझे. Challenge B main early on. Thank you so much यार. मेरी तरफ से धन्यवाद रहेगा आपको. अरे शिट मिक्स करना भूल गया. धन्यवाद to you friend. Going to be fading. What is that? Just pre-aiming. Anticipating it for seconds. So tight to the angle there. इतनी देर क्यों होल्ड किया? Necessary kill for him. He's not having a great start to this map, but let's get back onto the board with that one at least. Kawanzin went and took the ult orb over towards A, so he now has the rolling thunder online. Second. An initial tap, but now going to be sticking it for the plant. Does have his ult online now for it. Here's the rolling thunder. Back into them. Showstopper to use. There's a bit of a reaction into this one. And second, his whole goal is to really slow this one down. TP dodging out of the way. On top of the box, they can expect this one to go. We'll see it. Tags him up. So eventually, Tenz will be spotted into this one and done spot. And QCK through the wall, favored for it. That's the wallbang angle on top of it now. It's an interesting fight to be taken. John QT turns it into a 2 versus 2. 2 tagged up by the knife, but just a tap onto the head. Spots it now, Zelsis. So much more in this position. Sadak feeling frantic in nature. Does he have it? I don't know. I don't know. Did he get onto it in time? It's so close. Oh my. साडक ने सेलिब्रेट कर दिया था पहले मतलब. साडक अपने से ज़्यादा ही जानता है obviously. Coming down to fractions of a second. And despite John's best वाइपर मॉली तो डिसरेस्पेक्ट होती है भाई अब तो फुल. Sadak's able to win that one in the 1v1. A little bit more Thank God. Zelsis would have done it. Oh, gonna be kicking himself. He can't offer Loud opportunities like that. You can see Sadak wasn't even sure. Oh my. With how tightly contested these rounds have been, I mean, the economy's taking a bit of a tumble. Some weird, dodgy buys across the board. साडक अल्टी से निकाल दो एक किल यार. टाइस अल्ट करने 3 किल मिल जाएंगे यार. That allows them to build up towards the Phoenix zone. Second and Tenz are looking to try to explore mid again. They haven't done this in a while. Oh, nice. Over towards A, maybe even pincer some of these players. And yeah, they're just barreling all the way through into mid. There's a nade! Watched it. Zelsis still here. Nice. They're just trying to dominate this one. This one singular Nice one, nice one, nice one. We have Sova ulti now. And we have the read, but why are we taking? Oh, spotted. Nice one, Sadak. Oh, clean. Card नहीं है membership लेने के लिए ये ले लो. Thank you, Ayu, for the 40 rupees super chat. अरे एक kill काहे दे दिया? मुझे ऐसी feeling आ रही है एक और kill लेगा ये. इसने thrash वापस क्यों नहीं उठाया? उठा सकता ना, उधर ही तुम मर गया था. भैया ये मैच आपको हार्ड दे रहा है क्या? बेचैनी सी हो रही है भाई. अरे भाई फिर से ये तू वो वाला पिछली बार 1v3 वैसे इस बार तो नहीं कर पाएगा क्योंकि ट्रैश नहीं है और मॉली भी नहीं है. बट ये बोला था ना एक किल लेगा और
Also online here for Sadak, but he doesn't really find a Reveal हो गया है. Dart reveals all. Sassy has to pull off an absolute miracle. 5 HP drop down, backing away. Now wide and sprayed them through. Sassy, a beastly performance against the former team, silencing the Brazilian crowd. Sunset Sassy ने 1v3 भाई वो लोग बार-बार कैसे एक गलती कर सकते हैं? दूसरी बार गिनते रहो बस कितनी गलतियां हो रही हैं. अच्छे शॉट भी नहीं मारे हैं भाई. The fact he can be so far away from where the plant goes down, his positioning is just immaculate in that situation. Lauda not thinking about it. Sassy as a player, we needed to see a big step up. He was Norden 6 when it comes to those first kills, the first deaths last map. Wasn't having a good game. Pre-fire with a knife, less lucky. Relatively unscathed, all things. और उसकी 2 और में अल्टी है, मतलब ये राउंड फिर अल्टी आएगी इसकी, देखना. यार ये लोग बार-बार एक गलती करते हैं और बार-बार इतना अल्ट्रा पैसिव खेलने लगी है लाउड भाई, इतना पैसिव खेलने लगी है भाई. आसपास के जाने के बाद से हुआ है सब. Thinking that it's a B stack because of all of that utility in their face, they may end up running into danger. John's watching it. हार्ट अटैक देने की बात कर रहे थे, दे दिया अब. But in terms of anticipating 4 players, Tenz cleared, now crossfire. अच्छा वैसे किल नहीं मिला. Everybody scattered to the winds. I'd realise it. Okay, we've been found out. Got to back away now and just try and flood back into this. Do some economic damage. So, util flying forwards here. I'll have to push away the plan though. So still, spike down and out. Oh. Hello, QCK. No turn on the fire. He's still alive here. I think there's too much danger. It shouldn't be dangerous. भाई मैं प्रोसेस कर रहा हूँ अभी तक वो 1v3 या 1v4. Just never know. Tap. QCK. Hello. It's rattling their heads now. Already 2. चलो अल्ट कमिट करा दी एटलीस्ट, थैंक गॉड. Has to be used. He popped the ult. He popped the ult, man. He got caught. और उसने भी, हमारे किंग खान ने भी अल्ट कर दी. वाह. To the corner here, potentially winnable though. Now man is looking more likely. Finally fades away and he's back into it. But here it is. The follow-up. With all the rifles online. He doesn't have the time. My God. It's an effort. It's unbelievable how close these rounds are getting, though. You know, the one team's got an enormous advantage. They've got rifles, they're in a post-plant position, and yet it still feels like any team can take it. We've had some rounds go down to defuses with a fraction of a second left on the clock. We've had a 1v3 played by Sassy. Exactly. अभी ना भाई हम लोग भी नहीं सह पा रहे हैं क्या हो रहा है. But not in a way that has immediate effect. But it's going to keep a lid on Sen's economy getting out of control and going to allow Loud some opportunities to maybe play some anti-eco. यार वो 1v4 नहीं भाई. 5 out of 6 of the most recent rounds have all gone the way. मेरे दिमाग में चल रही है वो पूरी क्लिप बार-बार भाई, वो बार-बार एक गलती यार, बार-बार एक गलती भाई. And to be honest with you, और ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ लाउड से सेम मिस्टेक रिपीट करने के लिए भाई. इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं यार. 1v3. Okay, in order to get into a 1v3 situation, Loud साडक भाई नहीं यार, नहीं भाई, मेरा दिल टूट गया भाई इस राउंड. They got themselves into a player advantage. They just lost out because there's beasts on the other side of the stage. Hello Mr. Youth, welcome to the school. There's no player on either of these rosters that doesn't deserve to be here. Everybody capable of stepping the hell up. मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा उसकी पोजीशन सिटी में रिवील होने के बाद भी ये लोगों ने उसको एक-एक करके पीक लिया. At the scoreboard, QCK is the player in position to do the most of that. It's less actually. कौन जीतेगा? सनसेट नहीं आ रही है सेंटिनल्स यार. Usually we're expecting less. एक चांस था जब 3-1 था, 3-0 था. Finding his moments to have value even though he's playing the Viper. वो 4-0 होता पता है, वो राउंड भी 4-0 में आता. Over towards B. नहीं प्रतीक भाई कहाँ हाइड किया है ना क्या वो 3-0 वाला राउंड भी जो हारे ना ये लोग वो 4-0 में आता. QCK moved their way over the B, just calling up the back of it. Now 2 years this time standing strong, just trying to brave the onslaught as well. Russia players now ready to push him back and away. Zels is getting the ult online, can counter Sadak. You can see Sadak getting set up to go for the ult. Oh, they just rip it anyway. Okay. Send it out wide. Smokes on the फिर ही वो छोटू से प्लांट कराता है बस. मुझे चिढ़ मच रही है भाई इनके गेट कॉम से. So next layer of this one, Sentinels. Do they have anything cooked up to try and fight this one further?
साड़क भाई अल्ट से निकालना पड़ेगा utility early for plant denial. Hunter's Fury. Molly's going to be used towards the back of the side. Hunter's Fury. There's the connection. Second falls. अरे फिर ऊपर चढ़ गया यार वो. Memes of that one, but still not being dislodged from these positions. Tenz up top. Familiar angle. Has the ult now for a classic reposition. Ult into the back of the side. Could be anyone's game on a knife's edge. Every single instance. Tenz sticking the plow. Or not quite already with the ult into the back, but he has been cleaned up. 2 years there. It's a 1v2. Taps it. Gets sassy, doesn't give him anything, still bides his time, waits it out, and now it has been fully drawn down to the final moments. All the kills coming Loud's way, but not the round. Same again. Same thing again. The retakes, they are effective, but just not enough to be able to get over the line for Loud. It's Ten's position, I think, here that is the magic. Look at him, the way that he's able to wiggle out and avoid being traded because he's got the pillar to dance around. It looks lovely. अरे इसको एक किल मॉल इधर और दिया इसको. Dealing with a lot of what Loud are going for, and when you saw Loud demolish EDG here, one of the things they were doing on the AoE takes was throwing in a lot of plant denial, making it uncomfortable for EDG to get into good post-plant spots. Well, they can't do that when Zelsis is ulting them. Shadows traveling. Possible. Util cut away. All these close rounds just going down straight to the wire. Again, economy. मुझे तो 8-4 दिख रहा है ये. And how many times have we said that? It's just been a run. 4-4 पे बोलने वाला था मैं कि अभी एक भी राउंड नहीं देखी सेंचुरी. Hot start in every half. This time they actually had to grind their way back into ecoing Loud. मुझे 3-1 पे ही पता चल गया था. Back of a 1v3 from Sassy too. Ridiculous recovery. भाई ऐसा हग रहा है ना और टेंस के ऊपर वो क्या नाम है? Loud players, they're opting for a stack over towards B. This is Tenz के माथे पे शुलभ शौचालय लिखा हुआ है. Time and time again. Really disrespecting them though. Just holding the angle for some util. Needs to. Is this a paranoia? Yeah, I mean, what is the timing of this? I don't know. I mean, he's found. Okay, he's the found plaintiff something. satisfied the decree and the court ordered Flash is connecting. Gives up the space. Just seeking to delay as long as possible. Sentinels though. Looking likely they're going to have an open sight. 2 years is really trying to make this feel like there's lots of players here. Nades forward, so they just spam the box in the common angles. They do deal with him, and finally the flood defense is here in time, but can Loud do anything about it? Beautiful dart. Everybody lit up here, even with the stingers. There's danger, danger in abundance. अरे नहीं यार. It's Tenz. Playing that post-plant position over towards A-Link, swings around, gets 3. And saves the rest of his team. I mean, they needed it. They were all barreled up in sight. It looked over. Bunker and down. That's a terrible post-plant to be playing against. Yeah. Or playing in position at least. Well, you see how much more difficult it looks for Sentinels when Loud are close by, able to flood defend and throw that utility to put pressure on them before they can get into post-plant positions. And Tenz bails them out. Top of the scoreboard. Doing things fantastically, playing from similar spots. इसको यही काम है, बस फ्लैश करो, ऐसा फ्लैश करता है राउंड के स्टार्ट में, वापस उठा ले, बस वहाँ से फ्लैश उठा के वापस आता है, साइड पे फ्लैश देगा, बड़ी डालेगा, मॉली करेगा, फिर अल्ट कर देगा पोस्ट प्लांट, बस. अल्ट भी गोल घुमाएगा, वापस ले आएगा, देखना अभी. At least onto that one. QCK should be alive as well. He's got some backup from the rest of the plan. ये राउंड हार गए हैं Loud तो फिर. Might be another funny round. Loud are playing really heavily for backside B control, which is going to allow them to get players in flooded. Hit it as well. Just to play for it. QCK does have his own ult. क्या प्लान देने लगा वो लोग, इतना सेफ खेलते हैं Loud वाले, इतना रीटेक भाई, जब रीटेक हो ही नहीं रहा है, जब तू बार-बार क्यों रीटेक पे खेलना है भाई? मॉली तो कर दे. मॉली कर दे QC के बता रहा हूँ, अब आफ्टर शॉक के बाद उधर एक बंदा चला जाएगा. अच्छा उधर ही मॉली की वापस. चलो अच्छी चीज है. मरा टेंस तो मरा. सासी भी मर. बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड अंडर 2K Amazon पे जाओ, यही सेम चीज Amazon पे लिख दो, जो ऊपर आएगा सबसे वो ले लेना. But I think Loud really figured something out there in that final round. 60% ही मिलेगा 2.5K में डंका. Was lovely. It was anybody's game though, and I think Loud need really another pistol to be able to get back into this. पिस्टल हार गई अगर Loud, फिर तो मैं बंद ही कर दूंगा भाई.
सोने चलेंगे अपन नहीं मतलब मुझे तो लिखना है खूब सारा आप चले जाना मुझे भी लिखना है उसके बारे में कुछ अरे 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 तू इतनी खूबसूरत है तेरा दीदार पे Senti muito bem. A EDG é time que, pra mim, tem सुना है गाना os ये तूने melhores players individuais e acredito que o कौन सा राहत फतेह अली खान वाला है जुबिन नौटियाल वाला é um राहत फतेह अली खान भाई तो दिक्कत है जुबिन वाला सुनिए एक बार Então acho que o principal motivo disso foi a nossa individualidade hoje que estava muito boa. आया मैं कुछ मीठा खा के आता हूँ तभी शायद शुभ मीठा खाना पड़ेगा कुछ तभी जाके जीत पाएगी टॉक्सिक वजह Acho que a partida टॉक्सिक क्या contra सही बात है भाई uma confiança बेस्ट तरीका यही है muito boa pra gente. Então भाई acho जो que a चीज gente यहाँ सर्च esperaria कर रहे हो ganhar वो esse Amazon पे सर्च कर लो mas ninguém esperaria esse stomp. Né? Cara, a gente não esperava isso, mas acho que nós tivemos um plano de jogo muito bem executado pela nossa parte. 30 seconds. They have no map control. They are just looking to take it to the elbow. The flash, perfect. He hasn't killed anyone yet, but GTK, he just slaughtered every member remaining of EDG. Eu acho que a Sentinels é um dos melhores, ou se não, o melhor time aqui do campeonato de Madrid. Cara, acho que o diferencial deles é que eles jogam muito bem como equipe. Quer dizer, tem o star player que é o Ziken, mas eles jogam muito bem como um time e acredito que todo mundo pode performar muito bem lá e ganhar um clutch ou talvez levar a partida sozinho. Rapaziada, muito obrigado pela torcida, quero agradecer muito principalmente a minha família, meus amigos que me mandam mensagem no WhatsApp, me ligam. Estou muito feliz que a gente conseguiu fazer isso e classificar para o playoff. Só quero pedir vocês fãs que continuem confiando na gente, a gente vai dar o nosso melhor e vamos tentar conquistar esse título para casa. É isso, tamo junto. Praise for his opponents. I mean, talking all the talk there about Sentinel's team play, and it goes to show as well. I mean, even praising Zekken as their star player. Now, Zekken's at the bottom of the scoreboard. Yeah, and yet still, Sentinels are holding a lead 7-5 when they had an absolutely horrific start to the entirety of that half. Yeah, and actually, I think the story over the last couple of maps has been not so much SEN getting the advantage at the beginning of the round, but just having really strong ways of being able to close things out. Tenz has been amazing in those spots. And so we go into a pistol, which is चाहते हैं भाई एक्सक्लेमेशन मार्क कीबोर्ड डालो जो मेरा कीबोर्ड वही ले लो for Loud, I think, to be able to get online. Complete contacting up. Zelsis picks a mid-round timing. Knife destroyed. Could be anybody there. Tenz back and out. चाहते हैं भाई बताया तो सही So close to getting punished there. Very close. I mean, Les was quick I onto guess the team is angle. कौन सा वाला है? To that Demon avenue भाई. of opportunity. They want to flood out now, facing with the bodies. It Paranoia was backing 21 away. है. It's blind as the fadeaway. Damage has been done definitely to Zelsis here. Single shot will do it. Touch close. There it is, straight to the chest. Brings him down. John can't do much. So मजा आया ब्लाइंड में पड़ी उसको मजा आया बहुत मजा आया Looking good for it. To have not won Have a taste of your own medicine. And then get both of them in the decider map could end up being crucial. अभी देखना पूरा टाइम उधर बैठ जाएगा गराज मार्केट में ऊपर Not going to force into this one again. On the defense side, not as many kills. That's a ridiculous kill though. That is a ridiculous one. But the fact that QCK was the tip of the spear is going to start building his way up to the Phoenix ult. And Loud started that with such a contacting approach. ओम साई राम to give anything away. ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले मैं नाम लेकर रहा हूँ मैमून मोहम्मद हाजी ये I think Lauda got the read now that this was not a heavy A setup. केस का नाम है जी भाई As soon as they don't अपने में बोल फिर हमको नहीं सुनना तेरा केस मेरा केस करा देगा तू 1967 का केस है good post plan position as well. It was year 90. Oh ये shock dart W हो जाएगा जल्दी कर ये कितना खाया Tenz 52 HP बहुत मजा एक भी किल मत देना Could get costly. किसी के ऑफ गार्ड बहुत बढ़िया अरे वो राइट आ गया बहुत बढ़िया करो बहुत सही क्यूसी की अल्टी आ गई है बहुत बढ़िया ट्विस्ट भाई उसको हैंडल तो और अल्टी कराओ But that was very easily cleaned up. I think that's going to put people in positions where they need to go for light armor. भाई सॉलिटी से बट लाउड नहीं जीत पाएगी भाई मुझे भी पता है बट यू नेवर लूज होप ऐसा तो फिर उनको बोल देता हूं लाउड वाले मत खेलो आगे का राउंड I think SEN are going to be confident in those kind of rounds once guns are online. Their comp can just util dump spots on A
It's very difficult to hold on to post plants. That was most of the metagame actually that we saw in the last time that these teams faced on Sunset, was how they approached the A retakes. The bonus round now to be cooked up for Loud. They've got plenty of danger in it. I mean, that ran it back earned. QCK, this guy is frying. I mean, he's 20-10 currently. At the top. Another score. At the top here, though. Tap and a face. That contact play style. Finally, punishment in place. Yeah, but I mean, what? Seriously, भाई एक बंदा और ले गया तुम्हारे आंखों के सामने. Pick up there and they both get sprayed down. सासी को और भी दिलाएंगे पूरी देरी है बस. Targeted the paranoia onto a spot that Tenz is often likely to play, but it's second up there this time. In market. The trip not broken though. They know it's fake market pressure. Yeah, this is a weird one. No way. Did they spot a hint of 2Es? Was there that question mark on the minimap? Maybe. Yeah, pinged out, I think. Yep, it is. Leaning this way. Celsius. He is a low player, but he decides Loud to is take dry anyway. picking, not set up really. onto They that didn't. angle. वो और वाले में उन्होंने double peek कर लिया ना, वो spray down में आ गए. Has to be broken and he's revealed his position. अगर Celsius मर जाता ना, अगर This is तो दूसरा एक और kill आ ही जाता ना. Still util now. Tenz right behind them. Sends out the paranoia. There is that swing, and that's a spike going to be dropped down. सासी की ult आ गई next round. Nowhere near here. Les is the last one standing. This flank from Sen has worked beautifully, but the Loud players barely reacted. I don't think they knew where that paranoia was coming from. Has left Les in a 1v3 in a much worse position than Sassy was when he was able to get the plant down. अरे कैसे compare कर रहे हो सासी का और लेस का situation? कुछ भी बोलता है भाई. 10 seconds left. And Les will just be trying to win this one while the rest of the team in silence scratches their head, wondering where Spray it तो all करते हैं went भाई wrong पूरी here. देर Phantom लेके. देखो तीनों Phantom चला रहे हैं भाई. चलते चलते Phantom करते रहते हैं इधर-उधर बस. And the flank from B bailed him out. और सब recon पकड़े हैं. Just getting a bit of a read, I think, in terms of how Loud going to play and set up into this one. Of how many risks they were taking in this round against the bonus. Sound आई थी और उसकी तो फिर flash कर लेता QC के यार. वो गलती की मेरे हिसाब से QC के ने. Giving them all that information. But I think going for flank plays like that just plays really nicely into Loud's composition, which lacks the cipher. Anytime you can get aggressive like that, yeah, go for it. Why not? Loud are not going to have that information, and they're going to find it difficult. Tenz not to be dislodged from this spot. There's a Phoenix flash in his face, though. Won't be punished and dropped down. Paranoia now. TP, phone line, everything. The kitchen sink being tossed and turned and shucked at them. Out through market. Flash over the way. Ring around a Rosie. Let's go, bhai. Let's Can't go. escape. So now we get to see Loud in a post plan. We saw a lot of it from Sen. Here it comes. Paranoia, yeah. Thrash as well. It's all being laid out on top of one another. Fast. Cover play. Shock into the corner was utilised a little bit earlier, but everybody tucked into main. Do have the orb for this one. Actually some mollies as well. We're going to see how the util just reigns supreme into it. Dizzy over the top. डाल दिया, छोटू डाल दिया. Try and latch onto this spike and get the defusal started. Is there time for the thrash? I don't even know. I mean, listen, it's going to be 1 second left. बहुत अच्छा stunt भाई, W stunt. चलेगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस एक डिटेल से. अरे Tenz किल ले गया, अरे दो, अरे भाई उसको प्लीज. He's been stopped in his tracks. Half tapped, Sassy. No more to room, no more to work with. And this game, more than any that I've seen recently, has featured just 368 भी नहीं, मेरे को तो लगता है और ज्यादा पे खेलते हैं. 368 तो रहता ही है. 360 हो गया है. पहले 240 था मैक्सिमम, अब 360 हो गया है. 540 भी आने वाला है आई गेस. सारे प्लेयर्स को फिर 540 लेना पड़ता है अपने पर्सनल पे भी. वही नहीं, पर आजकल सारे प्लेयर्स के पास पहले से ही है 540. हाँ वैसे अब तो स्पॉन्सर ही दे देते हैं सब कुछ. Where little bro's just sat inside the pit, just tinkering away, cutting the red wire. Yeah, it's a good heads up. Loud though. They get the 3 kill spray and down. I think most teams 360 और 540 के बीच में कुछ नहीं है ना? अरे बहुत है. All the targets are going to be on it, but now इतना कौन बोलता है उनको इनोवेट करने का भाई? मेरा खर्चा मतलब हमारा गरीबों का तो देखो भाई. क्या मैं जब 144 हर्ट्ज में Immortal 2 पहुंच सकता हूँ, तो 540 जितना इन्वेंट करने की जरूरत ही क्या है? सही बात है ना? हाँ. क्या जरूरत है 540 हर्ट्ज की, बताओ? क्या वैसे भी ह्यूमन है तो रजिस्टर ही नहीं करती है. हाँ बट एक्सपीरियंस तो स्मूथ हो जाता है. 480 भी है. क्यों कौन बोलता है भाई इतना बनाने को? ये कंपनी वालों को कुछ काम नहीं, लूटना होता है बस.
मैट्रिक्स में फंसा देते हैं हमको ये सब महंगी महंगी चीज़ें निकाल के। कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। मेरे को तो ये 240 हर्ट्ज भी बहुत ज़्यादा लगता है। 165 बहुत है भाई। 360 मुझे ज़्यादा लगता है, 240 तो चलो समझ आई बात। यार ये लोग पता है अगर ये कुछ, अरे यार ये राउंड जाएगा क्यों, पता है ब्रीचल्ट नहीं करनी थी यार, बिना ब्रीचल्ट। अरे रे 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 भाई इनके स्टिंगर राउंड यार, प्लांट तक नहीं मिल पाया, प्लांट तक नहीं मिल पाया। 680 भी है अभी 1000 हर्ट्ज का भी आने वाला है विजय भाई। अरे भाई इतना हर्ट्ज क्या भाई, मेरे पूरे पीसी से महंगा पूरा एक मॉनिटर हो जाएगा मतलब। ये कितने का होता है इनको? He's taken the brain of Angel and Redgar and combined it with the skill and impeccable timing of... Dude, I don't even know himself. Yeah. आपने प्री-बिल्ड मंगवाया था ना? Who's got it like he does? Yeah. He's stylish, man. He's stylish. But on a knife's edge. One of the only rounds really that just goes entirely the way of SEN. We see them now just having that lead. Knocking the money back down here for Loud. Yeah, this is devastating. 360 हर्ट्ज 77,000 का मॉनिटर है। उसका देखो व्यू सोनिक का, वो सस्ता आता है। Loud would love a thrifty here. भाई जायदाद बेच के लेना पड़ेगा एक जीपीयू और एक मॉनिटर अब। He dealt with flash to follow up as soon as that knife gets the confirmation. No one peeking off of it though. All the noise in the world being made really. आपकी तो रेगिस्तान में होगी ना खूब जमीन। Should be able to get himself out of there with a satchel. क्या बोलूँ अब? Okay. We need this round guys, we need this round. QCK को और मिला दो, अच्छा और उसने शायद पहले ही ले लिया होगा, और वैंडल पे उसको अल्टी करा दो यार, ये राउंड निकालो कुछ भी करके। साड़क भाई 100% ऑफ द ब्रेन यूज कर ले, मुझे नहीं पता, मेरे को ये राउंड चाहिए भाई, वरना मैं नहीं सह पाऊंगा भाई, एक और हार नहीं सह पाऊंगा। Holding the corner, like you said, there's a smoke now. Yeah, now it is possible to go and get that. So they're calling for a reclear potentially of their own wingman. Rajasthan से खेत बेच ले। Yeah, somebody's in elbow and also pushed up close. That gives you a good idea. It's going to be a re-hit. Tenz takes the fight. अरे वो, अरे उसको कोई तो आओ उसके साथ। To get the punish. Through those shots now, they're worried about the TP close to the corner here. But it's all just feigns and fakes on top of each other. There's only 25 seconds left. What do you go for here? I mean, a pause into the play. भाई बेलमेंट में भी सेम केस है। Going for a re-hit. Celsius is in a committed position. Really committed. It's the first phase coming through. It's just the players of the Sheriffs, and they're all going to be falling now. Fully crumbling. Less. The one with the rifle makes a decent job, a decent go of it, but now 2 more rounds for the lead here. Sentinels. Loud look a little Just lost in that phantom spot, though, things. man. That was a bit of a disappointing round. एक leg shot, एक I wouldn't be headshot. surprised to see them take the timeout, and I think they have actually. But they call a pause in the round there, right? On their attack side. But there isn't really a threat that they could be going for the hard rotate. Because Yeah? John's still got up all of his Cypher utility. He's got a cam deep in B, Kaun? he's got a trip for market, and the players over in A-Link know that there's nobody looking B. ये 3 किल छोड़ दो, 7 What किल बचा exactly पूरे is Sen मैच। going to be afraid of? Especially when the wingman catches contact. ये 3 किल के लिए मैं ओवरऑल बता रहा हूं, चलो ये गेम उसका बेकार भी हो सकता है, बट मैं वैसे बहुत इंपैक्ट। Yeah, and on the other side of things, Sen building up that confidence, making sure that everybody's on the same page. मैं पानी लेके मैं वैसे फैंटम चलाता है जेएनजी वालों की So तरह, this जैसा आप कह रहे next थे तो rifle चला कि round, it's a फैंटम। perfectly timed tactical timeout. Because this next rifle round is going to be extraordinarily important. इसी राउंड पे पूरा गेम है, इस राउंड पे पूरा गेम है, क्योंकि QC के अल्टी भी है। ये राउंड पे गेम है पूरा भाई, ये राउंड जो जीतेगा वो, मतलब लाउड मैच तो नहीं जीतेगी लेकिन बनी रहेगी कम से कम, और अगर सेंटिनल जीत गई तो मैच जीत गई, फिर खत्म। The upper round 2 of the playoffs. So this is a must win for Loud. Oh, Japan by 614. Put everything into it. Luckily, York's being earned. See that run it back. I mean, it feels like QCK is never without it. He's been earning it at such frequency. All the kills he's been getting, the plants, the orbs funneled into him. But has he been able to find value with it? Yeah, that's the thing. Seems quite offhanded in terms of the way that they do approach to use it, but every now and then you might see it still.
Lassie holding the dizzy. Okay, this time they wait out the knife at the start of the round from Celsius. Right, so Loud have to start a little further back, but they don't give away that there's 2 players. 1.5 लाख में 500 FPS सही बोल रहे थे भाई, कांस्टेंट नहीं आएंगे और हमेशा नहीं आएंगे, जब जरूरत होती है तब 500 नहीं देगा वो, फाइट्स के बीच में और उस टाइम तो नहीं देगा 500. Not been breaking these. And again, acknowledgement there from Dizzy. पूरे फ्लैश के रट्टे मार रखे हैं, कहाँ से फ्लैश वापस मिलेगा. उसका गैक होगा तो आसमान में देख के फेंक दो, आ ही जाता है. Not scared of mid, and they're not scared of market because John's utility is still there. भाई देखो यार 50 सेकंड बच रहे हैं और ले भाई लेकिन जिंदा अल्टी आ गई, घंटा नहीं निकलता ये राउंड. अब नेड भी बचा है, बूम बॉट भी बचा है, ये राउंड नहीं निकलेगा भाई. अरे एक तो पहले से लो था, फिर दूसरा फाइट लेते लेते लो गया और नेट से मर गया. अरे वो रीटेक पे दे रहे हैं भाई. हाँ रीटेक दे रहे हैं ना, अल्टी है तो. साडक के पास अल्ट है लेकिन पता नहीं भाई, अगर यहाँ पे सेंटिनल होती ना पूरे के पूरे पीछे चले जाते, क्योंकि क्यूसी के पे मॉली है, वो मॉली पे खेल लेते. फिर ये लोग क्यों नहीं खेलते मॉलीज पे. चलो नसीब बैक स्टेप चेक किया. Loud get info that there's nobody on the flank. Yeah, exactly with that dart. Around now, and that's a Hunter's Fury to add even more time pressure. Ult committed and stuck. Tenz is forwards. He wins his fight. That is ridiculous. Still with a paranoia, now to showstopper. Seeking to commit this one. Where these players might be, but the first tap at least forces out the ult. Rocket flying. Again clears the one, but on top of this corner, top of the box 2 years. Has to reveal his hand, spraying it through. Guarding, blocking. बोला था ना ये राउंड गया है, नहीं जीत सकती. And he's won the round for his team. Despite the heroics of Sadak, not enough. Loud versus Loud versus PaperX. हाँ लाउड पेपर How एक्स. close these rounds are getting. Oh my god. But also, how on earth is SEN even in position to do that? Tenz sticks the ultimate, gets caught by a player. अरे यार ये फैंटम यार. There is no way you get that kill from Vandal. अच्छा 0.37 पे डिफ्यूज हुआ है. Even when Loud have openings, good job, Zach. SEN are still finding their way through. And I said that was going to be the important round. यार बहुत जल्दी अल्टी कमिट कर दिया. Dire Straits. और अल्टी नहीं है अभी. उसी के मर गया ना, उस चक्कर में उसको जल्दी अल्टी करनी पड़ी. फिर इको आ गया भाई. वो थोड़ा सा और अगर 1 सेकंड लेट करता ना, कि वो क्या कहते हैं सोवा, वो निकल जाता राउंड. Yeah, this is a very different flavor to the round. The problem is the weaponry is just so advantage towards Sentinels. Loud have finally got a better macro idea. Still might be some danger. Two players spotted. One tagged up here. Shock darts now. थोड़ा और यूटिल. अरे मॉली पहले ही करनी थी यार. Dropping around. Molly there. Oh hello. Trip. Tenz lit up entirely. Looks that paranoia. That one way. Less than ideal. What a good execute. Finally something good. Yeah. SEN couldn't figure out how. देखना पांचों मरेंगे, देखना अभी लाउड के एक एक करके मरेंगे. एक भी नहीं मरा. कुछ भी बोलते हो तुम लोग. क्या यार वेजी पर कोई मतलब नहीं है. अभी तो 11-11 यहाँ से सेम सिचुएशन से सेंटिनल्स वो ले गई थी ओटी. क्या ये ले पाए जा पाएंगे? उन्हीं के अगेंस्ट काम कर गया वो वन वे. उसी के अगेंस्ट काम कर गया. वो तो अरे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे. वहाँ एक तरफ मार भी देता वो उधर, तो 4 तरफ से बंदे आ रहे थे. Yeah, you are right. Losing control of that one. So Sentinel's going to be using this timeout now to discuss precisely where. वो ड्रोन नहीं करता ना भाई. Potentially putting more of an emphasis onto it. Again, Sadak, world class caller this guy is. नहीं ड्रोन तो हमेशा क्लियर करते हैं वो पूरा मेन. As well with the aiming department, at least for this map. मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ even expecting. हार रहे होते हैं थोड़ा तो. रहने तो कमेंट्री तुम भेजी भाई. I think from Loud though, this timeout is also going to serve them. They've been struggling to deal with what SEN have been throwing at them. And I think it is possible that EDG has given them a serious clue of how to adapt in the game.
Sadak is normally so good at coming up with those adjustments late on in a map, late in a half, late in a series. वरदान He's not one of the guys to run out of ideas. So let's see what he's brought to the table coming out the back of this time. भगवान से बोले कहते क्या कहते want to try to take the game to them perhaps. We can see them pinging out the mini map over towards A. And Zekan set up for an earlier fight, something he hasn't done. मॉडर्न जीजी रैंक अप तो नहीं होगा आपका। ऐसा कोई बोले तो उसको उड़ा दूंगा। रैंक अप तो होगा, मेरे सारे सब्सक्राइबर का रैंक अप होगा भाई। मेरा भी हो गया, अभी A3 वापस आ गया। One player tagged there, and it was Sadak, who does sometimes play alone on the opposite side of the map. डेविल हियर, वेजी भाई तुमसे रजत भाई बात करना चाहते हैं कुछ। कौन रजत भाई? रजत दलाल। Big one. Pre-fire and hope. खाली मत दो। The shot there onto the market trip, but the dice still remains up. So John continues to provide great info to his team. Hello. Oh, Zekan got for the repick there with the thrash. He's punished. Yeah. Zekan's been neutralized, to be honest. As much as Kalanzin was bigging him up at the halftime, you know, in the segment talking about those, Sentinel's strengths, they have managed to neutralize the star player of SEN. म्यूजिक वीडियो निकालनी होगी। They dodge the knife again. This is going to give Loud the perfect timing to go intercept. Can they pull out some magic? मैं कह रहा हूँ म्यूजिक वीडियो निकालनी होगी। Here's it. Has to respect it now. It's running away just to get the hell out of there. It doesn't break the drone either, so it clears out the site entirely. No command. Let loose. Let rip. Celsius. मुझे लग तो नहीं रहा। Wide now. Cross onto the side. Not going to be letting them use जिंदगी that यूटिल करने neutral नहीं plan. है Stuck here by भाई। देखो एक किल ले गया वो, Callanzin. कहाँ से पिक मिल गया? लेस का उसको लड़कर डाउन मतलब। That's been removed. That's one of the star players going pound for pound, just removing this one, and a call is made. अरे वो क्या? Taking it straight to भाई इसका यूटिल यार, अरे भाई मैं तो तंग आ गया। किसी के कुछ जादू कर भाई, भाग भाग के मार दिया उसने। देख he's miles away. The knife gives them every single bit of information they could want. Skipping a hop, dodging round. अरे इनकी फैंटम नहीं चलती ना, इनकी किस्मत। मैं बोल रहा हूँ नहीं जीत सकते भाई, किस्मत है इनकी पूरी। किस्मत क्या होती है भाई, हार्ड वर्क पर स्किल जाए। I was looking at the minimap the whole time at Tui's positioning. He looked his way fully through B main, walked all the way into Boba, going round the world. अरे भाई वो एक एचपी में मार गया यार साडक को। Yeah, it definitely looked like bullets were headed in Tenz तू इसको गाली दिया होगा साडक, पक्का पक्का गाली दिया होगा तू इसको। But it's better to be lucky than good. W कल पहला मैच है जेएनजी वर्सेस सेंटिनल, जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूं, और दूसरा मैच है लाउड और पीआर। Sliver of an angle, just holding it ADS, but he does not get what he was seeking. यार मुझे तो अब पीआरएक्स की हालत देख के ऐसा लग रहा है लाउड भी जीत सकते हैं। इनको स्पाइक पिंग करना नहीं आता क्या आर्यन भाई? सिल्वर प्लेयर स्पॉटेड। My team struggling to come up with an idea. I am going to make the play to win. ठीक है भाई, आर्यन भाई ओके भाई। आयरन भाई समझ रहे हैं आप गेमिंग में नहीं हो। अब तो समझ गए कि गेमिंग में नहीं हो। बस आपने उड़ाते रहे, तोते उड़ाते रहे बस। बस डाल दिया, छोटू डाल दिया। भाई या तो फ्लॉलेस निकालते हैं या पूरे हक देते हैं। Probably just going to say, I mean, look at the economy of SEN. प्रतीक भाई क्या बोल रहे हैं? It feels like SEN are in control, and yet you look, because they've died so many times while winning these rounds, they don't have an economic cushion to rely on. Yeah. So John keeping this weapon online, it does end up being really important. It's common the entire time. You can see it in the scam. अभी ये वेंडल सेकंड को दे देगा, देखना। सेकंड भाई प्लीज। And really the big difference that round is that Les just found an opening up through L. भाई मेरी चैट इग्नोर ही करती है, करो। Not sure exactly how he's managed to find that read. That SEN had nobody playing there. Perhaps even if people were playing there, he was happy to take the fights. यार मैंने जस्ट चालू किया था, मुझे इस गेम की कुछ पता ही नहीं था इस एपिसोड 3 में तो। पता नहीं भाई, पता नहीं। पर हाँ बीच में
पहले वो था इमॉर्टल डायरेक्ट हो जाता था डायमंड के बाद ही। हाँ और इमॉर्टल 1 2 3 भी नहीं होता था बीच में, ऐसा भी टाइम आया था। ऐसा कुछ तो सीन होते रहते थे बार बार। नहीं वो 2 बार चेंज हुआ है, मतलब इमॉर्टल 1 2 3 वाला वापस हटाया था, वापस डाल दिया, ऐसा कुछ तो। वो साला 1v4 अभी भी दिमाग घूम रहा है भाई। उस 1v4 के बाद तो मैंने रिकवरी कर ली थी, उसके बाद उन्होंने मेरा और दिमाग घुमा दिया है। अभी जो 1v3 3v3 हार है उसमें दिमाग घुमा था। मैं वही बोल रहा हूँ, एक बार ब्रीच की अल्ट ये नहीं यूज करेंगे ना तभी जीतेंगे राउंड। पोस्ट प्लांट ही काम आएगी ब्रीच की अल्ट। वैसे ये रीटेक पे खेल रहे हैं, शुरू में करने की जरूरत भी नहीं है। वो तब भी कर दी थी ना अल्ट, वो नहीं करते तो भी चल जाता। क्यूसी के फ्लैश पे खेलो, फ्लैश अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जा, मैं बोलूंगा, रुक जा, कॉल दे रहा हूँ तुझे। अब कर, सुन रहा है बस छोड़ दो छाटक भाई। आरएनजी भाई, आरएनजी के भाई, पूरे आरएनजी भाई। क्वाउजिन फर्स्ट टैप पे अल्ट नहीं करनी है क्वाउजिन, ठीक है? फर्स्ट टैप पे नहीं करनी है। प्ले बना रहा था भाई। हु आर यू पीकिंग ब्रो, हु आर यू पीकिंग? क्वाउजिन ने अल्ट ही नहीं करी। बहुत भाई, बहुत बढ़िया भाई। हाँ पर फिर भी अरे लेस स्केल तो प्लांट तक भी नहीं पहुंच रही। भाई थैंक गॉड छाटक ने ऊपर, पता नहीं टीटी की साउंड आ गई उसे इतने केओस में कि क्या था। आपकी सुन रहा था इसलिए मर गया भाई। तो वो ऐसे भागेगा स्टिंगर लेके, ऐसे पूरा भाई कैसे ट्रेस करेगा भाई, कैसे ट्रेस करेगा ऐसे उसको? ऐसे भाग रहा है भाई पूरा इधर उधर वो स्टिंगर लेके, क्या करेगा वो बेचारा? Sentinels playing with their brain. Kawanzine has a huge ultimate online and Sentinels are wary of that. I'm not sure what kind of adjustment Kaplan wants to make towards the end of this. I would imagine that they want to use that little elbow passage that Les was able to find for them in round 22. But to be honest, a lot of the game plan has still been working here for Sen on defense side. John's been able to find so much value from this Cypher setup. You know, if you're able, there aren't actually that many tools with Loud's composition to be able to get through it. There's obviously the trips or the shocks or an after shock, something like that. But Loud have not been meticulous in making sure all of that is eroded away. PaperX versus Sentinels देखने को मिल सकता है क्या? तुम बोलो मत अभी, मैच देखने दो मुझे। On the attack side this time. इधर बाय है क्या? फुल बाय है और सैची की अल्ट है, सेकंड की भी अल्ट है। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे राउंड निकालने के लिए सेन को नहीं, लाउड को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ क्वाउजिन की अल्ट पे कुछ होगा नहीं मुझे लग रहा है। ब्रीच अल्ट तो मैं वैसे भी मैं कुछ काउंट नहीं करता उसको अल्टी भाई। पहले तो बेकार है। नहीं वो सिर्फ प्लांट से उठाने के काम किए, बाकी तो उसमें वन टैप पड़ जाते हैं। Paranoia used off the rip from Tui's to make it feel like they're taking early B main control. I think trying to prompt out some kind of aggression in A main and see if they could punish it. Maybe even hoping that second Hello Aryan Singh, and they could get that. ब्रीच के का वो तो उसमें होता है। It really feels like they're trying to मुझे लग रहा है अल्ट करने से पहले ही मर जाएगा, देखना। Second assassin, you're not taking a risk like that to throw away their chance of winning the match and going to beat Gen G in the uppers. PRX के सामने करेगा। अरे रोहित भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फास्ट एग्जीक्यूशन से क्या होता है वो बताता हूँ, ठीक? इस राउंड के बाद बताऊंगा। अपना रैंक मैच नहीं है, यूटिलिटी बेट नहीं कराओगे ना सामने वाले की, तब तक आपकी फास्ट एग्जीक्यूशन से कुछ होगा नहीं, क्योंकि फिर वो रीटेक बहुत इजीली कर लेंगे। रीटेक में पूरी अल्ट बची है तो क्या मतलब है फिर? Ulted up, stunned up, will be brought down in the end, so the trade is online here, and a call is made for Sen to scatter, backing away, playing for the retake here. अरे वो अल्ट छोड़ दिया प्लांट, अरे भाई वो क्लोज आ जाएंगे यार। अच्छा रन इट बैक है, अभी कर तुरंत लगेज कर अभी कर दे प्लीज, अभी कर दे भाई। अच्छा वो सप्रेस हो गया है, सप्रेस हटते ही अल्ट चाहिए भाई मेरे को, बहुत बढ़िया। हक दिया फ्लैश हक दिया। सैची यू हैड वन जॉब, फ्लैश एक और फ्लैश, टाइम बाय कर। 2 is you get 1, 2 is gets 1, 2 is gets 1।
QCK, we have one more flash. The upper second shot goes flying हाँ, wide. क्लब कर दिया उसने flash, कर दिया उसने flash. Very good twist, very good bro, very good. Time running against them, the rifles have to sink. Nice round bro. But it will not happen. Overtime once more. हाँ तो अब कल फिर PaperX और उसमें कितना सपोर्ट कर रहे हो आप सेंटिनल से भाई. These late adjustments on Icebox and now on Sunset to be able to get into overtime have just been marvelous. And this with Can you Tenz being please able do to it get bro, the or first should I kill watch onto someone left to else? start with. What do you mean? But that punish at the back of the What do I have to do? Rolling Thunder was so important. Can you reduce the voice of the guy who is speaking in VC and passing irrelevant comments? Okay, okay, I will. Didn't get away with any shenanigans like that this time. Sorry, Aryan bhai. No ops being bought in OT. So no craziness just yet. एपेक भाई को म्यूट कर दो. एपेक भाई को खुद ही समझ जाना चाहिए. भाई बेकार भाई. इतना चुभने लगा वो कर दो ना आपका. इतना चुभने लगा कहीं काटा तो Dart's going to be fading away. Sen happy to wait it out for the initial 10 seconds. Smokes are propped up. Yeah, going for their defensive setup where 2Es is the player holding aggressive over towards A, so they frequently leave 2Es alone in these spots. हाँ ठीक है, तो अब मैं एक बार रीड कर लूँ क्या चल रहा है. 5 प्लेयर इधर हैं, ये लोग मिड ट्राई कर रहे हैं. उसके ड्रोन में कोई स्पॉट नहीं हुआ है. ठीक है, तो अपने पास अभी कोई इन्फो नहीं है. QCK की फटी पड़ी है, मार्केट भी देखना है, मेन भी देखना है. ये लोग 5 मिड में और ये A स्प्लिट कर रहे हैं. ये मिड से A जाएंगे, ठीक है समझ गया. और क्वाउजिन के पास अभी इधर आ चुका है. ये उस पे स्टन है क्या? नहीं है. ठीक है, फ्लैश पे खेल सकते हैं. द मोमेंट he sees the omen ओमन. अच्छा हुआ कि क्वाउजिन ने ओमन स्मोक नहीं दिया, देखा, वरना वो देख के वो कॉल देता. ये लोग कुछ तो प्ले बनाते, उसमें गलती कर देता. अभी जितना टाइम बाय हो रहा है ना, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है. इनको स्टॉल कराओ इधर ही. क्वाउजिन पे अल्टी है, आफ्टर शॉक सब अल्टी क्या मतलब, पूरी यूटिल डाल दो, पूरा पुश करो इनको पीछे. अब प्लांट ही नहीं देना भाई. और ये लोग तो रीटेक खेल रहे हैं 5v5. अब QCK पे दोनों फ्लैश हैं. आफ्टर प्लांट उतना काम आएगा नहीं, QCK का फ्लैश है. Going down here, but sort of util after shot breaks it. Nice 12 one. seconds time really against them. Snake bite drop down loud. This is them with a chance to really gain some ground. अरे क्वाउजिन अकेला कहाँ रहा है? You understood it as a win con and just decided to take अरे the वो risk शायद anyway. सोच रहा था कि बस प्लान ड्रॉप करा दूं. अरे गया राउंड क्वाउजिन. Double face though, util sentinels barreling through, finding their own timings, gifted with it, spamming through. Sadak left in a 1v2. Second making the wraparound to A-Link. Sticking this one half onto it, half onto the defuse. He's bought himself a little bit of time, a window potentially, but he just needs a kill, and he's not being given it. He's not being given it. No one will give him an easy one. And face together. Would have won that. They have pulled that one यार back क्वाउजिन from उतना बोल्ड प्ले की जरूरत नहीं थी यार. 4v5 हो गया identification that was था. an A hit. And the fact जाना that था तो सबने जाना था यार, सबने जाना था भाई. and put pressure on the plant. That almost won them the round. You saw Cow and Zine just barreling over the top of the mosh, trying to end the round instantly. फ्लैश उसने वेस्ट कर दिया था, मतलब उसने डॉज कर दिया था. किसने? सेकंड ने ऊपर जो चढ़ा होता रेज. हाँ सेकंड ने. नहीं नहीं यार, सारों को पुश करना, क्योंकि आप वाइपर मॉली में घुस रहे हो ना, उस पोजीशन पे मरोगे यार. हाँ वही बोलो ना, सारों नहीं करना था यार. तो Match point, map point, series point, whatever you want to call it here. It's Sentinels in that driving seat. This time, John Cutie hasn't put a setup for mid control as well, or mid information. So he's got the cam in market, but he is going to need to rely on other people. नहीं, खेल तो अच्छा रही है, बात तो है भाई. बिना खेले इतने मैचेस नहीं जीत सकते हो भाई आप. लाउड जैसी टीम को बार-बार आप इतना लिमिट्स पे नहीं पुश कर सकते भाई, बिना अच्छा खेले. वो मैं बोल देता हूँ किस्मत विस्मत पर सब कैलकुलेशन है, थोड़ी बहुत है किस्मत, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है. और साथी भी यूटिल कर रहा है, तो भाई यूटिल पे ही खेलेगा ना, रैंक मैच थोड़ी चल रहा है. वो तो मस्ती में बोलते हैं भाई ये सब. Can't account for the 2 spots that he could be peeked from. The flash in his face was not turned in time. Doesn't make a footstep though, so they don't know exactly where he's positioned to punish him. Moves his way out. Cam broken there from the shutdown, I believe. They're going into the heavy B setup. Into it indeed. Potentially into the jaws of defeat. Zekken
He's found his slice. Sadek removed, and now confusion. प्लांट भी नहीं देंगे, देखना अब देखना ये कैसे डिनाई करेंगे प्लांट, देखना देखो अभी अल्टी आ जाएगी सेकंड की ये किल पे और तुरंत अल्ट खोल देगा। अल्ट नहीं आई, आ गई थी, मर गया वो तो। प्लांट ही नहीं होगा, प्लांट ही नहीं होगा। पैरानोया भी बच रहा है अभी तक। जी जी चलो अच्छा मैच तो दिखा दिया कम से कम इन्होंने। मजा आया मैं पिछले बार भी सेंटिनल जीती थी दिविन भाई। But SEN were resilient the whole way through with huge performances coming out from multiple players. Sassy's 1v3 absolutely instrumental. लेकिन की हाइट कितनी छोटी लग रही है इन लोगों के सामने। हाइट छोटा है। John called a great game the entire time and was fragging too. It's not over for Loud, of course. They are no strangers to taking the long road in tournaments like this, but SEN for the moment on top in this region. भाई मुझे नहीं देखना ये बाय द सेन बंडल वाली चीज भाई। मैं कुछ और देख लूंगा उसकी जगह भाई, मुझे नहीं देखनी वो चीज। देखो वेजी बॉय लाइव है, उसको देख लो। फाइनल अभी नहीं है दोस्तों, फाइनल में टाइम है। लाउड वर्सेस पीआरएक्स में किसको सपोर्ट कर रहे हो? पीआरएक्स को। प्राइड ऑफ ऐसी है। Sunset too. It was really working, and it was different things that were working as well. We didn't really get to see that A retake coming out with all of the flash dizzy combos. Yeah, these teams are constantly evolving. Arquauzin push नहीं करना था, वो team में round में constantly going to be adjusting what to look for here, but Contract so tightly of pledge matched between both of these teams. I mean, SEN barely able to get it over the line in that OT. What an absolute world-class series as well. I thought map one, I mean, we might have just been chalked, man. Yeah. Early finish for the day, but no, wasn't the case as well. And we're just getting the players ready for an. अरे फाइनल नहीं, अभी टाइम है भाई, अभी टाइम है फाइनल को। Professional yappers, but listen, we don't like to do it for too long. अपर फाइनल होगा, ये जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा अभी, फिर ये जो हारेगा वो यहाँ खेलेगा और इन दोनों से जो जीतेगा वो लोअर फाइनल खेलेगा, फिर वो फाइनल में जाएगा। I do think we're set up for this to possibly become the preeminent rivalry of. I agree. Maybe of the global Valorant circuit, but certainly the American circuit as well. Definitely. The chances of a matchup दिया सासी को भाई, are also entirely possible. They don't count Loud out at all. Yeah. But both of these teams playing their heart out today, and SEN also showcasing that even on some of their weaker maps like Icebox, they're continuing to add to their playbook, to the strat book. Icebox में तो खेल ही नहीं रहे थे, मॉली कर रहे थे बस, कुछ बोलो मत तुम। सही बात है, वो मैप ओटी गया तो आज के मैचेस खत्म। हाँ भाई, जेनजी सेन कब है? वो कल होगा ना, देखो देख लूँ एक बार, मेरे को थंबनेल भी तो बनवाना है। बाईस को, हाँ मतलब 2 मैच है कल, 2 मैच है कल। 8:30 बजे पेपर एक्स और लाउड है, और यही सेम टाइम पे सेंटिनल्स का एक और मैच है कल 11:30 वाला जेनजी से। अगर जेनजी को भी हरा दिया ना सेंटिनल्स ने, फिर तो फाइनल कराने ही मत, उनको डायरेक्ट ही ट्रॉफी दे देना भाई। चलो कॉल आता फिर आपके जलाने सेन, क्योंकि कल भी जीतेगी। दिव्यम भाई को आजकल मेरे से बहुत दिक्कत होने लगी है, मेरे अगेंस्ट भी ये कर रहे हैं, मेरे क्यू स्नाइप भी कर रहे हैं रोज़ रोज़। ठीक है दिव्यम भाई, कहाँ जाओगे? किसी दिन आएगा मेरे पास भी मौका, बराबर लपेटूंगा आपको। आना दो 240 yards। 240 तो नहीं आ रहा भाई अभी। Match found.
Death match. Warm up. आपके मन से गाली है एकदम मेरे लिए. गाली तो नहीं देता हूँ ना. रेना दिव्यम भाई है क्या? My advice? नहीं कोई और. Don't get shot. गुड नाइट आर्यन मलिक. Fight. दिव्यम भाई आओ भाई कॉम्पी खेलोगे? Kill. मेन आईडी से आना. Go away. वृंदावन जा रहे थे. इतने बंदे आ गए भाई. Bad move. That's 3. साला नोट. What? Hello technology. Dominating. अब तो मानते हो ना सेंटिनल? नहीं. That's 3. Nice try. Pledged his. क्या? Back off. राहुल भाई टेक्स्ट इग्नोर नहीं. आप मैं चाहता हूँ आप जाओ ना स्क्रीन से. इसलिए गुड नाइट नहीं बोल रहा. Alice. Taken out. Yoru's down. ओके दिव्यम भाई बाय बाय. Get lost. बहुत सारे राउंड थ्रो. वो हमें लगता है थ्रो है भाई. Smart move. बस वो सासी को जो बार बार क्लच दे देते हैं ना वो लोग. ये लोग बहुत पैसिव खेल रहे थे. बस वही गलती कर रहे थे और कुछ. बाकी ओटी तक ले आए भाई. 12-8 से सेंटिनल्स के सामने सनसेट पे जो ओटी ले आए बहुत. बस वो क्लाउडीन का जो पुश था वो. हाँ वहाँ पे अगर फ्लैश भी होता ना. फ्लैश उसने पहले कर दिया था मॉली से. उसने फ्लैश के बाद मॉली कर दी तो उस मॉली के बाद दौड़ के आ गया और अकेला आया. Kills remaining. Over again. Bye bye. 5 kills remaining. Dominating. Go away. That's 3.
kill remaining. One left. कॉम्पी खेलने का बहुत मन कर रहा है. Yoru's down. What did I say? Don't mess with me. खेल लो. सोलो नहीं करना और मेरे को भी थोड़ी नींद सी आ रही है. वो ब्रेक ले लेते ना, इतना 4 घंटे से मस्त चिल मैच दिख रहे थे. सभी 27 वॉचिंग है. स्ट्रीम स्टार्ट से हूँ और अभी तक 2.67 ही बढ़ा है. हाँ यार, वो पता नहीं स्ट्रीम लैब्स कैसे कैलकुलेट करता है. कॉन्स्टेंटली चैट करते हो तभी वो शायद काउंट करता है, ऐसा कुछ तो होता है. वेजी भाई, कीबोर्ड के कीज कलर अल्ट्रा क्या मतलब? यार वर्ड्स खा मत जाओ ना बीच में, पूरा लिखो ना अच्छे से. उत्तरा क्या लिखा है वो? अच्छा, उत्तरा क्या? नहीं नहीं नहीं. इमॉर्टल पहुंचने के बाद बजना जरूरी होता है क्या? यार अभी तो लिया है गौरव भाई, इतने में तो नहीं उतरेगा सत्या भाई. अच्छा कीबोर्ड है. बहुत ओवर थिंक करते हो भाई तुम लोग चीजें लेने में भाई. बहुत ओवर थिंक करते हो. पच्चीस को पीच का बर्थडे है. हमें क्या फायदा उससे? विश करना है मुझे, याद. मुझे तुम याद दिला देना कि तुम्हें याद दिलाना है, ठीक है? ठीक है. चलो भाई साहब, अपनी ऑल्ट आईडी से लाइक करो. 150 लाइक करने, 24 लाइक चाहिए और.
player standing. Flawless. Just gotta play around the slow fields, and we're fine. Nice. Need healing. Nice. क्या अच्छा They're dead. Last player standing. Here, spike planted. Hello B2Pain. I'm the last thing they'll see before they die. Nice. Average model. 你好，你好，你好，你好。Gun here. Thank you. Thank you. Isolate and exterminate. Yes. Spike planted. Bomb buddy out. Stabilizing. One enemy remaining. 你好。Nice. Blocking sight, blocking sight. Yes. Team Ace. Breaking them. 你好。Show me a target. Last round before the switch. User credits. Yes. 你好。मैंने जानबूझ के नहीं बताया था आपको B2Pain. Satchel out. Satchel out. Deal with my call. Nice. Enemy spotted B. On my way. Breaking them. Grenade! Okay. My ult is ready. Spike down B. One enemy remaining. I'm still here, amigo. Switching sides. भाई आज से कॉम्पी हो गया यार. If I may, I'll go in first. Yes. Thank you Arshid bhai. Gun here. Yes. Gun here. Yes. Nice. Shake them up. There. No. Hey Ram. Grenade! Satchel out. Here. Satchel out.
spotted A. Enemy spike planted. Reloading. Here. One enemy remaining. Just as my playlist ends. आज नो कॉम्पी थक गया यार 6:30 बजे से स्ट्रीम कर रहा हूँ दोस्त. I want their life, not yours. Yes. Nice. खेल चुकी कॉम्पी आज का हो गया. वॉच पार्टी भी इतनी लंबी करी है. लगता है वॉच पार्टी में पता नहीं लगती बट लगती. मैं बोलता भी तो रहता हूँ पूरी देर. सेंटिनल्स को एनालाइज करना पड़ता है, दिमाग लगाना. I need a gun. Their omen will fall. इसके बाद एक और शूट खेल. Yes. Enemy spotted A. Reloading. I dropped the spike. I got the spike. Yes. Satchel out. और 1 सेकंड पहले मैं भाग के चले जाता. बिना भाई सोते नहीं है. बैटमैन है भाई. दिल्ली को कौन संभालेगा फिर रात में. Spike down B. I got the spike. Enemy spike. Focusing. 30 seconds left. Last player standing. What do we learn by fighting ourselves? Thinking out loud. How? I need a gun. Can I get a drop? Thanks. Thank you. Bro, you are real gun buddy. Damn. Are you a developer? Something? Take them one by one. Can I give me one tired gun buddy? ओमेन आता है लेफ्ट में. Satchel out. Gone. आज खेल नहीं रहे हो आप? नहीं नहीं. अच्छा आपको नहीं क्योंकि किसी और को. एक सेकंड. One enemy remaining. Last player standing. Hello, Veggiebuoy. Hello. Big fan, sir. Sight. हाँ क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं. Clutch. नहीं वेजिबॉय कुछ बोल रहा था ना, वही कुछ. Match point. वो जो मैं बोल रहा था. वेजीबॉय आगे कोई बोल सकता है यार. टैब गेमिंग अभी इमॉर्टल 1 है. 10 आ रहा है. कौन?你好.
spotted B. Here was my copy. Bomb buddy out. Watch this! Reloading. Got him! You will not kill my allies! सुने ना, मैं मैच खत्म हो जाने पर आ रहा हूँ, ठीक है? Satchel out. One enemy remaining. Spike down B. Cutting their vision. Last player standing. Yes. Vulnerable करो. Destabilizing. Destabilizing. Stopping fire. Sudden death. Out of charges. We got this. 你好。你好。你好。 अरे भाई मुझे नहीं चाहिए वो वाली. Bro, give me one real gun buddy, bro. Who do you think will win this VCTs, bro? Genji. No way, bro. ERX ये पक्का सेंटिनल वाले होगा. You are Sentinel fans, right? Yes. Yes. पूरा कचरा भर रखा है. Bomb buddy out. Reloading. Satchel out. Satchel out. Breaking down. Enemy spotted B. Focus. Spike planted. Ready then. Here comes the party. One enemy remaining. Attackers win. We survived and we're stronger for it. Dozuela. माइक थोड़ा ऑटोमेटिक नहीं. Match found. Go. Let's go. बेबी रेक को देख के मैं भी नियॉन खेल लेता हूँ इस मैप पे. अरे बेबी रैक my inspiration, but before baby rack, Mini Boo my real love. Mini Boo. Today the meal came to me. Oh, No charges left.
इस पे क्या होता है फिर? अच्छा ठीक। Hello, mister. I'm under the water. Hello, Vaibhav. Welcome to the My stream. bed under the water. अरे भाई, Many enemies, eh? Show me a target. Who else? Enemy spotted A. Spike planted. अभिनव के भी 250 होने वाले बराबर। Last player उसके पहले standing. स्ट्रीम एंड कर देंगे अपन। स्ट्रीम ने भी आत्मा निकाल दी साउंड में भाई रियल। I'm out of here. अरे उसकी काउंटिंग कैसे होती समझ नहीं आता अर्षित भाई। Here we go. देखना तो पड़ता ही है चेंबर भाई। पिस्टल राउंड चालू होते ही फटका खा जाओगे तो सब देखना पड़ता है। मैंने देखा है ना। Go, go, go. भाई खुद तो पहले मर जाते हैं फिर दूसरों को देख के हंसते हैं भाई। रेना भाई ऐसे ही है। Gotta go. मम्मी बचा लो पापा। Spike planted. भाई anyone man, let's go. आपकी पार्टी में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ मैं। क्या? Last player standing. बाय बाय राहुल भाई, गुड नाइट। सी यू One टुमारो। enemy कल remains. भाई कल तो भाई हरा देना सेन को कम से कम यार। और मेरे हार्ट झेल नहीं पाएगा। अरे 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 देखा देखा चेंबर भाई, हमने भी देखा ठीक है। क्या देखा? एक बूमबा टूट नहीं रहा तुमसे भाई। Hit that. Don't get stabbed. Bad way to go. Go, go, go. Keep going in the epi. Let's go राहुल भाई। चट को अब कल आना। Go, go, go. रात है नासा This is होता gonna be रहता है। fun. नासा यार वो क्लोन बार बार One enemy remains. एस था मेरा एस था भाई यार। एस था मेरा आइसो। Last round in the half. आइसो तो इसको जानता ही है। हेलो नेक्सटर, सेंटिनल जीत गए और जेनजी जीत गई। और हाय वैभव भाई कैसे हो? गुड मॉर्निंग। ये कौन है गुड मॉर्निंग वाला? अरे एक और जैन भाई, जय जिनेंद्र आर्यमन भाई, लेट्स गो। इस बार बुंड नहीं भी बच गए। The hunt begins. Party's over. तो आरएनजी वर्ड। अरे नाइट मास्टर एसपेस इवन वन। अरे भाई इसने पूरा दिमाग लगा दिया भाई मेरे पे। भाई योरू ने सारी यूटिल यूज कर दी भाई।
player standing. One enemy remaining. चेम्बर भाई 1v1 में फिर ठग दिया आपने यार। वो निकालते ना आपकी पिस्तौल निकालते ना, क्लासिक क्यों निकाल दी? When we go out there, someone dies. Carry that weight. लेना भाई आप तो एक किल पे, आप तो बोले मत। सोना नहीं, सोए मेरे दुश्मन भाई। नाइफ के उसके 500 रुपए अलग चीज मुझे, ठीक है। I'm out of here. Shortcut. मेरे को तो ऐसा लगता है ये 5 तक पुश करा है इन्होंने। Spike planted. Is that from dead? ये कौन निपट गया? भाई ये तो प्रो प्लेयर मर गया भाई कोई। अरे मर जाओ ना जल्दी से, चेंबर को वेव करते देखो। Last player standing. भाई देख लिया मैंने। चेंबर भाई हमने भी देखा आपने। मैंने बंदा मार दिया भाई, मैंने अपना काम कर दिया चेंबर में। भाई तुम ऊपर तो आओ, तुम तो 0-5 पे बैठे हो भाई। बॉटम प्राइमरी तो बचता है, उसको ही तो राइट है सारा। तेरे को पता नहीं है क्या, ब्रीज पर नियॉन इंस्टॉल होकर को बजना ही तो होता है। ये तो रोल होता है हमारा। I'm ready. वो हर मैप पे यही होता है काम। भाई देखो भाई, मेरे को तो सिखाया था भाई, ये जो रोल होता है वो फिल करना चाहिए। इंस्टॉल होकर मरते हैं बस। देना गार्डियन की स्किन दूं? Need a drop. Thanks. रहना ये गार्डियन, ये लेवल रिवर से बेटर है ये। They're not better than me. अरे ये बेटर है ब्रो। मेरे को दे। तीर लो, मैं ओपोनेंट में किसी ने होप लगा दी, मजा आता है। Go, go, go. Wait, what's this? My ult's ready. लैग लग रहा है। बोलना तो नहीं चाह रहा बट अच्छा ओके। Last player standing. फैन फाइनलिस्ट सेकंड नहीं अभी नहीं। कल जीतेगी तो फाइनल में चली आएगी चिन्मय भाई। One enemy remaining. Their lives are so meaningless. Might as well give it. हेलो शिवम भाई। रेना येलो इधर आओ। Need a drop. Thanks. हवाबाजी। ए रहना एक बार इसका वैंडल दिखाइए मेरे को कुछ अजीब सा लगा दिखाइए। Mine right now. अरे दिखाना वापस कर दूंगा। There. Show me a target. Enemy spotted me. Enemy spotted me. Reloading. Oh yeah! Monster on the loose! Enemy kill. One enemy remaining. भाई ये दल्ले इतना स्पाइक रश में क्यों बज रहे हैं? Reloading. पता नहीं। Spike planted.
राइटर पे राइटर ही है। Clock sticking. ये लो आपकी फेवरेट फ्रेंड। वेजी भाई किधर हो? आपकी फेवरेट फ्रेंड इसके अंदर। Gun here. हाँ लाउड के चांसेस है ना, बाहर नहीं हुआ है आज, जो भी हारा है वो बाहर नहीं हुआ है। कल पहला मैच जो हारेगा वो बाहर, सेकंड मैच जो जीता वो फाइनल में, और जो बाकी दो टीम बचेंगे उनका फिर परसों मैच होगा। Who's next? Be faster. Go. अच्छा वो यूरो की साउंड आती है। I'm out of here. Blocking sight. एक flank. Flank देखो, flank अपना. Take this. Spike planted. प्लान क्या है? My ult ready. One enemy remaining. No target left. There you go. My ult's ready. What's this? Sudden death. Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. Gotta go. वेजी भाई मेरे को ऑपरेटर दिलाना और आप वैंडल नो शील्ड करो। Need a drop. Need a drop. Need a drop. Need a drop. वेजी भाई एक ऑपरेटर के आगे भाईचारा आ गया। कौन भाई भाई? अरे कंट्रोल जेड नहीं हो रहा उसके आगे। और अरे भाई इसने वाइट पिक दिया। Spike down A. Last player standing. Defenders win. ऐसा बज ही रहा होगा अभी तक ना। चले गए क्या सोने वेजी भाई? नहीं नहीं, तो प्ले में खेल रहे हैं, वॉच दिखा रहे हैं गेम प्ले लोगों को। टैक्सी म्यूटेड हो। हेलो। स्विफ्टली में सेक्सी गेम प्ले दिखा रहे हैं सबको। आइए Match found. अरे कॉम्पी क्यों नहीं खेल रहे? थक गए शुभम भाई, 6:30 बजे से लाइव। आपकी स्ट्रीम में मेरे गर्दन चटकने की आवाज आई। क्या करूं? मुझे अच्छा लगा वो सुन के। क्रिस्प ऐसा लगा क्या तुम्हें? Yes, sir. गड्डी मेरी लो, मैनू देखो गौर नाल।
आया था फ्री में मिल रहा था वो हैं जी कॉइन मतलब गोल्ड कॉइन को लेकर कर रहा हूं नॉट फ्रॉम मनी फ्री में वाला तो fucking अभी everyone have हां अरे सबके सो इट वाज बेसिकली आई थिंक 25,000 coins or something The lies we've told this city. Just to pry it open and suck it dry. Reloading. 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 Bye. Reloading. Spike down A. Party's over. क्या बहन जो One enemy remaining. Last अरे player बैक से आ standing. गया Oh, main. Spike planted. लोड़े पकड़ो हुक्का गुजा ये हॉल सॉरी चाकू रखो ना आदमी घूम के जाओ उसके मुंह पे Fire needs oxygen. Let me replace this phoenix's air. बज लेते ना रेडिएंट बोल देते मजा आ जाता Immortal 2 बोल दो Immortal 2 बोल दो Keep up. अरे फट गया My ult's ready. Spike drop. I have the spike. One enemy remaining. Reloading. Aw, thought. Blocking sight. The enemy only looks composed. Their heart's tell a different story. Weapon here. फिर वैंडल ड्रॉप करिए आपके लिए बेस पे Gun here. हल्ड कर रहे हो क्या आप? है मैंने एक और बाय कर लिया अरे छोड़ आदमी में अमीरों के ऐसे मेरे को बंडल भी बाय करता है Blocking sight. अरे इस झाटू ने ना मॉली कर दी वाइपर ने One enemy remaining. I have the spike. भाई ब्रिम इतना लकी है उसने पिस्टल राउंड में भी वही से दो मारे
Spike planted. रीना को रैंक पूछो ना. Last round before the switch. We lose everything after this. Spend it. ए भाई पर गंदी अपना मैंने राइट बड़ी देखा तेरे पास. ए स्ट्रीमर ए वाइपर हेलो वाइपर हु यू. Whose red buddy is this? Hold them under. You're dead. इसका है जेट का Hold them to the grave. Nothing there. अगली बार डेडलॉक मत खेलना कभी. Spike down B. Fire in the hole! No escape. Last player standing. Flawless. Lol. Easy oh भाई. Switching sides. Their death demands our attention. ज़्यादा बोल रहा है अभी ना मैं. Are you famous? This jet is super fast. I know this guy. Let's go. अरे ये हमको शॉट दे रहा था बड़ा. भाई पर आप कॉम्पी में कैसे खेलते हो अगर स्विफ्टली में ऐसे खेलते हो तो? वॉली कर रहा है भाई. खेलना एम पे भाई क्या. Spike planted. अरे भाई इस पे तो थोड़ा ना. One dead. Wall raised. अर्शित भाई ज़्यादा बोल रहे हो. बज रहा है क्या अर्शित फिर से मैसेज? हाँ कह रहा है आप लोगों को खेलना आता नहीं क्यों तुम्हारे साथ आया था बार पार्टी में. बताओ ऐसा कैसे बोल सकते हैं बिना. यार ओटी में कैसे वो यार क्वाउजिन ने पुश कर दिया यार. स्टिंगर देख के याद आया ना आपको. छोड़ो सैसी को 1v4 दे रहा है. मैं अभी तक ट्रॉमा में. Spike down A. भाई हील दे पहले. Healing. Barrier created. स्मोक जाने दो. We turn to dust. My ultimate is ready. रहना भी क्लोज. One enemy remaining. इधर ही. रहना भी उधर ही है कहीं. Here. Your duty is not over. Back where I belong. Reloading. रुको आरएनजी करते हैं इसको जैसे सेकंड करते. All enemies. मैंने भाई आपके लिए कुछ लाया हूँ. Match कुछ point. महसूस कर रहा हूँ. Add a tally to the board. अकेले में नहीं बस. अब मेरे 100 आर हो गया. अब मैं बजूंगा. किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई. किसी को फर्क नहीं पड़ता अर्शित भाई. सो जाओ. भी होल्ड करेंगे.
ले भाई कॉम्पी वाला दिमाग लगा रहे हैं तुझे। अरे आने दो। करो करो करो। अरे लौड़े जल्दी करना, आधे घंटे से लेके खड़ा हाथ में उसको। जाओ ये भागो अब। ले प्लांट सब पाई ड्रॉप हो गया, दोनों इधर ही, दोनों इधर ही है भाई। सेज तो एमर है भाई। Last player standing. टप्पा मान जाऊंगा अगर राउंड निकाल दिया ना। टीपी कर गया वो। कर दिया Spike planted. Joke's over. You're dead. ई हॉल से करिए। और इस बंदे को साउंड सेंस ही नहीं है भाई। आपको प्लांट के बाद ई हॉल में साउंड दी थी उसने। कहाँ शावर में ढूंढ रहे हो भाई? मेरे को आ गई थी यूएल में साउंड, बट मैंने वो एक कान में लगा रखा है। चल 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 चल। एक कान में लगा रखा है, दूसरे कान में क्या ले रखा है फिर? अरे यार ड्राफ्ट वेस्ट हो गया भाई। ये तो आयरन मनी है भाई, रियल भाई, लेजिट। The hunt begins. अरे Spike down A. ये जब से वीरश कर रहा है। अभिनव है क्या? हाँ अभिनव है आदित्य भाई। बॉटनव है। Last player standing. मान जाऊंगा राउंड निकाल दो भाई। Spike planted. इतने बड़े-बड़े केस में आ रहे हैं। छी भाई तुमसे एक राउंड तक नहीं चला हुआ। Sudden death. Okay, we know need a drop. अरे टीपी पे लगता मेरा ड्राफ्ट, ऐसे ही लगा दे तू। This is our home. Keep them out. Blocking movement. सुनकर होल्ड डाल दो। अबे चल वे, तेरे से 10 आ गए। एटी है। भाई लेजिट बहुत है भाई। अरे वाह 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 वाह, पोजीशन दे दी, बहुत बढ़िया वाइपर भाई। क्या रैंक है आपकी? Spike planted. One enemy remaining. भाई वाइपर के रिएक्शन आपके राइट में। Enemy spotted A. My ultra. They will cover. मस्ती कर रहे हैं वाइपर भाई, बुरा मन मान जाना। बुरा तो नहीं लगा आपको वाइपर भाई? वाइपर बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं लगा क्या? शिट यार, फेल हो गया हमारा गेम। लाइक कर देना। प्रमोशन तो है। चले अब सो जाए। अरे लगाओ भाई, सोते थोड़ी हम लोग। अरे भाई तो शार्क टैंक भी तो देखना है।
देख में ना भाई शार्क टैंक। आपने लैपटॉप में लॉग अपने पीसी में लॉगिन कर लिया या फिर फोन में देख रहे हो अभी तक? अरे ईशान भाई का नंबर डाला, कहते ओटीपी भी दे दिया, फिर मैंने कहा आ नहीं रहा इसमें, फिर मैंने फ़ोन में देखा, फिर थोड़ी देर बाद मैसेज करते कहते अरे भाई ये वाला नंबर थोड़ी है, आपने इस नंबर से क्यों लॉगिन किया? मैंने कहा भाई रहने दो, बाद में करूँगा। अच्छा हाँ, उनका दूसरा नंबर है वो। Death is not an option. बताता हूँ डेडलॉक कैसे खेलती है, ठीक है? ओके, डेडलॉक मास्टर क्लास विद वेजीबॉय। सोच रहा हूँ कल यार कॉम्पी में भी एक मैच में खेल ही लूँ यार, मेन आईडी पे। हार जाएंगे क्या है, परसों वापस रैंक अप कर लेंगे। तो ऐसा हुआ था ना, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को ये Z5 दिया था ईशान भाई ने, तो मैंने उनके नंबर से लॉगिन कर लिया और मैं मस्त ऐसा मूवी लगा रहा हूँ, ऐड आने लग गए बीच बीच में, तो मेरे को लगा क्या हो रहा है, तो कहते भाई आपने जिससे लॉगिन करा है इसमें तो मेंबरशिप ही नहीं है, इसमें फ्री वाला चलता है, ये मेंबरशिप वाले से लॉगिन करूँ। मैंने कहा भाई क्या बोलूँ भाई, इनको पासवर्ड नहीं याद रहता अपनी मेंबरशिप्स का। भाई डेडलॉक की अल्ट तो वेजीबाई से बेटर कोई सिखा ही नहीं सकता। वेजीबाई वही है जिनको कुछ महीनों पहले तक यही नहीं पता था कि डेडलॉक की अल्ट बाउंस नहीं हो सकती। बाउंस हो सकती है दल्ले, आपको पहले नहीं पता था है ना? हाँ वो मैंने वीडियो में भी डाला जाता है, होशियार मत बन, ठीक है? उस मैच में आयु था मेरी टीम में और आयु ने फिर मेरे को बताया था कि भाई बाउंस करके मारनी होती। मेरे को याद है, मेरे को मत सिखाओ ठीक है? फोटोग्राफिक मेमोरी के चौदे, मेरे से अच्छी मेमोरी तुम्हारी। चलो अच्छो निकल यहाँ से। मैं तक बता सकता हूँ, लोटस मैप था, बाइंड था, चल बढ़िया फालतू का। आयु याद है ना कौन से मैच में तुमने बताई थी मुझे? लोटस पे 2 बार अल्ट चौक करी थी एमएन पे, अभी लिख के दे रहा हूँ। हाँ पर तब तक मुझे पता नहीं था ना, फिर जब आयु के साथ खेल रहा तब मुझे आयु ने बताया। लोटस नहीं आयु, तुमने मुझे बाइंड पे बताया था, मैंने वीडियो डाल रखी भी 2-3, पिछले लास्ट की 2 वीडियो में मिल जाएगी तुम्हें। सर आप म्यूटेड हो डिस्कॉर्ड पे। क्या? कहाँ से सुन रहा है फिर तू ये सब? स्ट्रीम पे। तो सुन गया ना भाई, पहुँच तो गई बात। यार ये वो साइड में है ना, ऑटोमेटिकली म्यूट हो जा रहा है। मैं जैसे टीम वॉइस के लिए यूज़ करता हूँ ना, वो मेरा टॉगल है। समझ रहा हूँ मैं। फनी कर दिया भाई ये तो। So, Sage, when are you going to teach me how to revive people, huh? Jets, you... डेडलॉक की अल्ट करना सिखा दो बस। अरे अभी सिखाता हूँ। पर मिस होने के बहुत चांस होते हैं डेडलॉक की अल्ट से, ऐसा नहीं कि नहीं होती, मिस होती है। मैं क्या कह रहा था, लास्ट गेम में जो आपको होल्ड करा था वो सब भूल जाना इस गेम। हाँ बेटा इसीलिए लिया है मैंने। अरे बापू कह गए लड़ाई से किसी का भला नहीं होता, एक्सेप्ट कंट्रोवर्सीज ऑन वाईटी। करा दो मेरी एक। नहीं यार पर मेरे को वो सब नहीं करना है। बिना कंट्रोवर्सी के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ सकते क्या स्पीड में एकदम? म्यूजिक वीडियो निकाल लो। ये म्यूजिक वीडियो का क्या जोक है? ये जो अभी एलवेश भाई ने किया ना, इनका तो नाम मतलब मेरे सामने बस वही बड़े आदमी है भाई, वो किंग खान है, हम छोटे लोग हैं। Kill confirmed. इधर ही हुआ इधर। No escape. नीचे पकड़ ले, नीचे पकड़ ले। दो। मैं कहाँ से जाऊँ, मैं तो ऊपर चला गया।
Where are you? Bam. Come on, please. आप बोला है जाके Remaining. That Reina is not as fearless as she appears. भाई भी लाइक झुक के लड़ूंगा। झुक के रहना पड़ेगा। आखिरी गेम है यार, 3 बजे आती, 2 बजे से प्ले खेल रहे हैं। भाई बूटी तो हिल गया भाई डेडलॉक की जो भी बोला। Enemy spotted mid. होल्ड करना। देखो होल्ड पे तो मैं डैश कर रहा हूँ। Enemy spotted B. Sleep, brother. Night night. Right here. Right here. Throwing net. Right here. One enemy remaining. Close side. Spike down B. Deployed. They're done. Reloading. Reloading. The wind shift in our favor. एक काम करोगे इधर से नहीं इधर होल्ड करो। नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा। मुझको पिछली बार फंसाया था ना, तुम्हारी एक भी बात नहीं सुना। भाई फाइनली चला गया। जी मैंने कुछ ना करके औकात दिखा दी। Ultimate record. No escape. Hold them. Spike down A. Reeling them in. Spotted mid. Target escape. One enemy remaining. बेस पे लेफ्ट 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 लेफ्ट। अब ड्राफ्ट करके देख लो, मजाक कर रहा हूँ तो। अरे इधर होगा। समझ गया, मैं इधर लेफ्ट में होल्ड कर रहा हूँ। On my mark. बोल रहा हूँ बेस पे, तुम मान ही नहीं रहे हो मेरी बात। अरे इधर होल्ड कर रहा था भाई। अरे घंटे का होल्ड भाई। Last round in the half. Spend everything. Hoarding money is useless now. Gun here. I'll find their cipher. Blocking movement. Barrier. There they are. Right here. Here. Reloading. Who's next? Enemy spotted. Sound sensor up. Plane hot. Sensor tripped. Reloading. One enemy remaining. Spike down mid. No escape. बाहर है बाहर टिपी गया। Looks like I was. Sound sensor up. Switching sides. दोबारा करो वाल। Good dreams while you. रुको, तुमको उसमें जाके बताऊंगा, रेंज में जाके बताऊंगा। रेंज में जाके डेडलॉक कैसे करोगे? अरे सिखा तो सकता हूँ ना, चोमू की बंदा इधर है तो ऐसे अल्ट करनी है। चोमू बोल रहे हो भाई? चोमू ही बोला, तुम्हारी तरह बीकेएल तो नहीं बोलता ना हर अगली बात में। अरे मंदार बोलता है भाई, मैं नहीं बोलता। हाँ 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 बताऊंगा।
अरे व्हाट्सएप की बात सुने जा रहे हैं। हाँ chat अलग। हाँ नहीं नहीं स्ट्रीम के चैट में लिखते हो इतने लोगों के सामने। भाई इसका है चोमू और बदतमीजी करता है मेरे से। There they are. ए झील भाई ये प्लान करेगा पक्का एंट्री प्लान करेगा। Okay. For you. Problem solved. Plant the spike. Right here. राउंड हारो ना, अभी ना भाई हारना था यार राउंड। भाई वो सच में खा गया वन टैप शेडो से क्या। Right here. फिर क्या अल्टा जाती ना अगले राउंड तो अर्षित भाई क्वालिटी दिखा देते। Spike planted. Enemy spotted A. Barrier created. Reloading. छोड़ दे भाई अपने। One enemy remaining. नाइफ करो नाइफ करो। नाइफ करने वाले को 150 रुपया इनाम। अरे भाई नई वाली नाइफ है सेज भाई पे तो बहुत पैसा है। कौन सी नई वाली नाइफ? अरे वो दो चक्कू चलते हैं जिसमें राइट साइड में। Where are you? Bring them down. सेज भाई नाइफ करके 150 रुपया मेरे को दे देना, मैं खाना खा लेगा। Last player standing. भाई तुम्हारे बस की नहीं सेज में नाइफ नहीं रहने। सेज ने क्या हाल है लास्ट राउंड में अल्टी कर दी। Match point. I'm taking walks more dangerous than this. Veggie bhai, a great teammate would drop me a vandal. कोई ना मेरे पे पीक दे के मर जाऊँ मैं बॉडी से ले। पार्टी कोड दुखे तो नहीं कर देता हूँ। On my mark. Caution here. गेम चालू रखना जल्दी ज्वाइन करना लेकिन। Down. अरे यार इसने मार लिया। Need healing. Reloading. Spotted A. Meet the smurry. देखो और सीधे दिखाता हूँ ठीक है। Enemy spotted A. Deploy drone. Pull them to their grave. Nothing. अरे यार। Throwing nets. अरे बैठा दिया मुझे। One enemy remaining. Blocking movement. Right here. Catch them. I'll find you. Reloading. Listening. Listening. Sensor trick. भाई एक में मुंह पे लोना That's going to be. Attackers win. Direct and hunted. ठीक है भाई। फैन भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। कहाँ हो स्ट्रीम लाइक करो, कहाँ रहते हो आजकल? तनिष भाई आओ, ये पार्टी कोड है आपका FPT767। तब तक रेंज में जाके आपको अल्टी दिखाता हूँ। कस्टम में चल रहे थे, मेरे को भी अल्टी गिरा रहे थे। टाइम बहुत लग जाएगा कस्टम। Pull them to their grave. Nothing there. देखो जैसे बंदा यहाँ खड़ा है ठीक है, Over there. और आप इधर हो ना तो आप ऐसे अल्ट करोगे तो ऐसे वो बाउंस होकर इधर जाएगी। रडार नहीं दिखता ना ठीक है। इधर अल्टी करी ऐसे तो देखो बाउंस इधर जाएगी ऐसे। इधर इधर यहाँ इस यहाँ से लेके इतने जितने में बंदा खड़ा है ना उधर सब जाएगा ऐसे। देखो ये दिखाता है बाउंस होगी कहाँ जा रही है वो भी दिखाता है। देखो ये ऐसे कर ली, देखो बाउंस होगी उधर जा रही है। तो ये अगर इधर भी होगा तो भी आएगा मरेगा, वो इधर होगा तो भी मरेगा। समझ गए?
Nothing there. और हमेशा अल्ट करो ना, जब जंप पंप करके करो ताकि खुद भी इजी टारगेट ना बनो, और अल्ट में तो आना ही है उसने। Nothing there. Nothing there. Hold them to their grave. देखो ऊपर करी तो नीचे आएगी, देखो अब दिखा उसका वो पूरा रेंज, ऐसे पूरा कर्व बनता है, ऐसे सी बनता है हमेशा अल्ट का। और अगर सामने सामने ही है तो भी ऐसा सीधा मत जाओ, ऐसे जंप करके जाया करो ताकि वो आपको तुरंत मार ना पाए, है ना। अगर सामने बंदा खड़ा है ना तो सीधा मत जाओ, वरना आपको मार ही देगा भाई वो अपील करने से पहले। बहुत सेक्सी एजेंट है भाई, खेल लिया ना रैंक में तो बहुत पावरफुल है भाई, बहुत पावरफुल है। बाइंड पे तो, बाइंड और स्प्लिट पे तो, सनसेट पे भी ठीक है वैसे, मतलब रेस के अगेंस्ट तो, रेस का तो नाइट में है भाई ये। आप रेस खेल रहे हो अगेंस्ट में, आपके डेडलॉक है ना, आप तो बुंड मरा रहे हो। सैचल ही नहीं करने मिलेंगे आधे टाइम तो, जिधर सैचल किया उधर निपट गए। और हर्षित भाई देखो इसकी यूटिल कैसे यूज़ करनी पता है, जैसे ये एंट्री पॉइंट है, इधर ऐसा लगा दिया है, अगर वो शिफ्ट वॉक करके आ रहा है ना तो ऐसे डायरेक्ट फाइट मत लो, ऐसा जिगल कर दो पहले उसको, वो जैसे ही गोली चलाएगा ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर वो शिफ्ट वॉक भी कर रहा है तो भी फिर पीक ले लो, वेट करो यूटिलिटी में, दीवार तो है ही है। और एक बार जब एक बंदे को मार दो वैसे वहाँ से, फिर ये डाल दिया। अरे कुछ नहीं होता, हर्षित भाई भी अगर फायर कर देंगे ना, अगर वो बंदा शिफ्ट वॉक करके आ रहा है। वो आ गए आप, चलो समझे हर्षित भाई। किसी दिन रैंक मैच में खेलूंगा ना तब देखना कैसे यूटिल यूज करते हैं। Match found. सोलो सेंटिनल एजेंट नहीं है भाई, डेड ड्रॉप पता चला ले लिया, आपकी टीम आपको गाली भर रही है कि भाई फ्लैंक आ गए, फ्लैंक आ गए। कल मेन आईडी में खेलने का मन है मेरा, बाइंड पे, पर यार वही है कि फिर लोग डबल डुएलिस्ट भी ले लेते हैं, वैसे चल जाता है यार, बाइंड पे तो चल जाएगा। सोलो सेंटिनल भी हुक्का के नीचे लगा दिया ना आपने, इसका वो सेंसर फ्री किल है भाई एक तो, फिर उस पर यूटिलाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ओपन में जाके खड़े रह गए उसके बंदों ने मार दिया तुम्हें। स्टन वाला तो रह गया, स्टन साइड जहाँ से रेस सैचल करता है बॉक्स के नीचे। आप सिखा रहे हो कि मैं सिखा रहा हूँ? ऑब्वियसली मी, you and I. Trust me, we can get this job done. Reloading. रेज भाई आगे नेड करो ना यहाँ पे। लोटस पे भी बहुत सेक्सी है, रेज वाले मैप पे बहुत सेक्सी, लोटस पे तो बहुत ही सेक्सी भाई। इधर अभी एक किल मिलेगा, मैं देखना, अभी हमें यहाँ एक किल मिलेगा। रेज भाई फ्री किल है, ठीक है, नेड करो, फ्री किल है। मेरे इसमें फंसा दूंगा जाल में, सबको जाल में फंसा दूंगा। आगे तो वो भाई तो तुम हो ही दल्ले, क्या करें हम। ठीक से नेड करना भी नहीं आता। अच्छा मिला किल, ये मिला ना किल, बोला था ना फ्री किल है भाई। मिला जॉर्ड भाई, क्या खेलते हो भाई। मटका, अच्छा लो था, अच्छा उसने हील नहीं किया। Last player standing. मान जाऊंगा, निकाल दो राउंड, मान जाएगा, मान गया। पीछे बोलने की गंदी आदत है, म्यूट कर दो। हाँ ना, इसको भी एपेक्स। You're all more important than words on a brief. Look out for each other. ओपोनेंट वाले डर गए, कह रहे भाई ये सब क्या है भाई, स्विफ्ट प्ले है ना ये। बोल रहे हैं क्या? चैट देखो, मैंने म्यूट कर रखा था। रेज भाई इस बार वो करेंगे नहीं ऐसा, उनको पता लग गया ना, इस बार हम नहीं करेंगे वो, हम आगे जाएंगे, पुश करेंगे। W
उनका स्काई लिख रहा है द स्टार्ट विद इन द लैंड टूर्नामेंट। Reloading. Spike down A. Begins. सबसे पहले कोई राउंड मैच करने वाला हूँ। One enemy remaining. अरे यार मार दिया उन्होंने पहले ही। Ultimate ready. Now they are nervous. चेंबर में सही बोला। भाई ये राउंड एक बंदा हेडशॉट मारा है, ठीक है? प्लीज पुट सम रिस्पेक्ट अंडर माय नेम। देखो अल्टी दिखाता हूँ कैसे फंसाऊंगा ना अपने जाल में एक और इंसान को अभी। No escape. अरे इधर आई नहीं। अरे ये तो पूरा ट्राई। अरे चेंबर मेन। Gun here. Flash out. Clearing out. Right there. डैश करके जाओ ना यार किंग खान। और जॉड यार। They're all. Last round before the switch. Buy the best gear before it's too late. ओपन स्किल्स दिखाता हूँ आपको मेरी। क्या? अभी फ्लिप्स देखना। ओपन यापिंग स्किल्स क्या बोल रहे हो? फिंगरिंग स्किल्स। हंस क्यों रहे हो भाई? यापर। Throwing net. They found my trap. Let's go! Pull them to their grave. Three out. यार ये लोग ट्राई हार्ड करने लग गए यार। हर्षित भाई माफ कर। हारो राउंड हारो बिना भाई राउंड हारो एक और अल्टी करनी है यार। अल्टी में तो कोई फंस ही नहीं रहा मेरे। रेस भाई राउंड हारे ना, लंबा चलाएंगे गेम, थोड़ा मजा आएगा। ओटी ले जाएंगे। हार जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। जेट यार प्लीज जेट भाई प्लीज यार। मारना नहीं। One enemy remaining. Spike down B. Let's play. अरे जिंदगी और मौत की बाजी है इनकी, ऐसे तो खेल रहे हैं लोग। Last player standing. बस मर जाओ। भाई वो भी दल्ला। नाइस ट्राई करो। अरे तो जाके मर जाओ ना आप भी, क्या कॉमेडी किंग कर बन रहे हो उसके 30 सामने। seconds left. Clutch. Switching sides. Paint? Check. Charges? Check. Brakes? Nowhere in sight. वेजी भाई चेंबर को नाइफ करना है ना आप। चेंबर को ठीक है, उसको बिठा देंगे नीचे और कर देंगे नाइफ। No charges. Reloading. सुनो वो भी सेम ट्राई करेंगे इधर वो डाल के सीज पर। हम जाएंगे ही नहीं आगे, ठीक है? उनके पास तो रेज नहीं है तो क्या हो गया? सीज तो फिर भी हो सकते हैं। आफ्टर शॉक कर दिया तो चुप करो यार। तुम्हें नहीं पता लगता मत बोलो। मैं टीपी आउट मार दूंगा। Reloading. So close. Blinding. Next. Over there. Caution here. One enemy remaining. Reloading. सी से आ रहा है। Barrier deployed. Grenade. We have to knife him this. Spike planted. कहाँ पे? नाइफ करना है, अपने भाई का बदला लेना है, ठीक है?
जान दे देंगे पर नाइफ करेंगे जरूर। 55 है तो बढ़िया है। नहीं हुआ। Last player standing. Let's go, let's go, let's go. Never been in a knife fight, have you? Oh yeah, there's the adrenaline. I could use a drop. Does anyone have funds? अबे देना दल्ले। अबे चोमू। हवा करनी थी, राइट बढ़ गई थोड़ी। अरे वो तो अपना ही लौंडा है। It begins. ओह सॉरी। अच्छा ये तो अब पार्टी में 3 हो गए अब तो। शिट यार मैं तो भूल ही गया था। Gun here. Scam. Ultimate ready. You want to play? Let's play. One enemy remaining. Flawless. Match point. They think they're better than us. I can tell. भाई जो है अभिनव भाई को आगे जाने देना सी पे, उनको लेके जाओ और फिर उसके बाद केज कर देना पीछे। I'm ready. बोल रहे देखे आयु, आवाज नहीं आई नीचे से तुम्हारी। अरे मैं नीचे हूँ ना सबसे। No escape. Discord पे muted है। Reeling them in. Blocking movement. Sound sensor. One enemy remaining. Knife, 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 knife. Spike planted. Reloading. Sound sensor. जेट पे अपड्राफ्ट, अरे जेट पे अपड्राफ्ट वगैरह सब हो गया। Listening. आने तो कहाँ जाएगा, फंसेगा इसमें अभी। Listening. नेट कर। No surprises. Satellite. अरे Last player standing. आइए। Let me get that close. Attackers and you're win. already dead. This is our victory. यार अब तो एक और मोमेंटम बन गया भाई, ये तो सोने नहीं दोगे तुम लोग यार। एक और खेल लो, मेरा लास्ट पैराग्राफ बचा है। भाई थोड़ा जल्दी क्यों कर दूं? बहन पढ़ रही साइड में, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकता। तो खुद भी पढ़ाई करो ना, सीखो बहन से कुछ। आयु स्ट्रीम पे गाना सुना, सेक्सी गाना सुनाऊंगा, शायद तुमने सुन भी लिया होगा, पता नहीं। सुनो सुनो। दहा रनची आवश्यकता। आई जावाड्या, लेट्स गो। भाई 16, 17, 20, 22, 25, 23 लोग देख रहे थे। इतनी जैसे कोई चैट क्यों नहीं कर रहा हर्षित भाई के अलावा? तुम सब गूंगे हो क्या भाई? चला दिया, चला दिया। प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो। प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दे।
यार तेरा जी लेगा जैसे भी हालातों पर दिखेगा नहीं कभी तुम्हें शोर में प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो ना प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दे जी यार मेरे पूछते तू ठीक है ना मैं भी हंस के कह देता रिपोर्ट ओके की हाँ मैं ठीक हूँ ज्यादा मुझे पड़ता नहीं फर्क बड़ा ठीक हूँ सुधार नहीं पाया कोई शख्स अजीब हूँ नहीं देता ज्यादा किसी को भी वक्त अगर दे दिया तो खुद पे लगाऊंगा क्या बांट दिया सब तो फिर खाऊंगा क्या ऐसा सोचा तो नीचे ही जाऊंगा ना ये बात है पार्टीज आई डोंट लाइक इट भाई तू गम में बुलाएगा तब आऊंगा ना टाइम से बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं फिर फर्क नहीं पड़ता कि पेशा क्या है तो उठना बेटा क्या घर नहीं चलाना है अब तक तू बिस्तर पे लेटा क्या है जैसे दोस्त है ना दुश्मन ये नींद भी है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ वक्त कीमती है I'll be most consistent you'll ever witness मुझे अपने से ज्यादा फिक्र सीन की है कहीं वैक ना हो जाए कहीं डैड ना हो जाए किसी लड़के का मुझसे बेहतर रैप ना हो जाए ट्रैप भी हो जाए मुझसे ब्रैक भी हो जाए जब पंचेस का मूड बूम बैप भी हो जाए ड्रिल भी करा है मैंने बिल भी भरा है जज्बात जैसे भी हो कलम डट के चलाए ये लिखाई मेरी नहीं है मोहताज किसी शख्स की दिखाई नहीं देता क्या नहीं हूँ मैं वक्त की प्रूव नहीं कर सकता बार बार मैं बोल के होगा यकीन तभी होगा जब टॉप पे सुधर रहा होता हूँ जब होता हूँ गायब तुम ये मत समझना कि आऊंगा नहीं लौट के ट्रेजेडीज 110 मेरी लाइफ में एनिमी आकर सब बने माइक पे वनबीज इनका मुंह तोड़ दूं ये लिखाई मेरी जिंदगी में कैसे जोड़ दूं वेटिंग फॉर द बेटर मी अब इतने टाइम से हेटिंग फॉर नो रीजन अब क्या सबको टाइम दे जाना है सबसे आगे लेना है सबसे कम ही रेस्ट था ही नहीं तू कल तक आकर क्यों बाय बाय आर्यन भाई थैंक यू फॉर जॉइनिंग सी यू टुमारो नहीं है आई एम बोर्न टू बी नंबर 1 याद आया नंबर से कॉल कराओ 2 दिन से क्यों तेरा नंबर बंद फिर से क्या दुनिया से जंग हो गई फिर से क्या दुनिया से तंग हो गई या जिसके लिए दुनिया से बात करना बंद की उसी से क्या बात होना बंद हो गई समझ सकता हूँ मैं सिचुएशन तुम्हारी भी होता ही आया है सालों से यही वक्त दिया सब दिया मुंह कैसे फेर लिया कह दूं मैं अब तक सवालों में वही सीखा है वक्त से कि वक्त को भी वक्त दो फिर वक्त पे तुम सब कुछ ही पालोगे भाई भागने की करोगे वक्त से भी आगे तो वक्त से ही पहले तबाह होगे भाई इसमें शक क्या है बोल मेरे बिक रहे रास्ते तेरी इज्जत के बदले तो 2 जरा खोल इज्जत आते हुए लाती है हेल्थ और ट्रोल बनना है बेस्ट ये सब झेलना पड़ेगा कदम रख दिया गेम में अब खेलना पड़ेगा सब छोड़ देंगे आपका दोस्त है भैया अभिनव पांडे रेडलर है आपके मैच में डॉक्टर कर रहा था क्या आई एम नॉट सरप्राइज्ड जबान कब चलाना मेरे गेम में पक्का गाली गलत कर रहा होगा बचता है ये बहुत बचता है फुल मार दिया करना अगली बार आपकी टीम में आ जाए के आ ही ना पाए कभी थॉट कोई क्या रुकूंगा नहीं कभी झुकूंगा नहीं भले हिट ना हो कह रहा जेट इंस्टॉल कर रहा था अरे दल्ला है बिल्कुल बॉट है भाई प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दे यार तेरा जी लेगा जैसे भी हालात पर दिखेगा नहीं कभी तुम्हें शोर में प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दे जी यार स्पाइक दोगे फिनिक्स स्पाइक दोगे मुझे मेरी अल्टी आ गई कह देता रिपोर्ट की अरे बैक से हाँ दिख गया था कवर आपका Yes. One enemy remaining. 4. My ult's ready. हक दिया साला इतना कब वाइड आ गया ये इन्हीं पे फ्लैश करके मार दो मजा आ जाएगा Last player standing. हो गया एस हो गया मिला नाश्ते में आंसू और सपने में जब मिल जाता सब उसको लिखने में काबू इस माइक को मैं क्या दूं लिख के मैं गा दूं मेरे बोल करते हील कभी लगता मैं कट को फिर अब रखा नीचे सुना बोलते नीचे तेरा वोट पीछे बापू गिनती है राइम्स में तो रैप मुझे का बॉटम करके बट कैरी कर दिया था इसने बस टॉक्सिक के बहुत मेरा डुओ को भर दिया था इसने रिडलर MS4 था वो एडिट मेरे में पूछा हाँ भैया रेड में MS4 ही बराबर सही है यही आता है बहुत टॉक्सिक है बहुत टॉक्सिक वाइपर की मॉडल से ज्यादा टॉक्सिक है ऐसे स्पेस भर दिए मैंने अरबों में एक छोड़े लड़का तेरे रोज का नहीं पापा की ये बोझ का नहीं ऑफ की ये दोस्त का नहीं बोलता है पर पहुंचता नहीं पहुंच कर आंसू पोस्ट कर इधर बैठा है Spike down mid. वो कोई और होगा नहीं नहीं यही है खुश होना टाइम लेके 4-10 अभी नहीं है Reloading.
सिर्फ फिट होने के लिए साउंड स्विच नहीं करते और लिट होने के लिए क्लाउन शिट नहीं करते पैसा इसलिए काउंटेज नहीं करते बॉल बाउंस नहीं करते ट्रैक पे मैं बोल्ट और किस हूँ मैं वर्सेस पे जीत हो या हार ताकत है सिर्फ कोशिश में मेहनत और दिमाग तू खुद अपना ज्योतिष है पर में असली तू बोगस है जो भी किया मैंने खुद से मैं खुद पे मैं चलने दो जलती है डर क्या जमाने का जिनके पास नहीं पैसा क्या पैसा देखो पैसा कमाने का कभी बैठ के सोचता ये सोचते नहीं अरबों में लड़का तेरे दोस्त का नहीं पापा की ये बोझ होता है आंसू पोस्ट कर रहा तू पुकार बस भाई फुल लेजेंड भाई लेजेंड डिवाइन क्रेजी है भाई खुश होना टाइम Need a drop. Thanks. जो स्ट्रीमर है पता ना हेलो पनी आज सबके रिएक्शन बढ़िया है। अरे मेरा डुओ है स्ट्रीमर है इसका जो आईजी है ना वही है स्ट्रीमर इसका जो इन गेम नेम है ना अभी स्कोरबोर्ड पे लिखेगा वही है। अरे ये साइफर की बहन की Last player standing. भाई कहाँ बैठे रहता है पता नहीं। Last round in the half. Either spend all your money or give it to me. Good cause either way. Need a drop. Thanks. Enemies nearby. The hunt begins. भाई वो दिन के बैठे हैं बेड में भाई देखिए पक्का सिस्टम है ना। Last player standing. कॉम्पी वाले लिए Flawless. Switching sides. Match point. I got your backs. Just, you know, from the front. रीच भाई बेइज्जती करा दी भाई। भाई अब मैं अपनी 36 बिरादरी को क्या बोलूँगा। जाट हो गया भाई 4 सेकंड भी जाट है। बिल गेट्स भी जाट ही था। छोटा भाई चबा द चैन दोनों भाई जला दे गैन अभी तो 10 out of 10 है बहुत महंगा ये पहले से अच्छे से आता है करना फैन से अच्छे से आता है करना फैन मुझे अच्छे से आता है भरना घुसन तेरी साथ वाली ज्यादा पसंद है Spike planted ये लंडा बुलंद तेरी ज़बा से ज्यादा ये काली सुरंग तुझे जाना तो जा बिन मन में तो गन्ने से घर वाली म्यूजिक है बाहर वाली गन्ने से एक तेरी खुशी और एक तेरी बहुत सारा ईद और बहुत सारे रुपीस मोटी मोटी जेब टी पे बड़े One gap. डाउन ऑन द मैप रख दी लबों की शक्ल की वहाँ पे आप सूजी कवि Last player standing. कवि ने आपके पिताजी के पैसों का कभी Enemy kill. नहीं है तो और यार 90 और 75 थे। Attackers win. चलो बाय बाय गुड नाइट।
चलो आप दोनों को गेको डीजी और फिनिक्स फ्लैश तो सभी हम तो सभी जाट हैं। सॉरी शौर्य प्रेशर वेलकम टू द स्ट्रीम। चलो बाय बाय तनिक भाई, अभिनव भाई गुड नाइट। से सीखा के अपनों को रखने का दिल में और दिल से जो उतरे वे लौड़ों पे बजो बे हम जैसा कभी नहीं बनोगे ना, खुद से लौंडों को भरू भी ना, कैटलॉग ऐसा कि मरू। चलो दोस्तों गुड नाइट, कल मिलते हैं आपसे 6:30 बजे। गेको डीजी और फिनिक्स फ्लैश मतलब क्वेश्चन नहीं समझ आया। गुड नाइट फाइट, थैंक्स फॉर स्ट्रीमिंग। अरे यार मालिन जी ऐसे अच्छी अच्छी बातें करके मुझे पिघला मत दो। विच इज़ बेटर? क्या घटिया सवाल किया शौर्य भैया आपने। बोथ इफ यूज्ड प्रॉपरली। भाई 8:30 घंटे हो गए, मैं जा रहा हूँ सोने। बाय बाय, गुड नाइट। माफी तलाफी की काफी पराई काम नहीं जी, आप वो लेती मेरा नाम नहीं। Pills pop, I let the weed smoke. Sometimes just talking does not make the pain go. तू ही आग, तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस। तू ही छाँव, तू ही धूप, रंगों के साथ रूप, तू जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज्यादा दूर। मैं लिखना छोड़ दूं जो तेरे बारे, मैं कलम तोड़ दूं और तू स्याही में बसा रहे। हंसा रहे जमाने को खुद से परेशान, वो पढ़ती थी किताबें, मैं पढ़ता हूँ इंसान। इंसान भी क्या चीज़ है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। इंसान भी क्या चीज़ है, मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीज़ एक। तेरा नंबर नहीं है, You left the city and you're gone। बात करने को है बस ये माइक्रोफोन, वही कागज वही कलम लहजे सख्त, दिल नरम बदबख्त। बस करो उदासी हर तरफ, झूठे तेरे भरम, किस बात पे तू बरहम। पर हम क्यों अभी stuck like a jam on a one way, but someday तू समझ जाएगी दूर होके हमसे कि हम में वो करार नहीं, पहले वाली बात नहीं। तुझे किया आज़ाद या दी है खुद को सजा, लेकिन दिल के मोहल्ले में अब तेरा मकान नहीं। आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी, सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती। But God damn it girl, आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। राजी दिल तो रजामंदम क्यों नहीं, नई टापी पिल गाने लिखे ये शऊर भैया, आजिज़ी है बागी इसको कहते हम गुरूर नहीं। दिले मगरूर तू भी खूब तो आराम देना सूद फिर, I'm just a text away, इतना भी दूर नहीं, feels like yesterday, सच का सबूत नहीं। तू ही ज़वाल मेरा, तू ही है उरूज, ए लोगों से पूछे कलम लिखता झूठ नहीं। गम देकर फिर दिला से कैसे, मुँह पे तसल्लियाँ तो दुनिया में तमाशे कैसे। हम आज भी कहते ना कोई रकीब ना हरीफ, हम थे गरीब न जाने काटी हैं वो रातें कैसे। कलम छोड़ या कलम तोड़ा वजन तोल, नहीं हजम शोर ये हजम खोज, तू सुरंग खोद तराजू ही नहीं जो तोलेगा ये डजन बोल। तू रकम सोच इन लफ्जों की आजा जख्म तोल। इंसान भी क्या चीज़ है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। इंसान भी क्या चीज़ है, झूठ की सज़ा नहीं तो तोहमतें लगाने पे ढील है। तू जैसे रहमत तू ही हूर, तू ही नूर कोहे नूर, तू ही साया तू ही धूप, तू फितूर ये फतूर।
तू इतनी खूबसूरत के मैं लिखने पे मजबूर, बादल सिराना क्योंकि दूर तूने तो आना नहीं, खुद कुछ जमाना ये एक गाना कोई फसाना नहीं, लिख दे अफसाने तुझ पे लेकिन आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी, सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती, but God damn it girl आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। माफी तलाफी की काफी पराई काम नहीं जी, आप वो लेती मेरा नाम नहीं, pills pop I let the weed smoke, sometimes just talking does not make the pain go। तू ही आग तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस, तू ही छाँव तू ही धूप रंगों के साथ रूप, तू जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज्यादा दूर, मैं लिखना छोड़ दूं जो तेरे बारे, मैं कलम तोड़ दूं और तू स्याही में बसा रहे, हंसा रहे जमाने को खुद से परेशान, वो पढ़ती थी किताबें मैं पढ़ता हूँ इंसान, इंसान भी क्या चीज़ है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है, इंसान भी क्या चीज़ है, मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीज़ एक, तेरा नंबर नहीं है, you left the city and you're gone, बात करने को है बस ये माइक्रोफोन, वही कागज वही कलम लहजे सख्त, दिल नरम बदबख्त बस करो उदासी हर तरफ, झूठे तेरे भरम किस बात पे तू बरहम, पर हम क्यों अभी stuck like a jam on a one way, but someday तू समझ जाएगी दूर होके हमसे कि हम में वो करार नहीं, पहले वाली बात नहीं, तुझे किया आज़ाद या दी है खुद को सजा, लेकिन दिल के मोहल्ले में अब तेरा मकान नहीं, आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी, सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती,